श्रीपद्मनाभ पुरुषोत्तम वासुदेव वैकुण्ठमाधव जनार्दन चक्रपाणे श्रीवत्ससिंहशरणागत पारिजात श्रीवेङ्कटाचलपते तव सुप्रभातम् गन्धर्वनन्दनसुन्दरमूर्ते कान्ताकुजाम्बुरुहकुट्मललोटदृष्टे कल्याणगुणकरदिव्यकीर्ते श्रीवेङ्कटाचलपते तव सुप्रभातम् मीनाकृते कमठकोलनृसिंहवर्णन् स्वामिन् परश्वतपोदन रामचन्द्र शेषांश रामयदुनन्दन कल्किरूप श्रीवेङ्कटाचलपते तव सुप्रभातम् हेलालवङ्गघनसार सुगन्धितीर्थम् दिव्यं वियत्सरिति हेमघटेषु पूर्णम् धृत्वाद्य वैदिकशिखामणयः प्रहृष्टाः तिष्ठन्ति वेङ्कटपते तव सुप्रभातम् भास्वानुदेति विगतानि सर्वविहङ्गाः श्रीवैष्णवा सततमर्दितमङ्गलास्ते कामाश्रयन्ति वेङ्कटसुप्रभातम् सन्तस्तनन्दनमुखास्त्वदयोगिवर्याः दामान्तिके तव हि वस्त्रवस्तु हस्ताः श्रीवेङ्कटाचलपते तव सुप्रभातम् लक्ष्मीनिवास निरवध्य गुणैकसिन्धो संसारसागरसमुद्रतरणैकसेतो वेदान्तवेद्य निज वैभव भक्तभोग्य श्रीवेङ्कटाचलपते तव सुप्रभातम् लक्ष्मीनिवास निरवध्य गुणैकसिन्धो संसारसागरसमुद्रतरणैकसेतो वेदान्तवेद्य निज वैभव भक्तभोग्य श्रीवेङ्कटाचलपते तव सुप्रभातम् इत्थं वृषाचलपतेरिह सुप्रभातम् ये मानवा प्रतिदिनं पठितुं प्रवृत्ताः तेषां प्रभातसमये स्मृतिरङ्गभाजां प्रज्ञां परार्थसुलभां परमां प्रसूते इत्थं वृषाचलपतेरिह सुप्रभातम् ये मानवा प्रतिदिनं पठितुं प्रवृत्ताः तेषां प्रभातसमये स्मृतिरङ्गभाजां प्रज्ञां परार्थसुलभां परमां प्रसूते कमलाकुचूचुककुङ्कुमतो नियतारुणितातुलनीलतनो कमलायतलोचनलोकपते विजयी भव वेङ्कटशैलपते कमलाकुचूचुककुङ्कुमतो नियतारुणितातुलनीलतनो कमलायतलोचनो विजयी भव वेङ्कटशैलपते शशधन्मुख षण्मुख पञ्चमुख प्रमुखाखिल दैवमौल्लिमणे शरणागत वत्सल सारथिने परिपालय मां वृषशैलपते अधिवेलकृदैवरदादसै परिदं त्वरिदं वृषशैलपते परया कृपया परिपाहि वेङ्कटमुदातवदे जनदाभिमदात् परदेवतया गदितानि कमलादयितान्न परं कलये कलवेणुरवावशगो भवतु शतकोटिवृथा स्मरकोटिसमात् प्रतिवल्लभिगाभिमगात् सुखदात् वसुदेवसुधान्न परं कलये अभिरामगुणाकरदाशरथे जगदेकतदुत्तरधीरमदे रघुनायक राम रमेश विभो वरदो भवतीर्गतया जलदे
अवनीयधनागमनीयकरं रजनीकरचारुमुखाम्बुरुहम् रजनीचरराजममोनिधिरं महनीयमहं रघुराममये सुमुखं सुहृदं सुलभं सुखदं सनुजं च सुखार्यममोघशरम् असहाय रघुत्वमन्यमहं न कथञ्चन जातु भजे विना वेङ्कटेशं ननाथो ननाथ सदा वेङ्कटेशं स्मरामि स्मरामि हरे वेङ्कटेशं प्रसीद प्रसीद प्रियं वेङ्कटेशं प्रयच्छ प्रयच्छ विना वेङ्कटेशं ननाथो ननाथ सदा वेङ्कटेशं स्मरामि स्मरामि हरे वेङ्कटेश प्रसीद प्रसीद प्रियं वेङ्कटेश प्रयच्छ प्रयच्छ अगं दूरदर्शे पदाम्बोजयुग्म प्रणामे च सेवा करोमि सदेव सया नित्य सेवा बलं त्वं प्रयच्छ प्रयच्छ प्रभो वेङ्कटेश अज्ञानिना मया दोषान् शेषान् हरे समक्षत्वं समक्षत्वं शेषशैलशिखामणे अज्ञानिना मया दोषान् शेषान् विदान् हरे समक्षत्वं समक्षत्वं शेषशैलशिखामणे ईशानां जगतोऽस्य वेङ्कटपतेर्विष्णो परां प्रेयसीं तद्वक्षस्थलनित्यवासरसिकां दक्षान्तिसंवर्धिनीं पद्मालङ्कृतपाणिपल्लवयुगां पद्मासनस्तां श्रियं वात्सल्यादिगुणोज्ज्वलां भगवतीं वन्दे जगन्मातरम् ईशानां जगतोऽस्य वेङ्कटपतेर्विष्णो परां प्रेयसीं तद्वक्षस्थलनित्यवासरसिकां दक्षान्तिसंवर्धिनीं पद्मालङ्कृतपाणिपल्लवयुगां पद्मासनस्तां श्रियं वात्सल्यादिगुणोज्ज्वलां भगवतीं वन्दे जगन्मातरम् श्रीमन्कृपाजलनिधे कृत सर्वलोक सर्वज्ञ शक्त सर्ववत्सल सर्वशेषिन् स्वामी सुशील सुलभाषित पारिजात श्रीवेङ्कटेश चरणौ शरणं प्रपद्ये श्रीमत्कृपाजलनिधे कृत सर्वलोक सर्वज्ञ शक्त सर्वशेषिन् स्वामी सुशील सुलभाषित पारिजात श्रीवेङ्कटेश चरणौ शरणं प्रपद्ये आनूपुरार्पित सुजात सुगन्धि पुष्प सौरभ्य सौरभकरौ समगन्धिवेशौ सौम्यौ सदा सुभवने नवानुभाव्यौ श्रीवेङ्कटेश चरणौ शरणं प्रपद्ये सद्यो विकासि समुदितर सान्द्र राग सौरभ्य निर्भर सरोरुह साम्य वार्ताम् सम्यक्षु साहस पदेषु विलेखयन्तौ श्रीवेङ्कटेश चरणौ शरणं प्रपद्ये रेखामयध्वज सुधा कलशात पत्र वज्राङ्कुशाम्बुरुह कल्पक शङ्खचक्रैः भव्यैरलङ्कृत तलौ परतत्त्वचिह्नैः श्रीवेङ्कटेश चरणौ शरणं प्रपद्ये ताम्रोदरद्युति पराजित पद्मरागौ बाह्यै महोभिरभिभूत महेन्द्र नीलौ उद्यन्नकांशुभिरुदन्त शशाङ्क भासौ श्रीवेङ्कटेश चरणौ शरणं प्रपद्ये सप्रेम भीति कमलाकर पल्लवाभ्यां संवाहसे सिलपति क्लममादधानौ कान्ताववाङ्मनस गोचर सौकुमार्यौ श्रीवेङ्कटेश चरणौ शरणं प्रपद्ये
लक्ष्मी महीतदनुरूप निजानुभाव नीलादि दिव्य महिषीकर पल्लवानाम् आरुण्य संक्रमणतः किल सान्द्र रागौ श्री वेंकटेश चरणौ शरणं प्रपद्ये मद्विधि शिवादि किरीट कोटि प्रत्युक्त दीप्त नवरत्न महप्ररोहैः नीराजनाविधि मुदारमुपादधानौ श्री वेंकटेश चरणौ शरणं प्रपद्ये विष्णोर्पदे परम इत्युदित प्रशंसौ यौ मध्य उत्स इति भोग्यतयाप्यपाक्तौ भूयस्तथेति तव पाणितलप्रतिष्ठौ श्रीवेङ्कटेश चरणौ शरणं प्रपद्ये पार्थाय तत्सदृश सारथिना त्वयैव यौ दर्शितौ स्वचरणौ शरणं व्रजेति भूयोऽपि मह्यमिह तौ करदर्शितौ ते शरणं प्रपद्ये श्रीवेङ्कटाद्रिशृतीनां चित्ते मनसां सममहितभूते श्रीवेङ्कटेश चरणौ शरणं प्रपद्ये आम्लानहृव्यदवनीतलकीर्णपुष्पौ श्रीवेङ्कटाद्रिशिखराभरणाय मानौ आनन्दिताखिलो श्रीवेङ्कटेश चरणौ शरणं प्रपद्ये प्राय प्रपन्न जनता प्रथमावगाह्यौ मातुत्सनाविव शिशोरवृतायमानौ प्राप्तौ परस्पर तुलामतुलान्तरौ ते श्रीवेङ्कटेश चरणौ शरणं प्रपद्ये सत्त्वोत्तरैर्न सेव्य पदाम्बुजेन संसारतारकदयार्द्रदृगञ्चलेन सौम्योपयन्तृमुनिना मम दर्शितौ ते श्रीवेङ्कटेश चरणौ शरणं प्रपद्ये सत्त्वोत्तरैस्तुतसेव्य पदाम्बुजेन संसारतारकदयार्द्रदृगञ्चलेन सौम्योऽप्ययन्तमुनिना मम दर्शितौ ते श्रीवेङ्कटेश चरणौ शरणं प्रपद्ये श्रीशश्रियाग्रिगया त्वदुपाय भावे स्वयमुपे मया स्फुरन्त्या करो वृषगिरीश न जातु मह्यम् श्रीशश्रिया घटिकया त्वदुपाय भावे प्राप्ये त्वयि स्वयमुपेयतया स्फुरन्त्या नित्याश्रिताय निरवध्य गुणाय तुभ्यं स्यां किङ्करो वृषगिरीश न जातु मह्यम् श्रियकान्ताय कल्याणनिधेर्निधेर्तिनां श्रीवेङ्कटनिवासाय श्रीनिवासाय मङ्गलम् श्रियकान्ताय कल्याणनिधये निधयेऽर्थिनां श्रीवेङ्कटनिवासाय श्रीनिवासाय मङ्गलम् लक्ष्मी सविभ्रमालोकसुभ्रू विभ्रमचक्षुषे चक्षुषे सर्वलोकानां वेङ्कटेशाय मङ्गलम् श्रीवेङ्कटाद्रिशृङ्गाग्रमङ्गलाभरणाग्रये मङ्गलानां निवासाय श्रीनिवासाय मङ्गलम् सर्वावयव सौन्दर्य सम्पदा सर्वचेतसां सदा सम्मोहनायास्तु वेङ्कटेशाय मङ्गलम् नित्याय निरवध्याय सत्यानन्दचिदात्मने सर्वान्तरात्मने श्रीमद्वेङ्कटेशाय मङ्गलम् सर्वविदे सर्वशक्तये सर्वशेषिने सुलभाय सुशीलाय वेङ्कटेशाय मङ्गलम् परस्मै ब्रह्मणे पूर्णकामाय परमात्मने प्रयुञ्जे परतत्त्वाय वेङ्कटेशाय मङ्गलम्
मङ्गलम् आकालतत्त्वमाशान्तम् आत्मनाम् अनुपश्यताम् अतृप्त्यम् मृतरूपाय वेङ्कटेशाय मङ्गलम् स्वचरणौ पुंसां शरण्येन पाणिना कृपया दिशते श्रीमद्वेङ्कटेशाय मङ्गलम् दयामृततरङ्गिन्यास्तरङ्गैरिव शीतलैः अपाङ्गैः सिञ्चते विश्वं वेङ्कटेशाय मङ्गलम् सर्वभूषामरनिधीनां सुषमावमूर्तये सर्वातिशमनायास्तु वेङ्कटेशाय मङ्गलम् श्रीवैकुण्ठविरक्ताय स्वामी पुष्करिणी तटे रमणा रममाणाय वेङ्कटेशाय मङ्गलम् श्रीवैकुण्ठविरक्ताय स्वामी पुष्करिणी तटे रमया रममाणाय वेङ्कटेशाय मङ्गलम् श्रीमत्सुन्दरचामातृमुनिमानसवासिने सर्वलोकनिवासाय श्रीनिवासाय मङ्गलम् सुन्दरचामातृमुनिमानसवासिने सर्वलोकनिवासाय श्रीनिवासाय मङ्गलम् मङ्गलाशासनपरैर्मदाचार्य पुरोगमैः सर्वैश्च पूर्वैराचार्यै सत्कृतायास्तु मङ्गलम् Vigneshwar, are you there? आभस्यन्ति सूरयः विभीयषट्सुराददं तद्विभ्रासो विवन्यवो जागृवाषः समेन्ददे विष्णोर्यत्परमं पदं पर्याप्त्याय सर्वस्वमुद्रात्तमः सर्वस्याप्ते सर्वस्वति स्वै सर्वस्तेन आप्नोति सर्वं जयति मङ्गलं कौसलेन्द्राय महनीय गुणाप्तये चक्रवर्तितनूजाय सार्वभौमाय मङ्गलम् Global. Vigradaya. We thank Jim Narayanan for giving us such a big, beautiful platform of the 6th day of Saptaham and the 7th day of Marghazhi Mahotsav from Sri Kittasamy Kalyan Mandapam, Srinagar, Chennai, India. And today is the day of Malaysia. Right? That's okay. Then. Today is global chanting by Malaysia, no? All right? Malaysia. I got Malaysian team join today, and we will be dealing for Tirupalli Tirupave as we are also doing here. You can continue that. And only one small request to others, you can view the entire program today. We have got an interesting program, and we have from 6 a.m. to 8 p.m. after the news, after the Ramadan discourse on the 6th of today. We have the Vitrusasanam home at 8 o'clock. Those who are in Chennai, in the Mandapam, can give the nakshatra from home, everything. We'll give the start to all of you. You can give it to that for the Sharmaji can read that. You yourself can read your nakshatra body. Your relatives or anybody you want us to time. Do that. And for those who are abroad online, can tell your nakshatra both of yourself so that let us all 8,750 That is on the home part of it.
From 9 to 11, we have 9 to 1, we have two conference. One is 9 to 11 on the Pavarabitu Sasanamam and Science Sasanamam. 11 to 1, we have another session that is on merits and merits of online satsang. And as usual, we have Nama Sankirtanam between, of course, we have 1 to 2 chanting as usual, and 2 to 5:45, we have the Nama Sankirtanam, various famous artists from all over India participating in that. 6 o'clock, as usual, we have some facilitated program, and 6:30 to 8:30, instead of Sahasranamam, we have the open house on the benefits of Sahasranamam online. People all over the globe should participate and get it clarified from our senior gurus like Dr. Ramadhan, Dr. Agnes Katmari, and many more people. You yourself also can give inputs in the subject. And that's for today. And tomorrow morning we have the Telangana Utsavam from 8 o'clock to 11 o'clock. Those who are in Chennai and should participate, others can go on online. Over to you, Ramadhan. Thank you, Om Namo Venkatesaya. Thank you, Shildran sir. Good morning, everyone. Om Namo Venkatesaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya. This is Ramadhan. Welcomes you all for today's VISVAS Global Chanting 1 from Krishna Swami Kalyana Mandapam, T. Nagar, Chennai. Today we have Malaysia team with us to recite Tirupalli Elluchi and Tirupavai, followed by Sri Vishnu Sahasranamam at 5 o'clock by the same team. Later, English, Kannada and Hindi news bulletin will be there. And today's news presenters are Mrs. Rama Reddy presenting English news, Anita from Kannada news, she will present from Mandapam itself, and Purnima Rao will present Hindi news. And later, Guruji's discourse will be there on Tirupavai, and till date we completed 6 pashrams, and today's 7th pashram is going on. Thank you once again. And this evening, straight away, 6 o'clock, VISVAS Global Chanting 2 starts with news bulletin, Telugu, Tamil and Malayalam, followed by at 6:15 p.m. we have India A batches 507 and 509 batches with us to recite Sri Vishnu Sahasranamam. It's a kind request with all the devotees, please kindly join VISVAS Global Chanting 1 and 2 morning 4:30 a.m. and evening 5:15 p.m. and take the blessings of Lord Sriman Narayanan, and let us pray for the universal peace. And at the same time, it's a humble request with all the devotees, those who are not able to attend physically at Mandapam. I request you all watch live show from Mandapam at Krishna Swami Kalyana Mandapam, T. Nagar, Chennai through WCC link, and at the same time, VISVAS YouTube channel. So it's a humble request with all the global audience in and around of India. Please kindly subscribe our YouTube channel so that you can see live show from Mandapam even today and tomorrow. So today we entered into 6th day of Saptaham and 7th day of Marghazhi Mahotsav. So today we are going with Vishnu Sahasranamam after the completion of Guruji's discourse. I request all the devotees, please stay tuned to WCC link so that you can get the blessings of Lord Sriman Narayanan. Thank you once again, and I extend my warm welcome to Team Malaysia to start Tirupalli Elluchi and Tirupavai. Over to you, Prema Mohan ma'am. Thank you. Vignesh, just keep mute. Om Namo Venkatesaya. Hello. Already announced. तमेव मध्वा परवासुदेवं रङ्गे जयं பிரபோதிகும் யோக सुक्तिमालां சுக்திமாலாம் பக்தாங்கிரேனு பகவந்தமீடே மண்டங்குடியன்பர் மாமரையோர் மன்னிய சீர் தொண்டரடிப்பொடி தொன்னகரம் பண்டு தினத்த வயல் தென்னரங்கத்தம்மானை வள்ளி உணர்த்தும் பிரானுதித்தவோர் உணதிசை சிகரம் வந்தடைந்தான் தனேர் உலகன்றது காலையும் பொழுதாய் வலிவில் தொழுகிற மாமலர் எல்லாம் வானவரசர்கள் வந்து வந்தேன் எதிர் திசை நிரந்தரர் இவரோடும் புகுந்த பெருங்களில் ஈட்டமும் கடல் போன்றதெங்கும் அரங்கத்தமா பள்ளி எழுந்தருளாயே கதிரவன் உணதிசை சிகரம் வந்தடைந்தான்
காலையும் பொழுதாய் பதிவினின் தொழுகின மாமலர் எல்லாம் மாணவர்கள் வந்து வந்தேன் செய்திருந்தனர் இவருடன் புகுந்த இறைஞ்சொழில் ஈற்றமும் முடியுடவசும் அதுதலில் அலைகடல் போன்றதெங்கும் அரங்கத்தம்மா பள்ளி எழுந்தருளாயே. ஒழுங்குடி முல்லையில் கொள்மலர் நதி கூர்த்தல் குணேசை மாறுதல் இதுவோ விழுந்தன மலரனை பள்ளி கொண்ட அண்ணம் ஈன்பை நினைத்த தவறின் விழுங்கிய முதலையின் விளம்புரை பெய்வாய் உள்ளியவரன் விடத்தனு கணங்கி அழங்கிய ஆணையர் அருந்தியர் விடுத்த அரங்கத்தம்மா பள்ளி எழுந்தருளாயே. குடலொளி பரந்த சுருதி செய்யலாம் புண்ணிய தாரகை மின்னொளி சுருக்கி படலொளி 15 பசித்தனன் இவனோ பயிருள் அகன்றது பைம்பொழில் கமிழடை வீரிவன் பாடைகள் நார வைகரை கூட்டது மாறுதல் இதுவோ அரங்கத்தம்மா பள்ளி எழுந்தருளாயே. மேதிகள் தலைவிடும் ஆயர்கள் வேங்குழல் ஓசை விடமறி கொள்ளணும் வீட்டு இசை பரந்தன வயலுள் பாட்டிய வரிசை வானவரேரே மாமுனிவேல் அபிரதம் ஆட்டி அறுதியல் அயோத்தியம் அரசே அரங்கத்தம்மா பள்ளி எழுந்தருளாயே. புட்களும் பூம்பொழில்களின்வாய் போயிற்று கங்குள் புகுத்தது புலரி கலந்தது குணசை கனைகடல் அருவம் களிவண்டு வேற்றிய கலம்பகம் பணிவான் அவர்கள் புகுந்தனர் ஆதலிலம்மான் இறங்கையர் போன் வழிபாடு செய் கோயில் எம்பெருமான் பள்ளி எழுந்தருளாயே. மதுரும் இவனோ மருதரும் வசித்தரும் பாடலும் பாடலும் கோயிலும் இவரோ அரங்கத்தம்மா பள்ளி எழுந்தருளாயே. சமரர்கள் கூட்டங்கள் இவையோ அருந்தனம் மருதனம் இவனோ இந்திரநாரியும் தானும் இவனோ சாதரர் மயங்கினர் திருவடி தொழுவான் இதுவோ அரங்கத்தம்மா பள்ளி எழுந்தருளாயே. ரொம்பவே வானவர் உலகினை வழங்க மானிடி கபதி கண்ணாடி முதலா எம்பர் பார்வடி மக்களம் காண்கற்கு ஏற்பனவாயின தும்பொரு நாரதர் முகுந்தனரிவரோ தோன்றினன் இரவியும் துலங்கொழி பரப்பி அம்பலத்தளத்தில் அகல்கின்றது இருள் போய் அரங்கத்தம்மா பள்ளி எழுந்தருளாயே. ஏதமில் தன்னுமை எக்கம் மத்தளி யாழ்குழல் புரோமோடு இசை இசை கல்வி கீதங்கள் பாடினர் கிண்ணறர்கள் நந்தர்வர் அவர் மாதவர் சாரணர் இயக்கர் சித்தரும் மயங்கினர் திருவடி தொழுவான் ஆதலில் அவருக்கு நாடோழக்கம் அருள அரங்கத்தம்மா பள்ளி எழுந்தருளாயே. ஏதமில் தன்னுமை எக்கம் மத்தளி யாழ்குழல் புரோமோடு இசை இசை கல்வி கீதங்கள் பாடினர் கிண்ணறர்கள் நந்தர்வர் அவர் மாதவர் வானவர் சாரணர் இயக்கர் சித்தரும் மயங்கினர் திருவடி தொழுவான் ஆதலில் அவருக்கு நாளோழக்கம் அருள அரங்கத்தம்மா பள்ளி எழுந்தருளாயே. கரிமலர் கமலங்கள் மலர்ந்தன இவையோ கதிரவன் கனைகடல் முளைத்தன இவனோ துடியுடையார் சிறுவேல் புயந்ததறி துவிலிடத் தேரினர் சூழ்மலர் அரங்கா துளவும் புழையும் அடியனை அடியார்க்கு ஆட்புணத்தாய் பள்ளி எழுந்தருளாயே. கமலங்கள் மலர்ந்தன இவையோ கதிரவன் கனைகடல் முளைத்தன இவனோ துடியுடையார் சிறுவேல் புயந்ததறி துவிலிடத் தேரினர் சூழ்மலர் அரங்கா துளவும் கூடையும் பொலிந்து ஆட்படுத்தாய் பள்ளி எழுந்தருளாயே. கிருஷ்ணம் வாராஸ்தம் ஸ்வம் ஸ்ரீ சரஸ்வதி சித்தமத்யாவயந்தி ஸ்ரோசிஷாயாம் கோதா தஸ்மை நமைதமிதம் பூயேவாஸ்து பூயः அன்னவயல் புதுவை ஆண்டாள் அரங்கற்கு மன்னதிருப்பாய் பல்வதியம் இனிதியால் பாடி கொடுத்தாள் பாமாலை குமாரை சுடி கொடுத்தாளை சொல்லு சுடி கொடுத்த சுடற்குடியே ரூபாவை பாடி ஆடியாய் நாடி வெங்கடவன் மாற்றம் நீங்கள் மனிதரென்ற நன்னாளால் நீராட போதுவீர் போதுமினோ நேரேழீர் சீர்மல்கு மாய்ப்பாடி செல்வச் சிறுவீர்கள் குருவேல் கொடுந்துவேலன் நந்தகோபன் குமரன் மார்கழி திங்கள் மனிதென்ற நன்னாளால் நீராட போதுவீர் போதுமினோ நேரேழீர் சீர்மல்கு மாய்ப்பாடி செல்வச் சிறுவீர்கள் குருவேல் கொடுந்துவேலன் நந்தகோபன் குமரன்
கார்மேனிச் செங்கண் கதிர் மதியம் போல் முகத்தான் நாராயணனே நமக்கே படை தருவான் பாரோர் புகழப் பணிந்தேலோர் எம்பாவாய். வையத்து வாழ்வீர்கள் நாமும் நம் பாவைக்கு செய்யும் கிரிசைகள் கேளீரோ பார்க்கடலுள் பையத்து வீன்ற பரமனடி பாடி நெய்யுண்ணோம் பாலுண்ணோம் நாட்காலே நீராடி மையெழுதோம் வளர்வண்ணோம் நாமுடியோம் செய்யோதன செய்யோம் தீக்குறளை சென்றோதோம் ஐயும் பிச்சையும் மாந்தனையும் கை காட்டி உய்யுமாறெண்ணி உகந்தேலோர் எம்பாவாய். ஓங்கி உலகளந்த உத்தமன் பேர் பாடி அங்கள் நம் பாவைக்கு சாற்றி நீராடினார் திங்கின்றி நாளெல்லாம் திங்கள் மும்மாறி பெய்து ஓங்கு பெருஞ்சென்னல் ஊடு கயல்கள பூங்குவளை போதில் பொய்வண்டு கண்படுப்ப தேங்காதே புக்கிருந்து சீர்த்த முளை பற்றி வாங்க உடம் நிறைக்கும் வள்ளல் பெரும்பசுக்கள் நீங்காத செல்வம் நிறைந்தேலோர் எம்பாவாய். ஓங்கி உலகளந்த உத்தமன் பேர் பாடி அங்கள் நம் பாவைக்கு சாற்றி நீராடினார் தீங்கின்றி நாடெல்லாம் திங்கள் மும்மாறி பெய்து ஓங்க பெருஞ்சென்னல் ஊடு கயல்கள பூங்குவளை போதில் பொய்வண்டு கண்படுப்ப தேங்காதே புக்கிருந்து சீர்த்த முளை பற்றி வாங்க குடம் நிறைக்கும் வள்ளல் பெரும் பசுக்கள் நீங்காத செல்வம் நிறைந்தேலோர் எம்பாவாய். ஆழ்மழை கண்ணா ஒன்று நீ கைகரவேல் அழியல் புக்கம் முகந்து கூட ஆர்த்தேரி ஊழி முதல்வன் உருவம் போல் மெய்கருத்து வாழியன் தோளுடை பத்மநாபன் கையில் ஆள்போல் மின்னி வலம்புரி புலோ நின்ற திறந்து தாழாதே சார்கம் உதைத்த செரமலை போல் வாழ உலகினில் பெய்திடாய் நாங்களும் வாக்காளி நீராட மகிழ்ந்தேலோர் எம்பாவாய். ஆயனை மந்து வடமதுரை மைந்தனை தூய பெருநீர் யமுனை துறைவனை ஆயர் குலத்தினர் தோன்றும் மணி விளக்கை தாயை குழல் விளக்கம் செய்த தாமோதரனை தூயோமாய் வந்து நாம் தூமலரல் தூவித் தொழுது வாயினால் பாடி மனத்தினால் சிந்திக்க போய பிழையும் புகழ்வான் என்றனவும் தீயல் தூசாகும் செப்பேலோர் எம்பாவாய். உள்ளும் சிலமினகான் புல்லரையன் கோயில் வெள்ளை விழி சங்கின் பேரரவம் கேட்டிலையோ பிள்ளாய் எழுந்திராய் பேய்முலனைத் துண்டு கள்ளச்சகடம் கலக்கழிய காலோச்சி வெள்ளத்தரவில் தீர்ந்து நடந்த வித்தினை உள்ளத்து கொண்டு முனிவர்களும் யோகிகளும் வெள்ள வெளிந்து அறியென்ற பேரரவம் உள்ளம் புகுந்து குடிரந்தேலோர் எம்பாவாய். ஈசகி சென்றெங்கும் ஆனை சாத்தன் கலந்து பேசின பெச்சரவம் கேட்டிலையோ பெய்ப்பெண்ணே காசும் பிறப்பும் கலகலப்ப கை பெயர்த்து வாச நெருங்கொழிலாய்ச்சியர் மத்தினால் ஓசைப்படுத்த கைரவம் கேட்டிலையோ நாயக பெண்ணிலாய் நாராயணன் மூர்த்தி கேசவனை பாடவும் நீ கேட்டோ தேசமுறையாய் திரவேலோர் எம்பாவாய். விரிவானம் வெள்ளென்று எருமை சிறு வீடு விரிவான் பரந்தனகான் மிக்குள்ள பிள்ளைகளும் போவான் புகின்றாரை போகாமல் காத்து உன்னை கூவான் வந்து நின்றோ போது கலமுடைய பாவாய் எழுந்திராய் பாடிப்பறை கொண்டு பாவாய் பிளந்தானை மன்னரை மாட்டிய தேவாதி தேவனை சென்று நாம் சேவித்தார் தூப்படி மாடத்து சுற்றும் விளக்கெரிய தூபம் கமழ துயின மேல் கண்மலரும் மாமான் மகளிர் மணிக்கண்வன் தாழ் திரவாய் மாமீர் அவளை எழுப்பீரோ ஆனந்தலோ என் கருணையில் மந்திரப்பட்டாளோ மாமாயன் மாதவன் வைகுந்தன் என்று நாமம் பலவும் அறிவேலோர் எம்பாவாய். சுவர்க்கம் போகின்ற அம்மனாய் மாற்றம் தாராரோ வாசல் திரவாதார் நாற்ற துழாய்மொழி நாராயணன் நம்மால் போற்ற பரிதரும் புண்ணிய நாள் அண்டொரு நாள் கூற்றத்தில் வாழ்விழந்த கும்பகர்ணன் தோற்று உனக்கே பெருந்தையில் தானோ ஆற்ற வனத்துடைய அருங்கலமே ஏற்றமாய் வந்து திரவேலோர் எம்பாவாய். கரவை கணங்கள் பல கறந்து செற்றா திரளைய சென்று செய்யும் குற்றம் ஒன்றில்லாத கோவலர்தம் பொற்கொடியே குற்றரவு அருள்கள் புறமையிலே போதராய் மன்னன் கேட்பாட சிற்றாதே பேசாதே செல்வ பெண்டாடி ஏற்றுக்குறங்கும் பொருளேலோர் எம்பாவாய். கற்றதுமை கன்றிறங்கி நினைத்து மலவழியே நின்று பால் சோர நனைத்தெல்லாம் சேராக்கும் கற்செல்வன் தங்காய் பனித்தலை வேணின் வாசல் கடைபற்றி சினத்தினால் தென்னிலங்கை கோமானை செற்ற மனத்துக்கினியானை பாடவும் நீவாய் திரவாய் இனித்தானிந்திராய் இதென்ன பேருறக்கம் அனைத்தில்ல தாரும் அறிந்தேலோர் எம்பாவாய். வாக்கின்றானே பொல்லா அரக்கனை இல்லை கலைந்தானே கிட்டிமை பாடி போய் பிள்ளைகள் எல்லாரும் பாவை களம்புக்கார் வெள்ளி எழுந்து வியாழ முழங்கிற்று உள்ளம் சிலம்பினகான் போதர கண்ணினாய் உள்ள குளிர குழைந்து நீராடாதே பள்ளி கிடத்தியோ பாவாய் நீ நன்னாளால்
கள்ளம் தவிரன்று கலந்தேலோர் எம்பாவாய். உங்கள் புழக்கடை தோட்டத்து வாவியுள் வாழ்நிலை ஆம்பல் வாய் பூமிரகான் எங்கள் முடிக்கூரை வெண்பது தங்கள் திருக்கோயில் கிடுவான் போதந்தார் எங்களை முன்னம் எழும்புவான் வாய் வீசும் நங்காய் எழுந்திராய் நானாலாய் நாவுடையாய் செங்கொடு சக்கரமேந்தும் கடல் கையன் பங்கையன் கண்ணானை பாடேலோ எம்பாவாய். இலக்கிலேயே இன்னும் உறங்குகிறோ இல்லீர் போதருகின்றேன் வல்லை உன் கட்டுரைகள் பட்டே உன் வல்லீர்கள் நீங்களே நானே தான் ஆயிடுக கொல்லை நீ போதாய் உனக்கிடவே இல்லை எல்லாரும் போந்தாரோ போந்தார் போதை கொள் வல்லானை வல்லானை மாற்றானை மாற்றுவிக்க வல்லானை வாயானை பாடேலோ எம்பாவாய். நாயகனாய் நின்று நந்தகோபுரனை கோயில் காப்பானே ஒளித்தோன்றும் கோண வாயில் காப்பானே மணிக்கதவம் தாழ் திறவாய் ஆயர் சிறுமியர் ரோபுக்கு மணிவண்ணன் தென்னலே வாய் வீரத்தான் தூயோமாய் வந்தோம் துயிலல்ல பாடுவான் வாயால் முன்னம் முன்னம் மாற்றாதே அம்மா நீனே நிலை கதவம் நிற்கேலோர் எம்பாவாய். நாயகனாய் நின்று நந்தகோபுரனை கோயில் காப்பானே ஒளித்தோன்றும் கோண வாயில் காப்பானே மணிக்கதவம் தாழ் திறவாய் ஆயர் சிறுமியர் ரோபுக்கு அனைவரே மாயன் மணிவண்ணன் தென்னலே வாய் வீரத்தான் தூயோமாய் வந்தோம் துயிலல்ல பாடுவான் வாயால் முன்னம் முன்னம் மாற்றாதே அம்மா நீனே நிலை கதவம் நிற்கேலோர் எம்பாவாய். புறமே தண்ணீரே சோதே அறஞ்செய்யும் எம்பெருமான் நந்தகோபாலா எழுத்தினாய் கொம்பனார்க்கெல்லாம் குழந்தே குலவிளக்கே எம்பெருமாட்டி யசோதாய் அறிவுராய் அம்பரமூடலத்து ஓங்கி உலகளந்த உம்பர் கோமானை உறங்காதெழுந்திராய் செம்பொற்களடி செல்வா பலதேவா உம்பியம் நீயும் உலகேலோர் எம்பாவாய். மதகளின் போடாத தோல் வலியன் நந்தகோபாலன் மருமகளே நம்பினாய் கந்தம் கமழும் கோயிலே கடைதிரவாய் வந்தெங்கும் கோழி அழைத்தனகான் வானல் பந்தல் மேல் பல்கால் குயிலினங்கள் கூவினகான் வந்தார் விரலி உன் மைத்துனை மேற்பாட செந்தா மரக்கையால் சிறியார் வளையொலிப்ப வந்து திரவாய் மகிழ்ந்தேலோர் எம்பாவாய். மதகளின் ஓடாத தோல் வலியன் நந்தகோபாலன் மருமகளே நம்பினாய் கந்தம் கமழும் கோயிலே கடைதிரவாய் வந்தெங்கும் கோழி அழைத்தனகான் மாதவி பந்தல் மேல் பல்கால் குயிலினங்கள் கூவினகான் வந்தார் விரலி உன் மைத்துனை மேற்பாட செந்தா மரக்கையால் சிறியார் வளையொலிப்ப வந்து திரவாய் மகிழ்ந்தேலோர் எம்பாவாய். வழக்கெரிய கொட்டுக்கால் கட்டில் மேல் எத்தென்ன பஞ்ச சைனத்தின் மேலேறி கொத்தலர் பூங்குழல் நப்பின்னே கொண்டு மேல் வைத்து கிடந்த மலர் மார்பா வாய் திறவாய் மைத்தடம் கண்ணினாய் நீயும் மணாளனை எத்தனை போதும் கீழல ஒட்டாய் காண் எத்தனை ஏதும் கீழாற்றவில்லையால் தத்துவமன்றும் ரகவேலோர் எம்பாவாய். குப்பத்து மூவர் அமரருக்கு முன் சென்று கப்பம் தவிர்க்கும் கலியே துயிலையாய் செப்பமுடையாய் திரளுடையாய் செற்றார்க்கு வெப்பம் கொடுக்கும் விமலா துயிலையாய் செவ்வாய் திருமருங்குள் பிள்ளை நங்காய் திருவே துயிலாய் உப்பமும் கற்றொழியும் தந்துன் மணாளனை இப்போதே எம்மை நீராட்டேலோர் எம்பாவாய். ஏற்ற கலங்கள் எதிர்பொங்கி மீதளிப்ப மாற்றாதே பால் சொரியும் மன்னல் பெரும்பசுக்கள் ஆற்றப்படைத்தான் மகனே அறிவுராய் குற்றமுடையாய் பெரியாய் உலகினில் தோற்றமாய் நின்ற சுடரே துயிலாய் மாற்றாருனக்கு வழிதொலைந்து உன் வாசகன் ஆற்றாது வந்து உன்னடி பணியுமா போலே போற்றியாம் வந்தோம் புகழ்ந்தேலோர் எம்பாவாய். அபிமான பங்கமாய் வந்தனின் பள்ளி கட்டிற்கேயே சங்கமிருப்பார் போர் வந்து தலை பெய்தோம் இங்கிடி வாயில் செய்த தாமரை பூ போலே செங்கல் சிறுச்சிறிதே எம்மேல் விழியாவோ திங்களும் ஆதித்யனும் எழுந்தார் போல் அங்கள் இரண்டு கொண்டு எங்கள் மேல் நோக்கிதியேல் எங்கள் மேல் சாபம் பிடித்தேலோர் எம்பாவாய். ஆதி மனமுழஞ்சில் மன்னி கிடந்துறங்கும் சீரிய சிங்கம் அறிவுற்று தீவிழித்து வேரி மயிர்முக எப்பாடும் பெயர்ந்துதறி மூறி நிமிர்ந்து முழங்கி புறப்பட்டு உலருமாவோடே நீ போய் பூவண்ணா, உன் கோயிலுக்கு இங்கனே போதலை கோப்புடைய சீரிய சங்கசனத்திரந்து யாம் வந்த காரியமாறாய் கருவேலோர் எம்பாவாய். மாறி மனமுழஞ்சில் மன்னி கிடந்துறங்கும் சீரிய சிங்கம் அறிவுற்று தீவிழித்து வேரி மயிர்வங்க எப்பாடும் பெயர்ந்துதறி மூறி நிமிர்ந்து முழங்கி புறப்பட்டு போதருமா போலே நீ பூவை பூவண்ணா, உன் கோயில் இங்கனே போந்தருளிலி கோப்புடைய சீரிய சிங்காதனத்திலிருந்து நாம் வந்த காரியம் ஆராய்ந்தருளேலோர் உலக வளர்ந்தாய் அடி போற்றி சென்றங்கு திருநங்கை சென்றாய் திரள் போற்றி ஒன்றச்சகடும் உதைத்தாய் புகழ் போற்றி
கன்று குடிலாய் இருந்தாய் கழுவோற்றி ஒன்று உடையாய் எடுத்தாய் குணம் போற்றி வென்று பயிரெடுக்கும் நின் கையில் வேல் போற்றி என்றென்றும் உன் சேவகமே ஏற்றி பணிகொள்வான் இன்றியாம் வந்தோம் இறங்கேனோ எம்பாவாய் அன்றே உலகம் அளந்தாய் அடி போற்றி என்றங்கு தென்னிலங்கை செற்றாய் திரள் போற்றி ஒன்றச் சகடம் உதைத்தாய் புகழ் போற்றி கன்று குடிலாய் இருந்தாய் கழல் போற்றி ஒன்று உடையாய் எடுத்தாய் குணம் போற்றி வென்று பயிரெடுக்கும் நின் கையில் வேல் போற்றி என்றென்றும் சேவகமே ஏற்றி பணிகொள்வான் இன்றியாம் வந்தோம் இறங்கேனோ எம்பாவாய் ஒருத்தி மகனாய் பிறந்து ஓரிரவில் ஒருத்தி மகனாய் ஒளித்து வளர தரிக்கிலானாகித்தான் தீங்கு நினைத்த கருத்தை குழைப்பித்து கஞ்சன் வயிற்றில் திருப்பண்ண நின்ற நெடுமாலே உன்னை அரித்திட்டு வந்தோம் பரதறியாகில் திருத்தக்க செல்வமும் சேவகம் யாம் பாடி வருத்தமும் தீரத்து மகிழ்ந்தேலோர் எம்பாவாய் மார்கழி நீராடுவான் நிலையார் சேவனைகள் வேண்டுவன கேட்டீர் ஞாலத்தை எல்லாம் நடுங்க முரல்வன பாலண்ண வண்ணத்துள் பாஞ்ச சன்னியமே போல் வனசங்கங்கள் பெரும்பறையே பல்லாண்டு சேர்ப்பாரே கோல விளக்கே குடியே விதானமே ஆதியாய் அருளேலோர் எம்பாவாய் யாம்பெரும் சம்மானம் நாடு புகழும் பரிசினால் நன்றாக ஊடகமே தோல்வழியே தோடே செய்வோம் பல்கலனும் யாம் அழிவோம் ஆழகிருப்போம் அதற்கே வாசோர உடனே பெய்து விளக்கு வழிவார கூடியிருந்து குடிநீரோர் எம்பாவாய் வெல்லும் சீர் தன்னை பாடி பறைகொண்டு யாம்பெரும் சம்மானம் நாடு புகழும் பரிசினால் நன்றாக ஊடகமே தோல்வழியே தோடே செய்வோம் அழகமே என்னைய மல்கலனும் யாம் அழிவோம் ஆழை இருப்போம் அதற்கே வாசோர உடனே பெய்து முழங்கை வழிவார கூடியிருந்து குடிநீரோர் எம்பாவாய் சென்று காணும் சேர்ந்துண்போம் அறிவொன்றுமில்லாத ஆய்குணத்து உந்தன்னை பிறவி பெருந்தனை யாமுடையோ குறை ஒன்றுமில்லாத கோவிந்தா அறியாத பிள்ளைகளும் அன்பினால் தன்னை சிறியர்களை தனவும் சிறியருளாது இலங்காய் நீதாராய் பற்றியேலோர் எம்பாவாய் பின் சென்று காணும் சேர்ந்துண்போம் அறிவொன்றுமில்லாத ஆய்குணத்து உந்தன்னை பிறவி பெருந்தனை புண்ணியம் யாமுடையோ குறை ஒன்றுமில்லாத கோவிந்தா தன்னோடு உறவே நமக்குள் இங்கொழிக்கிறார்கள் அறியாத பிள்ளைகளும் அன்பினால் இறைவாய் நீதாராய் பற்றியேலோர் எம்பாவாய் சிறுகாலே உன்னை சேவித்து முன்பற்றா மலையிலேயே போற்றும் புகழாய் பெற்றம்மை சொன்னும் குலத்தில் பிறந்து எங்களை கொள்ளாமல் போகார் ஒற்றைப்பறை கொள்கானந்த காண்கோவிந்தா எச்சைக்கும் மேலே பிறக்கும் நான் தன்னோடு உற்றோமே நாமும் மற்ற இனம் மக்கள் மாற்றேலோர் எம்பாவாய் சிறுகாலே வந்துன்னை சேவித்து முன்பற்றா மலையிலேயே போற்றும் பொருள்களாய் பெற்றம்மை சொன்னும் குலத்தில் பிறந்து நீ குற்றவரங்களை கொள்ளாமல் போகாது ஒற்றைப்பறை கொள்வானன்று காண்கோவிந்தா எற்றைக்கும் மேலே பிறக்கும் முன் தன்னோடு உற்றோமே நாமும் மற்ற இனம் காமங்கள் மாற்றேலோர் எம்பாவாய் கடற்கரைந்த மாதவனைக்கே சமனை எங்கள் திருமுகத்தை சிறையால் சென்னிறைந்து அக்கப்பறை கொண்ட வார்த்தை வைக்கமல் தண்டறியல் பற்றவிழான் மோதி சொன்ன சங்கத்தமிழ் மாலை முப்பதும் பானே பரமேஸ்வரன் வாய் வீரரிடம் உலகத்துள் செல்வ திருமாலாய் எங்கும் திருவருள் பெற்று இன்பம் வரும் கடற்கரைந்த மாதவனைக்கே சமனை எங்கள் திருமுகத்தை சிறையால் சென்னிறைந்து அங்கப்பறை கொண்ட வார்த்தை அனுபவிவை வைக்கமல் தண்டறியல் பற்றவிழான் மோதி சொன்ன இங்கு துப்பறிவார் ஏழிலும் மாணவனைத்தோள் செங்கல் திருமுகத்தில் செல்வ திருமாலாய் எங்கும் திருவருள் பெற்று மானை சாத்தன் கலந்து பேசி மத்தினால் மோசைப்பட தந்தை நரவம் கேட்டதையும் நாயகப் பெண்பிள்ளாய் நாராயணன் போற்றி ஏற்றவனை பாடுமுன்னே கேட்டே கிடத்தியோ எசுடையாய் திருவேனோ எம்பாவாய். ஓத பிறந்த ஊர் கோவிந்தன் வாழ்வோர் மணிமாடன் தோன்றுவோர் கிரியால் நலவத்தர் வாழ்வோர் நான்மறைகள் ஓடுவோர் திருத்தோர் வேதக்கோரோர் மதகங்கள் தீர்க்கும் கருணை காட்டும் மாநிலை
ஐயம் சுமப்பதும் வம்பு திருவாடை புறத்து தாழ்வாழி திருப்பாவை முப்பதும் செப்பினாள் வாழி பெரியாழ்வார் பெற்றெடுத்த பெண் பிள்ளை வாழி பெரும்போதூர் மாமலைக்கு பின்னானால் வாழி 143 இருந்தாள் வாழியே உயரங்கற்கே கஞ்சி உணர்ந்தாள் வாழியே வருவாத வாழியே 9 நல்வோதை வாழியே கமலமுடன் வெள்ளிபுத்தூர் விளங்கி வந்தாள் வாழியே அவதரித்தாள் வாழியே திருவாள் வாழியே இலங்கையாள் வாழியே அமர திருப்பாவை அளித்தருள்வாள் வாழியே ஆகலூற்று எண்ணெய்த்து 3 வைத்தாள் வாழியே அமரநாள் வனங்களுக்கே மாறுகின்றாள் வாழியே ஆண்டாள் வினையடிகள் அறமரம் வாழியே திருவடிகளே சரணம் திருவடிகளே சரணம். ನಮೋ ವೆಂಕಟೇಶಾಯ. ಈಗ ಒಂದಾವರ್ತಿ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ ನಡೆಯುತ್ತೆ 6 ಗಂಟೆಗೆ. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಮ ನಡೆಯುತ್ತೆ, ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ ಹೋಮ. ಅದು ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ. ಇವಾಗ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದೊಂದು ಯೆಲ್ಲೋ ಕಾರ್ಡ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆ ಯೆಲ್ಲೋ ಕಾರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು, ಗೋತ್ರ, ಅಕ್ಷರ, ಆಮೇಲೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಇಚ್ಛೆಗಳೇನಿದೆಯೋ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಬೇಡ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರ ಹೆಸರು, ನಕ್ಷತ್ರ, ಗೋತ್ರ ಬರೆದು ಆ ಕಾರ್ಡ್ ನ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಜಗದೀಶ್ ಅವ್ರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಓವರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿಸಿ ಹೋಮ್ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಎಲ್ಲರೂ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ಬರೆದು ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಇವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. భక్తులందరికీ మనవి, ఈ రోజు జరగబోయే విష్ణు సహస్రనామం హోమం సందర్భంగా మీకు ఒక ఎల్లో కార్డ్ పాస్ చేయడం జరుగుతుంది. అందులో మీ గోత్రం, నామం, నక్షత్రం, మీ కుటుంబ సభ్యుల పేర్లు అన్ని వివరిస్తే అందులో హోమం జరిగేటప్పుడు మీ పేర్లు చదవబడతాయి, మీ పేరును అర్చన చేయబడుతుంది. జగదీష్ సార్, ఎవరికి కింద కూర్చోనేకి అవుతుందో, ಯಾರು ಕೆಳಗೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಆಗುತ್ತೋ ಅವರೆಲ್ಲ ದಯವಿಟ್ಟು ಕೆಳಗಡೆನೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇವತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಬರ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಸಹಕರಿಸಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ. సౌండ్ పెట్టారా? గ్లోబల్ సౌండ్ పెట్టారా?
ಯಾರು ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ, ಇನ್ನೊಂದು 2 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ ಪಾರಾಯಣ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ. Yeah, thank you, Team Malaysia. That was really wonderful and blissful chanting this morning. Now it's time to go with the starting prayer, but before that, it's a kind request with the coordinator of Malaysia team. Please give me the details of number of chanters in the chat box so that I can update myself. Thank you so much. Now I request Prema Mohan, please go with the starting prayer, ma. ॐ Hari हरि ओम् Visvasmai तस्मै Namah. नमः। शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। व्यासं Namaskaram Shakte Pautramakalmasham Para तं लिघ्नन्ति सततं विश्वक्सेनं तमाश्रये। व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्ते पौत्रमकल्मषम् पराशरात्मजं वन्दे सुखदातं तपोनिधिम्। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। अविकाराय शुद्धाय नित्याय परमात्मने सदैकरूपरूपाय विष्णवे सर्वजिष्णवे यस्य स्मरणमात्रेण जन्म संसारबन्धनात् विमुच्यते। नमस्तस्मै विष्णवे प्रभविष्णवे। ॐ नमो विष्णवे प्रभविष्णवे। श्रीवैशम्पायन उवाच
श्रुत्वा धर्मानशेषेण पावनानि च सर्वशः युधिष्ठिरश्चान्तनवं पुनरेवाभ्यभाषत। श्रीयुधिष्ठिर उवाच किमेकं दैवतं लोके किं वाप्येकं परायणम् सुवन्तः कम्पमर्चन्तः प्राप्नुयुर्मानवा शुभम् को धर्म सर्वधर्माणां भवतः परमो मतः किं च पन्युच्यते जन्तुर्जन्म संसारबन्धनात्। श्रीभीष्म उवाच जगत्प्रभुं देवदेवम् अनन्तः पुरुषोत्तमम् स्तुवन्नाम सहस्रेण पुरुषः सततोत्थितः तमेव चार्चयन् नित्यं भक्त्या पुरुषमव्ययम् ध्यायन् सुवर्णमस्यं च यजमानस्तमेव च अनादिविधनं विष्णुं सर्वलोकमहेश्वरम् लोकाध्यक्षं सुवन्नित्यं सर्वदुःखादिगो भवेत् ब्रह्मण्यं सर्वधर्मज्ञं लोकानां कीर्तिवर्धनम् लोकनाथं महद्भूतं सर्वभूतभवोद्भवम् एष मे सर्वधर्माणां धर्मोऽधिकतमो मतः यद्भक्त्या पुण्डरीकाक्षौ स्तवैरचेन्नरः सदा परमम्यो महत्तेजा परमम्यो महत्तपः परमम्यो महद्ब्रह्म परमम्यः परायणम् पवित्राणां पवित्रं यो मङ्गलानां च मङ्गलम् दैवतं देवतानां च भूतानां यो व्ययः पिता यतः सर्वाणि भूतानि भवन्त्यादियुगागमे यस्मिंश्च प्रलयं यान्ति पुनरेव युगक्षये तस्य लोकप्रधानस्य जगन्नाथस्य भूपते विष्णो नाम सहस्रं मे शृणु पापभयापहम् यानि नामानि गौणानि विख्यातानि महात्मनः ऋषिभिः परिगीतानि तानि वक्ष्यामि भूतये ऋषिर्नाम्नां सहस्रस्य वेदव्यासो महामुनिः छन्द्योनुष्टुप्तदा देवो भगवान् देवकीसुतः अमृतांशुद्भवो बीजं शक्तिर्देवकी नन्दनः त्रिसामा हृदयं तस्य शान्त्यर्थे विनियुज्यते विष्णुं जिष्णुं महाविष्णुं प्रभविष्णुं महेश्वरम् अनेकरूपदैत्यान्तं नमामि पुरुषोत्तमम् अस्य श्रीविष्णो दिव्यसहस्रनाम स्तोत्रमहामन्त्रस्य श्रीवेदव्यासो भगवान् ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः श्रीमहाविष्णु परमात्मा श्रीमन्नारायणो देवता अमृतांशुद्भवो भानुरिति बीजम् देवकी नन्दन स्रष्टेति शक्तिः उद्भवः शोभनो देव इति परमो मन्त्रः शङ्खभृन्नन्दकी चक्रीति कीलकम् शार्ङ्गधन्वा गदाधर इत्यस्त्रम् रथाङ्गपाणिरक्षोभ्य इति नेत्रम् त्रिसामा सामगः सामेति कवचम् आनन्दं परब्रह्मेति योनिः ऋतुः सुदर्शनः काल इति दिग्बन्धः श्रीविश्वरूप इति ध्यानम् श्रीमहाविष्णु प्रीत्यर्थे सहस्रनाम पारायण जपे विनियोगः ध्यानम् क्षीरोदन्वत् प्रदेशे शुचिमणिविलसत्सैकते मौक्तिकानां माला क्लुप्तासनस्तस्फटिकमणिनिभैर्मौक्तिकैर्मण्डिताङ्गः शुभ्रैरभ्रैरदभ्रैरुपरि विरचितैर्मुक्तपीयूषवर्षैः आनन्दीनः पुनीयादरिनलिन गदा शङ्खपाणिर्मुकुन्दः भूपादौ यस्य नाभिर्वियदसुरनिरश्चन्द्रसूर्यौ च नेत्रे कर्णावाशा शिरोद्यौर्मुखमपि दहनो यस्य वास्तेयमब्धिः अन्तस्थं यस्य विश्वं सुरनरखगो भोगि गन्धर्वदैत्यैः चित्रं रं रम्यते तं त्रिभुवनवपुषं विष्णुमीशं नमामि ॐ नमो भगवते वासुदेवाय शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिवृद्ध्यानगम्यं
वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं मेघश्यामं पीतकौशेयवासं श्रीवत्साङ्गं कौस्तुभोद्भासिताङ्गं पुण्योपेतं पुण्डरीकायताक्षं विष्णुं वन्दे सर्वलोकैकनाथं नमः समस्तभूतानाम् आदिभूताय बुभृते अनेकरूपरूपाय विष्णवे प्रभविष्णवे सशङ्खचक्रं सकिरीटकुण्डलं सपीतवस्त्रं सरसीरुहेक्षणं सहारवक्षस्थलशोभिकौस्तुभं नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजम् छायायां पारिजातस्य हेमसिंहासनोपरि आसीनमम्बुदश्यामायताक्षमलङ्कृतम् चन्द्राननं चतुर्बाहुं श्रीवत्साङ्कितवक्षसं रुक्मिणी सत्यभामाभ्यां सहितं कृष्णमाश्रये। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ विश्वस्मै नमः। हरिः ॐ। विश्वं विष्णुर्वषट्कारो भूतभव्य भवत्प्रभुः भूतकृद्भूतहृद्भावो भूतात्मा भूतभावनः भूतात्मा परमात्मा च मुक्तानां परमागतिः अव्यय पुरुष साक्षी क्षेत्रज्ञोऽक्षर एव च योगो योगविदां नेता प्रधान पुरुषेश्वरः नारसिंहवपुः श्रीमान् केशवः पुरुषोत्तमः सर्वशिवस्ताणुर्भूतादिर्निभिरव्ययः सम्भवो भावनो भक्ता प्रभव प्रभुरीश्वरः स्वयंभू शम्भुरादित्य पुष्कराक्षो महास्वरः अनादिनिधनो दाता विधाता धातुरुत्तमः अप्रमेयो ऋषिकेश पद्मनाभो वरप्रभुः विश्वकर्मा मनुस्त्वष्टा स्थविष्टस्थविरो ध्रुवः अग्राह्य शाश्वत कृष्णो लोहिताक्ष प्रदर्धनः प्रभूतस्त्रिककुब्धामा पवित्रं मङ्गलं परम् ईशानः प्राणदः प्राणो ज्येष्ठ श्रेष्ठ प्रजापतिः हिरण्यगर्भो भूगर्भो माधवो मधुसूदनः ईश्वरो विक्रमी धन्वी मेधावी विक्रमक्रमः अनुत्तमो दुरादर्श कृतज्ञा कृतिरात्मवान् सुरेश शरणं शर्मा विश्वरेता प्रजाभवः अहः संवत्सरो व्याळ प्रत्यय सर्वदर्शनः अजः सर्वेश्वर सिद्धा सिद्धिः सर्वादिरच्युतः वृषा कपिरमेयात्मा सर्वयोग विनिश्रुतः वसुर्वसुमना सत्य समात्मा संमितः समः अमोघ पुण्डरीकाक्षो वृषकर्मा वृषाकृतिः रुद्रो बहुशिरा भभ्रो विश्वयोनिषु जिष्टवाः अमृता शाश्वतस्थाणुर्वरारोहो महातपाः सर्वगा सर्वविद्वानो विश्वक्सेनो जनार्दनः वेदो वेदविदव्यङ्गो वेदाङ्गो वेदवित्कविः लोकाध्यक्षः सुराध्यक्षो धर्माध्यक्षः कृताकृतः चतुरात्मा चतुर्व्यूह चतुर्दंष्टा चतुर्भुजः प्राजिष्णुर्भोजनं भोक्ता सहिष्णुर्जगदादिजः अनघो विजयो नेता विश्वयोनि पुनर्वसुः उपेन्द्रो वामनः प्रांशुरमोघः शुचिरुत्थितः अतीन्द्रः सङ्ग्रहः सर्गो धृतात्मा नियमो यमः वेद्यो वैद्यः सदा योगी वीरः माधवो मधुः अतीन्द्रियो महामायो महोत्साहो महाबलः महाबुद्धिर्महावीर्यो महाशक्तिर्महाद्युतिः अनिर्देशवभो श्रीमान् अमेयात्मा महादृदृक् महेश्वासो महीभर्ता श्रीनिवासः सदाङ्गतिः अनिरुद्धसुरानन्दो गोविन्दो गोविदाम्पतिः मरीचिर्दमनोहंसः सुपर्णो भुजगोत्तमः हिरण्यनाभः सुतपा पद्मनाभः प्रजापतिः अमृत्यो सर्वदृक्सिंहः सन्धाता सन्धिमान् स्थिरः अजो दुर्मर्षणः शास्ता विश्रुतात्मा सुरारिः गुरुर्गुरुतमो धाम सत्य सत्य पराक्रमः निमिषो निमिषस्रग्वी वाचस्पतिरुदारधीः अग्रणी ग्रामणी श्रीमान् न्यायो नेता समीरणः सहस्रमूर्धा विश्वात्मा सहस्राक्षः सहस्रपात्
आवर्तनो निवृत्तात्मा संवृता संप्रमथनः अहः संवर्तको वह्निरनिलो धरणीधरः सुप्रसाद प्रसन्नात्मा विश्वदृक् विश्वभुक् विभुः सत्कर्ता सत्कृता साधुर्जह्नो नारायणो नरः असंख्येयो प्रमेयात्मा विशिष्टा शिष्टकृच्छुचिः सिद्धार्था सिद्धसंकल्पा सिद्धिदा सिद्धिसाधनः वृषाही वृषभो विष्णुर्वृषपर्वा वृषोधरः वर्धनो वर्धमानश्च विविक्ता श्रुतिसागरः सुभुजो दुर्धरो वाग्मी महेन्द्रो वसुदो वसुः नैकरूपो बृहद्रूपा शिपिविष्टा प्रकाशनः ओजस्तेजो द्विधिधर प्रकाशात्मा प्रतापनः रुद्धस्पष्टाक्षरो मन्त्रश्चन्द्रांशुर्भास्करद्युतिः अमृतांशोद्भवो बाणो शशबिन्दो सुरेश्वरः औषधं जगता सेतु सत्यधर्मपराक्रमः भूतभव्यभवन्नाथ पवनः पावन्यो नलः कामः कामकृत्कान्ता कामः कामप्रदप्रभुः युगादिकृद्युगावर्तो नैकमायो महाशनः अदृश्यो व्यक्तरूपश्च सहस्रजितनन्तजिग इष्टो विशिष्टशिष्टेष्ट शिखण्डी नहुषो वृषः क्रोधः क्रोधकृत्कर्ता विश्वबाहुर्महीधरः अच्युता प्रतिता प्राण प्राणदो वासवानुजः अपां निधिरधिष्ठान अप्रमत्तः प्रतिष्ठितः स्कन्द स्कन्दधरो दुर्यो वरदो वायुवाहनः वासुदेवो बृहद्भानुरादिदेवा पुरन्दरः अशोकस्तारणस्तार शौरः शौरिर्जनेश्वरः अनुकूला शतावर्ता पद्मी पद्मनिवेक्षणः पद्मनाभोरविन्दाक्ष पद्मगर्भा शरीरभृत् महर्षिरुद्धो वृद्धात्मा महाक्षो गरुडध्वजः अतुलाशरभो भीमा समयज्ञो हविर्हरिः सर्वलक्षणलक्षण्यो लक्ष्मीवान् समितिञ्जयः विक्षरो रोहितो मार्गो हेतुर्दामोदरः सहः महीधरो महाभागो वेगवानमिताशनः उद्भवाक्षोभणो देवा श्रीगर्भा परमेश्वरः करणं कारणं कर्ता विकर्ता गहनो गुहः व्यवसायो व्यवस्थान संस्थानस्थानदो ध्रुवः परद्धि परमा स्पष्टा तुष्टा पुष्टा शुभेक्षणः ग्रामो विरामो विरतो मार्गो नेयो नयोनयः वीरशक्तिमतां श्रेष्ठो धर्मो धर्मविदुत्तमः वैकुण्ठः पुरुष प्राण प्राणद प्रणवपृतुः हिरण्यगर्भ शत्रुघ्नो व्याप्तो वायुरदोक्षजः ऋतुसुदर्शन काल परमेष्टि परिग्रहः उग्र संवत्सरो दक्षो विश्रामो विश्वदक्षिणः विस्तारस्तावरस्ताणो प्रमाणं बीजमव्ययम् अर्यो नर्यो महाकोशो महाभोगो महाधनः अनिर्विण्णस्तविश्वो भूधर्मयूपो महामकः नक्षत्रनेमि नक्षत्री क्षमः क्षामा समीहनः यज्ञयुज्यो महेज्यश्च क्रतुस्सत्रं सताङ्गतिः सर्वदर्शी विमुक्तात्मा सर्वज्ञो ज्ञानमुत्तमम् सुहृदा सुमुखा सूक्ष्मा सुघोषा सुखदः सुहृदो मनोहरो जितक्रोधो वीरबाहुर्विदारणः स्वापना स्ववशो व्यापी नैकात्मा नैककर्मकृत वत्सरो वत्सलो वत्सी रत्नगर्भो धनेश्वरः धर्मगुद्धर्मकृद्धर्मी सरसक्षरमक्षरम् अभिज्ञाता सहस्रांशुर्विधाता कृतलक्षणः गभस्तिनेमि सत्त्वस्था सिंहो भूतमहेश्वरः आदिदेवो महादेवो देवेशो देवभृद्गुरुः उत्तरो गोपतिर्गोप्ता ज्ञानगम्या पुरातनः शरीरभूतभृद्भोक्ता कपीन्द्रो भूरि दक्षिणः सोमप्योऽमृतपा सोमा पुरुजित् पुरुषोत्तमः विनयोजय सत्यसन्तो दाशार्हा सात्वतां पतिः जीवो विनयिता साक्षी मुकुन्दो मितविक्रमः अम्भो निधिरनन्तात्मा महोदधिशयोऽन्तकः अजो महाः स्वाभाव्यो जितामित्रप्रमोदनः आनन्दो नन्दनो नन्द सत्यधर्मा त्रिविक्रमः महर्षि कपिलाचार्य कृतज्ञो मेदिनीपतिः त्रिपदास्त्रिदशाध्यक्षो महाशृङ्गकृतान्तकृत महावराहो गोविन्द सुषेणा कनकाङ्गदी
गुह्यो गभीरो गहनो गुप्तश्चक्रगदाधरः वेदास्वाङ्ग्योजितः कृष्णो दृढसङ्कर्षणोच्युतः वरुणो वारुणो वृक्षा पुष्कराक्षो महामनाः भगवान् भगहानन्दी वनमालीहलायुधः आदित्यो ज्योतिरादित्य सहिष्णुर्गतिसत्तमः सुधन्वा कण्ठपरशुर्धारुणो द्रविणप्रदः दिवस्पृक् सर्वदृग्व्यासो वाचस्पतिरयो निजः त्रिसामा सामगः सामा निर्वाणं भेषजं विशक सन्न्यासकृच्छमा शान्तो निष्ठा शान्तिपरायणम् शुभाङ्गा शान्तिदा स्रष्टा कुमुदा कुवलेशयः गोहितो गोपतिर्गोप्ता वृषभाक्षो वृषप्रियः अनिवर्ती निवृत्तात्मा संक्षेप्ता क्षेमकृच्छिवः श्रीवत्सवक्षा श्रीवास श्रीपति श्रीमताम्बरः श्रीदा श्रीशा श्रीनिवास श्रीनिधि श्रीविभावनः श्रीधर श्रेय श्रीमान् लोकत्रयाश्रयः स्वक्षस्वङ्गशतानन्दो नन्दिर्ज्योतिर्गणेश्वरः विजितात्मा विधेयात्मा संकीर्ति चिन्ह संशयः उदीर्ण सर्वतश्चक्षुरनीश शाश्वतस्थिरः भूषयो भूषणो भूतिर्विशोकाशोकनाशनः अर्चिष्मानर्चिता कुम्भो विशुद्धात्मा विशोधनः अनिरुद्धो प्रतिरता प्रद्युम्नो मितविक्रमः कालनेमिनिः वीर शौरी शूरजनेश्वरः त्रिलोकात्मा त्रिलोकेश केशवः केशिः हरिः कामदेव कामपाल कामी कान्ता कृतागमः अनिर्देश्य वपुर्विष्णुर्वीर्योऽनन्तो धनञ्जयः ब्रह्मण्यो ब्रह्मकृत् ब्रह्मा ब्रह्म ब्रह्म विवर्धनः ब्रह्मविद् ब्राह्मणो ब्रह्मी ब्रह्मज्ञो ब्राह्मणप्रियः महाक्रमो महाकर्मा महातेजा महोरगः महाक्रतुर्महायज्वा महायज्ञो महाहविः स्तव्यस्तव प्रियस्तोत्रं स्तुतिस्तोतारणप्रियः पूर्णा पूरयिता पुण्या पुण्यकीर्तिरनामयः मनोजस्तीर्थकरो वसुरेता वसुप्रदः वसुप्रदो वासुदेवो वसुर्वसुमनाहविः सद्गति सत्कृति सत्ता सद्भूति सत्परायणः शूरसेनो यदुश्रेष्ठः सन्निवासा सुयामुनः भूतावासो वासुदेवा सर्वासु निलयो नरः दर्पः दर्पदो दुग्धो दुर्धरो तापराजितः विश्वमूर्तिर्महामूर्तिर्दीप्तमूर्तिरमूर्तिमान् अनेकमूर्तिरव्यक्ता शतमूर्ति शताननः एको नैकासवाक्यः किम्यत्तत्पदमनुत्तमम् लोकबन्धुर्लोकनाथो माधवो भक्तवत्सलः सुवर्णवर्णो हेमांगो वरांगश्चन्दनागरी वीरः विषमाशून्यो घृताशीरश्चलश्चलः अमानीमानदो मान्यो लोकस्वामी त्रिलोकधृत सुमेधामेधजो धन्या सत्यमेधाधराधरः तेजो वृषो जितिधरः सर्वशस्त्रभृताम्बरः प्रग्रहो निग्रहो व्यग्रो नैकशृङ्गो गदाग्रजः चतुर्मूर्तिश्चतुर्बाहुश्चतुर्व्यूहश्चतुर्गतिः चतुरात्मा चतुर्भाव चतुर्वेदविवेकपात् समावर्तो निवृत्तात्मा दुर्जयो दुरतिक्रमः दुर्लभो दुर्गमो दुर्गो दुरावासो दुरारिः शुभाङ्गो लोकसारङ्गा सुतन्तुस्तन्तुवर्धनः इन्द्रकर्मा महाकर्मा कृतकर्मा कृतागमः उद्भवा सुन्दरा सुन्दो रत्ननाभा सुलोचनः अर्को वाजसना शृङ्गी जयन्ता सर्वविजयी सुवर्णबिन्दुरक्षोभ्या सर्ववागीश्वरेश्वरः महाह्रदो महागर्तो महाभूतो महानिधिः कुमुदा कुन्दरा कुन्दा पर्जन्या पावन्योनिलः अमृतांशो कृतवपो सर्वज्ञ सर्वतोमुखः सुलभा सुवृता सिद्धा शत्रुजिश्चत्रुतापनः निर्ग्रोधोदुम्बरोश्वत्तश्चाणूरात्रनिषूदनः सहस्रार्ची सप्तजिह्वा सप्तैदा सप्तवाहनः अमूर्तिरनघो चित्यो भयकृद्भयनाशनः अणुबृहत्कृशस्थूलो गुणभृनिर्गुणो महान् तद्रुता स्वधृता स्वास्य प्राग्वंशो वंशवर्धनः भारभृत्कथितो योगी योगीश सर्वकामदः आश्रमश्रमणक्षामः स्वर्णो वायुवाहनः
धरोधनुर्वेदो दण्डो दमयिता दमः अपराजित सर्वसहो नियन्ता नियमो यमः सत्त्ववान् सात्विका सत्या सत्यधर्मपरायणः अभिप्राय प्रियारोह प्रियकृत्प्रीतिवर्धनः विहाय सगतिर्ज्योतिर्सुरचिर्हुतभुग्विभुः रविर्विलोचनः सूर्य सविता रविलोचनः अनन्तो हुतबुद्भोक्ता सुखदो नैकजोऽग्रजः अनिर्विण्णा सदा मर्षि लोकाधिष्ठानमद्भुतः सनातनतमः कपिला कपिलव्ययः स्वस्ति दा स्वस्ति कृत् स्वस्ति स्वस्ति भुक् स्वस्ति दक्षिणः अरौद्र कुण्डली चक्री विक्रम्योजित शासनः शब्दातिगा शब्दसः शिशिर शर्वरीकरः अक्रूरपेशलो दक्षो दक्षिण क्षमिणाम्बरः विद्वत्तमो वीतभया पुण्यश्रवणकीर्तनः उत्तारणो दुष्कृतिः पुण्यो दुःस्वप्ननाशनः वीरः रक्षण सतो जीवन पर्यवस्थितः अनन्तरूप्योऽनन्तश्रीजितमन्युर्भयावहः चतुरश्रो गभीरात्मा विदिशो व्यादिशो दिशः अनादिर्भूर्भुवो लक्ष्मी सुविरो रुचिराङ्गदः जननो जनजन्मादिर्भीमो भीमपराक्रमः आधारनिलयो दाता पुष्पहासा प्रजागरः ऊर्ध्वगा सत्पथाचार प्राणद प्रणवप्पणः प्रमाणं प्राणनिलय प्राणभृत् प्राणजीवनः तत्त्वं तत्त्वविदेकात्मा जन्म मृत्युजरादिगः भूर्भुवः स्वस्तरुस्तार सविता प्रपितामहः यज्ञो यज्ञपतिर्यज्वा यज्ञाङ्गो यज्ञवाहनः यज्ञभृत् यज्ञकृत्यज्ञी यज्ञभुक् यज्ञसाधनः यज्ञान्तकृत् यज्ञगुह्यमन्नमन्नाद एव च आत्मयोनि स्वयं जातो वैकानः सामगायनः देवकीनन्दन स्रष्टा क्षितीशा पापनाशनः शङ्खबृहन्नन्दकी चक्री शार्ङ्गधन्वा गदाधरः रथाङ्गपाणिरक्षोभ्य सर्वप्रहरणायुधः श्री सर्वप्रहरणायुध ॐ नमः इति वनमाली गधीशार्ङ्गी शङ्की चक्री च नन्दकी श्रीमान् नारायणो विष्णुर्वासुदेवोऽभिरक्षतो वनमाली गधीशार्ङ्गी शङ्की चक्री च नन्दकी श्रीमान् नारायणो विष्णुर्वासुदेवोऽभिरक्षतो वनमाली गधीशार्ङ्गी शङ्की चक्री च नन्दकी श्रीमान् नारायणो विष्णुर्वासुदेवोऽभिरक्षतो श्रीवासुदेवोऽभिरक्षतो ॐ नमः इति सदा सर्वत्र गोविन्द नाम संकीर्तनं गोविन्द गोविन्द Vigneshwar, are you here? You unmute button.
श्रद्धाभक्तिसमन्वितः विजयताति सुकक्षाति श्रीजुतिस्मृतिकीर्तिभिः न क्रोधो न तमात्सर्यं न लोभो नासिकामति भवन्ति कृतपुण्या भक्तानां पुरुषोत्तमे दौस्यचन्द्रा नक्षत्रा सन्ति स्वपूर्वमोदति वासुदेवस्य वीर्येण विद्युतानि महात्मनः ससुरासुरगन्धर्वंशयक्षोरगराक्षसम् जगद्वसे तदेदं कृष्णस्य सचराचरम् इन्द्रियाणि मनोबुद्धिः सत्त्वं तेजो बलन्तु भगवतो विष्णोर्व्यासेन कीर्तितं स्तुतयेन संशिनः रमे रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम सहस्रनाम तत्तुल्यं नमोऽस्मदे
Check, check, one. Check, check. Vigneshwar, unmute. Run, 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 run. Yeah, thank you, Team Malaysia. That was a divine full chanting of Sri Vishnu Sahasranamam this early morning. Thank you once again. Now it's time to. Oh God. Jagdish sir, music. Now it's time to go with Vishwas News Bulletin, English, Kannada, and Hindi. English News Bulletin, Rama Reddy will present from Krishna Swami Kalyana Mandapam, T. Nagar, Chennai. Anita will present Kannada news from the Mandapam itself, and Purnima Rao will present Hindi news. I request all the devotees, please kindly stay on mute. And those who are present at the Mandapam, my request is same with you all. Please be silent, no discussions, no signals. Sir, select new tab. New tab just below that my drive is there. Go back to screen. Go back to screen. From there you share. Select. Om Namo Venkatesaya. Om Namo Venkatesaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. The voice of Vishwas for Vishwa Shanti. Vishwas is committed to take Sri Vishnu Sahasranamam to the nook and corner of the world with its 5D principles: discipline, devotion, dedication, determination, development plus effort equals to success. This is Rama Reddy presenting today's Vishwas News Bulletin from Krishna Swami Kalyana Mandapam, T. Nagar, Chennai. And today's news headlines are Vishwas Global Chanting, Dr. Ramabhadran Guruji's discourses, Nama Sankirtanam, weekly satsangs, and important events. Now news in detail. This morning at 4:30 a.m., Tirupalli Elluchen Tirupavai presented by Team Malaysia. And at 5 a.m. this morning,
Shri Vishnu Sahasranamam recitation presented by Team Malaysia, and yesterday at 5 a.m., VSN chanting was presented by Team Australia. And at 6:15 p.m. this evening, we have India A batches to recite Shri Vishnu Sahasranamam 507 and 509. And yesterday, VSN chanting was presented by India A batches 505 and 506. Guruji, in his discourse, he explained sixth Pashuram till yesterday, and today Guruji will continue with seventh Pashuram. For your information, Bhagavad Gita classes will resume from 16th January 2023. Now, let us go into the details of weekly satsangs. A batches 51, location 35, Videsh 13. Now, let us move on to the important events. Nagara Sankirtanam. A physical chanting around the streets of TTD Temple, Madavidhi, Setti Nagar, Chennai. Vishwas chant hour, a no charge of Archana performed in the name of devotees who send their names, Gotram and Star for fulfilling their needs or alleviating their ordeal or hardships. Under periodical events, the Saptaham entered the sixth and penultimate day today, which is celebrated as Chennai Day. It will be an interesting day with the day beginning with Vishnu Sahasranama Homam, conference on benefits of Vishnu Sahasranamam, science in Vishnu Sahasranamam, and interesting debate on satsangs, online versus physical. On the final day, that is 23rd December 2022, that is tomorrow, devotees will be treated with the rare event of celestial wedding, that is Srinivasa Kalyana Utsavam. The news about Vishwas Marghazhi Saptaham carried in various print media like Hindu and Mailapur Times and was also telecast in SVBC TV channel. After the conclusion of Saptaham, the Marghazhi Saptaham will continue from 24th December 2022 into the next year till 13th January 2023 with a sparkling presentation of Nama Sankirtanam every day from 2 p.m. to 5:45 p.m. IST. Devotees from all over the globe will be participating, giving us a medley of music, bhajans, and other cultural events. Devotees interested in participating can give their names to their respective batch coordinators. Devotees interested in participating can register, and for registration, please contact for India Srimati Kamala Krishnan on 9663381613, and for overseas Mrs. Anuradha Chandrasekhar on +9715585666906. A159 batch is planning to chant daily during the month of Marghazhi, that is from 16th December 2022 to 14th January 2023. Vaikuntha Ekadashi falls on 2nd January 2023. To welcome the new year and to pray for global peace and prosperity, Vishwas has planned an Akhanda Parayanam of Vishnu Sahasranamam, that is physical, for 24 hours from 7 a.m. IST on 2nd January 2023 to 7 a.m. next day at Yaduguri Yatirajamat, East Trank Street, Triplicane, Chennai, just opposite the Divya Desham Parthasarathi Perumal Temple. Devotees are requested to join the Parayanam and seek the blessings of Lord Sriman Narayanan. The next Bhishmashtami day falls on January 29th, 2023. Vishwas will be arranging for Vishnu Sahasranama chanting in all the 106 Divya Deshams on that day, as well as online chanting by various satsangs. Vishwas is glad to inform its devotees that Vishwas has been invited by the management of Ammaji Temple in Ayodhya, which is considered to be a part of Ayodhya Divyadesham, to join the day-long chanting of Vishnu Sahasranamam at their venue. Vishwas considers this divine invitation as another acknowledgement of Vishwas Narayana Seva. Vishnu Sahasranama chanting at Tirumala by the grace of Lord Sriman Narayanan and the guidance of Dr. T.J. Sridharan sir. Vishwas has been conducting an annual chanting program at Tirumala at Asthana Mandapam, and this year we had the program in the month of May 2022 for 3 days, where we performed an Akhanda Parayanam for 72 hours. We are happy to announce that we will be continuing with the same tradition this 2023 too. The program will be held at Asthana Mandapam from 21st February to 24th February for 4 days. We welcome all the devotees to participate in this chanting program.
You are requested to book your travel tickets, accommodation, and darshan tickets at Tirumala, while complete details will be made available shortly. This is an advance intimation to plan your travel. Now let us go to the Vishwas Geo channel. As devotees are aware, Vishwas TV channel is telecast under the Geo TV banner for more than a year from now. Chanting of Vishnu Sahasranamam, Guruji's discourse on Vishnu Sahasranamam, and other programs of Vishwas are telecast daily 24 hours. Devotees are requested to watch Vishwas TV channel and get the blessings of Lord Sriman Narayanan. Kindly join morning and evening Vishwas Global Chanting 1 and 2 and take the benefits of Vishnu Sahasranamam, Guruji's discourse, Nama Sankirtanam and news bulletins and get the blessings of Lord Sriman Narayanan. Morning VGC 1 at 4:30 a.m., evening VGC 2 at 5:15 p.m. Chanting Shri Vishnu Sahasranamam is the panacea in this Kali Yuga. Om Namo Venkateshaya. That's all for today's English news bulletin. Stay tuned to Kannada News Bulletin presenting Anita from Mandapam. Thank you, one and all. ಓಂ ನಮೋ ನಾರಾಯಣಾಯ. ವಿಶ್ವಶಾಂತಿಗೋಸ್ಕರ ವಿಶ್ವಾಸ್ನ ವಾಣಿ. ವಿಶ್ವಾಸ್ನ ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮವನ್ನು ಪ್ರಪಂಚದ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಲು ವಿಶ್ವಾಸ್ ಬದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಅದರ 5 ಡಿ ತತ್ವ ಭಕ್ತಿ, ಶಿಸ್ತು, ಸಮರ್ಪಣೆ, ಸಂಕಲ್ಪ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ಪ್ರಯತ್ನ. ಇದೆಲ್ಲವೂ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಸಮಾನವಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭ ಮುಂಜಾನೆ. ನಾನು ಅನಿತಾ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ ಬಯಸುತ್ತಾ ವಿಶ್ವಾಸ್ನ ಸುದ್ದಿ ಸಮಾಚಾರಗಳನ್ನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ತಂದಿದ್ದೇನೆ. ಈ ದಿನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ವಿಶ್ವಾಸ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ತಿರುಪಳ್ಳಿ ಎಳುಚಿ, ತಿರುಪ್ಪಾವೈ ಮತ್ತು ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ ನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನ, ಪ್ರತಿವಾರ ನಡೆಯುವ ಸತ್ಸಂಗದ ವಿವರಗಳು, ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಮಭದ್ರನ್ ಗುರುಗಳಿಂದ ಪ್ರವಚನ, ಮುಖ್ಯವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು. ಈ ದಿನದ ವಿವರಗಳು: ವಿಶ್ವಾಸ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ತಿರುಪಳ್ಳಿ ಎಳುಚಿ, ತಿರುಪ್ಪಾವೈ, ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ ಪಾರಾಯಣ, ನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನಂ. ಅದರ ವಿವರಗಳು: ತಿರುಪಳ್ಳಿ ಎಳುಚಿ ಮತ್ತು ತಿರುಪ್ಪಾವೈ ಮುಂಜಾನೆ ಗಂಟೆ 4:30ಕ್ಕೆ ಮಲೇಷ್ಯಾ ಸತ್ಸಂಗದವರು ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡಿದರು. ಮುಂಜಾನೆ ಗಂಟೆ 5ಕ್ಕೆ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ ಪಾರಾಯಣ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಸತ್ಸಂಗದವರು ಮಾಡಿದ್ದು. ನಿನ್ನೆ ಮುಂಜಾನೆ ಗಂಟೆ 5ಕ್ಕೆ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡಿದವರು ಲೊಕೇಶನ್ ಸತ್ಸಂಗದವರು. ಸಂಜೆ ಗಂಟೆ 6:15ಕ್ಕೆ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ ಪಾರಾಯಣವನ್ನು ಭಾರತದ ಎ ಗುಂಪಿನ ಸಂಖ್ಯೆ 507 ಮತ್ತು 509 ಸತ್ಸಂಗದವರು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುವರು. ನಿನ್ನೆ ಸಂಜೆ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಿದವರು ಭಾರತದ ಎ ಗುಂಪಿನ ಸಂಖ್ಯೆ 505 ಮತ್ತು 506ನೇ ಸತ್ಸಂಗದವರು. ಗುರೂಜಿಯವರ ಪ್ರವಚನ. ಗುರೂಜಿಯವರು ತಮ್ಮ ಪ್ರವಚನದಲ್ಲಿ ತಿರುಪ್ಪಾವೆಯಿಂದ 6ನೇ ಪಾಶುರಂನವರೆಗೂ ಅರ್ಥವನ್ನು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ದಿನ 7ನೇ ಪಾಶುರಂ ಅರ್ಥವನ್ನು ತಿಳಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಮಾರ್ಗಶಿರ ಮಾಸದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಪುನಃ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಹಬ್ಬದ ನಂತರ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ತರಗತಿಗಳು ಮುಂದುವರಿಯುವುದು. ಏನಾದರೂ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದ್ದಲ್ಲಿ visvas.bg@gmail.comಗೆ ಕಳುಹಿಸಬಹುದು. ಗುರೂಜಿಯವರ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಪ್ರವಚನವನ್ನು ಸಂಜೆ ಗಂಟೆ 5:45ರಿಂದ 6 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನವನ್ನು ಕೃಷ್ಣಸ್ವಾಮಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪದಿಂದ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಸಂಜೆ ಗಂಟೆ 5:15ಕ್ಕೆ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುವರು. ಈ ದಿನ ನಡೆಯುವ ವಾರದ ಸತ್ಸಂಗಗಳ ವಿವರಣೆ ಹೀಗಿದೆ. ಎ ಬ್ಯಾಚ್ನಿಂದ 51 ಸತ್ಸಂಗಗಳು, ಲೊಕೇಶನ್ ಬ್ಯಾಚ್ನಿಂದ 35 ಸತ್ಸಂಗಗಳು, ವಿದೇಶಿ ಬ್ಯಾಚ್ನಿಂದ 13 ಸತ್ಸಂಗಗಳು ನಡೆಯಲಿವೆ. ಮುಖ್ಯವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ವಿವರಣೆ. ಈ ದಿನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು: ಟಿ ನಗರ್ ಚೆನ್ನೈನ ಟಿಟಿಡಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಸುತ್ತುವರಿದ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ ಪಾರಾಯಣದ ಭೌತಿಕ ಪಠಣ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ವಿಶ್ವಾಸ್ ಪಠಣ ಶಿಖರ. ಭಕ್ತರ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಅಥವಾ ಅವರ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಹೆಸರು, ಗೋತ್ರ ಮತ್ತು ನಕ್ಷತ್ರವನ್ನು ಕಳುಹಿಸಬಹುದು. ಅಂತಹವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಶುಲ್ಕವಿಲ್ಲದೆ ಅರ್ಚನೆ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಯತಕಾಲಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು: ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಸುದ್ದಿ. ಎ ಬ್ಯಾಚ್ ಸಂಖ್ಯೆ 159ನೇ ಸದಸ್ಯರು ಮಾರ್ಗಶಿರ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಡಿಸೆಂಬರ್ 16, 2022ರಿಂದ 14ನೇ ಜನವರಿ 2023ರವರೆಗೆ ಪ್ರತಿದಿನ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದು, ಈ ಮೊದಲು ಶುಕ್ರವಾರ ಸಂಜೆ ಗಂಟೆ 5:15ಕ್ಕೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಪಾರಾಯಣವನ್ನು ಶ್ರೀಧರ್ ಸರ್ ಆದೇಶದ ಮೇರೆಗೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ 17ರಿಂದ ಡಿಸೆಂಬರ್ 23, 2022ರವರೆಗೆ ರಾತ್ರಿ ಗಂಟೆ 8:30ಕ್ಕೆ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ ಪಾರಾಯಣ ನಡೆಯುತ್ತದೆ.
ದಿನಾಂಕ 24 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2022ರಿಂದ ಜನವರಿ 14, 2023ರವರೆಗೆ ಸಂಜೆ ಗಂಟೆ 5:15ಕ್ಕೆ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ವಿಶ್ವಾಸ್ ರವರು ಎ ಬ್ಯಾಚ್ ಸಂಖ್ಯೆ 159ನೇ ಸದಸ್ಯರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತಾ ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣನ ಪೂರ್ಣ ಕೃಪಾ ಕಟಾಕ್ಷ ಸಿಗಲೆಂದು ಹಾರೈಸುತ್ತಾರೆ. ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸ್ ಆಯೋಜಿಸಿರುವ ವಾರ್ಷಿಕ ಮಹಾ ಸಪ್ತಾಹವು ಇಂದು 5ನೇ ದಿನಕ್ಕೆ ಕಾಲುಡುತ್ತಿದ್ದು, ದಿನಾಂಕ 23 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2022ರವರೆಗೂ ಮಾರ್ಗಶಿರ ಮಾಸದ ಸಪ್ತಾಹವು ನಡೆಯುವುದು. ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ ಹೋಮದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಈ ದಿನ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ ಪ್ರಯೋಜನಗಳ ಕುರಿತು ಸಮ್ಮೇಳನ ಮತ್ತು ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ ಆನ್ಲೈನ್ ಮತ್ತು ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪಠಣದ ಕುರಿತಾಗಿ ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ಚರ್ಚೆ ಇರುವುದು. ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲಾ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಈ ಮೇಘಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಶುದ್ಧ ಆನಂದವನ್ನು ಆನಂದಿಸಿ ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆಯಲು ವಿನಂತಿಸುತ್ತಾರೆ. ಸಪ್ತಾಹದ ಮುಕ್ತಾಯದ ನಂತರ ಮಾರ್ಗಶಿರ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆಯು 24 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2022ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಗೊಂಡು ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ 13 ಜನವರಿ 2023ರವರೆಗೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಗಂಟೆ 2ರಿಂದ ಗಂಟೆ 5:45ರವರೆಗೆ ನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನೆಯ ಪ್ರಸ್ತುತಿಯೊಂದಿಗೆ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ. ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಭಕ್ತರು ಸಂಗೀತ, ಭಜನೆ ಮತ್ತು ಇತರ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಸಂಯೋಜನೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಭಾಗವಹಿಸಲು ಆಸಕ್ತಿಯುಳ್ಳ ಭಕ್ತರು ತಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನು ತಮ್ಮ ಗುಂಪಿನ ಸಂಯೋಜಕರಿಗೆ ನೀಡಬಹುದು. ನೋಂದಣಿಗಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕಾದ ಹೆಸರು: ಭಾರತ ದೇಶದವರಿಗೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಕಮಲಾ ಕೃಷ್ಣನ್, ಅವರ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ 9663381613. ವಿದೇಶಿಯರಿಗೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಅನುರಾಧ, UAE +9715585666906. ದಿನಾಂಕ 2 ಜನವರಿ 23ರಂದು ವೈಕುಂಠ ಏಕಾದಶಿ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಹೊಸ ವರ್ಷವನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಲು ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲು ವಿಶ್ವಾಸ್ ರವರು ಯದುಗಿರಿ ಯತಿರಾಜ ಮಠದಲ್ಲಿ ಈಸ್ಟ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್, ಟ್ರಿಪ್ಲಿಕೇನ್, ಚೆನ್ನೈ ದಿವ್ಯ ದೇಶಂ ಪಾರ್ಥಸಾರಥಿ ಪೆರುಮಾಳ್ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಎದುರು ಬೆಳಗ್ಗೆ 7 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಇಡೀ ದಿನ ಭೌತಿಕ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ ಪಾರಾಯಣವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದು, ಭಕ್ತಾದಿಗಳೆಲ್ಲರೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣನ ಕೃಪೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಮುಂದಿನ ಭೀಷ್ಮಾಷ್ಟಮಿ ದಿನವು 29 ಜನವರಿ 2023ರಂದು ಬರುವುದು. ಆ ದಿನದಂದು ವಿಶ್ವಾಸ್ ರವರು ಎಲ್ಲಾ 106 ದಿವ್ಯ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ ಪಠಣವನ್ನು ವಿವಿಧ ಸತ್ಸಂಗಗಳಿಂದ ಆನ್ಲೈನ್ ಪಠಣವನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಅಯೋಧ್ಯೆಯ ಅಮ್ಮಾಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯು ಅಯೋಧ್ಯೆಯ ದಿವ್ಯ ದೇಶದ ಭಾಗವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ವಿಶ್ವಾಸ್ ರವರನ್ನು ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮವನ್ನು ದಿನವಿಡೀ ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡಲು ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಲು ಹೆಮ್ಮೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದು, ಈ ದೈವಿಕ ಆಹ್ವಾನವನ್ನು ವಿಶ್ವಾಸ್ ನಾರಾಯಣ ಸೇವೆಯ ಮತ್ತೊಂದು ಸ್ವೀಕೃತಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಾರೆ. ತಿರುಪತಿಯ ತಿರುಮಲದಲ್ಲಿ ಪಠಣ ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣನ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಮತ್ತು ಡಾಕ್ಟರ್ TJ ಶ್ರೀಧರನ್ ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸ್ ರವರು ತಿರುಮಲದ ಆಸ್ಥಾನ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಮೇ 2022ರಲ್ಲಿ 3 ದಿನಗಳ ಕಾಲ, ಅಂದರೆ 72 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಅಖಂಡ ಪಾರಾಯಣವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದು, ಈ ವರ್ಷವೂ ಅದೇ ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತೇವೆಂದು ಘೋಷಿಸಲು ಹರ್ಷ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದು, ದಿನಾಂಕ 21 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023ರಿಂದ 4 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತಾದಿಗಳಿಗೂ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಾ ತಿರುಮಲಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಯಾಣದ ಟಿಕೆಟ್, ದರ್ಶನದ ಟಿಕೆಟ್ ಹಾಗೂ ವಸತಿಯನ್ನು ಕಾಯ್ದಿರಿಸಲು ವಿನಂತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇತರೆ ವಿವರಗಳನ್ನು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಯೋಚಿಸಲು ಮುಂಗಡ ಸೂಚನೆಯಾಗಿದೆ. ನಿಮಗೆಲ್ಲ ತಿಳಿದಿರುವಂತೆ ವಿಶ್ವಾಸ್ ಟಿವಿ ಚಾನೆಲ್ ಜಿಯೋ ಟಿವಿ ಬ್ಯಾನರ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 1 ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಪ್ರಸಾರವಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ ಪಾರಾಯಣ, ಗುರೂಜಿಯವರ ಪ್ರವಚನ ಹಾಗೂ ವಿಶ್ವಾಸ್ನ ಇತರೆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿದಿನ 24 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಪ್ರಸಾರವಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಭಕ್ತರು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣನ ಕೃಪೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ವಿಶ್ವಾಸ್ನ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಸಂಜೆಯ ಸುದ್ದಿ: ಎಲ್ಲರೂ ಬೆಳಗಿನ ಹಾಗೂ ಸಾಯಂಕಾಲದ ವಿಶ್ವಾಸ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಪಠಣೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ತಿರುಪ್ಪಳ್ಳಿ ಎಳುಚಿ, ತಿರುಪ್ಪಾವೈ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ ಪಾರಾಯಣ, ಗುರುಗಳ ಪ್ರವಚನೆ, ನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನೆ ಮತ್ತು ವಾರ್ತಾ ಸಂಚಿಕೆಯನ್ನು ಕೇಳಿ
ಅದರ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಬೆಳಗಿನ ವಿಶ್ವಾಸ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಪಠಣವು ಮುಂಜಾನೆ ಗಂಟೆ 4:30 ಮತ್ತು ಸಂಜೆ ಗಂಟೆ 5:15 ಇರುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತಾ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಅನಿತಾ, ಕನ್ನಡದ ವಾರ್ತಾ ನಿರೂಪಕಿ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನೂ ನಾಳೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ವಿಶ್ವಾಸ್ನ ಸಮಾಚಾರದೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಭೇಟಿಯಾಗುತ್ತೇನೆ. ಈ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ ಪಾರಾಯಣವೇ ರಾಮಬಾಣ. ದಿನನಿತ್ಯ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮವನ್ನು ಪಠಿಸಿ ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಡೆಯೋಣ. ಓಂ ನಮೋ ನಾರಾಯಣಾಯ. ಜೈ ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣಾಯ. ಓಂ ನಮೋ ವೆಂಕಟೇಶಾಯ. मैं पूर्णिमा राव, हैदराबाद, तेलंगाना। विश्वास प्रभात का समाचार। ओम नमो वेंकटेशाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। विश्वास की आवाज, विश्व शांति की निनाद। विश्वास 5 सिद्धांत पर चलती है। वे है भक्ति, अनुशासन, निष्ठा, दृढ़ निश्चय, विकास, कोशिश और यही है विजय की रहस्य। और हम चलते हैं सीधी विवरण की तरफ। आज 22 दिसंबर 2022। आज की होने वाली समाचार इस प्रकार। विश्व सुमिरन, तिरुपल्लिडुच्ची, तिरुप्पावई, नाम संकीर्तनम, गुरुजी प्रवचन। विश्वास में सूचित कार्यक्रमों का आयोजनित का समाचार इस तरह। तिरुपल्लिडुच्ची तिरुप्पावई सुमिरन 4:30 बजे सुबह भारतीय मानक समय तिरुपल्लिडुच्ची और तिरुप्पावई को मलेशिया ने प्रस्तुत की थी। विश्व वैश्विक सुमिरन 1 सुबह 5 बजे विश्व सहस्रनाम सुमिरन को मलेशिया ने प्रस्तुत की थी और कल सुबह 5 बजे विष्णु सहस्रनाम सुमिरन को ऑस्ट्रेलिया से प्रस्तुत हुआ। शाम 6:15 बजे विष्णु सहस्रनाम सुमिरन को भारत के ए बैचेस 507 और 509, कल भारत के ए बैचेस 505 और 506 भारत के बैचेस ने प्रस्तुत की थी। गुरुजी प्रवचन। हमारे पूज्य गुरुजी के प्रवचन में तिरुप्पावई की 6वां पाशुरम को अर्थ और व्याख्या दिए हैं और आज गुरुजी 7वीं पाशुरम को लेके प्रवचन जारी रखेंगे। भगवद गीता कक्षाएं 16 जनवरी 2023 में शुरू होने वाली है। नाम संकीर्तनम। नाम संकीर्तन श्री कृष्ण स्वामी कल्याण मंडप से सीधी प्रस्तुत की जाती है। दोपहर 2 बजे से शाम 4:45 बजे तक। साप्ताहिक सत्संग की सूचना इस तरह। ए बैचेस 51, लोकेशन सत्संग 35, विदेश 13। महत्वपूर्ण घटनाएं, दैनिक घटनाएं। नगर संकीर्तन सीधा टीटीडी टेम्पल, माड़ा बीदी, टी नगर, चेन्नई की आसपास सड़कों से चलते हुए सुमिरन की प्रस्तुत की जाती है। विश्वास मीनार सुमिरन। जो भी अपने नाम, गोत्र, नक्षत्र का समाचार देते हैं उनके नाम पर अर्चना की जाती है बिना चार्जेस के और हरिबंधुस की मनोकामनाएं पूरी होने की, कष्ट दूर होने के लिए पूजा की जाती है। नियतकालीन आयोजन। सप्ताहम 6वें दिन को प्रवेश हुआ है और आज अंत से पहले का दिन है। इसको चेन्नई दिन के जैसे मनाते हैं। आज बहुत दिलचस्प दिन है जो विष्णु सहस्रनाम होमम से शुरू होती है।
विष्णु सहस्त्रनामम पढ़ने से क्या लाभ है, इसके बारे में सम्मेलन, विष्णु सहस्त्रनाम में विज्ञान, बहुत दिलचस्प कार्यक्रम, वाद विवाद सत्संग के बारे में ऑनलाइन और भौतिक। हरिबंधुस के लिए अंतिम दिन यानी 23 दिसंबर 2022 श्रीनिवास कल्याणम होने वाली है। ये बहुत ही दिव्य विवाह श्रीनिवास कल्याण उत्सवम। विश्वास के अन्य कार्यक्रमों का समाचार मुद्रण माध्यम में प्रचलित हुआ है, जैसे हिंदू और मइलापुर टाइम्स और एसवीबीसी टीवी चैनल में प्रस्तुत हुआ है। सप्ताह निष्कर्ष समारोह समाप्त होने के बाद मार्गली आध्यात्मिक भक्ति रस सदा यूं ही बरकरार रहेगी। 24 दिसंबर 2022 से 13 जनवरी 2023 तक दोपहर 2 बजे से शाम के 4:45 बजे तक बरकरार रहेगी। जो भी भक्त इसमें भाग लेना चाहते हैं वे अपने बैच समन्वयों से संपर्क करें और अपनी कला को प्रदर्शन करने के लिए बेहतरीन मंच विश्वास दे रही है। समन्वयकर्ताओं का मोबाइल नंबर, भारत के भक्तजन श्रीमती कमला कृष्णन को संपर्क कर सकते हैं। उनकी नंबर है 9663381613। विदेश भक्तजनों श्रीमती अनुराधा से संपर्क कर सकते हैं। यूएई 971558566906 पर संपर्क करें। 159 बैच मार्गली के पूरे महीने तक रोज विष्णु सहस्त्रनाम का सुमिरन कर रही है। वह 16 दिसंबर 2022 से लेके 14 जनवरी 2023 तक। नई साल में जनवरी 2 तारीख 2023 वैकुंठ एकादशी नई साल की स्वागत करते हुए विश्व शांति और समृद्धि की नमन करते हुए विश्वास अखंड पारायण सीधी भौतिक पूर्वक सुमिरन 24 घंटे सुबह 7 बजे से लेके अगले दिन 7 बजे तक आयोजन की है। इसकी प्रसारण यदुगिरी यतिराज मठ, ईस्ट टैंक स्ट्रीट, ट्रिप्लिकेन, चेन्नई एकदम पार्थसारथी पेरुमाल मंदिर के सामने। हरिबंधु से संवेदन करती है इस पारायण में भाग लेने की और श्रीमन नारायण की आशीर्वाद लेने की। अगले दिन भीष्म अष्टमी दिनांक 29 जनवरी 2023 विश्वास सारे 106 दिव्य देशम में विष्णु सहस्त्रनाम सुमिरन के लिए व्यवस्था की है और उसके साथ ऑनलाइन सुमिरन भी होगी अन्य सत्संगों से। विश्वास बहुत प्रसन्न से हरिबंधुस को जानकारी देती है कि विश्वास को अम्माजी मंदिर अयोध्या के प्रबंधकारों ने आमंत्रित की है कि अयोध्या में लंबी सुमिरन विष्णु सहस्त्रनाम सुमिरन करने की। विश्वास का मानना है यह स्वयं नारायण की आमंत्रण। विष्णु सहस्त्रनाम सुमिरन तिरुमला से भी प्रस्तुत होगी। श्रीमन नारायण की कृपा से और हमारे पूज्य संस्थापक श्री श्रीधरन जी की सलाह से तिरुमला आस्थान मंडप में मई 2022 में 3 दिनों का सुमिरन आयोजित किया था और 3 दिन तक अखंड पारायण 72 घंटों तक चली थी। विश्वास को बेहद खुशी की अगले साल फरवरी 21 से 24 तक यही कार्यक्रम का आयोजन 4 दिनों तक आस्थान मंडप में आयोजित किया जाएगा। हरिबंधुओं को एक सूचना है कि आप अपनी यात्रा टिकट, दर्शन टिकट और रहने का इंतजाम स्वयं करें और इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में भाग ले और श्रीमन नारायण को पाए और इसके बारे में पूरी जानकारी जल्दी मिलेगी। आप सबके लिए एडवांस सूचना में दी जा रही है। विश्वास टीवी हरिबंधुओं के लिए विश्वास टीवी चैनल का प्रसारण जियो टीवी बैनर के साथ करीबन 1 साल से प्रसारण किया जा रहा है। विष्णु सहस्त्रनाम का सुमिरन और गुरुजी के प्रवचन पूरे 24 घंटे हर रोज प्रसारित होती है। विश्वास सुबह और शाम वैश्विक सुमिरन। हरिबंधुस कृपया रोज सुबह और शाम विष्णु सहस्त्रनाम वैश्विक ग्लोबल चैंटिंग 1 और 2 में भाग लीजिए और विष्णु सहस्त्रनाम को फायदा उठाइए। नाम संकीर्तन न्यूज बुलेटिन में भाग लीजिए।
VGC 1 सुबह 4:30 बजे, VGC 2 शाम 5:15 बजे। श्री विष्णु सहस्त्रनाम कलियुग का रामबाण। और ऐसे ही भक्त पूर्व सनातन आध्यात्मिक धर्मों का विषय लेके आएंगे कल सुबह फिर नई समाचार के साथ। आप सबको शुभ दिन। आपकी समाचार वाचिक पूर्णिमा राव। Thank you, Anita and Purnima, for presenting today's VISVAS News Bulletin. Thank you once again. Now it's time to go with Guruji's discourse. Till yesterday, Guruji completed 6th Pashuram from Tirupavai, and today Guruji will continue 7th Pashuram. But before, let us go with let us felicitate our Guruji by Jagdish sir. वनमाले गदिशार्गी शंखी चक्री चनंदकी श्रीमान नारायणो विष्णुर्वासुदेवोभिरक्षतु। वनमाले गदिशार्गी शंखी चक्री चनंदकी श्रीमान नारायणो विष्णुर्वासुदेवोभिरक्षतु। श्री वासुदेवोभिरक्षतु। ओम नम इति। Over to you, Guruji. கீச்சு கீச்சென்றெங்கும் ஆனை சாத்தன் கலந்து பேசின பேச்சரவம் கேட்டிலையோ பேய் பெண்ணே. காசும் பிறப்பும் கலகலக்க கைபேர்த்து வாச நறுங்குழல் ஆய்ச்சியர் மத்தினார் ஓசைப்படுத்த கேட்டிலையோ நாயக பெண்பிள்ளாய். நாராயணன் மூர்த்தி கேசவனை பாடவும் நீ கேட்ட கிடத்தியோ தேசமுடையாய். திருவேலோர் எம்பாவாய். Om Namo Venkateshaya. My pranams everybody. Shuklam Bharadaram Vishnum Shashivarnam Chaturbhujam Prasannavadanam Dhyayet Sarva Vignopashantaye Vyasaya Vishnu Rupaya Vyasa Rupaya Vishnave Namo Vai Brahma Nidaye Vasishtaya Namo Namaha Yasya Smarana Matrena Janma Samsara Bandhanat Vimuchyate Namastasmai Vishnave Prabha Vishnave Lakshminatha Samarambam Natha Yamuna Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Paramparam Sri Vishnu Chitta Kulanandana Kalpavalli Sri Rangaraja Harichandana Yogadrisyam Sakshat Kshamam Karunaya Kamalamivanyam Godamananya Sharanam Sharanam Prapadye. Pranams everybody. So we are in Pasaram number 7. As I said yesterday, from Pasaram number 6 to Pasaram number 15, Andal is waking up each one of our, this comrades, our friend, to join them for this, this Pavai Nonbu. Of course, yesterday we talked about the Bhagavan remaining in the 5 states, Sri Vaikuntham Paravasudevan, then Chirabdi Sagar as Vyuha Vasudeva, then Vibhava Avataram, Ramakrishna Narasimha Avatara. Then we have this Antaryami, Bhagavan residing as the inner controller of everybody. And then the Archavataram, Bhagavan remaining as the Vigraha Murti in the various temples. In this 6th Pasuram, all these 5 states have been referred to. So Vittinai means is the seed. That means is the Paravasudevan. Then comes Vellattaravil Tuilamaranda. That means he is talking about the Chirabdi Sagar where Bhagavan is lying on this Adisesha. Then she is talking about the Krishna Avatara. This Kallachakadam, Kalakari, Kalochi, Pemule, Nanjunda. All these things refer to Krishna Avatara, which is the Vibhava Avatara.
Ullattukkondu Munivargalum. So that means he's talking about the Antaryami. Then of course this Pullarayan Koilil, so Archavatam. So all the 5 states of Bhagavan are referred to in the 6th Pasanam. Now let's move on to the 7th Pasanam. Kichiki Chandringam Anai Chatan Kalande Pesina Pecharavam Keteleyo. So this the first friend has joined. Now they are going to the second house. There she is also asking the same thing. It is so dark outside. How do you say that it has already dawned? So again they are saying, you are seeing this Anai Chatan is a bird called Bharadwaja Pakshi. So this Bharadwaja Pakshi is going out for bringing the prey. So before that it is talking to her, the female, the male and the female conversation, Kala Kalapa. தான் கலந்து பேசின பேச்சு. That means நானே சாத்த. So the male and the female are talking to each other, and therefore are not able to hear that voice. பேரரவம், பேச்சரவம். That is the birds chirping. The two of them chirping. Are you not able to hear that voice? Peipanne. Peipanne means she is in one way of looking at Peipanne means she is in complete trance. She is completely lost in the Krishna Anubhavam, and therefore whatever these people are saying, she is not able to even come to that senses. So in that sense, they are saying Peipanne. So that means you are in a totally different world. That is one meaning of that. Other meaning of Peipanne means she has come. The previous night she was spending time with Krishna and came only very late at night, and therefore she came almost around midnight or early morning, and therefore she is spending more time. She has been awake at night, and therefore she is called as Peipanne. காசும் பிறப்பும் கலகலப்ப கைப்பேர்த்து வாச நறுங்குழல் ஆய்ச்சியர் மத்தினால் ஓசைப்படுத்த தைரரும் கேட்டில. The second proof that she is saying that it is already dawned is, now all these gopi have already, they wake up very early in the morning. They wake up early in the morning, they take bath, they do the prayers, then apply the flowers on their tresses, and then they start, they churning this curd to get the, this Navanitam, that is that butter. They normally do it early in the morning because after the sunrise, they won't be able to get that kind of, this, that will become melt. The curd will come, the Navanitam, the butter will melt. And therefore, before the sun rises, they will have to do that. That's why, Kasum Pirappum Kalakalappa Kaipet. That means they are wearing 2 Mangali Sutras. One is called as Kasu, the other one is called as Pirap. It is called as Achitali, Amaitali. So that means they have got 2 Mangali Sutram. So when they are churning it, these two talis, that is this Mangal Sutram, hitting against each other, and there is a noise coming out of that. So Kasum Pirappam Kalakalappa. Then they are all moving there, they are churning that, so they are moving from one hand to the other one. Vasa Narunkural. So, okay, now that you are closing your eyes, at least your nose must be sensitive, or nose must be alive, and therefore are not able to smell the beautiful flowers that they are keeping on the dresses. Vasa Narunkural, Aichir, Matinal Vosepad. That means they're churning that. Are you not able to hear that churning noise? So she is giving a lot of evidences. She's saying, first of all, the birds, the Bharadwaja Pakshi, they are all conversing, are not able to hear that voice. Then when they are churning the 2 talis, that is the 2 Mangali Sutras sitting against that, are not able to hear that voice. And then they are keeping the flowers on their tresses, are you not able to smell the beautiful smell of that flowers? And then they are churning that curd through this, through the churning rod, are you not able to hear that noise? So this the earlier person was addressed as Pillai. Pillai means she was a novice into that group. Now this lady is their leader, Nayaga Pen Pillai. So you are our leader. So the leader must set examples by lead from the front. So you should be the person who must be coming to the front and then waking us up. But then you are sleeping. Nayaga Pen Pillai, Narayanan Murti. Keshavane. So it is the same Narayana who is residing in the Srivikuntam has come as Keshava. Krishna is called as Keshava. Keshava has got several meanings. One meaning is Keshiyanta. Keshiyanta, one who killed that Asura called Keshi. Because when this Gamsa sent several people, the last person he sent was a person called Keshi. He came in the form of a horse, and then Bhagavan Krishna killed him, and therefore he was called as Keshava. That's one meaning of Keshava. Keshava, Kleshanasanaha. One is able to destroy all our sorrows. It's called as Keshava. So Keshavanai Padavam. That means again Nama Sankirtanam. We are chanting the name of Keshava, Narava, Keshava, Madhava, Govinda. So we are chanting the name of the Lord, but still you are listening to that and still keeping quiet. So you are the leader of our team, and you are so fond of Krishna, and therefore we are chanting the name of Krishna, who is none other than Narayana, manifested Sri Krishna Paramatma. They are chanting his name, and you are so fond of hearing his names, but still you are keeping quiet. Deshamudaya.
Deshamudaya means tejas. One has got this tejas on her, the glow on her face, and therefore since you are the leader, you have got glow on her face. You are such a beautiful lady, and you are got so much attracted to Krishna. You are chanting his name, but still you are sleeping. Deshamudaya Tiravelo Ramba. So come and open the door. Tiravelo, open the door. Because the implication is Bhagavan's grace is present in the whole universe. All that is required is we'll have to chant the name of the Lord. So in fact, if you have the Wi-Fi, the Bhagavan's grace is like the Wi-Fi available in the whole universe. But then to invoke the Wi-Fi, you need the password. Without a password, you can't invoke the Wi-Fi. What is the password? Bhagavan Nama. Bhagavan Nama is the password. Once you chant the Bhagavan Nama, the grace of the Bhagavan will automatically come on you. And therefore, Tiravelo, that means you are sleeping quietly inside, closing all the doors and windows. That is not correct. And therefore, you come and open this door. That's what Andal is saying. The Alvar who is being referred to in this Pasuram is Kulasekara Alvar. The reason being, Desha Mudaya. One meaning of Desha means you got the land. He was the king. Kulasekara Alvar was the king of the Kerala, Cheranade. Therefore, he was a king, and therefore, he's called, is the Alvar being addressed. And also, this Kulasekara wrote some in the Sanskrit something called Grantham called Mukunda Mala, where he's talking about the greatness of the Lord Krishna. Where he's using the word Keshava. His name is also being addressed in this Mukunda Mala. Therefore, the Alvar being referred to is this Kulasekara Alvar. Now, the inner meaning of this Pasuram is Kisigi Sendringam Ane Chatan. Ane Chatan, one who killed the elephant. One who killed the elephant is Krishna. Krishna killed an elephant called Kovalayapidam when Kamsa, when he invited him to this Mathura, but then he kept this Kovalayapidam on the way to, destroy Krishna. But Bhagavan killed that Anai, and therefore is called as Anai Chatan. That the Bhagavan, Sri Krishna Paramatma and the Rukmani Devi are Kalakalappa, they are discussing. What are they discussing? Kasham Perappam. That means they are discussing about the two the Vedas, the Dravida Veda as well as the Upanishads. They are discussing all these things. Kasham Perappam Kalakalappa. They are discussing among themselves. Kaiperthu, they are showing their hand, like, Kaiperthu means blessing all of us. Kaiperthu, Vasa Narunkurel, Achiyar Matinal, Osaipaditha, that means they are churning. They are churning the Vedas, the Upanishads, as well as the Arili Chelgal of the Alvas. And what are they coming out with us? They are coming out with this beautiful Nayaga Pinpillai, Narayanamati Keshavan. They came out with a beautiful concept called that the Nama Sankirtanam is the only way of salvation in this universe. And therefore, they come out with this conclusion and said that Keshavane Pade. That is the conclusion they have come up, and they are saying that, and you are not listening to that. So, oh lady, please get up. That's what is the inner meaning of this Pasuram. Srimate Vishnu Chittarya Goda Vishnu Srimate Vishnu Manonandana Hetave Nandanandana Nandaye Godaye Nityamangalam Sarvam Sri Krishna Arpanamastu Goda Rangamanar Tiruvadigalaya Sharanam. Krishna 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 Krishna. Thank you, Guruji. Thank you for your wonderful explanation about Pashuram today. And now it's time to go with the ending prayer. But before that, let me have a glance on today's evening and tomorrow's as well. This evening, straight away at 6 o'clock, we'll start Vishwas Global Chanting 2 with Vishwas News Bulletin, Telugu, Tamil and Malayalam News. Later at 6:15 p.m. this evening, we have India A batches with us to recite Sri Vishnu Sahasranamam. 507 and 50 batches are with us. And Nama Sankirtanam will be presented from Krishna Swami Kalyana Mandapam itself from 2 p.m. to 5:45 p.m. And tomorrow morning, as usual, 4 o'clock, the WCC link will open and Suprabhatam will recite from Mandapam. Thereafter at 4:30, we have Singapore, Hong Kong and Japan batches are with us to recite Tirupalli Eluchen Tirupavai, followed by Sri Vishnu Sahasranamam at 5 o'clock. Later, Vishwas News Bulletin, English, Hindi and Kannada News Bulletin will be there. And after that, as usual, Guruji's discourse on Tirupavai. So tomorrow evening, we have India A batches, 510 and 511 batches with us to recite Sri Vishnu Sahasranamam. Before that, as usual, Vishwas News Bulletin will be there and Nama Sankirtanam will present from Mandapam 2. It's a kind request with all the devotees. Please kindly join Vishwas Global Chanting 1 and 2, morning 4:30 a.m. and evening 5:15 p.m. and take the blessings of Lord Sriman Narayanan and let us pray for the universal peace. And today,
At 6 o'clock, we are going with Vishnu Sahasranama Homam. Conference and debate will be there on satsangs and online as well as physical. So please, after completion of ending prayer, WCC link will continue. I request all the devotees, please stay back to WCC link and at the same time watch live program on VISVAS YouTube channel. So thank you once again. And I request the coordinator of Malaysia team, Mrs. Prema Mohan, please go with the ending prayer. Thank you once again. Ravi sir is. Yes, ma'am. We can hear. Yes,
closing prayer.
गणपतिभ्यः नमो नमो विरूपे विश्वरूपेभ्यः नमो नमः महद्यानिलयेभ्यः नमो नमो ऋतिभ्यः रथपतिभ्यश्च वो नमो नमः सेनानिभ्यश्च वो नमो नमः क्षत्रिभ्यः सङ्गृहीतृभ्यश्च वो नमः तक्षभ्योर्दकारेभ्यश्च वो नमो नमः कुलालेभ्यः कर्मारेभ्यश्च वो नमो नमः पुण्यनिषादेभ्यश्च वो नमो ऐषिगद्भ्यश्च वो नमो नमः मृगेभ्यः शनिभ्यश्च वो नमो नमः स्वभ्यः नमः भवाय च रुद्राय च नमः शर्वाय च पशुपतये च नमो नीलग्रीवाय च शशिकण्ठाय नमः कवत्तिने तकेताय च नमः सहस्राढ्याय च सतन्मने च नमो विष्णाय च नमो मीरट्टमाय तेजमते च नमो अश्वाय च वामनाय च नमो मृगते च वरीयते च नमो बुद्धाय संवत्सरे क्रियाय च प्रथमाय च नमः आतिवेताधिराय च नमः शीघ्राय च शीभ्याय ॐ याय च वत्सन्याय च नमः स्रोतस्याय च दीप्याय च नमो ज्येष्ठाय च कनिष्ठाय च नमः पूर्वजाय चापरजाय च नमो मध्यमाय चापकल्पाय च नमो जघन्याय च पुत्र्याय च नमः सोभ्याय च प्रतिसर्याय च नमो याम्याय च क्षेम्याय च खल्याय च नमः श्लोक्याय चावसान्याय च नमो वन्याय च कक्षाय नमः श्रवाय च प्रतिश्रवाय च नमः आशुषेणाय चाशुरथाय च नमः शूराय चावभिन्दते च वरूथिने च नमो बिल्विने च कवचिने च नमः श्रुताय च श्रुतसेनाय च नमो दुन्दुभ्याय चाकरण्याय च नमो धृष्णवे प्रमृषाय च नमो दूताय च प्रहिताय च नमो निशङ्किने युधिने च नमः स्वायुधाय च सुधन्वने च पथ्याय च नमः काट्याय च नीप्याय च नमः सूद्याय च सरस्याय च नमो नाद्याय च वैशन्ताय च नमः कूप्याय च नमो वर्ष्याय च नमो मेघ्याय च विद्युत्याय च नमः ईध्र्याय च नमो वात्याय च रेश्मियाय च नमो वास्तव्याय च वास्तुपाय च नमः सोमाय च रुद्राय च नमस्ताम्राय च अरुणाय च नमः शङ्गाय च पशुपतये च भीमाय च नमो अग्रे वधाय च दूरे वधाय च नमो अन्ते जानीय नमो वृक्षेभ्यो हरिकेशेभ्यो नमस्ताराय नमः शम्भवे च मयो नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च कूल्याय च नमः पार्याय च वार्याय च प्रतरणाय तोत्तरण आचार्याय च लास्याय च नमः शत्याय प्रवाक्याय च नमः हिरण्याय च प्रपत्याय च नमः तिरुंथिलाय च नमः कवत्थिले च बलस्थये च नमो ज्ञोक्य अनङ्गेक्याय नमः काट्याय च हृदयाय निवेप्याय च नमः पाकं सव्याय रस्याय च नमः शुक्याय धारित्याय च नमो लप्याय च नमः ऊर्व्याय च सूर्व्याय च नमः पन्याय च बन्धसत्याय च नमो भगरवाणाय आकितने च पक्कितने च नमो वक्रिजेभ्यो देवानां हृदयेभ्यो नमो विच्छेनकेभ्यो नमो विचिन्वत्केभ्यो नमाण्यदेभ्यो नमामि वत्के ध्यावे अन्ततत्पदे दरिद्रन्नीललोकिता येषां पुरुषाणामेषां पशूनां माभेर्मोरोमो येषां या ते रुद्र शिवा तनो शिवा विश्वाह वेदति शिवा रुद्रस्य वेदति तया न मृळजीवसे तव ते कपत्तिने वीराय परपरामहे मतिं दानः समदद्धिपते तदुत्पदे विश्वं ग्रामे अस्मिन् ऋणाना रुद्रोदनामयस्कृतिच्छयद्वीराय नमदामि देमते यस्सञ्जयोत्तम् அந்த புக்கு படிக்க எதுக்கு அது இருக்கிறாரு மானாவதி அது தெரியக்கூடாதுன்னா என்ன பண்ண முடியும் மானத்தனவோரா மானத்தோ கேத்தனையே மான ஆயுஷுமானோ கோஷுமானோ அஸ்வேரா
नमदामिते मते आराते गोप्रोतपूर्णग्ने चैत्वीराय सम्मत्वेते अत्तो अक्षातनो अदिते ब्रूयदातनः सर्वयत्तद्दुबरा सिद्धस्सदाङ्गत्तदं विवानं मृगन्न भेदवात्मक्रमस्तमानं ऐनारब्धस्य एतिर्विडक्तवर्गेदस्य तिर्मदिरिकायाः परमे विच्छाय दुर्निदायकत्वं वतानादनभिनागं विप्रदान् विगिलविलोकद नमस्ते अस्तवः याते सहस्राणि दासामि जानो भगवः प्राचीनामुकागते सहस्राणि तस्यो यत्रा दुम्यां एनाम् आश्मन्मत्तर्नवेन्दरक्षेपवादी விளக்கேத்திடலாமா? ஸ்ரீதர் சார் नीलग्रीवा ये विष्टेजत्पिञ्जरा नीलग्रीवा विलोकिताः हे भूतमतिपतयो गाधक्कपत्तिनः ते अन्ये विद्धन्तपात्रे तुपदादनानि ये पथाम्बधिरक्षय ऐलभृदाय व्युदः ये तीर्थानि प्रचरन्ति सृकावन्तो निषङ्गिणः य एतावन्तश्च भूयागुंसश्च दिशो रुद्राविधस्थिरे तेषागुंसगत्रयोजने वधन्वानि धन्मसे ये अन्तरिक्षे ये दिविजेषामन्नं वातो परिशमिषभस्तेभ्यो दश प्रदेशेर्दशोदेशेर्दशोर्ध्वास्तेभ्यो नमस्ते नो मृडयन्तु देयं द्वेष्टितं भोजं भेदधामि त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं गुरुवारुकमिव वन्दनामृतात् यो रुद्रो विश्वा भुवना विवेद तस्मै रुद्राय नमो अस्तु तमुष्टु यस्मिषुस्तु धन्वा यो विश्वस्य क्षयति वेडजस्य यक्ष्वा मघेसौ ओ मनसाय रुद्रन्नमो ओभिर्देवमसुरन् अयं मे हस्तो भगवान् अयं मे भगवत्तरः मित्रवे स्वाहा ओं नमो भगवते रुद्राय विष्णवे मित्रमे पाहि प्राणानां ग्रन्थिरुद्रामामि शान्ता नमो रुद्राय विष्णवे मित्रमे पाहि ओं शान्तिशान् अग्नावत्तन्दवां गिरः दुम्नेर्वाजे विराजं मे प्रतिपत्से ஆரம்பிச்சுடலாமா? ஜோதிர்ச்சமே சிவச்சமே யார் விளக்கேத்த பிராணச்சமே வரா? வானச்சமே விளக்கேத்துறதுக்கு யார்? விளக்கேத்த யார் வரா? மடிசாரோட இருந்தாவோ தெரியல. ஓம் दीपज्योतिः परं ब्रह्म दीपज्योतिर्जनार्दनः दीपो हर நீங்க மந்திரம் நீங்க சொல்லிக்கோ दीपो हरतु मे पापं दीपज्योतिर्नमोऽस्तु ते सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणि नमोऽस्तु ते शरणागत दीनार्थ परित्राणपरायणे सर्वस्यार्तिहरे देवी नारायणि नमोऽस्तु ते सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्तिसमन्विते भयेभ्यः त्राहि नो देवी दुर्गे देवी नमोऽस्तु ते रोगानशेषानपहंसि तुष्टा रुष्टा तु कामान् सकलानभीष्टान् त्वामाश्रितानां न विपन्नराणां
त्वामाश्रिता ह्याश्रयतां प्रयान्ते दुर्गे स्मृता हरसि भीतिमशेषजन्तोः स्वस्थैः स्मृता मतिमतीव शुभां ददासि दारिद्र्य दुःख भयहारिणिकात्मदन्या सर्वोपकारकरणाय सदार्द्रचित्ता सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्तिसमन्विते भयेभ्यः त्राहि नो देवी दुर्गे देवी नमोऽस्तुते एतत्ते वदनं सौम्यं लोचनत्रयभूषितं पातु नः सर्वभीतिभ्यः कात्यायनि नमोऽस्तुते ज्वाला कराळमत्युग्रमशेषासुरसूदनं त्रिशूलं पातु नो भीतेः भद्रकाली नमोऽस्तुते सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते श्रीधर सर प्लीज वांगो ஆரம்பிக்கலாமா சங்கல்பத்துக்கு लक्ष्मीं क्षीरसमुद्रराजतनयां श्रीरङ्गदामेश्वरीं दासीभूत समस्तदेववनितां लोकैकदीपाङ्कुरां श्रीमन्मन्दकटाक्ष लब्ध विभव ब्रह्मेन्द्र गंगाधरां त्वां त्रैलोक्यकुटुम्बिनीं सरसिजां वन्दे मुकुन्दप्रियां सरसिजनिलये सरोजगस्ते धवलतरां शुक गन्धमाल्यशोभे भगवती हरिवल्लभे मनोज्ञे त्रिभुवन भूतिकरी प्रसीद मह्यम् ताडदतमेवगं तदत्तमे चतुर्वेगं तत्तमे त्रात्रिगं तत्तमे धात्रिगं तत्तमे तत्त्रिगं तत्तारिगं तत्तमे तदत्तारिगं तत्तमे धादत्तारिगं तत्तमे वादत्तप्रदवत्ता तादवेष्ट्यश्चान्दायनच्चान्दत्तभवनत्तभवनच्चादिपदच्चा इडादेव मनोर्यज्ञरे बृहस्पतिरत्नामदानि उक्तवाद मधुनिश्चे मधुनिख्यामि मधुपदेश्यामि मधुपदे देवेभ्यो वासमर्षे मनुष्येभ्यस्तम्मा देवा अवन्तुषो मधुरोणवदन्तु ॐ शान्ति 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 यततो नमो नमः प्यायरिवो वर्तमानः यदा स्तोतृभ्यो महि गोत्ररुदाचिबोयट्टपादो ददेश्याम ब्रह्म प्रावादिष्मदन्नो महासीत् ओम शांति 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 வைதிகா வந்து உட்காரலாம் வாங்கோ ஃபர்ஸ்ட் அந்த ரெண்டு விளக்குல புஷ்பம் போடணும் ஸ்ரீதர் சார் பொன்னம்பலம் சார் அன்போடு வரவேற்கிறோம் வாங்கோ சார் அந்த விளக்குல ரெண்டு புஷ்பம் போட்டுருங்கோ ரெண்டு புஷ்பம் கொடுமா இப்படி வாங்க சார் ரைட் யா அம்மா புஷ்பம் கொடுமா இல்லை நோடு புஷ்பம் கொடு ரெண்டு விளக்குல புஷ்பம் போட்டுருங்கோ சர்வமங்கள மாங்கல்யே சிவே சர்வார்த்த சாதிகே சரண்யே திரியம்பகே கௌரி நாராயணி நமோஸ்துதே இந்த விளக்குல புஷ்பம் போட்டுருங்கோ நீங்களும் ரைட் எஸ் தேங்க்யூ சார் தேங்க்யூ சங்கல்பத்துக்கு தம்பதிகள் வந்து உட்காரலாம் சம்ஸ்கிருதத்துல ஒரு வாக்கியம் உண்டு so this Vishnu Sahasranama Yajna is performed this Vishnu Sahasranama Yajna
is being performed not for any individual. Our main motto is Loka Samasta Sukhino Bhavantu. Loka Kshema, right? If we pray that Loka Samasta Sukhino Bhavantu and Loka Kshema, among in this prayer, we automatically get involved ourselves. So in this public function, there is no, it's not done for any individual. It's not done for any individual's prosperity or anything. So only thing we humbly request you is Yatra Shantihi Tatra Phalam. Okay? Where peace is maintained, where silence is maintained, automatically all the fruits are being fetched by the peace itself. So we request you to be calm, peaceful, and enjoy the positive vibrations of the mantras. Right? I tell you, many learned people are there. One sound is distracted by another sound, because when the sound waves are passing, right? Suppose a musical waves are passing, the sound becomes a waves, sound vibration, and the in the space, the sound vibration travels, right? And it does the good things. When the sound vibration is disturbed by another sound vibration, which is more that is being disturbed. That's why in public functions, we request you to maintain silence, but also we understand that instructions are to be given, right? Time to time, that instructions, we can go near to the person and give the instruction that can be given in the beautiful way. So we'll start it. You all will repeat the mantra. You all will repeat the mantra. Who said Sanskritam is difficult? It is not at all difficult. It's very, very, very easy. So it is a person's skill to make it complicated or to make it what? Easier. So Sanskritam is beautiful language. So whatever we say, you have to repeat it, right? Another sound vibration comes. Right. Ready, Amma? Om Dhruvante Raja Varuno Dhruvan Devo Brihaspatihi Dhruvanta Indraschagnischa Rashtram Dharayatam Parvata Jiva Vichachalihi Indra Jivega Dhruvastishta Iga Rashtramudaraya Abhitishta Britan Yataha Adare Santoshatravaha Sumuhurtosto Supratishthitamasto Hridyasma Havyairnamasopasadya Mitram de Anuradhan Avishavardhayandaha Shatam Jivema Agamartham du Devanam Gamanartham Durakshasam Gantaravam Karom Yado Devadahvanalanjanam Apasarpandu Te Bhutaha Ye Bhuta Bhuvisamstitaha Ye Bhuta Vigna Kartaraha Te Nashantu Shivajnaya Prithvi Tvaya Drita Lokaha Devitvam Vishnuna Drita Tvam Chadaraya Mam Devi Pavitram Kurushasanam अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यस्मरेत् पुण्डरीकाक्षं सबाह्याभ्यन्तरशुचिः भूर्भुवस्सुवो भूर्भुवस्सुवो भूर्भुवस्सुवः ॐ अपौपस्पृश्य पवित्रं धृत्वा नमसोपसद्य मित्रं देवं मित्रते जन्नो अस्तु अनुराधान शतं जीवेम आचरण பண்ணிக்கிடுமா प्रसन्न वदनं ध्यायेत् सर्व विघ्नोपशान्तये ओम भूः प्राणानायम्य சொல்லுங்க நீங்க எல்லாம் மனசுலயே சொல்லிக்கலாம் ஓகே மம
उपात्त समस्त दुरित क्षय द्वारा श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थम तदेव लग्नम सुदिनम तदेव ताराफलम चंद्रफलम तदेव विद्याबलम दैवबलम तदेव गौरीपतेते अंघ्रि युगम स्मरामि अद्य करिष्यमाणस्य कर्मणः निर्विघ्नेन परि समाप्त्यर्थम आदौ विघ्नेश्वर महागणपति पूजां करिष्ये विश्वक्सेन आराधनं च करिष्ये यस्यद्विरद वक्त्राद्याः पारिषद्याः परश्शतं विघ्नं निघ्नन्ति सततं विश्वक्सेनं तमाश्रये ओम गणानां त्वा गणपतिगुं मवामहे कविं कवीनामुपमश्रवत्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणस्पद आनः Yeah, now in the starting we are going to do Vigneshwara Puja. Since before starting any puja, we have to start right with prayers with Vigneshwara. That puja we are doing. Time to time I'll explain why, what, when, how. Om Ekadantaya Vidmage Vakratundaya Dhimahi Tanno Danti Prachodayate Vigneshwaraya Namaha Asminne Haridra Bimbe Sumukham Vigneshwaram Dhyayami Vishvaksenam Dhyayami Vigneshwaraya Namaha Vishvaksenaya Namaha Avagayami Asanam Samarpayami Padyam Samarpayami अर्घ्यं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि मधुपर्कं समर्पयामि स्नानं समर्पयामि स्नान अनन्तरं आचमनीयं समर्पयामि वस्त्र उपवीत अलंकार आभरणार्थे अक्षतान् समर्पयामि दिव्य श्री परिमल गंधान् धारयामि हरिद्रा कुंकुमं समर्पयामि पुष्पमालिकां समर्पयामि पुष्पैः संपूजयामि ओम सुमुखाय नमः एकदंताय नमः ओम कपिलाय नमः ओम गजकर्णकाय नमः ओम लंबोदराय नमः ओम विकटाय नमः ओम विघ्नराजाय नमः ओम विनायकाय नमः ओम धूमकेतवे नमः ओम फालचंद्राय नमः ओम हेरंबाय नमः ओम वक्रतुंडाय नमः ओम शूर्पकर्णाय नमः ओम गजाननाय नमः ओम स्कंद पूर्वजाय नमः सिद्धि विनायक स्वामिने नमः नानाविध परिमल पत्र पुष्पाणि समर्पयामि धूपः ओम दशांगः गुग्गुलो धूपः सुगंधः सुमनोहरः आग्रेयः सर्वदेवानां धूपोयं प्रतिगृह्यतां दूरसि दूर्व दूर्वन्तं योऽस्मान् दूर्वसितं दूर्वयं वयं दूर्वामः विघ्न अक्षर पोट्टुको वर्बोधु कामिकला विघ्नेश्वराय नमः धूपम् आग्रापयामि आचमनीयं समर्पयामि साज्यं त्रिवर्ति संयुक्तं वह्निना योजितं मया गृहाण मंगलम दीपम त्रैलोक्य तिमिरापग विघ्नेश्वराय नमः प्रत्यक्ष दीपम संदर्शयामि आचमनीयं समर्पयामि नैवेद्यम பூர்புவ அந்த நைவேத்தியம் பண்ணிக்கோங்க புரோக்ஷம் பண்ணிக்கோங்க ரெண்டு பழம் வச்சிருப்பா பாருங்க குட் பண்ணிக்கோங்க ஆச்சு वयं धूर्वामधूरसि दूर्वदूर्वन्तं दूर्वतं धू योऽस्मान् दूर्वसितं दूर्वयं वयं दूर्वामः धूपम् आग्रापयामि प्रत्यक्ष दीपं संदर्शयामि नैवेद्यं भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् देवसवितः प्रसुव सत्यं त्वर्तेन परिषिञ्चामि अमृतमस्तु प्राणाय स्वाहा अपानाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा समानाय स्वाहा ब्रह्मणे स्वाहा विघ्नेश्वराय नमः कदलीफल
தாம்பூலம் நைவேத்தியம் சமர்ப்பயாமி ஆச்சமனீயம் சமர்ப்பயாமி. கற்பூரம் காப்பிக்கோங்க, பெருசா வச்சுட்டா இங்கிருந்து எல்லாரும் அப்படியே ஒத்திக்கலாம். கற்பூரம் தட்டு மடக்கிலேயே வச்சுக்கோங்க. ஓம் நிஷுசீத கணபதே கணேஷு த்வாமாஹுர் விப்ரதமம் கவி. கண்டாநாதம் குறியாத். நிஷுசீத கணபதே கணேஷு த்வாமாஹுர் விப்ரதமம் கவீனாம் நர்தே த்வத்க்ரியதே கிஞ்சனாரே மகாமர்க்கம் மாகவன் சித்ரமர்ஜ. விக்னேஸ்வராய நமः. சமஸ்த அபராத க்ஷமார்த்தம் சர்வமங்கள பிராப்தியர்த்தம் கற்பூர நீராஜனம் சந்தர்ஷயாமி. அப்படியே இங்கிருந்து எல்லாரும் ஒத்திக்கோங்க. Let us all pray Vigneshwara for health, wealth, prosperity, sukha, santosha for the entire universe. Yeah, for entire world. பிள்ளையார பிரார்த்தனை பண்ணிக்கோங்க. 2 ஸ்லோகாஸ் I am telling. வக்ரதுண்ட மகாகாய சூரியகோட்டி சமப்பிரப நிர்விக்னம் குரு மே தேவ சர்வகார்யேஷு சர்வதா சர்வதேவ அக்ரஜ சிரேஷ்ட விக்னேஷ கணநாயக துவாம் உபாஸ்யச்ச யத்கர்ம தத்கர்ம சபலம் குரு கௌரி புத்திர கணாத்யக்ஷ சர்வ விக்ன நிவாரக அஸ்மின் கர்மணி சர்வஸ்மின் நிர்விக்னம் குரு சித்தயே. Adi Shankaracharya has written beautiful shloka on Ganesha. Let us listen for 1 minute. Om मुदाकरात्त मोदकं सदा विमुक्ति साधकं कलाधरावतं सकं विलासी लोक रक्ष. For this, right? So please have the akshata. Pray for the entire world, right? Loka samasta sukhino bhavantu. We are not sannyasis. We are also human beings. We have small, big expectations, wishes to get fulfilled. There is nothing wrong. So please pray for that also, right? Because there is a
There is nothing called prarthana, right? Guruji, I don't know Sanskritam. No need. Even your mauna words, God will understand. Yeah, yeah. Same akshata will come to your place for collection, right? Yes. Hope you all got akshata. See, all have given your names and nakshatra. It will take full day to read and all these things. We will all make samarpanam to the kalasham, right? When I say at that time, you can think of your nama, nakshatra, family members, nama, nakshatra, and any visesha expectations, wishes ought to be fulfilled, right? That also you can, right? Think it over. Correct, sir? Sridharan, sir? Okay, va? Right. Right. Okay. Got it. Right. I think you have got all the akshata and all these things. Right. Om. Nothing to worry. I will take care. You can repeat it. Right. If you are not able to repeat it, I will take the blame, not you. Shukla. Ambara. Dharam. Vishnum. Shashi. Varnam. Chatur. Bhujam. Prasanna. Vadanam. Dhyayet. Sarva. Vigna. Upa. Shantaye. Keep like this. Right thigh. Yeah, on the right thigh, left hand in that akshata, close it with right hand. Got it? Yeah. Mama. Upatta. Samasta. Durita. Kshaya. Dwara. Shri. Parameshwara. Prityartham. Ishta Devata. Prityartham. Kula. Devata. Prityartham. Grama. Devata. Prityartham. Shubhabhyam. Shubhe. Shobhane. Muhurte. Adya. Brahmanaha. Dvitiya. Parardhe. Shveta. Varaha. Kalpe. Vaivasvata. Manvantare. Ashta. Vimshati. Tame. Kaliyuge. Prathame. Pade. Jambu. Dvipe. Bharat. Varshe. Bharat. Khande. Meroho. Dakshine. Parshve. Shaka. Abde. Asmin. Vartamane. Vyava.
हारिके प्रभवादि षष्टि संवत्सराणां मध्ये शुभकृत नाम संवत्सरे दक्षिण अयने हेमंत ऋतौ धनुर्मासे मार्गशीर्ष मासे कृष्ण पक्षे चतुर्दश्याम् उपरि अमावास्यायां शुभ तिथौ गुरुवासर युक्तायां ज्येष्ठा नक्षत्र युक्तायां शुभ नक्षत्र शुभ योग शुभ करण एवं सकल गुण विशेषण विशिष्टायाम अस्याम शुभ तिथौ विशेषतः ஆல் ஆஃப் யூ அவங்க வீட்டில் இருக்கிறவங்க ಅವರವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾರೆಯೋ ದೊಡ್ಡವರು ಚಿಕ್ಕವರು ಓದಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಬೇಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯು ಟೆಲ್ ಯುವರ್ ಆಲ್ ನಕ್ಷತ್ರಂ ಗೋತ್ರಂ ಹೌಸ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಗೋತ್ರಂ ನಕ್ಷತ್ರಂ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಎನಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ರೈಟ್ ಆರ್ಡಿನರಿ wishes are to be going to be fulfilled. That also you can pray for this. Yeah, நான் எது படிக்கணும் சார்? இதானே சார்? நீங்க படிச்சுடுங்க, எனக்கு இங்கிலீஷ் தெரியாது. வாங்க. या ज्येष्ठा नक्षत्रे जातस्य रञ्जित् नामधेयस्य मूला नक्षत्रे जातायाः उमा नाम्न्याः आरुद्रा नक्षत्रे जातस्य मृगशिरा नक्षत्रे ज्योति नाम्न्याः मखा नक्षत्रे जाताय रंगराज नामधेयस्य मखा नक्षत्रे जाताय सत्यभाम नक्षत्रे विवेक नामधेयस्य पुनर्पुष नक्षत्रे जातस्य विवेक नामक रेवती नक्षत्रे जातस्य विनोद नामधेयस्य मखा नक्षत्रे जातस्य पोन्नम्बलं नामधेयस्य स्वाति नक्षत्रे जातायाः शिवगाम सुंदरी नाम्न्याः श्रवण नक्षत्रे जातस्य कृष्णकांत नामधेयस्य वृश्चिका नक्षत्रे वृश्चिका राशौ जातायाः श्रीवल्ली नाम्न्याः स्वाति नक्षत्रे जातायाः रेखा नाम्न्याः पूर्वाषाढ़ नक्षत्रे जातस्य संकरलिंगम नामधेयस्य पूर्व फल्गुनी नक्षत्रे जातायाः राजेश्वरी नाम्न्याः भरद्वाज गोत्रोद्भवस्य मूला नक्षत्रे जातस्य सत्यनारायण नामधेयस्य सदभिषक नक्षत्रे जातस्य सत्यनारायण शोभना सत्यनारायण नामधेयस्य नाम्न्याः उत्तराषाढ़ नक्षत्रे जाताः सुनेत्रा नाम्न्याः उत्तरफल्गुनी नक्षत्रे जातायाः राजलक्ष्मी नाम्न्याः संकृति गोत्रोद्भवस्य उत्तरफल्गुनी नक्षत्रे जातस्य शिव रामन नामधेयस्य आश्लेषा नक्षत्रे जातायाः पवित्रा नाम्न्याः मूला नक्षत्रे जाताया रुद्रा नाम्न्याः मृगशिरा नक्षत्रे जातस्य कामेश नामधेयस्य मघा नक्षत्रे जाता चरित्रा नाम्न्याः उत्तराषाढ़ नक्षत्रे जाताय युवा नाम्न्याः कौंडिल्य गोत्रोद्भवस्य उत्तर प्रोष्ठपदा नक्षत्रे शेषाद्रिप्रिया नाम्न्याः श्रवण नक्षत्रे जाता प्रियंका सूर्या नाम्न्याः श्रविट्टा नक्षत्रे जातस्य प्रभाकर नामधेयस्य स्वाति नक्षत्रे जातायाः प्रभा नाम्न्याः आश्लेषा नक्षत्रे जातस्य सिद्धार्थ नामधेयस्य सनम नामधेयस्य परमेश्वरन नामधेयस्य कौशिक गोत्रोद्भवस्य रेवती नक्षत्रे मीनराशौ जातस्य परमेश्वरन नामधेयस्य ज्येष्ठा नक्षत्रे वृश्चिक जातायाः विजयलक्ष्मी नाम्न्याः पुनर्पुजो नक्षत्रे जातस्य मघालक्ष्मी जातायाः मघालक्ष्मी नाम्न्याः कर्कटक नागलक्ष्मी नाम्न्याः चित्रा नक्षत्रे जातस्य कण्णन् नामधेयस्य आश्लेषा नक्षत्रे जातः श्रीनिवास पूर्वाषाढ़ नक्षत्रे जाता सरोजा नाम्न्याः ज्येष्ठा नक्षत्रे जातस्य विजयराघव नामधेयस्य अपभरणी नक्षत्रे जाता राधा नाम्न्याः श्रवण नक्षत्रे जातायाः सुचरिता नाम्न्याः श्रवण नक्षत्रे जातस्य गोकुल कृष्ण नामधेयस्य ज्येष्ठा नक्षत्रे राजगोपाल नामधेयस्य श्रवण नक्षत्रे जातायाः शोभना नाम्न्याः आश्लेषा नक्षत्रे जाताय उमा नाम्न्याः कौशिक गोत्रोद्भवस्य रेवती नक्षत्रे कौंडिल्य गोत्रोद्भवस्य रेवती नक्षत्रे जातस्य सुरेश नामधेयस्य स्वाति नक्षत्रे जाताय विद्या नाम्न्याः अनुराधा नक्षत्रे जाताय निगारिका नाम्न्याः पुष्य नक्षत्रे जातस्य हयग्रीव शर्पणः उत्तराषाढ़ नक्षत्रे जातस्य योगेश नामधेय शतभिषक नक्षत्रे जाताया दिव्या नाम्न्याः कृत्तिका नक्षत्रे जातायाः आहारिका नाम्न्याः शिवगोत्रोद्भवस्य
पूर्वाषाढा नक्षत्रे जातस्य कृष्णन् सुब्रह्मण्यं नायदस्य रेवती नक्षत्रे जातायाः चित्ता सुब्रह्मण्यं नाम्न्याः. All of you have this one. Sridharan sir, உங்க பேரு நட்சத்திரம். நீங்க நன்னா இருந்தா விஸ்வாஸ் நன்னா இருக்கும், விஸ்வாஸ் நன்னா இருந்தா விஸ்வமே நல்லா இருக்கும். ஸோ உங்க வீடு பேரு நட்சத்திரம் எல்லாம் சொல்லிக்கோங்க. சொல்லுங்க சார். அதுவும் அது கண்டிப்பா. ஓகேவா? நவ் ரைட், கேன் வி ப்ரொசீட்? எல்லா பிரார்த்தனையும் வேண்டியாச்சா? குட், எக்ஸலன்ட். शुभ नक्षत्रे शुभराशौ जातस्य विश्वास विष्णु सहस्रनाम संस्थानम इति आख्यायाः आध्यात्मिक संस्थायाः उपरि उपरि अभिवृद्ध्यर्थं भारत संस्कृति कलाचार सर्व हितस्य कार्य करणत्व सिद्ध्यर्थं लोक क्षेमार्थं लोकाः समस्ताः सुखिनः भवन्तु इति सूक्तेः सत्य वाक्यता सिद्ध्यर्थं वेद मातुः परिपूर्ण अनुग्रह सिद्ध्यर्थम अतिवृष्टि अनावृष्टि आदि बाधानां निवृत्ति पूर्वकं सुखमय वातावरण प्रकृति अनुकूल वातावरण सिद्ध्यर्थम सर्वेषां महा जनानां परस्परम ऐकमत्य भावना सिद्ध्यर्थम मनसः संतोष सिद्ध्यर्थम मनसः सुख सिद्ध्यर्थम. There are sukha, santosha, ananda, different versions. Not all these are synonyms, right? Sukha, santosha, ananda, abhivriddhi सिद्ध्यर्थम विशेषतः अस्य श्री भगवतः महापुरुषस्य विष्णोः आज्ञया प्रवर्त मानस्य तिरुमला दिव्य क्षेत्रे अस्मिन् वर्तमाने श्री भगवत आज्ञया भगवत प्रीत्यर्थम भगवत कैंकर्य रूपेण श्री दिव्य दंपति श्रीमन लक्ष्मी नारायण कटाक्षे सर्वेषां सह कुटुंबानां क्षेम स्थैर्य धैर्य वीर्य विजय आयुः आरोग्य ऐश्वर्याणां अभिवृद्ध्यर्थं मनो वांछा फल सिद्ध्यर्थम शरीरे सर्वदा. Excellent sankalpa. Who made this? I don't know. Vishwas has made this. Nice. ஷரீரே நாங்க என்ன சொல்வோம்? ஷரீரே ஆரோக்கிய சித்தியர்த்தம். இவங்க ஷரீரே சர்வதா ஆரோக்கிய சித்தியர்த்தம். Always. That's an excellent word. Always know. When we come, when I come to the new place, I will always learn new things. Right? ஷரீரே सर्वदा आरोग्य सिद्ध्यर्थम अपमृत्यु दोष निवारणार्थम विद्यार्थिनां सर्व विद्या पारंगता सिद्ध्यर्थम अविवाहितानां रिपीट अविवाहितानां मातुः मातृ पितृ स्वस्य अनुकूल वर वधु प्राप्ति सिद्ध्यर्थम उद्योग रहितानां निरंतर उद्योग प्राप्ति सिद्ध्यर्थम राजद्वारे सर्व अनुकूल सिद्ध्यर्थम गृहस्थानां सत् संतति
प्राप्ति द्वारा सर्व संस्कृति अभिवृद्ध्यर्थम ज्ञान कर्म भक्ति वैराग्य सिद्ध्यर्थम तत्तत् अधिकार अनुगुण प्रवृत्ति सिद्ध्यर्थम मातृभक्ति सिद्ध्यर्थम पितृभक्ति सिद्ध्यर्थम आचार्य भक्ति सिद्ध्यर्थम गुरु भक्ति सिद्ध्यर्थम दैवीक भक्ति सिद्ध्यर्थम नवग्रह पीड़ा परिहार द्वारा ग्रह अनुग्रह सिद्ध्यर्थम सर्वेषां महाजनानां सकल कामना सिद्ध्यर्थम समस्त. Let the people in any belong to any religion. We will see only Jivatma there, not the religion. Let the people belong to any caste. We will see only the Jivatma, the soul which is existing here. That is a Sankalpam. Samasta Mata Anuyayinam. Samasta Jati Anuyayinam. Anyonya Sneha Bhavana Abhivriddhi सिद्ध्यर्थम विश्व संतोष विश्व शांति सिद्ध्यर्थम मानव मानव कल्याण एवं लोक कल्याण सिद्ध्यर्थम भक्त महाजनानां बंधुवर्गाणां मन शांति सिद्ध्यर्थम आत्म ज्ञान सिद्ध्यर्थम सकल भूत भौतिक आध्यात्मिक रोग निवृत्त्यर्थम सर्वमंगल अभिवृद्धि सिद्ध्यर्थम अलमेलु मंगा समत समेत प्रसन्न श्री वेंकटेश्वर स्वामी चरण सन्निधौ द्विसप्तति घंटा विष्णु सहस्रनाम पारायण होमम करिष्ये. Now gradually go to their place, sir. Someone go to their place, collect all the akshata. Oh, what? Namaskaram, namaskar. Yes, yes. Huh? ज्येष्ठा नक्षत्रे जातस्य श्री कृष्ण शर्मणः काश्यप दासनोल गोत्रोद्भवस्य ज्येष्ठा नक्षत्रे जातस्य श्री कृष्ण शर्मणः अस्य सह कुटुंबानां सबंधुवर्गाणां मनोवांछित सकल अभीष्ट फल सिद्ध्यर्थम आयुरारोग्य ऐश्वर्याभिवृद्ध्यर्थम भगवत कैंकर्य मन प्रसाद अनुकूल मनोवृत्ति सिद्ध्यर्थम. கொடுங்க அக்ஷத்தை கொடுத்துங்க. பாருங்க இன்னைக்கு ஜேஷ்டா நட்சத்திரம். யா விளக்கேத்துருங்க. டைரக்டா யாரும் போட வேண்டாம் அக்ஷதை. Please give it to the person. We will collect it and put it.
Dharmaji can start. Dharmaji. ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणि नमोस्तुते विளக்கேத்திಲ್ಲ. Om Namo Narayana. I would like to welcome our chief guest for the day today, Sri Krishna sir, Ramayan Go, a patron of VISVAS, former TDD member, Tirumala. We welcome you, sir. We also welcome Ponnambalam sir, Krishna Mandapam Swami. We request the dignitaries to light the lamp. Preeti ma'am, we request you to come and light the lamp. Mangala Bhaskar ma'am. Request Sridharan sir to honor the dignitaries. रुद्रो विश्वाभुवना विवेदस्मै रुद्राय नमोऽस्तु इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधानदसेवदं समूढमस्य वागुं सुरे इन्द्रं विश्वा अभिवृधान् समुद्रव्यसङ्गिरः रथीतमगुं रथीनां राजानागुं सत्पदिं पदिम् इदगुं सर्वं विश्वाभूतान्यापः प्राणावा आपः पशव आपोर्नमापो नमापः सम्राडापो विराडापः स्वराडापश्छन्दागस्यापो ज्योतिगिष्यापो जुतिगिष्यापः सत्यमापः सर्वा देवता आपो भूर्भुवः सुवरापो
अपः प्रणयति श्रद्धा वा आपः श्रद्धामेवारभ्य श्रद्धामेवारभ्य प्रणीय प्रजरति अपः अपः प्रणयति प्रणयति यज्ञो यज्ञो वा वा आपः आपः यज्ञमेवारभ्य यज्ञमेवारभ्य प्रणीय प्रणीय प्रजरति प्रजरति अपः अपः प्रणयति प्रणयति वज्रो वज्रो वा वा आपः आपः वज्रमेव वज्रमेव भ्रातृव्येभ्य भ्रातृव्येभ्य प्रहृत्य प्रहृत्य प्रणीय प्रणीय प्रजरति प्रजरति अपः अपः प्रणयति प्रणयति आपो आपो वै वै रक्षोऽग्नेः रक्षोऽग्नेः रक्षसामवहत्यै रक्षसामवहत्यै अपः अपः प्रणयति प्रणयति आपो वै देवानां देवानां प्रियन्धाम प्रियन्धाम देवानामेव प्रियन्धाम प्रणीय प्रजरति अपः प्रणयति आपो वै सर्पा देवताः देवता देवता एवारभ्य प्रणीय प्रजरति अपः अपः प्रणयति प्रणयति आपो वै शान्ताः शान्ताभिरेवास्य शुचकं शमयति देवो देवो वस्सविदोत्पुनातो वस्सविदोत्पुनातो अच्छिद्रेण अच्छिद्रेण पवित्रेण पवित्रेण वसो वसो सूर्यस्य सूर्यस्य रश्मिभिः रश्मिभिः सहिरत्नानि सहिरत्नानि दाभुषे दाभुषे सुवासितपिताभगः तं तं भागं भागं चित्रमीमहे चित्रमीमहे कूर्चाग्रे राक्षसान् घोरान् सिद्धिकर्मविकारिणः वामर्पयामि वामर्पयामि कुम्भेऽस्मिन् कुम्भेऽस्मिन् साफल्यं साफल्यं गुरुकर्मणि गुरुकर्मणि वृक्षराजसमुद्भूता शाखायाः पल्लवद्विजः युष्मान् कुम्भेष्वर्पयामि सर्वदोषापनुत्तजे नारिकेलसमुद्भूतत्नेत्रहरसं वद शिखजातुरितं सर्वं पापं वीराञ्जमेनुदा सर्वे समुद्रास्तरितस्तीर्थारिजलदानदाः आयान्तु देवपूजार्थं दुरिदक्षजकारकाः इमं मे वरुणश्रुधीहवमद्याजमृडय वामवस्सुराजके तत्त्वायामि ब्रह्मणा वन्दमानस्तदाशास्ते यजमानो हविर्भिः अहेणमानो वरुणेह बोध्युरुषकुं समानाय प्रमोषीः भूर्भुवस्वरो वरुणं ध्यायामि अस्मिन् तीर्थकुम्भे सकलतीर्थाधिपतिं श्रीवरुणम् आवाहयामि वरुणस्य इदमासनं वरुणाय नमः पाद्यं समर्पयामि वरुणाय नमः अर्घ्यं समर्पयामि मुखे आचमनीयं समर्पयामि मधुपर्कं समर्पयामि 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 भूर्भुवसुवः शन्नो देवीर्भयामो भवन्तु पीडके श्रेयोर्भिस्रवन्तु नः शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि स्नानानन्तरं समर्पयामि वस्त्र उपवीत आभरणार्थे अक्षतान् समर्पयामि दिव्यपरिमलगन्धान् धारयामि गन्धस्योपरि हरिद्रा कुङ्कुमचूर्णं समर्पयामि शोभन अक्षतान् समर्पयामि पुष्पमालां समर्पयामि पुष्पैः सम्पूजयामि ॐ वरुणाय नमः ॐ प्रचेतसे नमः ॐ स्वरूपिणे नमः ॐ अपाम्बरये नमः ॐ वासहस्ताय नमः ॐ मकरवाहनाय नमः ॐ तीर्थराजाय नमः ॐ जनाधिपतये नमः ॐ जन्याय नमः ॐ जृम्भकाय नमः ॐ आरुनिर्तिमध्यस्थाय नमः ॐ जृम्भकाय नमः ॐ वासहस्ताय नमः ॐ वरुणमूर्तये नमः पूजां समर्पयामि धूपमाघ्रापयामि स्थापितदीपं सन्दर्शयामि धूपदीपानन्तरम् आचमनीयं समर्पयामि भूर्भुवस्सुवः नैवेद्यं कुर्यात् देवसवितः प्रसुवा सत्यं सत्यं वर्तेन परिषिञ्चामि अमृतमस्तु अमृतोपस्तरणमसि ॐ प्राणाय स्वाहा ॐ अपानाय स्वाहा ॐ व्यानाय स्वाहा ॐ उदानाय स्वाहा समानाय स्वाहा ॐ ब्रह्मणे स्वाहा वरुणमूर्तये नमः नैवेद्यार्थे वृतस्थापित सेव्याफलं यथाभागम् अमृतं निवेदयामि आचमनीयं समर्पयामि अमृताभिधानमसि पूगीफलसमायुक्तं नागवल्लीदलैर्युतं कर्पूरचूर्णसंयुक्तं ताम्बूलं प्रतिगृह्यताम् निवेदनानन्तरं मुखवासार्थे क्रमुकं ताम्बूलं च समर्पयामि समस्तोपचारान् समर्पयामि तत्त्वायामि ब्रह्माणा वन्दामानस्तदाजास्ते यजामानो हविर्भिः अहेणमानो वरुणेह बोधिरोषं समानाय प्रमोषीः वरुणाय नमः वेदोक्तमन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि वरुणाय नमः इदमर्घ्यं प्रसन्नार्घ्यं समर्पयामि समस्तोपचारान् समर्पयामि अनया पूजया वरुणः प्रीयताम् ॐ तत्सत् ॐ शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिहृध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं लक्ष्मीं क्षीरसमुद्रराजतनयां श्रीरङ्गधामेश्वरीं दासीभूतसमस्तदेववनितां लोकैकदीपाङ्कुरां श्रीमन्मन्दकटाक्षलब्धविभव ब्रह्मेन्द्रगङ्गाधरां त्वां त्रैलोक्यकुटुम्बिनीं सरसिजां वन्दे मुकुन्दप्रियां भूर्भुवस्वरों लक्ष्मीनारायणं ध्यायामि ध्यानं समर्पयामि इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधा निदाथे पदं समोहोळमस्य पां सुरे सक्तोमि वतिता उना पुनन्तो यत्र धीरामना सा वाचमक्रात
अत्र असखाय सख्यानि जानते लक्ष्मीर्निहिताधि वाची नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मीः प्रचोदयात् भूर्भुवस्वरोम् अस्मिन् तीर्थकुम्भे लक्ष्मीनारायणम् आवाहयामि भूः लक्ष्मीनारायणम् आवाहयामि भुवः लक्ष्मीनारायणम् आवाहयामि सुवः लक्ष्मीनारायणम् आवाहयामि भूर्भुवः सुवः अस्मिन् तीर्थकुम्भे लक्ष्मीनारायणम् आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि ओम अलमेलु मंगा समेत श्री वेंकटेश्वर स्वामिने नमः ध्यायामि आवाहयामि आवाहिताभ्यः सर्वाभ्यो देवताभ्यो नमः अस्य श्री प्राण प्रतिष्ठा महामंत्रस्य ब्रह्म विष्णु सी after doing first avahanam means the entire energy of Vishnu through the mantras is being grabbed and put it in the kalasha. That kalasha tirtha, if you take, no, so entire energy of the universe has come to us. After doing avahanam, just by avahanam, Swami comes and he stays when we do prana pratishtha. Prana pratishtha means the entire parts and micro parts of energy of Mahavishnu are to be brought here, right? Asya Shri Prana Pratishtha Mahamantrasya ब्रह्म विष्णु महेश्वराः ऋषयः ऋग् यजुः साम अथर्वाणि छन्दांसि सकल जगत् सृष्टि स्थिति संहारकारिणी प्राणशक्तिः परा देवता आं बीजं ह्रीं शक्तिः क्रों कीलकम् आं अंगुष्टाभ्यां नमः ह्रीं तर्जनीभ्यां नमः क्रों मध्यमाभ्यां नमः आं अनामिकाभ्यां नमः ह्रीं कनिष्ठिकाभ्यां नमः क्रों करतल करपृष्ठाभ्यां नमः आं हृदयाय नमः ह्रीं शिरसे स्वाहा क्रों शिखायै वषटे आं कवचाय हुं ह्रीं नेत्राभ्यां वौषटे क्रों अस्त्राय पटे भूर्भुवस्वरोमिति दिग्बन्धः ध्यानं रक्ताम्बोधिस्तपोदोल्लसदरुण सरोजाधिरूढ कराब्जैः पाशं कोदण्डमिक्षोद्भवमलिगुणमप्यङ्कुशं पञ्चबाणान् बिभ्राणासृक्कपालं त्रिनयनलसिता आपीनवक्षोरुगाढ्या देवी बालार्कवर्णा भवतु सुखकरी प्राणशक्तिः परानः ॐ आं ह्रीं क्रों क्रों ह्रीं आं अं यं रं लं वं शं शं सं हः हंसः सोहं हंसः अस्मिन् कलशे लक्ष्मीनारायणस्य महाविष्णोः जीवास्तिष्ठन्तु अस्मिन् कलशे लक्ष्मीनारायणस्य अलमेलु मंगा समेत श्री वेंकटेश्वर स्वामिनः प्राणास्तिष्ठन्तु अस्मिन् कलशे अलमेलु मंगा समेत वेंकटेश्वर स्वामिनः वांग मनस्त्वक् चक्षु श्रोत्र जिह्वाघ्राण वाक् पाणि पाद पायु उपस्थानि इहागत्य स्वस्ति सुखं चिरं तिष्ठन्तु स्वाहा असूनीते पुनरस्मानु चक्षुः पुनः प्राणमिघनो देहि भोगं ज्योक्पश्येम सूर्यमुच्चरन्तमनुमते मृळयान स्वस्ति आवाहितो भव स्थापितो भव सन्निहितो भव सन्निरुद्धो भव अवकुण्ठितो भव सुप्रीतो भव सुप्रसन्नो भव वरदो भव प्रसीद प्रसीद स्वामिन् सर्वजगन्नाथ यावत् पूजा अवसानकं तावत् त्वं प्रीतिभावेन कुम्भेऽस्मिन् सन्निधो भव लक्ष्मी नारायणस्य अलमेलु मंगा समेत श्री वेंकटेश्वर स्वामिनः प्राणान् इह प्रतिष्ठापयामि आसनं समर्पयामि अत्यतिष्ठद्दशाङ्गुलं ध्यायामि आवाहयामि ॐ पुरुष एवेदगुं सर्वं यद्भूतं यच्च भव्यं उदामृतत्वस्येषाणः
यदन्नेनातिरोहति आसनं समर्पयामि ॐ एतावानस्य महिमा अतो जयाकृष्टपूरुषः पादोऽस्य विश्वाभूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि पादारविन्दयोः पाद्यं पाद्यं समर्पयामि ॐ त्रिपादोर्ध्व उदयित्पुरुषः पादोऽस्येह भवात् पुनः ततो विश्वं जग्रामत् शासनानशने अभि हस्तयोः अर्घ्यमर्घ्यं समर्पयामि ॐ तस्मात् विराटजायत विराजो अधिपूरुषः स जातो अत्यरिच्यत पश्चाद्भूमिमथो पुनः मुखे आचमनीयम् आचमनीयं समर्पयामि ॐ यत्पुरुषेण हविषा देवाजिज्ञमतन्वत वसन्तो अस्यासीदाज्यम् ग्रीष्म इद्मः शरद्धविः मधुवर्गं समर्पयामि पुनराचमनीयं समर्पयामि ॐ सप्तास्यासन् परिधयः त्रिसप्तसमिधः कृताः देवाजिज्ञन्तन्वानाः अबध्नन् पुरुषम् साध्यार्यत्सये यज्ञा सर्वतः सामान्यजगिरे May I चन्द्रगुंजगिरे request तस्मात् Raghavendra Sharma Guruji to honor our chief guest, Sri Krishna sir. Next, may I welcome Ponnambalam sir. May I now request Sridharan sir to honor Shiva Shankari ma'am. वनमाली गदीशांगी शंकी चक्री चनंदकी श्रीमान नारायणो विष्णुर्वासुदेवोभिरक्षतु. May I request Sri Krishna sir to share a few words? Om Namo Venkatesaya. It has always been. It's working, I suppose. It's always my pleasure to attend to any function or any occasion of VISVAS.
as I take it as more a responsibility rather than attending a function. Because Vishwas, I have seen it from I wouldn't say scratch. I would say from a very early days, and it has grown with all the effort, with all the, I would say, it's most committed efforts by all the members to this stage, especially Mr. Sridharan, who has given his entire time and effort for this institution and for this moment, which I'm sure with the blessings of Lord Balaji will only go from strength to strength and it will never look back, I suppose. For me, as I always tell, Vishnu Sahasranamam is always, it's a way of life. It is the way of life, and it is the greatest gift to the mankind that mankind would have ever got in this Kali Yuga. I'm sure this moment by Vishwas will go from strength to strength and will reach every corner of the country and the world. And Om Namo Venkateshaya. Everybody has the blessings of Lord Balaji. And we have seen one wave of COVID, and the news reports are saying that another is waiting. So all of you stay safe, stay secure, and stay safe. Om Namo Venkateshaya. Om Namo Venkatesaya. Before I call our other chief guest, Khaled Shelby, 1 minute. I just want to tell everybody, in fact, this is the 6th day of our Saptaham, 7th day of Marghazhi Mahotsav, and how we started about 18 years back with the help of Meenakshi sir, about 18 years back. Today, it has gone throughout the world. More than 52,000 members of VISVAS. Members with no fees and nothing, it is a free only. They studied Vishnu Sahasranam from us, and in more than 37 countries, we are there. The concept of this, I think some of them are new, like Madam. Two things only. We do a lot of things, but mainly important one is taking this to the younger generation throughout the world. That's called Catch Them Young, Parvate Paisai, Madalin Mudil Madhavani Namangal. This we started about 12 years back in a very small way with 1,000 children and 10 schools in Infosys Hall of Ramakrishna Mission, T Nagar. Today, that is 2022 August, we have touched nearly about 5 lakhs of children and 350 schools. And our target for the coming year, August 2, 2023, is I think we are planning for about 500 schools, and maybe we want to touch about 10 lakhs children all over the world. And that is possible because of again the three reasons: Stephen Narayan's blessing, power of Vishnu Sadhanam, and Vishwas Global Team. We are all part of Vishwas Global Team, owned by Stephen Narayan. It is possible, one. Second is, those who do not know Vishnu Sahasranamam, teach them in 21 days time free, online and offline both. Now that Corona is totally eradicated, both we are doing throughout the world, online and offline, in 21 days time, in convenient time, in all 6-7 Indian languages, and we teach them and make a satsang. Like that, every month we are adding about 40 satsang to the society. The satsangs are not owned by Viswas, it is by society. So even all the acharyans, including TTT, we have earned a name in Tirumala, sir. They say Vishnu Sahasranam is Viswas. I don't think we need any other credentials from anywhere. Though there are so many groups, but Viswas, they have recognized to that. We are closely associated with CDD, ISKCON, Chinmaya, and all the spiritual organizations. So this is one of the largest where we create more, sorry, we create more satsang. I want to clarify. These are the two main objects. With this, now I request Sushmita to honor Madam first. You can tell about you, ma. You are busy with this. May I request Raghavendra Sharma ji to honor Kalai Srinivas ma'am? Vanamali Gadi Shangi Shanki Chakri Chanandiki Shriman Narayano Vishnur Vasudevo Bhirakshato Vanamali Gadi Shangi Shanki Chakri Chanandiki Shriman Narayano Vishnur Vasudevo Bhirakshato. May I now request Kalai ma'am to share a few words.
அனைவருக்கும் வணக்கம். எவ்வளோ பெரியவங்க நிறைஞ்ச சபையில எனக்கு ஒரு வாய்ப்பு கொடுத்ததுக்கு காசி விஸ்வநாதருக்கும் அயோத்தி ராமருக்கும் நன்றி. என்னோட பெயர் கலைசெல்வி ஸ்ரீனிவாஸ். நீங்கள்லாம் பண்ணுறது ஒரு ஆலமரம்னா கீழே ஒரு அருகம்புல்லா சின்ன விஷயம் பண்ணியிருக்கோம். ஒரு 2 நாள் முன்னாடி தான் காசி விஸ்வநாதரையும் அயோத்தி ராமரையும் ராம ஜென்ம பூமி மண்ணையும் தரிசிச்சுட்டு வர பெரும் பாக்கியம் எங்களுக்கெல்லாம் கிடைச்சிருக்கு. ஒரு அடித்தளம் அப்படின்றது எதுக்குமே ரொம்ப பலமாக இருக்கணும். பேசிக்கலி ஐ எம் எ சிவில் இன்ஜினியர். ஸோ ஒரு ஃபவுண்டேஷன் அப்படின்றது ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்கணும், அற்புதமாக பண்ணியிருக்கணும். அப்படி இருந்தால் தான் அதுக்கு மேலே இருக்க கட்டுமானம் ஆண்டாண்டுக்கும் நிலச்சி இருக்கும். அந்த ஒரு அடித்தளமான அழகான அபூர்வமான அனாயாசமான வேலையை இந்த சத்சங்கம் விஸ்வாஸ் பண்ணிட்டு இருக்கு. ஏன்னா பார்த்தீங்கன்னாக்கா அந்த குழந்தைகள் அவள் தான் நம்மளுடைய ஃபவுண்டேஷன், எதிர்கால இந்தியாவின் தூண்கள். இவாளுக்கு வந்து நம்ம அந்த அடிப்படையை சரியாக போட்டு கொடுத்துட்டோம் அப்படின்னாக்கா மற்றதெல்லாம் பெருமாள் பார்த்துப்பார். அந்த ஒரு அற்புதமான விஷயத்த பல வருடங்களா ஆயிரக்கணக்கான பேருக்கு உலகமெல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கீங்கிறத கேள்விப்படும் போது பேசுறதுக்கு வார்த்தையே இல்லை. ஏன்னா காசியில் போனால் பிடிச்ச ஒரு விஷயத்த விட்டுட்டு வரணும்னு சொல்லுவா. பேசுறது எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும், அதனால குரலை வந்து கொஞ்சம் விட்டுட்டு வந்திருக்கேன், அதனால ஷமிக்கணும், ப்ளீஸ் பேர் வித் அஸ். அண்ட் இது நீங்கள் பண்ணிட்டு இருக்க ஒரு விஷயத்த நம்ம பாரத பிரதமர் இந்திய அரசாங்கம் கையில் எடுத்திருக்கார். ஏன்னா இப்போ நடந்து வர சூழல் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இந்து சனாதன தர்மத்துக்கு மிகப்பெரிய சவால் நிறைந்த ஒரு காலகட்டம். கோயிலாகட்டும், நம்ம ஆன்மீக ஒரு பொக்கிஷம் சொல்லுவாங்க, நதிக்கரையில தான் நாகரிகம் வளர்ந்துருக்கு அப்படின்ட்டு. உலகத்துக்கெல்லாம் ஒரு ஆன்மீக மையமா நம்மளுடைய பாரதம் திகழ்ந்துட்டு இருக்கு. ஒரே பாரதம் உன்னத பாரதம் அப்படின்றது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆன்மீக பயணம் அப்படின்றது, காசி அப்படின்றது த ஹார்ட், த சோல் ஆஃப் த வேர்ல்ட். பல யுகங்களா பல்லாயிரக்கணக்கான திரேதா யுகம் எல்லா யுகத்திலையும் பார்த்தீங்கன்னாக்கா நம்ம பாரதம் தான் உலகத்துக்கே விஸ்வகுருவா இருந்திருக்கு. அந்த ஒரு ஒரு விஷயத்த பல காலமா என்ன பண்றாங்க, இதனால கவரப்பட்டு இந்த செல்வங்களை கொள்ளையடிச்சிருக்காங்க, நம்ம ஆன்மீக வளங்களை கொள்ளையடிச்சிருக்காங்க, இடிச்சு தரமட்டமாக்கியிருக்காங்க. ஆனா நம்மளுடைய தர்மத்தை அவங்களால அழிக்கவே முடியல. ஏன்னா அது வேர் என்னைக்குமே அழியாது. ஒவ்வொரு காலத்திலும் அது ஆதி சங்கராச்சாரியாரா இருக்கட்டும், ராமானுஜரா இருக்கட்டும், மத்வரா இருக்கட்டும், ஒவ்வொரு கலிபுருஷனும் ஒவ்வொரு யுகத்திலையும் தோன்றி ஒவ்வொரு வருஷத்துலையும் அதை நிலைநிறுத்துறதுக்காக பிறப்பெடுத்திருக்காங்க. அப்பேற்பட்ட பெரியவர்கள் வாழ்கிற பூமி. ஒரு சின்ன ஒரு விஷயம் வந்து பண்றதுக்கான பெரும் பாக்கியம் கிடைச்சிருக்கு. காசி தமிழ் சங்கமம் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் வந்து கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. அதை எடுத்து நடத்துகிற பெரும் பாக்கியம் எனக்கு கிடைச்சிருக்கு. ஆயிரக்கணக்கான பேரை ஒரு சாதாரண ஒரு சாமானிய ஒரு மனிதனுக்கும் காசிக்கு போகணும் அப்படின்றது ஒரு பெருங்கனவு. நம்ம எல்லாம் ஒரு தர்மம் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தால பிணைக்கப்பட்டிருக்கோம் த்ரூ அவுட் த வேர்ல்ட். ஸோ ஹிந்து மக்கள் தான் போகணும், நம்ம தர்மத்தை ஃபாலோ பண்ற அனைவரும் வந்து ஹிந்துக்கள் தான். நம்மளுடைய வேர் அதுதான், அது நம்மளுடைய ஆன்மா அங்கதான் இருக்கு. அத்தனை பேரையும் வழிநடத்தி காசி விஸ்வநாதரையும் அயோத்தியா ராமரையும் தரிசிக்க வச்ச பெரும் பேர் எங்களுக்கு கிடைச்சிருக்கு. அதை முடிச்சுட்டு வர இது ஒரு பெரிய பாக்கியமா கருதுறேன். அது மட்டும் இல்லாம அங்க பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு டெபுட்டி கலெக்டர் சந்திக்க ஒரு வாய்ப்பு கிடைச்சது. சுதன் சொல்லிட்டு அவர் பேர், நம்ம தென்காசி தமிழர். அவ்வளோ அழகா ஒருங்கிணைச்சு பண்ணிட்டு இருக்காரு. காசிக்கு போற அத்தனை பேருக்கும், அயோத்தியா போற அத்தனை பேருக்கும், அந்த சரையு நதியாகட்டும், கங்கை நதியாகட்டும், அதில் ஜஸ்ட் டச் பண்ணாலே நமக்கு ஒரு உணர்வு வரும். திருப்பி வரணும்னு மனசே வராது. ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு திரும்பி வந்தோம். அதை பார்த்துட்டு எங்களோட ஒரு மாணவர் பயணிச்சார். ஹி வாஸ் செகண்ட் இயர் ட்ரிபிள் ஸ்டூடெண்ட். அவர்கிட்ட நான் கேட்டேன், இந்த சின்ன வயசுல காசிக்கு வரணும்னு நினைச்சிருக்கீங்களே, வாட் இஸ் தட் பிஹைண்ட் தட்? ஒரு சுற்றுப்பயணமா வந்தீங்களா என்னத்துக்குன்னு? ஏன்னா நமக்கு பாடம் படிப்புன்றது எங்கிருந்து வேணா வரலாம். அந்த சின்ன ஒரு மாணவர், அந்த ஒரு இளைஞர் சொல்றார், இல்ல சுத்தி நடக்கிறதெல்லாம் பார்த்துட்டு இருக்கேன், படிப்பை தாண்டி வாழ்க்கையில நம்ம வந்து ஒரு பாரதத்துல பிறந்ததே ஒரு புண்ணியம். இந்த ஒரு வாய்ப்பு கிடைச்சிருக்கு, வந்து பார்த்தாக்கா எனக்கு வந்து இவ்வளோ ஒரு பெரிய விஷயத்த வந்து இந்திய அரசாங்கம் எடுத்து நடத்திட்டு இருக்காங்க. அந்த அயோத்தியா ராமர் கோயிலை பொறுத்த வரைக்கும் அந்த கட்டுமானம் ஐஐடி மெட்ராஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. எந்த படையெடுப்பு வந்தாலும் எத்தனை பேர் இடிச்சாலும் இடிக்கவே முடியாது. அந்த மாதிரி ஒரு டெக்னாலஜில ஒரு அடித்தளம் போட்டிருக்காங்க. அந்த மாதிரி ஒரு அடித்தளத்தை விஸ்வாஸ் இங்க போட்டுட்டு இருக்கு. எத்தனை பேர் வந்தாலும் எத்தனை பேர் படையெடுத்தாலும் இந்த அடித்தளமானது இடிக்கவே முடியாது. நம்ம மனதில் ஆன்மால ஊற போட்டு பண்ணியிருக்காங்க. அந்த மாதிரி ஒரு விஷயத்த அயோத்தியா ராமர் கோயில்ல பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அந்த இளைஞர் சொன்னார், இவர் எப்படி இதெல்லாம் ஒருங்கிணைச்சு பண்ணிட்டு இருக்காரோ அதே மாதிரி அடுத்த தடவை காசிக்கு வரும்போது
நானும் இதே மாதிரி ஒருங்கிணைச்சு நம்ம சனாதன தர்மத்தை நிலைநிறுத்துறதுக்கு என்னால் ஆன ஒரு விஷயத்த பண்ணுவேன் அப்படின்னு சொன்னார். அவரோட பேரு இசக்கிமுத்து. இந்த மாதிரி பல இளைஞர்கள் மனதுல நம்மளோட பாரத பிரதமர் இந்த விதையை ஊனி இருக்கார். இந்த மாதிரி யுக யுகமா ஊனி இருக்கு. விஸ்வாஸ் மாதிரி பல அமைப்புகள் இருந்தாலும் விஸ்வாஸ் உலகமெல்லாம் இந்த விதையை ஊனி இருக்கு. ஆலமரமாய் விழுது விட்டு வேரோடி நம்மளுடைய அடுத்த தலைமுறைக்கும் வரும் தலைமுறைக்கும் இது மிகப்பெரிய அடித்தளத்தை போட்டிருக்குங்கிறது சந்தேகமே இல்லை. ஒரு மிகப்பெரிய வாய்ப்பை இந்த பெரியோர் நிறைந்த சபையில எனக்கு கொடுத்ததுக்கு சிரம் தாழ்ந்த நன்றி. வணக்கம். நன்றி. Thank you so much, ma'am. And blessings coming from someone who's just come back from Ayodhya. Thank you so much, ma'am. Yes, VISVAS aims at spreading Vishnu Sahasranamam across the globe. And with your blessings, ma'am, we have also planned to go for a Ayodhya trip in the month of January. So thank you so much, ma'am, for coming and blessing us. ஆரம்பிச்சுலாமா? ஓம் Om Namo Venkatesaya. Tomorrow we have that Srinivasa Kalyanam. As usual, morning program is same, 8 to 11:30. Srinivasa Kalyanam to conclude that 7 days program. Of course, after that also we have Nama Sankirtanam in the evening. Tomorrow being the last day, let us all participate in a big way and witness Srinivasa Kalyanam. And today, as usual, after that, I think we'll finish it by 8:50. From 9 to 11, one conference on power of Vishnu Sahasranamam and science in Sahasranamam. And 11 to 1, we have another conference, global conference on the merits and demerits of online satsang. Similarly, after Nama Sankirtanam evening, we have one more live program, global program, 6:30 to 8:30. That is the power of Vishnu Sahasranamam. Our Dr. Ramadan sir, Dr. Raghavendra Sharma will reply to any question. As I said, there are a lot of slogas for different purposes, but we can ask any question throughout the world on the subject. We have requested many, Dr. Ramadan and Dr. Sharma ji. All of our faculty will be there. It is a global program. Let us watch lively and get benefited. With this, we continue that. And one more request, program will continue this Omam. Some 10 people can take and join like that. Okay? Om Namo Venkatesaya. ಓಂ ಯಾಸಲ ಮುಗಿಸಿರಾಯ್ತಾ? ಯಾಸಲ ಆಯ್ತು. ಅಸ್ಯ ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣೋರ್ ದಿವ್ಯ ಸಹಸ್ರನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಹಾಮಂತ್ರಸ್ಯ ವೇದವ್ಯಾಸೋ ಭಗವಾನ್ ಋಷಿಗೆ ಅನುಷ್ಠುಪ್ ಛಂದಃ ಮಹಾವಿಷ್ಣು ಪರಮಾತ್ಮ ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣೋ ದೇವತಾ ಭಾನುರಿತಿ ಬೀಜಂ ದೇವಕೀ ನಂದನ ಸೃಷ್ಟೇ ದಿರಕ್ತಿಗೆ ಉದ್ಭವಃ ಕ್ಷೋಭಣೋ ದೇವಯಿತಿ ಪರಮೋ ಮಂತ್ರಃ ಶಂಖ ಬೃನ್ನಂದಗೆ ಚಕ್ರೇತಿ ಕೀಲಕಂ ಶಾರ್ಗದನ್ವಾಗದಾಧರ ಇತ್ಯತ್ರಂ ರಥಾಂಗಪಾಣಿ ರಕ್ಷೋಪ್ಯ ಇತಿ ನೇತ್ರಂ ತ್ರಿಸಾಮಾ ಸಾಮಗ ಸಾಮೇತಿ ಕವಚಂ ಆನಂದಂ ಪರಬ್ರಹ್ಮೇತಿ ಯೋನಿಗೆ ಶ್ರೀ ವಿಶ್ವರೂಪ ಇತಿ ಧ್ಯಾನಂ ಪ್ರೀತ್ಯರ್ಥೆ ಲೋಕಕ್ಷೇಮಾರ್ಥೆ ಸಹಸ್ರನಾಮ ಹವನೆ ವಿನಿಯೋಗಃ ಪ್ರದೇಶೇ ಶುಚಿಮಣಿ ವಿಲಸತ್ ಸೈಕತೆ ಮೌಕ್ತಿಕಾನಾಂ ಮಾಲಾ ಕ್ಲುಪ್ತಾಸನಸ್ತ ಸ್ಫಟಿಕಮಣಿ ನಿಭೈರ್ಮೌಕ್ತಿಕೈರ್ಮಂಡಿತಾಂಗಃ शुभ्रैरभ्रैरदभ्रैरुपरिविरचितैर्मुग्धपेयोजवरशैः आनन्देन पुनीयादरिनलिनगदा शङ्खपाणिर्मुकुन्दः भो वादो यस्य नाभिर्विगितसुरनिलश्चन्द्रसूर्यौ च नेत्रे कर्णावाजा चिरौद्योर्मुखमपि दहनो यस्य वास्तेयमब्धिः अन्तस्थं यस्य विश्वं सुरनरखगो भोगि गन्धर्वदै चित्रं रम्यतेतं त्रिभुवनभुजं विष्णुमेजन्नमामि ओम नमो भगवते वासुदेवाय शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिहृद्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं मेघश्यामं पीतकौशेकवासं श्रीवत्साङ्गं कौस्तुभोद्भासिताङ्गं पुण्यो वेदं पुण्डरीकायदाक्षं विष्णुं वन्दे सर्वलोकैकनाथं नमः समस्तभूतानामादिभूताय भो भरते अनेकरूपरूपाय विष्णवे प्रभविष्णवे सशङ्खचक्रं सकिरीटकुण्डलं सपीतवज्रं सरसीरुहेक्षणं सहारवक्षस्थलशोभिकौस्तुभं नमामि विष्णुं शिरसा
छायायां पारिजातस्य हेमसिंहासनोपरि आसीनमम्बुदश्याममायदाक्षमलङ्कृतं चन्द्राननं चतुर्बाहुं श्रीवत्साङ्कितवक्षसं रुक्मिणी सत्यभामाभ्यां सहितं कृष्णमाश्रये लं पृथिव्यात्मने गन्धं कल्पयामि हम् आकाशात्मने पुष्पं कल्पयामि यं वायुवात्मने धूपं कल्पयामि रम् अग्न्यात्मने दीपं कल्पयामि वम् अमृतात्मने नैवेद्यं कल्पयामि पं परमात्मने पंचोपचार पूजां परिकल्पयामि अनेन पंचोपचार पूजनेन लक्ष्मीनारायणः प्रीयताम् ओम तत्सत् ओम विश्वस्मै नमः ओम विश्वं विष्णुर्वषट्कारो भूतभव्यभवत्प्रभुः समित बोलूंगा भवन स्वाहा ओम भूतात्मा परमात्मा च मुक्तानां परमागतिः अव्ययपुरुषस्साक्षी क्षेत्रज्ञोऽक्षरेव च स्वाहा ओम योगो योगविदान्नेता प्रधानपुरुषेश्वरः नारसिंहः श्रीमान् केशवः पुरुषोत्तमः स्वाहा ओम सर्वशर्वशिवस्थानुर्भूतादिर्निधिरव्ययः सम्भवो स्वयंभो शंभुरादित्यं पुष्कराक्षो महास्वरः अनादिनिधनो धाता विधाता धातुरुत्तमः स्वाहा अप्रमेयो ऋषिकेशं पद्मनाभो मनप्रभुः विश्वकर्मा मनुस्वष्टा सविष्ठः सविनो ध्रुवः स्वाहा अग्राह्य शाश्वत कृष्णो लोहिताक्ष प्रदर्शनः प्रभो दशकबद्धाम पवित्रं मङ्गलं परं स्वाहा ईशान प्राणद प्राणो ज्येष्ठ श्रेष्ठ प्रजापतिः हिरण्यगर्भो भूगर्भो माधवो मधुसूदन स्वाहा ईश्वरो विक्रमी धन्वी मेधावी विक्रमः क्रमः अनुत्तमो दुराधर्ष कृतज्ञ कृतिरात्मः सुरेश शरणं जन्म विश्वरेता प्रजाभवः अह संवत्सरो व्याल प्रत्यय सर्वदर्शन स्वाहा अतः सर्वेश्वर सिद्ध सिद्धि सर्वादिरच्युतः वृषागमनमेघात्मा सर्वयोगविनश्रितः स्वाहा वसुर्वसुमना सत्य समात्मा संविदः समः अमोघ पुण्डरीकाक्ष वृषकर्मा वृषाकृते स्वाहा रुद्रो बहुशिरा बभ्रविश्वयोनिषु नमः अमृतशाश्वतस्थानर्वरारोहो महातपा स्वाहा सर्वगः सर्वविद्वानर्विश्वक्षेनो जनार्दनः वेदो वेदविदव्यङ्गो वेदाङ्गो वेदविद्गवे स्वाहा लोकाध्यक्ष सुराध्यक्ष धर्माध्यक्ष तथागतः चतुरात्मा चतुर्व्यूह चतुर्दं चतुर्भुज स्वाहा भाजष्णुर्भोजनं भोक्ताधरिष्णो जगदादिजः अनघो विजयो देता विश्वयोने पुनर्वधो स्वा उपेन्द्रो वामनव्रांशुरमोघः शुचिरोर्जितः अतीन्द्र संग्रह सर्गो धृतात्मा नियमो यमः स्वाहा वेद्यो वैद्यः सदा योगी वीरः माधवो मधुः अतीन्द्रियो महामायो महोत्साहो महाबलः स्वाहा महाबुद्धिर्महावीर्यो महाशक्तिर्महाद्युतिः अनिर्देशवः श्रीमानमे आत्मा महादृशः स्वाहा महेश्वासो महीभर्ता श्रीनिवाससदानदिः अनिरुद्धसुरानन्दो गोविन्दो गोविदाम्बते स्वाहा मरीचिर्नमनोऽहं स सुवर्णो भजगोन्नमः हिरण्यनाभः सुतपाः पद्मनाभः प्रजापते स्वाहा अमृत्यो सर्वदृक्सिंहः सन्धातः अजो दुर्मर्शनशास्ता विष्णुनात्मा सुरारिः स्वाहा गुरुर्गुरुर्नमो धाम सत्यः सत्यपराक्रमः निमिषो निमिषसर्वे वाचस्पतिरुदारथी स्वाहा अग्रणीर्ग्रामणी श्रीमान् न्यायो नेता समीरणः सहस्रमूर्धा विश्वात्मा सहस्राग्र सहस्रपात् स्वाहा आवर्तनो निवर्तात्मा संवृत संप्रमर्दनः अह संवर्तको वह्निर्निलो धरणीधर स्वाहा सुप्रसादं प्रसन्नात्मा विश्वसर्ग विश्वभोङ्गिभः सत्कर्ता सत्कृतः साधुर्जह्नुर्नारायणो नर स्वाहा असंख्येयो प्रमेयात्मा विशिष्ट शिष्टकर्च्छुजिः सिद्धार्थ सिद्ध संकल्प सिद्धिद सिद्धिदाधन स्वाहा वृषाहि वृषभो विष्णुर्वृषोदरः वर्धनो वर्धमानश्च विविक्तः श्रुतिदागर स्वाहा सुभुजो दुर्धरो वाग्मे महेन्द्रो वसुदो वधुः ऐकरो बृहत्तो वैश्वविवेट्ट प्रकाशन स्वाहा ओजस्तेजोद्युतिधर प्रकाशात्मा प्रतापनः रुद्धस्मट्टाक्षरो मन्त्रचन्द्रां जोर्भास्करज्योति स्वाहा अमृतां शोद्भवो भानशतमिन्दुर् औषधं जगतः सेतो सत्यधर्मपराक्रमः स्वाहा
भूत भव्य भवन्नाथ भवन वामनो नलः कामः कामगत्कान्तः कामः कामप्रद प्रभो स्वाहा युगादिगत्युगावर्तो नैकमायो महाजनः अवज्जतः त्रिजनन्दते स्वाहा इष्टो विजड्डजिड्डेड्डजिखण्डेन हुषो व्रजः क्रोधः क्रोधगद्गद्दा विश्ववागमहीधर स्वाहा अच्युत प्रथित प्राणतो वासवानुजः अमान्निधिरधिष्ठानमप्रमत्त प्रतिष्ठित स्वाहा स्कन्द स्कन्दधरोधर यो वरदो वायुवाहनः वासुदेवो बृहद्भानुरादिदेव पुरन्दर स्वाहा अशोकसारणस्दार शूरशौरेश्वर अनुकूलस्य तावर्तापत्ति पत्तुनिमेचन स्वाहा पद्मनाभोरविन्दाक्ष पद्मगर्भ शरीरभृते अहर्धरद्धो वृद्धात्मा महाक्षो गरुडध्वज स्वाहा अतुलशरभो भीम समयज्ञो हविर्हरिः सर्वलक्षणलक्षण्यो लक्ष्मीमान् समितिञ्जय स्वाहा विक्षरो रोहितो मार्गो हेतुर्दामोदरः सह महीधरो महाभागो वेगवान् अमिताजन स्वाहा उद्भवः क्षोभनो देव श्रीगर्भ परमेश्वर करणङ्गारणङ्गर्दा विगर्दा गहनो गुह स्वाहा व्यवसायो व्यवस्थान संस्थान स्थानदो ध्रुवः परर्थे परमस्पर्ट दुड्ड बुड्ड शुभेज्ञन स्वाहा रामो विरामो विरदो मार्गो नेयो नयोनयः वीरशक्तिमतां श्रेष्ठो धर्मो धर्ममिदोत्तम वैकुण्ठपुरज प्राण प्राणद प्रणव पृथुः हिरण्यगर्भ शत्रुघ्नो व्याप्तो वायुरथोऽग्रज स्वाहा रुदो सुदर्शन काल वरमेढे परिग्रहः उग्र संवत्सरो दक्षो विश्रामो विश्वदक्षिण स्वाहा विस्तार स्थावर स्थाणु प्रमाणं बीजमव्ययम् अर्थो नर्थो महाकोशो महाभोगो महाधन स्वाहा अनिर्विण्णस्तविष्ठो भूर्धर्मयो भो महामखः नक्षत्रनेमिर्नक्षत्रे क्षमः क्षामः समीहन स्वाहा यज्ञ इत्यो महेज्यश्चक्रतुः सत्रं तदाङ्गलिः सर्वदर्शे विमुक्तात्मा सर्वज्ञो ज्ञानमुत्तमं स्वाहा सुव्रत सुमुख सोग्न सुघोष सुखद सुहृदे मनोहरो जितक्रोधो वीरबाहुविदारण स्वाहा स्वापन स्ववशो व्यापीनैकात्मा नैककर्मकृते वत्सरो वत्सरो वत्से रत्नगर्भो धनेश्वर धर्मगुद्धर्मी सतसक्षरमक्षरम् अभिज्ञातासहस्रां जलविधाता कदलक्षर स्वाहा गभस्ने मे सत्वस्थ सिंहो भूतमहेश्वरः आदिदेवो महादेवो देवेशो देवभद्गुरु स्वाहा ज्ञानगम्यः पुरातनः शरीरभूतभृद्भोक्ता कपीन्द्रो भूरिदक्षिण स्वाहा सोमपो मृतमः सोमः पुरुषित्पुरुषोत्तमः विनयोदयः सत्यसन्धो दातारः शाश्वताम्बते स्वाहा जीवो विनेता साक्षी मुकुन्दो मृतविक्रमः अम्भो निधिरनन्दात्मा महोदधिजयोऽन्तकः स्वाहा अजो महारः स्वाभाव योजितामित्र प्रमोदनः आनन्दोनन्दनो अनन्त सत्यधर्मा त्रिविक्रम स्वाहा महर्षि कपिलाचार्य कृतज्ञो मेदिनीपतिः त्रिपदसुतजाध्यक्षो महासङ्घकृतान्तकर स्वाहा महावराहो गोविन्द सुषेण गणकाङ्गदी गुह्यो गभीरो गहनो गुप्तचक्रगदाधर स्वाहा वेधात्माङ्गोजितकृष्णो दृढसङ्घर्षणोज्जुतः वरुणो वारुणो वृक्षपुष्कराक्षो महामना स्वाहा भगवान् भगः नन्दी वनमाली हलायुधः आदित्यो ज्योतिरादित्य सहिष्णु कथितमस्वा सुधन्वाखण्ड परशुर्दारुणो द्रविणप्रदः दिवस्परद्रव्यासो वाचस्पतिर्योनिजस्वाहा सामधर्वाणं भेडजं बिडगे संजातकर्चमशान्तो निष्ठारां दिपरायणं स्वाहा शुभाङ्गशान्तिदश्रद्धा कुमुदः कुमलेडयगा गोहितो गोपतिर्गोप्ता वृषभाक्षो वृषप्रिय स्वाहा संक्षेप्ता क्षेमकृच्छिवः श्रीवत्सभक्षा श्रीवाद श्रीपति श्रीमतांबर स्वाहा श्रीधर श्रीकरद्रेय श्रीमान् लोकत्रयाश्रय स्वाहा स्वक्षस्मङ्गश्चिदानन्दोऽनन्तिर्ज्योतिर्गणेश्वरः विजितात्मा विदेयात्मा सत्कीर्ति छिन्न संशय स्वाहा उदीर्ण सर्वदशक्षुरनीरराजवदस्थिरः भूषयो भूषणो भूतर्विशोक शोकनाशन स्वाहा अर्चिष्मानर्चितः कुम्भो विशुद्धात्मा विशोधनः अनिरुद्धो प्रतिरथ प्रद्युम्नो विक्रम स्वाहा कालनेमिनि हावीर शौरेश्वर जनेश्वरः त्रिलोकात्मा त्रिलोकेश केशव केदिकाघरे स्वाहा कामदेवः कामबालः कामीकान्तः कृतागमः अनिर्देशव पुरुभेट्टुर्वीरोऽनन्तो धनञ्जय स्वाहा
ब्रह्मण्यो ब्रह्मगद् ब्रह्म 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 विवर्धनः ब्रह्मवित् ब्राह्मणो ब्रह्मे ब्रह्मज्ञो ब्राह्मण प्रिय स्वाहा महाकर्मा महातेजा महोरगः महाक्रतुर्मघा यज्वा महायज्ञो मघाघवे स्वाहा सव्यस्तव प्रियस्तोत्रं सुदिस्तोदारण प्रियः पूर्ण पूरयिता पुण्य पुण्यकीर्तिर्नामय स्वाहा मनोजवस्तीर्थकरो वसुरेता वसुप्रदः वसुप्रदो वासुदेवो वसुर्वसुमनाघवे स्वाहा सद्गते सद्गते सद्दा सद्बोधे सद्परायणः शूरसेनो यदुश्रेष्ठ सन्निवास सुयामुन स्वाहा भूता वासो वासुदेव सर्वासु निलयो नलः दर्पः दर्पदो दृप्तो दुर्धरो पराजित स्वाहा विश्वमूर्तिर्महामूर्तिर्देवतमूर्तिर्मूर्तिमान् अनेकमूर्तिरव्यक्त शतमूर्ति शतानन स्वाहा एको नैक सवहज्ञ यत्तत्पदमनुत्तमम् लोकबन्धुर्लोकनाथो माधवो भक्तवत्सल स्वाहा सुवर्णवर्णो हेमांगो वरांगश्चन्द्रांगदी वीरगाविडमशोन्यो कृताजीरचलच्चल स्वाहा अमानीमानदो मान्यो लोकस्वामी त्रिलोकधृगे सुमेधा मेधजो धन्यः सत्यमेधाधराधर स्वाहा तेजो वृषोद्युतिधर सर्वशस्त्रप्रदाम्बरः प्रग्रहो निग्रहो व्यग्रो नैकशृङ्गो गदाग्रज स्वाहा चतुर्मूर्तिश्चतुर्बाहुश्चतुर्व्यूहश्चतुर्गतिः चतुरात्मा चतुर्भावश्चतुर्वेद विदेकपात् स्वाहा समावर्तो निवृत्तात्मा दुर्जयो दुरतिक्रमः दुर्लभो दुर्गमो दुर्गो दुरावासो दुरारिगा स्वाहा शुभांगो लोकधारंग सुदन्त दन्तवर्धनः इन्द्रकर्मा मघाकर्मा कृतकर्मा कृतागम स्वाहा उद्भव सुन्दर सुन्दो रत्ननाभ सुलोचनः अर्को वाजन शृङ्गे जयन्त सर्वविजये स्वाहा वर्णबिन्दु रक्षोभ्य सर्ववागेश्वरेश्वरः मघाकृतो मघाकर्तो मघाभूतो महानिधि स्वाहा मुदः कुन्दरः कुन्दव्रजन्य पावनो निलः अमृतांशो अमृतभव सर्वज्ञ सर्वतोमुख स्वाहा सुलभ सुव्रत सिद्ध शत्रुदिच्छत्रुदामनः न्यग्रोधो दुम्बरो स्मत्तश्चानूरान्ध्र निषूदन स्वाहा सहस्राज्य सप्तदिग्वा सप्तैधा सप्तवाहनः अमूर्तिरनघो चिन्त्यो भयकृत् भयनाशन स्वाहा अनुबृहद्गुषस्थूलो गुणभृन्निर्गुणो महान् अधृतस्वधृतस्वास्य प्राग्वंशो वंशवर्धन स्वाहा भारभर्कथितो योगी योगी च सर्वकामदः आश्रमश्रमणः क्षामः सुपर्णो वायुवागन स्वाहा धनुर्धरो धनुर्वेदो दण्डोदमयितातमः अपराजितः सर्वजगो नियन्ता नियमो यम स्वाहा भगवान् सात्विक सत्य सत्यधर्म अभिप्राय प्रियार्घोर्ग प्रियकृत प्रीतिवर्धन स्वाहा विहाय जगदर्ज्योते सुरजुर्हुतभुक् विभुः रविर्विरोचन सौर्य सविता रविलोचन स्वाहा अनन्दो हुतभुक् भोक्ता सुखदो नैकदो कृजः अनिर्विण्णस्तवेट्टो लोकाधिष्ठानमच्युत स्वाहा सनातनतमः कपिल कपिलव्ययः स्वस्ति स्वस्ति कृत् स्वस्ति स्वस्ति भुक् स्वस्ति दक्षिण स्वाहा रौद्रः कुण्डली जितशासनः शब्दादिग शब्द जगत् शिशिर शर्वरीकर स्वाहा अक्रोरव्येषुलो दक्षो दक्षिणः क्षमिनाम्बरः विद्वत्तमो वीतभय पुण्य श्रवण कीर्तन स्वाहा तारणो दुष्कृतिः पुण्यो दुःस्वप्ननाशनः वीरगारक्षण संतो जीवन पर्यवस्थित स्वाहा आनन्दरूपो नन्दश्री जितमन्युर्भयापहः चतुरश्रो गभीरात्मा विदिशो व्यादिशो दिश स्वाहा नादिर्भूर्भो लक्ष्मी सुवीरो रुचिराङ्गदः जननो जन जन्मादि भीमो भीम पराक्रम स्वाहा ऊर्ध्वग सत्पदाचार प्राणद प्रणवपन स्वाहा तत्त्वं तत्त्वविदेकात्मा जन्म मृत्युजरातिग स्वाहा यज्ञो यज्ञपदर्यज्वा यज्ञांगो यज्ञवाहन स्वाहा यज्ञान्तकृत्यज्ञमन्नमन्नादयेवद स्वाहा स्वयं जातो वैखान सामगायिनः देवकी नंदन स्रष्टाक्षुदीड पापनाशन स्वाहा वर्णन्तकी चक्रेशान कथन्वा गदाधरः रथांगपाणि रक्षोभ्य सर्व प्रकरणायुध स्वाहा वनमाली गदीशार्ंगी शंकी श्रीमान् नारायणो विष्णुर्वासुदेवो भिक्षतो 2 minutes with a small information regarding this homam. Then we will start second avarati. Now, why homam? When Parayanam option is there, entire people can do Parayanam, right? Then why Vishnu Sahasranama homam? What is the necessity
requirement of Vishnu Sahasranama Homa. What the speciality which Parayanam cannot do, which Sahasranamam, a Homam can do. Right? Ultimately, there is no difference between Parayana and Homam. But there is a unique speciality in Homam. Gita says, Devan bhavayatane te deva bhavayanturaha parasparam bhavayantaha shreyah paramavapsyate. This is the concept of Homam. By Mahavishnu is omnipresent. While doing Parayanam, he can come anywhere, everywhere, and listen to the Parayanam and give the phalam. But there are Trayas Trimshat Koti Devata. 33 கோடியா சார் தேவர்கள் இருக்கிறாங்க. They are many devatas are not omnipresent. Only Mahavishnu is what? Omnipresent. Now, ஒரு பந்தியில சாப்பாடு போட்டோங்கன்னா, those who are attending the pandi, we can give food. Those who are not able to attend the pandi, those who are not able to walk, we will leave them. We will take the food, go to their place and offer. Right? Same thing, the Trayastrimshat Koti Devatas are there in the Asman or space. Right? They don't have the omnipresent power. So, right, with the order and Agnya of Sriman Narayana, all these Trayastrimshat Koti Devatas who haven't got power of coming and to the Bhuloka, and we are sending to those Devatas. Why not Parayanam? Why Havanam? Right? Let us understand how they accept like that they have to give. Right? We are doing like that, no? Right? Or a chinna kolanda irukku, I can take food like this, I can eat. For all, we have to put it in the mixie, smash it, and you have to. Jo jaisa lega, vaisa usko dena chahiye. So, Shabda Brahma is adopted by Sriman Narayana. By offering these, there is a process called convertible process. In Homam, whatever we offer, that gets converted into acceptable, adoptable, eatable, swallowable form to the Trayastrimshat Koti Devata. This Agni Bhagavan is taking this, convert into, smashes it and gives it. This is food for them. Whatever is offered in the Havana, no, this is what? Food for the Devatas. So Gita says, Devan Bhavayatanena, by offering, right, all this Havanam, right, it goes to the Devatas and becomes food for them. In return, they bless us in the form of rain. They bless us in the form of preventing the natural calamity, because iyarkaidan kadavul. So that's why we are doing Home for Lokakshemam. Olagamella nalla mala penji, river flourish arda, already everything is what? Taken care. Please. विष्णुर्वषट्कार भूतभव्य भवत्प्रभुः भूतकृद्भूतभृद्भाव भूतात्मा भूतभावन स्वाहा भूतात्मा परमात्मा च मुक्तानां परमागतिः अव्ययः पुरुषः साक्षी क्षेत्रज्ञोऽक्षर एव च स्वाहा योगो योगविदां नेता प्रधानपुरुषेश्वरः नारसिंहो श्रीमान् केशवः पुरुषोत्तमः स्वाहा सर्वशिवस्थानद्भूतादन्निधिरव्ययः सम्भवो भावना भर्ता प्रभव प्रभुरेश्वर स्वाहा स्वयंभो शंभुरादित्यः पुष्कराक्षो महास्वनः अनादिनिधनो धाता विधाता धातुरुत्तम स्वाहा अप्रमेयो श्रीकेशपद्मनाभामर प्रभुः विश्वकर्मामरस्तुष्टास्तविष्टस्तविध्रुव स्वाहा अग्राह्य शाश्वत कृष्णो लोहिताक्षपदर्दनः प्रभो तत्र गुब्धाम पवित्रं मङ्गलं परं स्वाहा
ज्येष्ठश्रेष्ठ प्रजापतिः हिरण्यगर्भ भूगर्भ माधव मधुसूदन स्वाहा ईश्वर विक्रमे धन्वे मेधावी विक्रमक्रमः अनुत्तमाधुरादृश कृतज्ञः कृतरात्मवान् स्वाहा सुरेशरणं शर्म विश्वरेताः प्रजापवः अहः संवत्सरो व्याळः प्रत्यय सर्वदर्शन स्वाहा अजः सर्वेश्वर सिद्ध सिद्धि सर्वादुरोत्सदः वृषाकप्रमेयात्मा सर्वयोगमनिसृत स्वाहा वसुर्वसुमना सत्य समात्मा संविद समः अमोघ पुण्डरीकाक्षा वृषकर्मा वृषाकृति स्वाहा रुद्र बहुशरा बभ्र विश्वजौनिश्वजुश्रवाः अमृतशाश्वतस्थान वरारोह महातपा स्वाहा विश्वक्सेनो जनार्दनः वेदो वेदविदव्यङ्गो वेदाङ्गो वेदवित्कवि स्वाहा लोकाध्यक्ष सुराध्यक्षो धर्माध्यक्षः कृताकृतः चतुरात्मा चतुर्व्योः चतुर्दंष्टश्चतुर्भुज स्वाहा भ्राजष्टर्भोजनं भोक्तादः अनघो विजयो जयता विश्वजोनिः पुनर्वसु स्वाहा उपेन्द्रो वामनपुरां श्रमोगश्चतुरोर्दितः अतीन्द्रसङ्ग्रह सर्गो धृतात्मा नियमो यम स्वाहा वेद्यो वैद्य सदा योगी वीरः माधवामधः अतीन्द्रिय महामाज महोत्साह महाबल स्वाहा महाविद्धिर्महावीर्य महाडित्तिर्महाद्युतिः अनिर्देशो श्रीमामेय आत्मा महादधृक् स्वाहा महेश्वासो महे भर्ता श्रीनिवासदाङ्गतिः गोविन्दो गोविदाम्बति स्वाहा मरीशत्तमना हंसस्वर्णावजगोत्तमः हिरण्यावसदवा पद्मनाभ प्रजापति स्वाहा अमृतं अंतिमांसरः अजो धर्मर्शन शास्ता विसृतात्मा सुरारिः स्वाहा गुरुर्गुरुतमो धाम सत्य सत्यपराक्रमः निमिष निमिष सृग्वे वाचस्पतिरुदारधे स्वा अग्रणेर्ग्रामणे श्रीमान् नाजो नेता सुमीरणः सहस्रमूर्धा विश्वा आवर्तनानि वृत्तात्मा संवृत संपरमर्दनः नः संवर्त गोवह्निरनिलोधरणेधर स्वाहा सुप्रसाद प्रसन्नात्मा विश्वदृक् विश्वभुवः सत्कर्ता साधुर्जन्हन्नाराजनो नर स्वाहा असंख्येयो प्रमेयात्मा विजष्टष्टकृत्यतिः सिद्धार्थ सिद्धिसङ्कल्प सिद्धिदानः स्वाहा पुरुषाहि वृषभावनः अर्धनावर्धमानश्चविक्तश्चतुसागर स्वाहा उपजादुर्धरावाग्मे मेघराभाभ्रप्रकाशन स्वाहा ओजस्तेजादुर्प्रकाशाः वृद्धस्फटाक्षरां चन्द्रां सुरभास्करद्युति स्वाहा अमृतां शोत्पवांशशवनस्रेभ्यः औषधन्तकजस्येतु सत्यधर्मपराक्रम स्वाहा पवनः पावनानुडः कामः कामकर्तान्तः कामः कामप्रदप्रभु स्वाहा युगादिगद्युगावर्तोनेकमाजो महासनः अदृश्याव्यक्तरूपश्च सहस्रजनन्दत् स्वाहा इष्टाव्यक्तशिष्टेत्यस्यकण्डीनः जोडः क्रोधः क्रोधगत्कृत्ताविष्टुवाहर्महीधर स्वाहा प्राणप्राणदो वासवानः अपामिधरदिष्टानः प्रतिष्ठित स्वाहा स्कन्दस्कन्दधरोजयवाहनः वासुदेवा बृहद्वानराजुदेव पुरन्दर स्वाहा अनुकूलशतावत्पत्नी पद्मनिवेक्षण स्वाहा पद्मनाभरविन्दाचापत्तरपश्रीहृदय स्वाहा सवेक्यो वीरे सर्वलक्षणलक्ष्मीवान् समितिञ्जय स्वाहा वृक्षरारोहितो मार्गो हे दुर्दामोदर स्वाहा महेधर महाभागो वेकवानदासन स्वाहा उद्भवः क्षोभणदेव श्रीगर्भपरमेश्वरः स्वाहा व्यवसायोद्भवस्थानसंस्थानदोद्भवः परर्धिप्रणस्पट्टत्वप्तष्टभेक्षण स्वाहा राम विराम विरतो मार्गणीयोनियोनिः वीरशक्तिमदां श्रेष्ठो धर्मो धर्मविदुत्तम स्वाहा वैकुण्ठः पुरुषप्राणप्राणप्रदगोरण्यगर्भशत्रुघ्नो व्याप्तो वायुर्धोक्षज स्वाहा ऋतुसदर्शनः कालः प्रमेयः उग्रसंवत्सरो दक्षिण स्वाहा विस्तारस्थावरस्थान प्रमाणं वेदमव्ययम् अनिर्वण्णस्तविष्टाभर्धनमयोपामहामखः क्षामसमयहन स्वाहा निज्ञेज्यमहे स्वाहा सुप्रदस्मद सूक्ष्म सुगोढ सुगद सुहृद
आदिदेवो महादेवो देवेशो देवगुरु स्वाहा उत्तरो गोपदुर्गोप्ताशुभाक्षो शरीरबोधभक्ता कवीन्द्रो दक्षिणा स्वाहा प्रदत्तमः पुण्याजे सत्यहिन्दो दासाधस्सात्पदाम्बदि स्वाहा जीवावनीता साक्षी मुकुन्दामति विक्रमः अम्बानिधृणन्तात्मा महादुर्गजान्तक स्वाहा अजामहारः स्वाभावजायुधामित्रप्रमोदनः आनन्दोऽनन्दोऽनन्दः सत्यधर्मात्रविक्रम स्वाहा महर्षि कपिलाचार्यः कृतज्ञो मेदनेपतिः हृदयसरसाध्यक्षा महाकृदान्तकृत स्वाहा गोविन्दस्तु मुख्यागभीरा गहना गुप्तश्चक्रगदाधर स्वाहा मेधा स्वाङ्गो कृष्णोदृढशङ्करहुणोच्छदः वरुणा वारुणा वक्ष पुष्कराक्ष महामना स्वाहा भगवान् भगहानन्दे वनमालीहलायुधः आदित्योद्योतिरादित्य सहिष्णुरगदहत्तम स्वाहा धन्वाखण्डवत्सदारुणा द्रवणप्रदः दिवस्प्रक्षरपदरजाणज स्वाहा त्रिसामासामकस्सामनिर्वाणं वैरसंविषगे संज्ञातगच्छमशान्तानुष्टाशान्त्यपराजनम् शुभांगशान्तिस्तृट्टाकमुदकबलेशयः गोहितो गोपदुर्गोप्ता शुभाक्षाविषप्रिय स्वाहा अनिवर्तेन वृत्तात्मा संक्षेप्ता क्षयमकृच्छवः श्रीवत्सवक्षा श्रीवाद श्रीवद श्रीमताम्बर स्वाहा श्रीनिवास श्रेणिज श्रीविभावनः श्रीधर श्रीकर श्रीमान् लोकत्रया श्री स्वाहा स्वच्छ संगस्वदात्मा सर्वदशः भूषया भूषण भोदर विशोक शोकनाथ अर्चिष्मात्मा प्रदम नाम विक्रम स्वाहा लोकात्मा लोकेश स्वाहा कामदेव कामबालः कामेकान्तकृतागमः हरिदेशो भविष्यविरानन्दानन्दय स्वाहा ब्रह्मण्यो ब्रह्मवेत्तना ब्रह्मवेत्ता ब्रह्मज्ञ ब्राह्मणप्रिय स्वाहा अकृपावः कर्मावः तेजोमार्ग महाकृतर महायज्वा महायज्ञा महाविस्वाहा अभ्यस्तव प्रियस्तोत्रं सजस्तोदारणप्रियः पूर्ण पूर्णिदा पुण्य पुण्य विनाम स्वाहा नाजो तीर्थकरावसरे तावसप्रदः असप्रदावादेवावसप्रसमनाः विस्वाहा सत्कदि सत्कदि सत्तरायणः सूरसेनो त्रेट्ट सन्निवादस्यामन स्वाहा भूतावासावादेव सर्वासमयोनः स्वाहा महामूर्तिमूर्तिवान् अनेकमूर्तिरव्यक्तशतमूर्तिशदानन स्वाहा एकोनैकसवः किं लोकबद्धर्गणादमाधवत्तवत्तर स्वाहा स्वर्णमन्नेनागवरागच्छतनागतिः वीरः स्वाहा अमानि मानदामान्य लोकस्सामेतलोकति सुवेदामेदयोदन्य सत्यवेदादरादर स्वाहा तेजोविशोदर सकलप्रावणः निग्रहवेग संज्ञाकिदाकिद स्वाहा चतुर्मूर्ति चतुर्भाग चतुर्योग चतुर्गति भाग चतुर्वेग स्वाहा समावर्तनावृत्तात्मा दुर्जयोदृतक्रमः दुर्लभो दुर्गमो दुर्गोदरावासोदरादि स्वाहा शुभाङ्गोदरादिकसत्तवर्तनः इन्द्रकर्मा स्वाहा सुन्दर सुन्दरात्मा आपस्सुलोदनः अर्कवादः स्वाहा यहाँ जगदर जोज सरदर रवि विलोदर सूर्य सविता रविलोदर अनंत होत भोक्ता जगदो अनेकग्रजः अनर्वण्य श्रीरामदट्टाणोद्भव स्वाहा सनातनातन कबीर कबीर प्रियः सत्यस्वस्ति सत्यदक्षिण स्वाहा अरुद्र कुंडले चक्रे विक्रम्योर्दिन साधनः सद्दादिक सर्वरीकर स्वाहा विद्वत्मावेद भज पुण्य श्रवण कीर्तन स्वाहा उत्तारणो दुष्कृतिकापण्यो दस्वप्ननादनः परदेवस्त स्वाहा अनन्तरोमानन्दस्वे तजपत्न्या भव स्वाहा
सुधिरोधनाङ्गतः रणनादनजन्मादुर्भीमाभिमपराक्रमः आधारलियोधादाप्तहादप्रजाग्रह ऊर्ध्वगस्सत्पथाधार प्राणद प्रणव प्रणव पुनः प्रमाण प्राणलय प्राणदीवरा तत्त्वं तत्त्वविदेकात्मा स्वाहा पूर्वसुस्त्रस्तार सविता प्रविदामः यज्ञोज्ञपतिरिज्वा यज्ञाङ्गो यज्ञवाहन स्वाहा यज्ञभोग्यज्ञसाधनः यज्ञान्तिकृत्यज्ञोक्षमन्नात् एव च स्वाहा संजाता वेखान सामगायनः देवकीनन्दन सृष्टाक्षते पापनासन स्वाहा शङ्खभृन्नन्दके चक्रेशारङ्गदन्वागदाधरः प्रसाङ्गवान् रक्षोभ्यः सर्वप्रहरणायुध स्वाहा सर्वप्रहरणायुध सांगे जंगे जक्के जनंतगे श्रीमान मडकलला ಇದು ಅಕ್ಕ ಅಕ್ಕ ವச்சிನಿ இசரு ஜால ஜால வரணும் ஜால பிரசாதத்துல போட்டு விசில் லைட்டா அதுல எடுத்து விசில் இடிக்கு வேணும் மடக்கலாம் அவ்வளவுதான் கொஞ்சம் அக்கி நல்லா ஜால வரணும் சீதா அவன் நல்லா சக்கரை பொங்கல் அண்ணா சொன்னியா வா சூப்பராக தான் இருக்கும் இதுதான் நல்லா தான் இருக்கும் ஆமாம் நல்லா தான் இருக்கும் விசிறுங்க வேணாம் ओम इदं विष्णुर्वचक्रमे त्रेतानि तदे पदं सबूढभस्सभागं सुरे
स्वाहा विष्णुमलक्काराय स्वाहा ओम बोधभव्यभवत्प्रभवे स्वाहा ओम बोधगदे नमः स्वाहा ओम बोधपदे नमः स्वाहा ओम भावाय स्वाहा ओम बोधात्मने ओम परमात्मने ओम स्वाहा ओम पुरुषाय नमः स्वाहा ओम साक्षिणे नमः स्वाहा ओम क्षेत्रज्ञाय नमः स्वाहा ओम अक्षराय नमः स्वाहा ओम योगाय नमः स्वाहा ओम योगविदान नेत्र स्वाहा ओम श्रीमते नमः स्वाहा ओम केशवाय नमः स्वाहा ओम पुरुषोत्तमाय नमः स्वाहा ओम सर्वस्मै नमः स्वाहा नमः स्वाहा ओम भूताय ओम संभवाय नमः स्वाहा पावनाय नमः स्वाहा ओम कर्त्रे नमः स्वाहा ओम प्रभवाय नमः स्वाहा ओम प्रभवे नमः स्वाहा ओम ईश्वर नमः स्वाहा ओम हरे नमः स्वाहा नमः स्वाहा ओम पुष्कराक्षाय नमः स्वाहा ओम महास्वनाय नमः स्वाहा ओम अनाथाय नमः स्वाहा ओम नमः स्वाहा भादवे नमः स्वाहा ओम अप्रमेयाय नमः स्वाहा ओम ऋषिकेशाय नमः स्वाहा ओम पद्मनाभाय नमः स्वाहा ओम अमरप्रभवे नमः स्वाहा ओम विश्वकर्मणे नमः स्वाहा ओम मनवे नमः स्वाहा ओम लक्ष्रे स्वाहा ओम स्थविष्ठाय नमः स्वाहा ओम स्थविराय ध्रुवाय नमः स्वाहा ओम अग्राह्याय नमः स्वाहा ओम शाश्वताय नमः ओम ईशानाय नमः स्वाहा ओम प्राणाय नमः स्वाहा ओम प्राणाय नमः स्वाहा ओम देवाय नमः स्वाहा ओम श्रेष्ठाय नमः स्वाहा ओम भूगर्भाय नमः स्वाहा ओम माधवाय नमः स्वाहा ओम मधुसूदनाय नमः स्वाहा ओम ईश्वर नमः स्वाहा नमः स्वाहा नमः स्वाहा ओम हृदये नमः स्वाहा ओम आत्मने नमः स्वाहा ओम यशाय नमः स्वाहा ओम शरणाय नमः स्वाहा ओम शर्मणे नमः स्वाहा हेलो ओम व्यालाय स्वाहा ओम प्रत्ययाय स्वाहा ओम सर्वदर्शनाय स्वाहा ओम अजाय स्वाहा ओम सिद्धाय नमः स्वाहा ओम सिद्धये स्वाहा ओम असंमिताय स्वाहा ओम समाय स्वाहा ओम अमोघाय स्वाहा ओम पुंडरीकाक्षाय स्वाहा ओम वृषकर्मणे स्वाहा ओम वृषाकृतये स्वाहा ओम रुद्राय स्वाहा ओम बहुशिरसे स्वाहा ओम प्रभवे स्वाहा ओम विश्वयोनये स्वाहा ओम शुचिश्रवसे स्वाहा ओम अमृताय स्वाहा ओम शाश्वतस्थानवे स्वाहा ओम वरारोहाय स्वाहा ओम महातपसे स्वाहा ओम सर्वगाय स्वाहा ओम सर्वविदे स्वाहा भानवे स्वाहा ओम विश्वक्सेनाय स्वाहा ओम जनार्दनाय स्वाहा ओम वेदाय स्वाहा ओम वेदविदे स्वाहा ओम अव्यंगाय स्वाहा ओम वेदविदे स्वाहा ओम कवये स्वाहा स्वाहा
ओम सुराध्यक्षाय स्वाहा ओम धर्माध्यक्षाय स्वाहा ओम कृताकृताय स्वाहा ओम चतुरात्मने स्वाहा ओम चतुर्व्यूहाय स्वाहा ओम चतुर्दंष्ट्राय स्वाहा ओम चतुर्भुजाय स्वाहा ओम भ्राजिष्णवे स्वाहा ओम भोजनाय स्वाहा ओम भोक्त्रे स्वाहा ओम जगदादिजाय स्वाहा ओम अनघाय स्वाहा ओम विजयाय स्वाहा ओम जेत्रे स्वाहा ओम विश्वयोनये स्वाहा निददे पदम तुपाकिल्री इंदर माडी ओम अतीन्द्राय स्वाहा ओम संग्रहाय स्वाहा ओम सर्गाय स्वाहा ओम धृतात्मने स्वाहा ओम नियमाय स्वाहा ओम यमाय स्वाहा ओम वेद्याय स्वाहा ओम महामायाय स्वाहा ओम महोत्सागाय स्वाहा ओम महाबलाय स्वाहा ओम महाबुद्धये स्वाहा ओम महावीर्याय स्वाहा ओम महाद्युतये स्वाहा ओम अनिर्देश्य वपुषे स्वाहा ओम श्रीमते स्वाहा ओम अमेजात्मने स्वाहा ओम महात्रिधृते स्वाहा ओम महीभर्त्रे स्वाहा ओम महेश्वासाय स्वाहा ओम महीभर्त्रे स्वाहा ओम श्रीनिवासाय स्वाहा ओम सतांगदये स्वाहा ओम अनिरुद्धाय स्वाहा ओम सुरानंदाय स्वाहा ओम गोविंदाय स्वाहा ओम गोविदांपदये स्वाहा ओम मरीचये स्वाहा दमनाय स्वाहा ओम अंसाय स्वाहा ओम सुपर्णाय स्वाहा ओम भुजगोत्तमाय स्वाहा ओम हिरण्यनाभाय स्वाहा ओम पद्मनाभाय स्वाहा ओम प्रजापतये स्वाहा ओम अमृत्यवे स्वाहा ओम सर्वदृशे स्वाहा ओम सिंहाय स्वाहा ओम संधात्रे स्वाहा ओम संधिमते स्वाहा ओम स्थिराय स्वाहा ओम अजाय स्वाहा ओम दुर्मर्शनाय ओम शास्त्रे स्वाहा ओम विश्रुतात्मने स्वाहा ओम सुरारिग्ने स्वाहा ओम गुरुतमा ओम गुरवे स्वाहा ओम धामने स्वाहा ओम सत्याय स्वाहा ओम सत्यपराक्रमाय स्वाहा ओम निमिषाय स्वाहा ओम अनिमिषाय स्वाहा ओम स्रग्विणे स्वाहा ओम वाचस्पत उदमणिको ओम न्यायाय स्वाहा ओम नेत्रे स्वाहा ओम समीरणाय स्वाहा ओम सगत्रमोत्रे स्वाहा ओम विश्वात्मने स्वाहा ओम सगत्राक्षाय स्वाहा ओम सगत्रपदे स्वाहा ओम आवर्तनाय स्वाहा ओम निवृत्तात्मने स्वाहा ओम संवृताय स्वाहा ओम संप्रमर्दनाय स्वाहा ओम अह संवत्सराय स्वाहा ओम वन्नये स्वाहा ओम अनिलाय स्वाहा ओम सुप्रसादाय स्वाहा ओम प्रसन्नात्मने स्वाहा ओम विश्वदृजे स्वाहा ओम विभवे स्वाहा ओम सत्कर्त्रे स्वाहा ओम सत्कृताय स्वाहा ओम साधवे स्वाहा ओम जह्नवे स्वाहा ओम नारायणाय स्वाहा
ओम नराय स्वाहा ओम असंख्येय स्वाहा ओम अप्रमेयात्मने स्वाहा ओम विशिष्टाय स्वाहा ओम शुचये स्वाहा ओम सिद्धार्थाय स्वाहा ओम सिद्धिदाय स्वाहा ओम सिद्धिदादनाय स्वाहा ओम वृषागिने स्वाहा ओम वृषभाय स्वाहा ओम विष्णवे स्वाहा ओम वृषपर्वणे स्वाहा அது கொஞ்சம் இது பண்ணிக்கோங்க சார் எந்திரிச்சு இது பண்ணிக்கோங்க அது கொஞ்சம் ஏத்திக்கோங்க ओम बृहद्रूपाय स्वाहा ओम सिपिविट्टाय स्वाहा ओम प्रकाशात्मने स्वाहा ओम प्रतापनाय स्वाहा ओम ऋद्धाय स्वाहा ओम स्पष्टाक्षराय स्वाहा ओम मंत्राय स्वाहा ओम चंद्रांशवे स्वाहा ओम भास्करद्युतये स्वाहा ओम भानवे स्वाहा ओम सशबिंदवे स्वाहा ओम सुरेश्वराय स्वाहा औषधाय स्वाहा जगदसेतवे स्वाहा सत्य धर्म पराक्रमाय स्वाहा ओम पवनाय स्वाहा ओम पावनाय स्वाहा ओम अनलाय स्वाहा ओम कामग्ने स्वाहा ओम कामकृते स्वाहा ओम कांताय स्वाहा ओम कामाय स्वाहा ओम कामप्रदाय स्वाहा ओम प्रभवे स्वाहा ओम युगादिकृते स्वाहा ओम युगावर्ताय स्वाहा ओम नैकमायाय स्वाहा ओम महासनाय स्वाहा ओम अदृश्याय स्वाहा ओम सगत्रजिते स्वाहा ओम अनंतजिते स्वाहा ओम इष्टाय स्वाहा ओम अविष्टाय स्वाहा ओम शिष्टेष्टाय स्वाहा ओम नकुशाय स्वाहा ओम क्रोधग्ने स्वाहा ओम क्रोधकृते स्वाहा ओम कर्त्रे स्वाहा ओम विश्वभागवे स्वाहा ओम महीधराय स्वाहा ओम अच्युताय स्वाहा ओम प्रतिदाय स्वाहा ओम प्राणाय स्वाहा ओम प्राणदाय स्वाहा ओम वासवानुजाय स्वाहा ओम अपाम निधये स्वाहा ओम प्रतिष्ठिताय स्वाहा ओम स्कंदाय स्वाहा ओम स्कंदधराय स्वाहा ओम तुर्याय स्वाहा ओम वरदाय स्वाहा ओम वायुवाहनाय स्वाहा ओम वासुदेवाय स्वाहा ओम बृहद्भानवे स्वाहा ओम सुराय स्वाहा ओम शौरये स्वाहा ओम जनेश्वराय स्वाहा ओम अनुकूलाय स्वाहा ओम सदावर्ताय स्वाहा पद्मिने स्वाहा ओम पद्मनिवेक्षणाय स्वाहा ओम अरविंदाक्षाय स्वाहा ओम शरीरभृते स्वाहा ओम महर्धये स्वाहा ओम ऋद्धाय स्वाहा ओम वृद्धात्मने स्वाहा ओम महाक्षाय स्वाहा ओम गरुडध्वजाय स्वाहा ओम अतुलाय स्वाहा ओम सरभाय स्वाहा ओम समयज्ञाय स्वाहा ओम अवर्घरये स्वाहा ओम सर्वलक्षण लक्षण्याय स्वाहा ओम लक्ष्मीवते स्वाहा ओम समितिञ्जयाय स्वाहा ओम भिक्षराय स्वाहा ओम मार्गाय स्वाहा ओम हेतवे स्वाहा ओम दामोदराय स्वाहा ओम सगाय स्वाहा ओम महाभागाय स्वाहा ओम अमिताशनाय स्वाहा ओम उद्भवाय स्वाहा ओम क्षेपणाय स्वाहा ओम देवाय स्वाहा ओम श्रीगर्भाय स्वाहा
ओम परमेश्वराय स्वाहा ओम करणाय स्वाहा ओम कारणाय स्वाहा ओम कर्त्रे स्वाहा ओम विकर्त्रे स्वाहा ओम गगनाय स्वाहा ओम गुगाय स्वाहा ओम व्यवसायाय स्वाहा ओम व्यवस्थानाय स्वाहा ओम संस्थानाय स्वाहा ओम स्थानराय स्वाहा ओम ध्रुवाय स्वाहा ओम परर्धये स्वाहा ओम परमस्पष्टाय स्वाहा ओम शुभेक्षणाय स्वाहा ओम रामाय स्वाहा ओम विरामाय स्वाहा ओम मार्गाय स्वाहा ओम मार्गाय स्वाहा ओम नेजाय स्वाहा ओम अनयाय स्वाहा ओम वीराय स्वाहा ओम धर्म विदुत्तमाय स्वाहा ओम वैकुंठाय स्वाहा ओम पुरुषाय स्वाहा ओम प्राणाय स्वाहा ओम प्राणदाय स्वाहा ओम प्रणमाय स्वाहा ओम पृथ्वे स्वाहा ओम शत्रुघ्नाय स्वाहा ओम व्याप्ताय स्वाहा ओम वायवे स्वाहा ओम अदोक्षजाय स्वाहा ओम ऋतवे ओम सुदर्शनाय स्वाहा ओम कालाय स्वाहा ओम परमेष्टिने ओम परिग्रगाय स्वाहा ओम उग्राय स्वाहा ओम संवत्सराय स्वाहा ओम दक्षाय स्वाहा ओम स्थावराय स्थानवे स्वाहा ओम प्रमाण उत्तमाय स्वाहा ओम सुब्रताय स्वाहा ओम सुमुखाय स्वाहा ओम विदारणाय स्वाहा ओम स्वापनाय स्वाहा ओम स्ववजाय स्वाहा ओम व्यापिने स्वाहा ओम नैकात्मने स्वाहा ओम नैक कर्मकृते स्वाहा ओम वत्सराय स्वाहा वत्सलाय स्वाहा ओम वत्सिने स्वाहा ओम रत्नगर्भाय स्वाहा ओम धनेश्वराय स्वाहा ओम धर्मगुभे स्वाहा ओम धर्मिणे स्वाहा ओम सहस्राम सवे स्वाहा ओम विदात्रे स्वाहा ओम प्रदक्षिणाय स्वाहा ओम गवस्तिने स्वाहा ओम सत्प्रस्थाय स्वाहा ओम सिंहाय स्वाहा ओम गोप्त्रे स्वाहा ओम ज्ञानगम्याय स्वाहा ओम पुरातनाय स्वाहा ओम शरीरभूतभृते स्वाहा ओम भोक्त्रे स्वाहा ओम कपीन्द्राय स्वाहा ओम भूरि दक्षिणाय स्वाहा ओम सोमपाय स्वाहा ओम अमृतपाय स्वाहा ओम सोमाय स्वाहा ओम पुरुजिते ओम पुरुषोत्तमाय स्वाहा ओम विनयाय स्वाहा ओम जयाय स्वाहा ओम सत्यदंधाय स्वाहा ओम दाशार्गाय ओम जीवाय स्वाहा ओम विनजित्रे स्वाहा ओम साक्षिणे स्वाहा
ओम मुकुंदाय स्वाहा ओम अमित विक्रमाय स्वाहा ओम अंबोनितये ओम अनंतात्मने स्वाहा। ओम मेदिनीपतये स्वाहा ओम त्रिपदाय स्वाहा ओम त्रिदशाध्यक्षाय स्वाहा ओम महाशृंगाय स्वाहा ओम कृतांतकृते स्वाहा ओम महावराहाय स्वाहा ओम गोविंदाय स्वाहा ओम सुषेणाय स्वाहा ओम कनकांगदिने स्वाहा ओम गुह्याय स्वाहा ओम गभीराय स्वाहा ओम गहनाय स्वाहा ओम गुप्ताय स्वाहा ओम चक्र कदाधराय स्वाहा ओम वेधसे स्वाहा ओम स्वांगाय स्वाहा ओम अजिताय स्वाहा ओम कृष्णाय स्वाहा ओम दृढ़ाय स्वाहा ओम संकर्षणाय अच्युताय स्वाहा ओम वरुणाय स्वाहा ओम वृक्षाय स्वाहा ओम पुष्कराक्षाय स्वाहा ओम महामनसे स्वाहा ओम भगवते स्वाहा ओम भगघ्ने स्वाहा ओम आनंदिने स्वाहा ओम वनमालिने स्वाहा ओम हलायुधाय स्वाहा ओम आदित्याय स्वाहा ओम ज्योतिरादित्याय स्वाहा ओम सहिष्णवे स्वाहा ओम गदित्तमाय स्वाहा ओम सुधन्वने स्वाहा ओम खंडपरशवे स्वाहा ओम दारुणाय स्वाहा ओम द्रविणप्रदाय स्वाहा ओम दिवस्पृशे स्वाहा ओम सर्वद्रव्यासाय स्वाहा ओम वाचस्पतये स्वाहा ओम त्रिसाम्ने स्वाहा ओम सामगाय स्वाहा ओम साम्ने स्वाहा ओम निर्वाणाय स्वाहा ओम भेषजाय स्वाहा ओम भेषजे स्वाहा ओम संन्यासकृते स्वाहा ओम शांताय स्वाहा ओम निष्ठायै स्वाहा ओम शांत्यै स्वाहा ओम परायणाय स्वाहा ओम शुभांगाय स्वाहा ओम शांतिदाय स्वाहा ओम स्रष्ट्रे स्वाहा ओम कुमुदाय स्वाहा ओम कुबलेशयाय स्वाहा ओम गोहिदाय स्वाहा ओम गोपतये स्वाहा ओम गोप्त्रे स्वाहा ओम वृषभाक्षाय स्वाहा ओम वृषप्रियाय स्वाहा ओम अनिवर्तिने स्वाहा ओम निवृत्तात्मने स्वाहा ओम संक्षेप्त्रे स्वाहा ओम क्षेमकृते स्वाहा ओम शिवाय स्वाहा ओम श्रीवत्सवक्षसे स्वाहा ओम श्रीवासाय स्वाहा ओम श्रीपतये स्वाहा ओम श्रीमदाम्बराय स्वाहा ओम श्रीदाय स्वाहा ओम श्रीशाय स्वाहा ओम श्रीनिवासाय स्वाहा ओम श्रीनिधये स्वाहा ओम श्री विभावनाय स्वाहा ओम श्रीधराय स्वाहा ओम श्रीकराय स्वाहा ओम श्रेयसे स्वाहा ओम श्रीमते स्वाहा ओम लोकत्रयाश्रयाय स्वाहा ओम स्वक्षाय स्वाहा ओम स्वंगाय ओम शतानंदाय स्वाहा ओम नंदये स्वाहा ओम ज्योतिर्गणेश्वराय स्वाहा ओम विजितात्मने स्वाहा ओम अविधेयात्मने स्वाहा ओम सत्कीर्तये स्वाहा ओम छिन्न संशयाय स्वाहा ओम अनीशाय स्वाहा ओम शाश्वतस्थिराय स्वाहा ओम भूषयाय स्वाहा ओम भूषणाय स्वाहा ओम भूतये स्वाहा ओम विशोकाय स्वाहा ओम शोकनाशनाय स्वाहा ओम अर्चिष्मते स्वाहा ओम अर्चिताय स्वाहा ओम कुंभाय स्वाहा ओम विशुद्धात्मने स्वाहा ओम विशोधनाय स्वाहा ओम अनिरुद्धाय स्वाहा ओम अप्रतिरथाय स्वाहा ओम प्रद्युम्नाय स्वाहा ओम अमित विक्रमाय स्वाहा ओम कालनेमिघ्ने स्वाहा ओम वीराय स्वाहा ओम शौरये स्वाहा ओम शूरजनेश्वराय स्वाहा
ओम त्रिलोकात्मने स्वाहा ओम त्रिलोकेशाय स्वाहा ओम केशवाय स्वाहा ओम केशिघ्ने स्वाहा ओम हराय स्वाहा ओम कामदेवाय स्वाहा ओम कामपालाय स्वाहा ओम कामिने स्वाहा ओम कांताय स्वाहा ओम कृतागमाय स्वाहा ओम अनिर्देश वपुषे स्वाहा ओम विष्णवे स्वाहा ओम वीराय स्वाहा ओम अनंताय स्वाहा ओम धनंजयाय स्वाहा ओम ब्रह्मण्याय स्वाहा ओम ब्रह्मकृत ब्रह्मणे स्वाहा ओम ब्रह्मणे स्वाहा ओम ब्रह्म विवर्धनाय स्वाहा ओम ब्रह्मविदे स्वाहा ओम ब्राह्मणाय स्वाहा ओम ब्रह्मिणे स्वाहा ओम ब्रह्मज्ञाय स्वाहा ओम ब्राह्मण प्रियाय स्वाहा ओम महाक्रमाय स्वाहा ओम महाकर्मणे स्वाहा ओम महादेदसे स्वाहा ओम महोरगाय स्वाहा ओम महाकृतवे स्वाहा ओम महायज्वने स्वाहा ओम महाहविषे स्वाहा ओम स्तव्याय स्वाहा ओम स्तवप्रियाय स्वाहा ओम स्तोत्राय स्वाहा ओम स्तुतये स्वाहा ओम स्तोत्रे स्वाहा ओम रणप्रियाय स्वाहा ओम पूर्णाय स्वाहा ओम पूरयित्रे स्वाहा ओम पुण्याय स्वाहा ओम पुण्यकीर्तये स्वाहा ओम अनामयाय स्वाहा ओम मनोजवाय स्वाहा ओम तीर्थकराय स्वाहा ओम वसुरेतसे स्वाहा ओम वसुप्रदाय स्वाहा ओम वासुदेवाय स्वाहा ओम वसवे स्वाहा ओम वसुमनसे स्वाहा ओम हविषे स्वाहा ओम सद्गतये स्वाहा ओम सत्कृतये स्वाहा ओम सत्तायै स्वाहा ओम सद्भूतये स्वाहा ओम सत्परायणाय स्वाहा ओम शूरसेनाय स्वाहा ओम यदुश्रेष्ठाय स्वाहा ओम सन्निवासाय स्वाहा ओम ओम भूत ओम दर्पघ्ने स्वाहा ओम दुर्धराय स्वाहा ओम अपराजिताय स्वाहा ओम विश्वमूर्तये स्वाहा ओम महामूर्तये स्वाहा ओम दीप्तमूर्तये ओम नैकस्मै स्वाहा ओम सवाय स्वाहा ओम काय स्वाहा
च वर्धनाय स्वाहा ओम दमयित्रे स्वाहा ओम दमाय स्वाहा ओम अपराजिताय स्वाहा ओम सर्वसगाय स्वाहा ओम नियंत्रे स्वाहा ओम अनियमाय स्वाहा ओम अयमाय स्वाहा ओम सत्ववदे स्वाहा ओम सात्विकाय स्वाहा ओम सत्याय स्वाहा ओम सत्यधर्मपरायणाय स्वाहा ओम प्रियार्गाय स्वाहा ओम अर्गाय स्वाहा ओम प्रियकृते स्वाहा ओम प्रीतिवर्धनाय स्वाहा ओम विगाय सगदये ओम ज्योतिषे स्वाहा ओम सुरुचये स्वाहा ओम उदबुदे ओम विभवे स्वाहा ओम रवये स्वाहा ओम सूर्याय स्वाहा ओम सवित्रे स्वाहा ओम अनंताय स्वाहा ओम भोक्त्रे स्वाहा ओम नैकजाय स्वाहा ओम अनिर्विण्णाय स्वाहा ओम लोकाधिष्ठानाय स्वाहा ओम सनातनाय स्वाहा ओम कपिलाय स्वाहा ओम अव्ययाय स्वाहा ओम स्वस्ति कृते स्वाहा ओम स्वस्ति भुजे स्वाहा ओम अरौद्राय स्वाहा ओम चक्रिणे स्वाहा ओम ऊर्जित शासनाय स्वाहा ओम शब्दसगाय स्वाहा ओम शर्वरीकराय स्वाहा ओम पेशलाय स्वाहा ओम दक्षिणाय स्वाहा ओम विद्वत्तमाय स्वाहा ओम पुण्यश्रवण कीर्तनाय स्वाहा ओम दुष्कृतिघ्ने स्वाहा ओम दुःस्वप्ननाशनाय स्वाहा ओम रक्षणाय स्वाहा ओम जीवनाय स्वाहा ओम अनंत रूपाय स्वाहा ओम जितमन्यवे स्वाहा ओम चतुरश्रयाय स्वाहा ओम विदिशाय स्वाहा ओम दिशाय स्वाहा ओम भुवो भुवे स्वाहा ओम सुवीराय स्वाहा ओम जननाय स्वाहा ओम भीमाय स्वाहा ओम आधार निलयाय स्वाहा ओम पुष्पहासाय स्वाहा ओम ऊर्ध्वगाय स्वाहा ओम प्राणदाय स्वाहा ओम पणाय स्वाहा ओम प्राण निलयाय स्वाहा ओम प्राण जीवनाय स्वाहा ओम तत्वविदे स्वाहा ओम जन्म मृत्यु जरातिगाय स्वाहा ओम ताराय स्वाहा ओम प्रपितामगाय स्वाहा ओम यज्ञपतये स्वाहा ओम यज्वने स्वाहा ओम यज्ञभृते स्वाहा
ओम यज्ञिने स्वाहा ओम यज्ञ साधनाय स्वाहा ओम यज्ञ गुह्याय स्वाहा ओम अन्नदाय स्वाहा ओम स्वयं जाताय स्वाहा ओम सामगायनाय स्वाहा ओम सृष्ट्रे स्वाहा ओम पापनाशनाय स्वाहा ओम नंदकिने स्वाहा ओम शार्ंगधन्वने स्वाहा ओम रथांगपाणये स्वाहा ओम सर्वप्रकरणायुधाय स्वाहा वनमाली गदीशार्ंगी शंकी चक्री जनंदगी श्रीमाल नारायणो विष्णु वासुदेवो विरक्षतु वनमाली गदीशार्ंगी शंकी चक्री जनंदगी श्री वासुदेवो विरक्षत ओम नमः इति ओम हिरण्य महालक्ष्मी की और आवर्ती होमम पण्णिडला नेक्स्ट पूर्णाहुति please be seated in your place that purnahuti will come to your place right you can touch the purnahuti right normally we used to have put the coins no coins please right so you can touch the purnahuti then finally we will do purnahuti please be seated Om Shantihi, Shantihi, Shantihi. Peace, peace, peace. Another meaning, silence, silence, silence. Right? That's also the meaning. Yeah. Ajyam Purnavati ki. Now, Mahalakshmi, Adhya Purvokta, Yevam Guna, Sakala Visheshana Vishittayam, Asyam Shubhatithau, Purvam Sankalpita Prakarena, Sarvesham Mahajananam, Mahalakshmi, Kripa, Kataksha, Anugraha, Siddhyartham, Dhana, Dhanya, Vastu, Vaganadi, Samasta, Aishwarya Siddhyartham, Mahalakshmi, Homam Karishe. ओम हिरण्यवर्णाम हरिणीम सुवर्णरजतस्रजाम चंद्राम हिरण्मयीम लक्ष्मीम आवह स्वाहा ताम आवह यस्याम हिरण्यम विन्देयम गामश्वम पुरुषानहम स्वाहा अश्वपूर्वाम रथमद्याम हस्तिनाद प्रबोधिने दामोदर दामोदर Siyam saha nam yadadam jalanti siyaloke devadatta madanam tam padminimim saranamagam prabhatte lakshmirmenasya tam tamrine swaha Manne sabadodi dhado vanaspadittava vrikshoda bilvaha Tassabalani tapasanudantu mayantarayakcha bhakya alakshmi swaha Ubhaydiman devasakah kirtitcha manilasaha Pradurbhodot virat kirtittim dadatu me swaha Chutbhivasamalam jeshtam alakshminajayamyaham Abhodamasamriddhanta sarvanirnudame grihat swaha Nadvara duradarshan nityabuddhagarijini Yesarigam sarvabhutanam tamiho bhakvaye shriyam swaha
मनसः काममा कूतिं वाच सत्यमशीमहि पशूनां रूपमन्यस्य मयि शीर्षयधाम्यसः स्वाहा तमेन प्रजाभूता मयि सम्भवकथमा श्रियं वासय मे कुले मातरं पद्ममालिनीं स्वाहा आपसृतिर्दिक्तानि सिक्रीतवत मे गृहे विजदेवी मातरग्रश्रियं वासय मे कुले स्वाहा आतां मुत्कर्णीं बुट्टिं सुवर्णां हेममालिनीं सूर्यां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो महामहः स्वाहा आत्तायकर्णीं यष्टिं पिङ्गलां पद्ममालिनीं चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो महामहः स्वाहा ताम् आवह जातवेदो लक्ष्मीमनपगामिनीं स्वाहा यस्यां हिरण्यं प्रबोधं गावोदास् स्वामिन्देयं पुरुषाणहं स्वाहा महादेवे च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् ओम ऐं ह्रीं श्रमणे कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद सकल सौभाग्यम देहि देहि ओम श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्म्यै स्वाहा ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद सकल सौभाग्यम देहि देहि ओम श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्म्यै स्वाहा ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद सकल सौभाग्यम देहि देहि ओम श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्म्यै स्वाहा ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद सकल सौभाग्यम देहि देहि ओम श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्म्यै स्वाहा ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद सकल सौभाग्यम देहि देहि ओम श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्म्यै स्वाहा ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद सकल सौभाग्यम देहि देहि ओम श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्म्यै नमः स्वाहा ओम श्रीं ह्रीं श्रीं नमः कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद सकल सौभाग्यम देहि देहि ओम श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्म्यै नमः स्वाहा ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद सकल सौभाग्यम देहि देहि ओम श्रीं ह्रीं श्रीं ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद सकल सौभाग्यम देहि देहि ओम श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्म्यै स्वाहा ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद सकल सौभाग्यम देहि देहि ओम श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्म्यै स्वाहा ओम श्रीं ह्रीं श्रीं क्लीन पण्णु सकल सौभाग्यम देहि देहि ह्रीं श्रीं महालक्ष्म्यै स्वाहा ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद सकल सौभाग्यम देहि देहि ओम श्रीं महालक्ष्म्यै स्वाहा ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद सकल सौभाग्यम देहि देहि ओम श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्म्यै स्वाहा ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद सकल सौभाग्यम देहि देहि ओम श्रीं ह्रीं श्रीं यक्षाय कुबेराय वैश्रवणाय धनधान्याधिपतये धनधान्य समृद्धिं मे देहि दापय स्वाहा यक्षाय कुबेराय वैश्रवणाय धनधान्याधिपतये धन धान्य समृद्धिं मे देहि दापय स्वाहा यक्षाय कुबेराय वैश्रवणाय धनधान्याधिपतये धनधान्य समृद्धिं मे देहि दापय स्वाहा
Now, Purnahuti. After Purnahuti, Dupam, Deepam, Naivedyam,
Hello, hello. Om Namo Narayana. A very warm welcome to one and all present here. Today, being the sixth day of the Saptaham, we started it auspiciously by conducting the Homa. And now, I request Preeti to chant the standing prayer. ॐ श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं रामनाम वरानने श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं रामनाम वरानने श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने श्रीराम नाम वरानन ओम नम इति
Now I request Sridharan sir to give the inaugural address. Om Namo Venkatesaya. The 6th day of Saptaham. After this Homam, we are going to start this global conference on power of Vishnu Sahasranamam. And it is online, and of course, Homam is still going on. We regret the delay by nearly 30 minutes on this account, but still Homam Purnavati is going on. But as a commitment, we are starting this conference also. I am thankful to all VISVAS global team for making success in all the areas, whatever we are doing. Like that, we have completed Homam and going for the conference. We have two different sessions today, followed by evening Nama Sankirtanam. After that, we have chanting concluded. We are very happy to say that in the last 5 days, we have completed more than 110 avartis, though we planned for 108 avartis. So we are able to achieve today and tomorrow another 10, 15 avartis. And tomorrow we have this Shivari Kalyana Utsavam, praying Sriman Narayan's success, and also for the conference. Thank you, Ma. Over to you. Now may I call upon Ramabhadran Guruji to do a presentation on Tirupavai and Vishnu Sahasranamam. Om Namo Venkatesaya. May pranams to everybody. Lakshmi Natha Samarambam Natayamana Madhyam Asmad Acharya Paryantam Vande Guru Paramparam. My thanks to all of you who are participating in this, the Saptaham for the 7 days. And then we are all on the 6th day, where we just now performed the Vishnu Sahasranamam Homam under the guidance of Sri Raghavendra Sharma ji. It's almost coming to the Purnahati is over. They are doing the Naivedyam and then this, this Harati. Now, all of us have been chanting this Vishnu Sahasranam for a long period of time. Of course, we know that Bhishma Pitamara has mentioned about this Palasruti, about the benefits of chanting the Vishnu Sahasranam in the Palasruti. So, there will be a lot of people who will be talking about the powers of Vishnu Sahasranamam. So, we are eager to learn, listen to all of them. Some people want to even share their personal experiences that will add more conviction to our chanting of Vishnu Sahasranamam. Now, the topic I am going to talk today is Tirupavai, and of course, being Vishnu Sahasranamam, we are the the institution which is promoting the Vishnu Sahasranamam. How is it a kind of a capsule of Vishnu Sahasranamam? Because this month is Marghazhi month, that is the month of Marghazhi, which is very famous for Andal and chanting the Tirupavai as such. So we can analyze Tirupavai from different angles. I'm just going to focus on how she is talking about the Nama Sankirtanam, and therefore the Vishnu Sahasranam, the effect of Vishnu Sahasranam, how she is trying to condense in this Tirupavai as such. Now, one day, Narada Maharshi went to Vaikuntham, so that he saw Narayana Bhagavan. He said, Narayan, of late I am not able to see you very regularly in Vaikuntham. Bhagavan said, yes, it is so. Then he said, why is it? Because it is Kali Yuga. That means in Kali Yuga you won't be in Vaikuntham, is what Narada Maharshi said. No. Then he chanted a sloka. He said, Naham vasami vaikunte na yogi hridaye ravo madbhakta yatra gayanti tatra tishtami narada. That means Bhagavan says, Narayan himself, na aham vasami vaikunte. I am not staying in Vaikunta nowadays. Then where are you saying? Na yogi hridaye ravo.
I'm not even, this living in the hearts of this yogis, this dhyana slokam you say, Yogi, that is this Santakaram, Bhujagasenam, Padmanabham Suresam, Visvadaram, Gagana Sadrisam, Mekavarnam Subhangam, Lakshmi Kantam, Kamalanam, Yogi Dhyana Gamyam. So whenever the yogis meditate, Bhagavan is residing in their hearts. This is even there I am not residing. Doesn't mean that he is not residing there. He is not residing with that kind of a love where he says, Madbhakta yatra gayanti tatra tishtami narad. That means where my devotees are chanting my name, I'm living there with a lot of affection. Bhagavan enjoys, staying in the places where the bhaktas are chanting. In fact, it's talked about this Pandu chants the name of the Lord, lying down on a bed. Bhagavan says he will sit there and listen to the Nama Sankirtanam. When somebody is sitting and chanting the name, he is standing and listening to the names. When somebody is standing and chanting the name, Bhagavan is, jumping and then listening to his Nama. When somebody is jumping, Bhagavan says he is surrendering at the feet of the devotees. Such is the greatness of Bhagavan. So he wants to listen to the name of the one. Unfortunately for us, in the 7 days, we would have chanted more than 100 times the Vishnu Sahasranam. Obviously, the presence of Bhagavan in this, in this hall, is very much present because Bhagavan enjoys chanting the Vishnu Sahasranam. Chanting the name of the Lord, and more so the Vishnu Sahasranam. So Vishnu Sahasranamam is a capsule of the essence of the Vedas. All that ultimately, the Vedas talk about ultimately the Upanishads. What are the Upanishads? Upanishads Saram. Veda Saram is Upanishad. Upanishad Saram is contained in Mahabharata. Mahabharata Saram is contained in Vishnu Sahasranam. So such is the greatness of Vishnu Sahasranam. Now, how does it get related to the Tirupavai as such? Now, Tirupavai, all of us know, I'll just briefly mention about Tirupavai for the benefit of people who are not familiar with the Tamil. Now, there are 12 Alvas in the Tamil literature who has sung about Lord Sriman Narayana. That is, the collection of all these things is called as Nalayara Divya Prabandha. So 4,000 songs have been composed by these 12 Alvas. Now, what is the greatness of this Nalayara Divya Prabandha? Now, if you look at the Vedas are Parocha Priya. That means they are indirectly they are not direct. Whatever the Vedas talk about, indirectly they talk about who is the Paramatma, and then what are the means of reaching it. Is not a direct one. So the Alvas thought that in the local language, and therefore it must be, because it is in Sanskrit and is not available to many people, it must be available in a language which is understood by many people, and therefore they composed that and they said direct. So they direct, that is, the message of the Vedas is contained directly. How is it? If you look at the Tirupai, the very first Pasaram Mandal says, Narayanane Namakke Pare Taruva. That means, whatever has been said, even Bhagavan said in Gita also, subsequently in later portion only, in fact, in the 18th chapter, towards the end of the chapter only, Bhagavan says, Sarva Dharman Parityajya Mam Ekam Sharanam Vrij. That means, you surrender to me because I am the Matta Parataram Nanyati Kinchidasti. Bhagavan says in the 7th chapter. That means, I am the ultimate supreme God. But then Andal says in the very first Pasaram, Narayanane Namakke. That means he is the Parampurul. He is the ultimate God. And then he is the person who is going to give us moksha. So that is why the Nalayara, the Alvas Pasurang has got such a great one, because they directly talk about what is to be known by all the people. So it becomes easy for people to understand. So that is the message of this Nalayara Divya Prabandha. And among all the Nalayara Divya Prabandhams, in fact, the most essence, if you take, it is the Tirupavai Granth. Because out of this 4,000, there are a period, it is called as Ana Adhyayana Kal. That means there are certain periods which we are not supposed to chant. Whereas Tirupavai is supposed to be chanted all the 365 days. Tirupavai and Tirupalli Aichi of this Tondaradipudi Alvar, it is supposed to be chanted. It is Nitya Anushtana Grantha. That means all the 365 days it is present. Why is it so great? What is so great about Tirupavai? First, of course, the reason I said, because it's a direct, the message is coming out directly from whatever is contained in the Vedas. And that's why it is called as Veda Manaithikkum Vittagam Godai Tamil. That means it is the seed of the Vedas. The entire, although the Tirupavai came subsequent to the Vedas, it is still said to be the seed because the entire essence of the Vedas is contained in this Tirupavai, and therefore such is the greatness of Tirupavai. And if you look at the Tirupavai from, of course, you can, as I said, we can view from different angles. The one angle where we can talk about this Tirupavai is where Andal says, I just listed out all the 30 Pasurams, and I said,
starting from the first Pasram till the end, everywhere, in most of the Pasram, almost 2/3 of the Pasram, she's saying Paraman Adipadi. The second Pasram, she says Paraman Adipadi. Ongi Ulagananda Uttaman Per Padi. So everywhere, Per Padi means what? Per means Nama, Padi means Kirtan, Nama Sankirtan. So in almost 2/3 of the Pasaram, she is referring to the Nama Sankirtan. So that means she is the message of the way, the Tirupavai is only Nama Sankirtanam. So chant the name of the Lord, chant the name of the Lord, chant the name of the, chant the name of the, of course, in Kali Yuga, Harir Namameva, Mama Jivanam, Kalau Nastyeva Gati. That's in Kali Yuga, there is no other easy path other than chanting the name of the Lord. So that's what a lot of people have said in the previous, all the VIPs, the guests have said. What you get by by doing the dhyana in the Krita Yuga, doing the yaga yajnas in the Treta Yuga, archana in the Dwapara Yuga is got simply by chanting the name of the Lord. That's what it is. So the focus of this Tirupavai has been Nama Sankirtanam. So related to the 1,000 names of the Lord, which is the Nama, which is the Vishnu Sahasranam. So what Andal has tried to do is, instead of taking the entire 1,000 names of the Lord, she has tried to summarize, and I just listed out, and maybe you can share it later on with all the people. In all these 30 pasurams, I just listed out the various namas which she has listed out. And then she has done a hybrid version. Hybrid version in the sense she has taken directly the names which is contained in the Vishnu Sahasranam. For example, Narayana. The Narayana name is there in Vishnu Sahasranam also. Similarly, the name of Govinda. In fact, the first nama Andal chooses in the first Pasaram is the Narayana. Narayana, the greatness of Narayana is a Paratattva. Paratattva is the ultimate supreme God. He is the supreme God. So that means supreme God is the ultimate Paramparul. That means he is capable of doing anything. That is the meaning of the word Narayana, because Naraha Ayanam Yaha Sa Narayanaha. So that means who is the ultimate goal of all of us and in whom we all reside, that is called as Narayana. Then the last two verse, the last 27, 28 and 29 Pasaram, she is using the name of Govinda 3 times. Kudare Vellam Shir Govinda, Kurayvandrum Illada Govinda, Andrigan Govinda. So she is using the three times the name of Govinda. So that means she's, in fact, the Narayana name also she is using it in three of the Pasurams, because Narayana, Vishnu Sahasram contains in only one place, Jannur Narayano Narayana, that's only one. But Andal takes it in 3 Pasurams. The first Pasaram, Narayana Namake Parutra, and today's Pasaram, the 7th Pasaram today is Keshavan Narayanan Murti, Keshavanai Padam Nikete. So Narayana is in 7th Pasaram. Again, on the 10th Pasaram, Nammal Potra Paretaram Puninal, Narayanan, Notrichuvarkum, Pugikindra Amanai, Matramum Tararo, Vasal Theravada, Natra Turaimudi, Narayanan. So 3 places she used the Narayana name. Similarly, she used the 3 places the Govindanam. So she has taken certain names directly from Vishnu Sahasranam, like Keshava, Narayana, then Madhava, Govinda. All those things, all those names have been taken directly from about these, this meanings of these various these namas. Now, other thing which she has done, which is an innovation, is she has literally translated some of the names in the Vishnu Sahasranam into Tamil. She has Tamilized, as would say. So that is why I said, for example, the nama Vishnu Sahasranam contains the name Narama, Ramo, Viramo, Virato, Margo, Neyo, Neham. And of course, we chant the Sri Rama, Rama, Rameti. Such as a beautiful name of the Lord is Rama. What is so great about Ramanamam? Because Ramanama, the word, Sarve Ramante Asminiti Rama. That means everybody is, enjoying. In fact, Parameshwara says that, no, Sri Rama Rama Rameti Rame Rame Manorame. Oh Parvati, you are pleasing to my heart, Manorame. Rame Rame. That means I'm enjoying. Rame means enjoying. I'm enjoying in the name of in Rama. So that means I'm enjoying the name of a person who enjoys in Rama is in the person is called as Rama. That is the meaning. And Andal has literally translated that into Tamil in the 12th Pasaram, which is where Manathu Kiniyane Padavumni Vaitiravai. Manathu Kiniyan is the literal translation of Rama. The word Rama is Sarve Ramante Isminiti Rama. So that means she has literally translated Manathu Kiniyan. So such is the greatness of the innovations which she has done. Certain namas she has taken directly as it is from Sanskrit. Certain namas she has taken it from, she has translated it. So that means Manathu Kiniyane Padamuni. That is one. Then another nama which is Utramudayai Periyai Vilangalil Totramai Ninda Sudai. Utramudayai Mahotsav.
one name we find Vishnu says Maha Utsaha Mahotsaha. Utsaha means Vutramudaya. That means he's, he has got great enthusiasm. Great enthusiasm. A person, Bhagavan is very enthusiastic because he's doing this, the creation, sustenance, annihilation. He keeps on doing it again and again and again. Why is he doing it? For all of us to ultimately reach the abode of Bhagavan. What is the purpose of creation? The whole purpose of creation is Bhagavan has given all these things for us, giving this physical body. The body itself is given for what purpose? Paropakarartham idam sariram. This body has been given to us for the sake of doing help for others. Idam sariram kalu dharma sadham. The whole idea of giving this body is for helping others. In the way doing this, this karma yoga. When you do the karma yoga, your karmas get exhausted. Then you get bhakti, and then ultimately reach the abode of liberation. That's what it is. And easiest part, the janmanam durlabam nara janma. That's what Adi Shankar Bhagavad Patal says, and Navya says, aride manidarai perathalaride. Because getting the human birth is the most difficult thing to get. The Bhagavan has created this human birth and given this body only for the sake of ultimately getting liberation. So that is that. So he keeps on doing it again because ultimately he wants everybody. Not a single person must be lived. Ultimately, everybody should reach him. That's why he keeps on doing it again and again without any exasperation. So that is why she is called Mahotsaha, and she is translated Maha Utsaha Utramudayai. Another nama, Periyai. Periyai means what? Brahman. Brahma Vivardhana. Brahman means big. That's all. The literal meaning of the word Brahma. Brahma means very big. That's what the literal meaning of Sanskrit. So Periyai. Why is the name Brahman is given as such? In English, there is something called adjective. What does adjective do? Adjective qualifies the noun. Supposing if I say, this is my finger. So that is a noun. Finger is a noun. When I say this is a big finger, big is the adjective. So adjective qualifies the noun. So that is big finger. Supposing there is an elephant, I say this is an elephant. I say this is a big elephant. I'm using the same adjective big over there. Isn't it? I'm using the same adjective big. Now what happens is, I'm using the same adjective big. When I say the adjective big for an elephant, you imagine the size of the big, you think it to be much bigger. But you don't, when I say the big finger, you don't take this finger to be same as the elephant. So here, the noun is qualifying the adjective. Rather than adjective qualifying the noun itself is qualifying the adjective. When I say that big, it is subsequently qualified by what noun I have. That's why the Sanskrit word uses the word Brahman, big. Big like anything, it doesn't say anything big because you got to imagine, for example, when I say the space is big because space is present in all places. There is no place space is not. Similarly, Bhagavan Brahman is because he's so big. So you will have to say he's only big. And Andal is translated literally into Butramudaya, Periyai. Periyai means Brahman. So that is why Andal, as the entire Tirupavai can be considered as a capsule of Vishnu Sahasranamam. And therefore, along with the Vishnu Sahasranamam, if you chant the Tirupavai also every day, you get the benefits of. In fact, in the Vaishnava Siddhantam, we call people as Uve. Some people must say Uve means Ubhaya Vedanti. Ubhaya means two, Vedanti. That means people are familiar with the Upanishads, which are the Vedantam of the Sanskrit. Of course, Upanishad essences contain Vishnu Sahasranamam. And also the other Vedanta is the Tamil Vedam. That is all this Nalayara Divya Prabandham. So if a person chants Vishnu Sahasranamam and Tirupavai every day, there is nothing he will not get. He will get everything ultimately reach the abode of Bhagavan as such. And he truly becomes a Ubhaya Vedanti because he knows both the Sanskrit, the Upanishads as well as the Vishnu Sahasranamam. So I thought being the Marghazhi month, so Vishnu Sahasranamam and Tirupavai are like the two eyes, the two eyes. Both eyes are very important for us. So if we chant the Vishnu Sahasranam Tirupavai every day, definitely we'll get the benefit of the Lord as well as the benefit of Andal, who is ever there to bless with us. Om Namo Venkateshaya. Thank you, Guruji, for so beautifully explaining the relationship between Tirupavai and Vishnu Sahasranamam. And my takeaway is that you chant Vishnu Sahasranamam and Tirupavai, you wish whatever you want and you will get it. So thank you for the teaching, sir. Now may I request Raghavendra Guruji to do a presentation on social equality in Sahasranamam.
Shri Gurubhyo Namaha. Thanks to Ramabhadran sir for his wonderful presentation. Preeta ji is observing all these things. Thank you, audience. Very need of the hour, in fact, very complicated topic has been taken. That is social justice and social equality in Vishnu Sahasranama. Does this Vishnu Sahasranama belong to only Brahmin or Kshatriya or Vaishya? In those days, whatever the four varnas were existing, to which varna does this Vishnu Sahasranama belong to? That we have taken the topic, right? Before going to the topic, we have to define two things. What is social justice and what is social equality? What is social justice? Equal opportunity to have the natural resources, right? And society, in the society, no, and the upper, lower, and the difference, without having difference, equal to enhance, give the opportunity to all the public, any varna, any caste, right? To give the equal importance, enhance them, empowering them to enjoy the resources. That is called social justice. Then what is social equality? Without social equality, social justice is not possible, right? Social equality, see, Ganga is there, Yamuna is there, Godavari, all these rivers are different, correct? We have to accept the difference, right? But all the rivers are what? Equally divine. That mindset. Can you mingle all the Ganga, Yamuna, Saraswati river? Naturally not possible. So what is social equality? Amidst the differences, having the mindset of all are equal. Amidst the differences, difference के बीच में हम सभी लोग समान हैं. That mindset, right? To imbibe that mindset is called social equality. So for social justice, social equality is the first step. Now, let us see. Guruji, Vishnu Sahasranama, we have been telling Brahmanas only should chant, Stri should not chant. Is this? According to me, it is not there. All can chant Vishnu Sahasranama at any time. That is the main interesting fact of Vishnu Sahasranama. Guruji, where is the proof? You are telling all can chant Vishnu Sahasranama. Vedantako Brahmanasyat Kshatriyo Vijayi Bhavet Vaishyo Dhana Samriddhasyat Shudraha Sukhamavapniyat. In those days, existing, prevailing that Varna system, no any single Varna was denied of chanting Vishnu Sahasranama. That shows that is the main source of social equality. Right? Now, Guruji, where is the social justice in Vishnu Sahasranama? Now, Ramo Viramo Virato, Margo Neyo Nayo, many shlokas are there. In those shlokas, these some namavalis are mentioning the avatars. First of all, avataram itself is showing social justice and social equality. How Guruji avataram is showing social equality, social justice? Let us see. Lord Vishnu is residing in the Kshira Sagara ocean. He can aram se, he can have all this best. Lakshmi vande kaal pudichi uttindruka. He can take rest. But whenever the bhakta is in trouble, right, he comes down. That itself is what? Social
equality. To the bhaktas level, God is coming down, avataram, that itself shows what? Social equality. Then, social justice. You see, in Ramavatara, when he had friendship with Guha, right? When Vibhishana had trouble, Vibhishana belongs to which avatar, which Rakshasa. So he did not see, that is called social justice. Even to Rakshasas, when Anyaya is happening, Rama came to rescue Vibhishana. He did not see, अरे बाबा इसका भाई जो है ना मेरे पत्नी का अपहरण किया. His brother, that too belongs to Rakshasa gene, right? Against Manava gene, he has to be punished. No. If something injustice is happening to anyone, right? Injustice happened to Gajendra. That's called social justice. Injustice happened to Gajendra. Bhagavan came, rescued. That is called Gajendra Moksha. The message of Gajendra Moksha very clearly says that social justice, not even to the human being, even to the, right? Even to the animals, something wherever injustice is happening, yes, I will come to rescue them. Then more than this, what else you want for social justice proof, right? Sita was in trouble. Sita is a stree. Sita is a stree. In those days, as per our view, okay, all these things were there, Rama would not have come to rescue Sita when she was in trouble, because social justice doesn't require any caste, any creed, any gender. Any gender which is in trouble comes to rescue Bhagavan. So when Sita was in trouble, Rama came to rescue Sita. Not single, all the armies. Right? So in many places, especially in Vishnu Sahasranama, the social justice and social equality are mentioned. Take first. So I told you, Rama Rama is a man of character who is totally free from self-interest, demonstrated the ideal relations by being friendly, honor. That's what social equality. Ramavatara had an excellent friendship with whom? Not even human being race. Not even ordinary Vanara. Right? And Guga Ivara. So social equality. When we maintain social equality, automatically social justice happens. Right? Then you see, next avatar, Krishna avatar. Krishna, for his caliber, he would have taken birth in which? He would have thought, for his caliber, Krishna avatar, where he would have taken birth? In the richest place. That is pertaining whoever the king, that king's family days, he would have taken and he would have been with it. He took birth, right, to Vasudeva, Devaki, though Naam ke vaste they were what? King, almost they were put in the jail. That's what more, right? When people are in trouble, when people are in pain, Bhagavan comes to them, pacifying them, consoling them, I am there for you. That message was given by Sri Krishna to birth. And ஒருத்தி மகனாய் பிறந்து ஓர் இரவில் ஒருத்தி மகனாய் வளர்ந்து. Now, transformation of Krishna after Janma, the growth happened. You know, wow, such a Krishna, Kosukadi, full of mustard, full of guy, cows,
Krishna made up of his mind to establish the social equality. He has decided go and stay in the Goshala along with the Gopa Idayargal cowherd. This is called social equality. And then gender wise. For his caliber, he would have made all of his friends know Krishna Avatara, male or boy. No, he wanted to establish that girls are nowhere inferior than the what? Boys, all are equal. So, in order to pacify them, in order to console them, in order to uplift the inferiority complex which is prevailing in the lady, he became the beautiful friend of Gopikas. He gives the message to Krishna. No gender is required. To become his Prema Patra, no gender is required, no education is required, no culture is required, no civilization is required. Only one required is Prema, not Bhakti, Prema Bhakti. First message given by Gopika was when Bhakti is not sufficient. In Bhakti, when you have Bhakti, Bhagavan comes to you. When you have Prema Bhakti, Bhagavan doesn't leave you. He stays with you. Prema, love, affection. So these Gopika three were not educated. These Gopika three were not civilized actually. Even they are not Sundari. And the Gopika three knows that, right? Radha, like that. Some very few people would have become beautiful. But he stayed all with the what? Gopika three, giving the message to the entire public that for me, only Prema Bhakti is most important. If any Prema Bhakti is there, for me, no gender bias, no caste bias, because he was always roaming with Gopa Balakas. Gopa Balak, because they were innocent, they were having Prema Bhakti. They did not know the puja methodology, the rituals, nothing. It is Rama Avatara and Krishna Avatara is a perfect personification of giving a message to the entire society that social justice and social equality, the message of social justice, social equality given by Krishna Avatara. Next week. Yeah. Now, coming to the Purvanga and Bidani. Now, very interesting. In Vishnu Sahasranama, Purvanga means Munnala shlokas are coming. Can you deny my fact? Telling that where Vishwacharya or Vyasa. Now coming to the Vyasa. Vyasaya Vishnu Rupaya, Vyasa Rupaya Vishnavaya. Namo vai Brahmanidage Vasistaya Namo Namaha. You tell me, Vyasa and Vishnu both are not different. Vyasaya Vishnu Rupa. Vyasa is the form of what? Vishnu. Vishnu is the form of Vyasa. Now, you take the birth of Vyasa. How did Vyasa born? No, he was not born from a Brahmin family. Vyasa's mother, right? Vyasa's mother was Matsya Kanya. Matsya Kanya means what? Matsya Kanya, fisher women. He born as a fisher women son. That Vyasa is considered as Vishnu Rupa. You tell me, wherever Shastras are giving biased opinion about Brahmanas or Kshatriyas or anything, this different application scientific that we are going to talk about. Right? Now, Vyasa, who was born for after Matsya Kanya, is considered Vyasa as Vishnu Rupa. First shloka itself is says social justice and social, because Tamil Nadu we are talking social justice, social
Bhishmacharya is lying on that bed of arrows and giving Upadesha Dharmaputra about Vishnu Sahasranama. Kindly, 6 questions were asked. What are the 6 questions? Ko dharma sarva dharmana bhavat paramo matah kim japan mujyate jantur janma samsara bandhanate. 6 questions. Now you tell me. You can see, I am telling you, I am here. I have followed that and all different. It is your side. If you find any wrong in my presentation, you have every right to question. If I find answer, I will justify it. If I don't find answer, I will learn it and give it. Now you tell me 6 questions is asked. Kimekam daivatam loke. Kimva pyekam parayam. Sumantakam. Kam archantaha. Right? 4. Now this word I will keep it afterward. You will manavachu. Okay. Now. Kimekam daivatam loke. First question. Kimva pyekam parayam. Next question. Sumantakam. Kam archantaha. Leave it to your manavachu. 5th question. Ko dharma sarva dharmana bhavata paramo mataha. 5th question. Kim japan muchyate jantuhu janma samsara bandhana. Probably you might be going to the meaning of this question. Now, coming to the main point. Prapnayur manava shubham. That is the main word we are going to catch it. This 6th question have been asked by Dharmaputra to Yudhishthira. Sorry, Dharmaputra to Bhishmacharya. For who? Tell me, for who? For Brahmana? For Brahmana? For Kshatriya? For Vaishya? No. Prapnayur manavaha shubham. By Kimjapan, by praying which God, by offering flowers to making archana to which God, the entire mankind will get shubham. And you have to underline. Prapnayur manavaha shubham. Na brahmanaha, na kshatriya, na vaishya. No. Prapnayur manavaha shubham. That manava is the word which has to be underlined. So Vishnu Sahasranama, the motive of Vishnu Sahasranama, the question, 6 questions were asked by Dharmaputra to Bhishmacharya for the entire manglam goodness of the Manava. Manava Yatma. Who is Manava? Ami Brahmana. For the mankind, human being. See the next question. Guruji, Manava okay, but this your Vishnu Sahasranama did not worry about insects. Insect form, only Manava Parishara. Then next question. Kim Japan Muchyate Jantu Janma Samsara Bandhana. See Jantu, Krimi, Kita, all these Yatya Jayate Tatsarvam Jantu. Yatya Jayate, whatever is taking birth, Janyate, Yatya Jayate Tatsarvam Jantu. Guruji, after plants, river, plants, in the Vishnu Sahasranama, Yat Jayate Tatsarvam Jantu. Jayate Nena, Yadana takes birth. A seed takes birth in the river. A seed takes birth. It has life. The plant has life. So that is also Jantu. So in the Purvanga of Vishnu Sahasranama itself, very clearly the message what was Vishnu Sahasranama has been, right? 1 people, 2 people, Prapnayur, Manava Shubham, and then Prapnayur Manava Shubham, Janma Samsara, Jantu, Jantu is word. So these 2 words are sufficient, right? The motto of Vishnu Sahasranama, it is not belongs to only caste or creed or anything. Bhishmacharya is answering. Hey, you asked Manava.
not for Madhava. He never said, right? He exceeds it. Subannama Sagasrena Purushaha Satothidaha. Guruji, now you are what? By chanting Sahasranama, Purushaha Satothidaha. Guruji, Purusha is only told, not three. Now you are not Guruji. When we come to the state, we always have some rules of escape, don't we? Right? Here, Purushaha means quantity refers to sutra. Puman Seshe. When we want to mention and including Purusha and Stree as a mark, as a symbol, we mention Pullinga. We mention what? Pullinga. So Purusha means it is not only male gender, male, female, finally as a mark of ஒரு பானசோத்துக்கு ஒரு சோல் அது மாதிரி புருஷா. So சுவன்னாம சகத்ரேன புருஷா சகதோபிதா by writing Sahasranama all puja including three, right? This get benefit. This is a statement about Bhishmacharya. Next, Sarva Dukkadi Gopave. See, Sarva, all people, Dukkadi Gopave. All people will cross the ocean of what? Dukkha, not particular people. Next, see, Vishnu Nama Sahasrame Shrutu Papa Bhaya Abaham. By listening to the Vishnu. See, how nice. Now, 15 ஆவர்த்தி கத்தி சொல்றேன். मेरा गला सूख गया. Drinking water. Once again chanting Vishnu. I will see upload it. See, Shrunura, that is about, that shows social justice. That shows what? Social justice. Shrunu Papa Pita. Maya, Baito, morning you have coffee, breakfast, don't miss anything. Sit in the chair, sit on the chair. I will chant. You will listen. I will moksha. You will also get moksha. Shrunu, Papa, Bhaya, Abham. By listening, Shrutva Dharma Mavapnoti, Shrutva Moksha Mavapniya, Shrutva Jnanameva Mavapniya. By just hearing and listening, all Papas are gone. Listening now. When I say something in the public, listen now. You should not listen. You can listen. And I say, so it is for everyone. And making it easy, Shrutva Dharma Mavapniya. Papa, Bhaya, Apaham. All your papas are gone. All your fear, phobia, everything is gone. Just by listening Vishnu Sahasranama, that is the social justice, that is the social equality. Anyone can listen. Can we prevent and chanting? Can we prevent the poetry even here? I got right. So this word, this sentence establishes social justice and social equality. Next. How much time is allotted? Now, in the Namavali, Vishnu Purvanya finish. In the Namavali, Vishnu Sahasra Namavali, according to all the Namavalis mention social justice and social equality. But some of the catchy words and their meaning are deal with social justice and social equality. First one, Varas is the first word itself in the 6th century. Vishvam. What do you mean? Universe. Lali make in Telugu, Nadulu, Vanamulu, Nana, Megamulu. He says, in Nadi, I am seeing Rama. Vanam, I am seeing Rama. Nadulu, Vanamulu, Nana, Megamulu. In each and every Virga,
Pashu, Pakshi, Jantu. I am saying what? Rama. Okay? That is a Annava Kirtana, Naguru, Manamulu, Nana, Mridamulu. Wherever you can be continue Ravana. Next word. So, Vishwam, the first word itself establishes social equality. Vishwam, you are in the Vishwam, you are in the Vishwam, I am in the Vishwam, right? Dog is in the Vishwam, snake is in the Vishwam, rat is in the Vishwam, bomb is in the Vishwam, and the insects are there in the Vishwam, unknown amoeba is also in the Vishwam. One cell planet, one cell amoeba, right? In that also Vishwam, and the meaning Aragaga Sundira, Tamil Aragago, I said in English, இந்த உலகமாகவும் இந்த உலகத்தின் அனைத்து பொருட்களிலும் உள்ளும் வெளியும் தானாகவும் இருப்பவர். இந்த உலகமாகவும் இந்த உலகத்தின் அனைத்து பொருட்களிலும் அந்த பொருளாகவும் உள்ளும் வெளியும் தானாக வியாபித்து இருப்பவர் விஸ்வம். அந்த பகிர்ச்ச தத்சர்வம் வேதவாக்கியம் அந்த பகிர்ச்ச தத்சர்வம் Narayana inside the universe, outside the universe, everywhere Sriman Narayana is there. That's why Bhagavad Gita says, Shuni Chaiva, Swabhakesha, Panditaha, Samadashya. Even in the dog, even in the Mamsa, Panditaha, Samadashya. The Panditas will see equally. Those who are seeing equally are Panditas. Sanskrit is a beautiful language. Suni, even in dog, even in the Mamsa, Panditas will see equally God. No. Even in the dog, even in the Mamsa, those who are seeing equally, everywhere the soul is existing, they are Panditas. Suni Chaiva, Swabhaki, Panditaha, Samadashana. So, Vishwam, he who is the universe itself. This means God is all inclusive. God is what? All inclusive. Every chara, achara, sthavara, jantara is God. This portrait, everyone is what? Equal. Next. Bhutakrit. Beautiful. Bhutakrit. Bhutani karoti iti Bhutakrit. He who creates all the Bhutas. Who created Brahman? Bhagavan Mahavishnu. Who created Kshatriya? Bhagavan Mahavishnu. How can he create a difference in this creation? You got the what? A path maker is picking the path. Which path he likes? All the path. Because all the creation are belonging to the creator. It is who made the difference. So, who the good? Or the Ganake Gadayag. Who the good? He creates all the Bhuta. He makes Srishti of all the Bhutas. Right? Next one. Avyayaha. That means the one who does not have destruction or mutation is called Avyaya. No change. Yaro ஒருத்தர் வந்துட்டா in those days the word Chandala, right, comes for the darshan. Bhagavan says, "Ayyo, I will not see you." Avyaya, no change. That's what like Guruji says. Special darshan means not you are seeing the God specially. Bhagavan will see you specially. That is called special darshan. So Avyaya is equal to everyone. No change. Next one, Sarvaha. Beautiful word. Sarvaha. He is everything. Beautiful meaning. He is everything. Right? Anoraniya, Mahato Magiya, Purandara is telling. Anoraniya, Mahato Magiya, Aprameyana, Adisitha. Anoraniya, Anukullavaga iruppavar. Everything is right from that time.
minute, tiny atom particle and to the universe is existing. So, who the next one? Vijayaraghavan is very clever, right? And Bhutatma, he from whom all beings evolve. He from whom all the beings evolve. Bhagavan से सब कुछ आया है. Nicely, from Bhagavan only all the creation, everything has come. So social equality and Bhuta Bhavanaha, the one who creates, makes them grow and develop is what Bhuta Bhavana. That is mentioned. Now, you can ask me, breathe. Guruji, then go. What is the word called Brahmana Priyaha? I thought when you ask question. Okay? Brahmana Priyaha, what is it, Guruji? And the word is, how can you nullify the social justice and social equality? We have to elaborate see the meaning. Right? Brahmana Priyaha. ரெண்டு அவருக்கு பிராமணால பிடிச்சா பிராமண பிரியா, பிராமணாளுக்கு அவங்களை பிடிச்சா பிராமண பிரியா. நீங்க என்ன பொறுத்த வரைக்கும் ரெண்டாவது அர்த்தத்தை நான் எடுத்துக்கிறேன். யாருக்கு ஒண்ணு அவர் பிடிக்கிறாங்க, யாருக்கு ஒண்ணு அவர் பிடிக்கிறாங்க. ஸோ பிராமண பிரியா, க்ஷத்ரிய பிரியா, வைசிய பிரியா, நோ ப்ராப்ளம். ரைட்? ஸோ பிராமணானாம் பிரியா பிராமண பிரியா, பிராமணாः பிரியாः யஸ்ய சஹ இதி பிராமண பிரியா. சமாஸ். So, Brahmana Priyaha and the word Brahmana there does not insist Varna. Please, let's understand the meaning in detail. Brahmana Priyaha, that word Brahmana does not insist Varna. That insists the attitude. Those who are traveling towards Brahma are called what? Brahmana. So that Brahmana Jiva is what? Brahmana Priyaha. Right? Then, next one, Nyayo Neka. He is a leader. He is a leader. Kaisa leader है? Nyayo Neka. Justified leader. Justified who goes in the path of justification. He never sees any, no, ये मेरा है, मैं ऐसे साधन, no, so equal to everyone. Nyayo Neka. Beautiful word. Vishva Yonihi, he who is the universe and its creator. That's all. More than what you want for establishing social equality. Then, next one, sir. Right. So, Achyutaha. The word is what? Achyutaha. From my hand, is my slipping down. That is called sugar. From my hand, this mic is not at all slipping down. That is called what? Achyutaha. If you catch hold of Bhagavan's lotus feet, he will never leave you. Okay? Whether you are without which one, no problem. Whoever is catching hold of the lotus feet of Bhagavan, he never leaves you. Even if you want to leave him, that is called Achyut. So, social equality, social justice is mentioned. Then, I like the word of Krishna. Either way, excellent word. What can be for social justice and social equality? It is a myth. The myth was prevailing in the society, even though prevailing in the society, that the myth has been prevailing in the society, right? White complexion is an excellent complexion. Black complexion is what? Bad complexion. Bhagavan wanted to break this myth, and that's why he deliberately gene in the color
what Krishna, black color. Rama is also black. Rama is also black. Ramayana. Varnam Shyamam Savashritaha. Varnam Shyamam Sita is plain. In Ashoka Vanam, so Hanuman, I will see my Rama, she is explaining how my Rama will be there. Krishna, Tripralambrasya, Chatus, all explaining. That time, Varnam Shyamam Savashritaha, where Ram, black color. Do you know? So, the word Krishna, who is black, this clearly breaks myth of racial discrimination. Maximum untold foreign countries, we have what? Racial discrimination. In the world itself, in the universe itself, my Krishna and Rama took avatara just to break the myth of what? Racial discrimination. This is not social justice. Right? Next. Beautiful. Sama. Sama. Atma. All the Atmas are what? Sama. Equal. Sama. He who looks everybody as equal. Once again, social equality as we mentioned. Satkarta. He who worships those who do good things. You tell me. Those who are doing good things, उनको ये वर्शिप करते हैं. कौन? श्री कृष्ण, विष्णु, महाविष्णु worships those who are doing good things. Satkarta. He never says Satkarta Brahmana, Satkarta Vaishya. No, simple word Satkarta. Okay, then yes sir. Yes, Pranaha. Very simple, beautifully mentioned. Pranaha. Inside you, prana is there. Inside you, prana is there. Inside him, prana is there. The great, I am seeing the greatest Veda Pandita, Bhagavata Uttama here. Your good name, sir? Sir. Yeah. Two people. Please come. Bhagavata Uttamas. Yes, your name? See, to listen to my word, Sakshat Purushottama has come. Right? So what I am telling, prana is inside you, prana is inside me, prana is inside me, prana is inside here, prana is in that Bhagavata Uttama. In every people's sharira, prana is there. In dog's sharira, prana is there. In snake sharira, prana is there. He is the prana. He is the prana. Where only the sharira differs. Only the sharira differs. In everyone's prana is there. So he is in the form of prana. Prana is commonly existing. By that way, he is social equality. He is establishing. Next, Samayajnaha. Next. We have lot of no time. All the namavalis are related to social justice and what? Social equality. Due to time shortage, some namavalis we have taken here. Right? Otherwise, we have 2-3 sessions of 3-4 hours to establish, not to establish. When will we go for establishing? No. When it is not there, only when it is not there, we have to establish. It need not be established. It is a truth. But unfortunately, in Kali Yuga, okay, asatyam is spreading. Satyam has to be established. See, asatyam is spreading like anything, naturally, like Wi-Fi. Satyam, right? We have to establish, but we should not make tired of this. Our Janma Uddeshya, we have to establish the Satyam. For all those things, we have to keep on moving efforts towards that. Right then. Dharma Yupaha, another word, he who is like a pillar in which right action, dharma is tied. Okay. Then Vidharanaha, he who tears off those who do sins. Inga parunga. Those who do
sins. யார் பாவம் பண்ணா கொஞ்சம் சொல்லுங்க. யார் பண்ணாலும் யார் பண்ணாலும் இல்ல சார், he is a great pandit சார், சரி, he has studied Vedas சார், சரி, இவன் கொஞ்சம் நமக்கு வேண்டிய ஆளு, சாரி, விதாரணஹா, the meaning goes like this, yahakopi papam karoti tan sarvan yeshaha vidarayati. Whoever does sins, he tears off, he tears off. You know, you want example? Ravana is a Brahman. Tato Vishravasa putro Ravano nama Rakshasah. He is a son of what? Vishravas. Vishravas is a Brahmana, right? Bhagavan Vidharanaha, nothing doing. If you commit sins, your jati will not be seen. If you commit sins, your varna will not be seen. Vidharanaha. Na kilichi potruven. Whereas Prahlada, Rakshasa Kula. Rakshasa, what? Rakshasa Kula, Bhagavan took a special avatar. What a bhagyam of Prahladam. Huh? What a bhagyam of Prahladam. Bhagavan took avatara exclusively what? For Prahlada, not for Hiranyakashipu. Not for Hiranyakashipu he took avatara. He took avatara for Prahlada. Okay? Even though he belongs to a Rakshasa Kula, he pampered him, he made him. Okay? So, Vidaranaha. And Bhayanashanaha. Any caste, any creed, any animal is in Bhaya. Bhagavan will not see, Are, who is in Bhaya? Whoever is in Bhaya, he removes, destroys the Bhayam. So he is called Bhayanashanaha. Social justice. Social justice, lena theriyuma? Whoever is in trouble, we have to rescue. Whoever is in trouble, we have to rescue him. As I told, Gajendra was in trouble, he rescued him. He rescued him. Right. So, Preeti Vardhanaha, excellent, which is missing in the present, right, scenario among the people. Preeti Vardhanaha, he who increases devotion, love of his devotees. Preeti Vardhanaha, one who increases, one who spreads, right, love and affection among the people, right. Once again, Bhayapaha, destroyer of fear. Yasya kasyapi bhayamasti. Whomsoever gets bhayam, he removes. He never sees, no partiality. No partiality. You know one thing? Sabari was there in Ramayana. Old lady. You know, he goes and visits Shabari. He goes and visits what? Shabari. My Rama is unbiased with the gender. Unbiased with the age. நாளைக்கு வந்து நம்ம ஆளு பொல்லாதவன், அந்த சபரி சின்ன பொண்ணா இருந்துன்னு வச்சுக்கோங்களேன், என்ன தெரியுமா சொல்லிருப்பான்? சின்ன பொண்ணு பார்க்க போனாரு. சபரி இஸ் a old age, கிடுகிடாதி, right, booty. Because we are in Kali Yuga, we have to face, we have to face any type of questions. Don't afraid of these small fellows. We have befitting reply for everything, right? Because dharma has to be established by palana and by yuddha. Yuddhana sanda illa, by giving appropriate answer to this one. Okay? Paramata khandana, swadharma sthapana. Both are the paramata khandana. We have to condemn wherever they are telling wrong. At the same time, we have to establish the greatness of dharma. These both are our duties. Now, Bhayapaha, then Govinda, beautiful. Yes, I know. Vijay Raghavan sir understood the minds of the people. Kaya Kubitar Forum sir ne 2 minutes. Right. Govinda, you know, he who is the chief of cows. See, and the Krishna, யாராவது அவ்வளோ பெரிய அவதாரம் எடுத்துண்டு, ஓகே, ஒரு சீஃப் ஆஃப் பெரிய இடத்துக்கு போக விருப்பப்படுவாங்களா? He becomes a what? Chief of cows. Gopalaka, because he wants to give justice not only for the human beings, he wants to give justice even for the animals.
animals, because animals only understand the language of love. Human being understand the, okay, for him we have to speak. To make him understand the language of love, we have to speak. Whereas for animals, we need not speak, just to mind transmission. உங்க வீட்டுக்கு போன உடனே நாய்க்குட்டி ஓடி வந்து உங்க மேல உட்காரும். ஆனா நம்ம சொந்த பொண்ணுங்க கதவு சாத்தின்னு உள்ள இருக்கும். காட்டி அப்போ கூப்பிட்டு வாடி கண்ணா, நான் உனக்கு சாக்லேட் கொடுத்துருக்கேன், ஹாய் மாமின்னு வரும். Whereas dog, போன உடனே ஏறி அதுக்கு ஒண்ணுமே கொடுக்க வேண்டாம். பிகாஸ் கவாம் பாஷாஹா விந்ததி இதி கோவிந்தஹா. Even he understands, communicates the language of what? Even cow is called Govindaha, and Papanashanaha, destroyer of sins of everyone, unbiased. Vishvatma, the soul of the universe. You can understand by meaning Vishvatma. And Vasudevaha, the one who covers the universe with his Maya, is Vasu. Vasudevasya putraha Vasudeva. That is there. Vasudeva's son. But the entire world is what? Covered with what? Maya. This Maya is called Vasu. Vasudevaha. Mayayaha Devaha. He is the Deva controller, okay, of what? Maya is called Vasudevaha. Then, yeah, Trilokatma, Trilokeshaha, very good. Ekaha, the one. Ekaha, the one. That's all. Ekaha, the one. In that one, many are there. In that one, many are there. Who is that many? Brahmana, Kshatriya, Vaishya, all many are Ekaha. All Ekaha. So, Naikaha. Guruji, போன இதுல ஏகாஹான்னு சப்போர்ட் பண்ணீங்க, இப்ப நைகாஹான்றீங்களே, நீங்க மாட்டிக்கிட்டீங்க. ந ஏகாஹா, not one. See the meaning. The one who has many forms. Leave it. I will explain. See, Ekaha, one Paramatma. One Paramatma. From one Paramatma, many jivas are coming. Bhagavan is existing in those jivatmas also. That is why na Ekaha. That is the meaning. You got it? He is not Ekaha. He is Ekaha when Paramatma comes. He is Naikaha when Jivatma comes. He is existing in all Jivatmas separately. Prithak. Because in Gopika Rasa Krida, each one, every Krishna was dancing with each one Gopika. Anga Naikaha. Anga yare? Naikaha. கிருஷ்ணா கிட்ட போயிட்டு நீங்க 10 பேர் ஆடுங்க, நான் ஒருத்தன் வரேன்னா எல்லாருக்கும் என்ன, எனக்கு வரலையே கிருஷ்ணா. அந்த ஆசையை பூர்த்தி பண்றதுக்காக கிருஷ்ணா became Naikaha. Okay, fine. Next. Yes, sir. Yes. So it's going on. Yes. Next, sir. Suhrit, excellent one. Suhritna, Hritna, Hridayam. Hrit means what? Heart. The English word heart from origin word is Hrit. Hrit is the word heart. In Indo-European language family, Bharatiya Bhasha Parivar, mother tongue is Sanskritam. You can go and check in the Google. By putting wrong fact, next day I can't stand here. Indo-European language system, the mother tongue is what? Sanskritam for all European languages. So, Hrit, Suhrit, he who has excellent, good heart towards the, right? So, Bhagavan existing, Ishvaraha Sarva Bhutanam Hriddeshe Arjuna Tishtati. Bhagavan enga irukkarar theriyuma? Ishvaraha Sarva Bhutanam. Sarva Bhutanamna neengala, nambala. Ishvaraha Bhagavan Sarva Bhutanam Sabi Praniyon ke enga irukkarar theriyuma? Kadula illa, kannula illa, mookula illa, vaayila illa. Hriddeshe Arjuna Tishtati. When your heart is connected, Bhagavan is connected.
So Ishvara, Bhagavan exists in the form of Hridaya. So 9. Jivanaha, he is the life of everyone. So social, once again, social equality. Samiranaha, one who controls all movements in beings, not only human beings, all the beings. Next, Loka Bandhuhu, beautiful, beautiful word. Loka Bandhuhu, he is the உங்களுக்கு சித்தப்பா இல்லையா, வருத்தமா இருக்கா, he is the சித்தப்பா. மாமா இல்லையா, வருத்தமா இருக்கா, he is the மாமா. Right? அக்கா, நான் சிங்கிள் கேர்ள் சைல்டு, எனக்கு பிரதரே இல்ல, கிருஷ்ணா இஸ் யுவர் பிரதர். லோக பந்துஹு, he is the one who is the right bandhu of everyone. For the entire lokam, right, he is the bandhu. அதனால நார்மல் பந்துக்கும் லோக பந்துக்கும் என்னடா வித்தியாசம்னா, ஒரு கவி சொல்றார், தப்பா நினைச்சுக்காதீங்க, ஞாதிச்சேத் அனலேனக்கிம், சொந்த if relatives are nearby, separately no fire is required. Whatever the fire has to be done, that work is done by what? ஒரு கவி பாவம் ரொம்ப பாதிக்கப்பட்டிருப்பார் போல இருக்கு. ஓகே, so ஞாதிச்சேத் அனலேனக்கிம், when relative is there, there is separately no requirement of what? Fire. But these bandhus are fire. Our loka bandhu is the water. When loka bandhu is there, these bandhus cannot harm us. So loka bandhu. So புரிஞ்சுண்ட சார். Right, now coming to the sir, directly come to the Palashruti. No, we have lot of words like this. Vijay Raghavanji, yeah, loka bandhu. Time is we have crossed the time limit, no ma? Limited, huh? 40? No, how much time was it? And how much exceeded? Yes, like this, we have lot of words in Vishnu Sahasranama which are emphasizing, insisting social justice and social equalities. In due course, we will send the PPT to everyone. Okay, because knowledge should be what? Shared, not to be kept. Not only specifically these directly figures out the meaning we have taken. Then coming to the Phalastuti, the entire Phalastuti, okay, insists on social justice. தமிழ்ல சொல்லணும்னா சமூக நீதி. எனக்கு தெரிஞ்சு முதல் பெரியார் பீஷ்மாச்சாரியார் தான். முதல் பெரியார் யாரு? பீஷ்மாச்சாரியார் தான். ஓகே, எப்படின்னா அவர்தான் விஷ்ணு சஹஸ்ரநாமம் மூலமா சமூக நீதியை பரப்பினவர், சமூக நல்லிணக்கத்தை. சார் இதெல்லாம் ரொம்ப நீங்க ஐ கேன் சேலஞ்ச் டு எனிபடி கேன் ரெஃப்யூட் மை தாட். சமூக நீதியையும் சமூக நல்லிணக்கத்தையும் முதல்ல எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணவர் அவர்தான். ஸ்லோகத்திலேயே சொல்லிடுறார், வேதாந்தகோ பிராமணஸ்யாத் க்ஷத்ரியோ விஜயீ பவேத் வைஷ்யோ தன சமிருத்தஸ்யாத் சூத்ரஹா சுகமவாப்னுயாத் தர்மார்த்தி பிராப்னுயாத் தர்மம் அர்த்தார்த்தி சார்த்தமாப்னுயாத் காமான் அவாப்னுயாத் காமி பிரஜ. இதை விட வேற என்னங்க வேணும்? உனக்கு தர்மத்தில் விருப்பம் இருந்தால் விஷ்ணு சகஸ்ரநாமம் சொல்லு, உனக்கு தர்மத்தில் நாட்டம் வரும். எனக்கு தர்மம் எல்லாம் வேணும். ஏன்னா choice should not be mine, choice should be yours. நீங்க எப்படி என்ன சொல்லலாம்? விஷ்ணு சகஸ்ரநாமம் சொன்னா எனக்கு தர்மத்தில் நாட்டம் வரும்னு நீங்க எப்படி சொல்லலாம்? நான் சொல்லலையேப்பா. எனக்கு பணத்துல தான் சார் நாட்டம், எனக்கு பைசா வேணும், நான் ப்ரொவிஷன் கொடுத்துருக்கேனேப்பா. தர்மார்த்தி பிராப்னுயா தர்மம் அர்த்தார்த்தி சார்த்தமாப்னுயா. உனக்கு பணம் வேணுமா? சகஸ்ரநாமம் சொல்லு, ஆயிரத்தில் லட்சங்களில் கோடிகளில் நீ புரளலாம். அடுத்த ஆள் சண்டைக்கு வருவான், எனக்கு அதெல்லாம் இல்ல சார், ஐ வாண்ட் டு என்ஜாய் ஆல் த கம்ஃபர்ட்ஸ் இன். வேர் இஸ் த ப்ரொவிஷன் இன் விஷ்ணு? எஸ், வி ஹவ் given provision. காமார்த்தி தர்மார்த்தி பிராப்னுயாத் தர்மம் அர்த்தார்த்தி சார்த்தமாப்னுயாத் காமான் அவாப்னுயாத் காமி. காமான், whatever the desires, whatever the pleasures, whatever the comforts you want, yes, Sahasranama is granting you. It is your field of interest, choice is yours. Vishnu Sahasranama never compels anyone. Okay, only by chanting Sahasranama you will get only dharma. அப்படின்னா partial.
only money அப்படின்னா partial. Nobody is denied of anything. Vishnu Sahasranama gives provision to everyone. Choice is yours. According to the level of understanding, according to the level of maturity, one selects. That's all. If my level of understanding is dharma, I will select dharma. If my level of understanding, my maturity of understanding is only taboo, yes, I will chant Vishnu Sahasranama. Chaturvida bhajante mam. Once again, Bhagavad Gita. Okay, now, now see, coming to the conclusion. Conclusion சொன்னாதான் சந்தோஷமா இருக்கும். அப்போ ஒரு 10 நிமிஷம் எடுத்துக்கலாம். பக்திமான் யஸ் சதோத்தாய சுச்சி தத்கத மானசக. ஃபர்ஸ்ட் ஒரே ஒரு ரிக்வயர் குவாலிட்டி, பக்திமான். அவ்வளவுதாங்க. நீங்க ஆணாக இருக்கலாம், நீங்க பெண்ணாக இருக்கலாம், நீங்கள் அலியாகவும் இருக்கலாம், நீங்கள் நாயாக இருக்கலாம், நீங்கள் குதிரையாக இருக்கலாம், நீங்கள் புழுவாக இருக்கலாம். ஆனா ஒன் ரிக்வசைட் குவாலிட்டி இஸ் வாட்? பக்தி, பக்தி, பக்தி. ஓகே, ஃபெய்த், டிவோஷன். அப்போ கரெக்டா சொல்லிட்டார். சோசியல் ஜஸ்டிஸ். பக்திமான் யஸ் சதோத்தாய. பக்தி இருக்கிறவன் யாரெல்லாம் இருக்கோ அவன் காலையில் எழுந்து விஷ்ணு சஹஸ்ரநாமம் படிச்சா, சார் எனக்கு பக்தி இருக்கு சார், ஒன்னு மிஸ்ஸிங். என்னது? மனசு மட்டும் சுத்தம் இல்லை சார். சாரி சாரி, டூ ரிக்வெஸ்டட் குவாலிட்டிஸ், ரைட்? சுச்சிஹி தத்கத மானசஹா. சுச்சிஹி, ஓகே, மனசு சுத்தமா இருக்கணும், இல்லைங்களா? குருஜி அது அப்ப மறுபடியும் கிளாசிஃபை போடுறீங்களே, ஆர் யூ நாட் டினைங் அதர்ஸ்? மறுபடியும் சொல்றேன், ஐஏஎஸ் ஆகணும்னா என்ன பண்ணும்? யூ ஹேவ் டு equip your qualities in such a way. ஆடிட்டர் ஆகணும்னா என்ன பண்ணும்? யூ ஹேவ் டு எக்யூப். இல்ல யார் வேணா ஆடிட்டர் ஆக, யார் வேணா ஆகலாம். இட் வாஸ் நாட் டினைட். ஐஏஎஸ் யார் வேணா ஆகலாம். ஆனா யூ ஹேவ் டு எக்யூப் ஃபார் தட் குவாலிஃபிகேஷன். அந்த மாதிரி யாரு வேணும்னா பகவானோட சரணார விந்தத்தை அடையலாம். anyone can reach, but before that you have to equip. What is that equip? You know, bhakti, shuchi, tadgata manasa. Concentration, concentration, tadgata manasa. Okay, so three requisite qualities are there. Everywhere we are fixing the quality. நீங்க வந்து காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம் எழுதுறீங்க, are you not fixing the quality? You are fixing the qualification or not? No, no. Certain people are denied naturally. Naturally, in the present scenario also we are having. All are equal. Let us understand for social justice. All are equal. All will be given equal opportunities. We are not denying. But you have to equip yourself. You have to upgrade yourself to reach that. Am I right? Am I right? Same thing. All can attain God. All can have this one. Only thing is you have to equip your mind with prema and bhakti. That's all. Right? So, imam stava madiyanaha. Once again, no caste, no creed. Shraddha, bhakti, samanvitaha. உங்களுக்கு மனதில் ஸ்ரத்தை இருந்தால், உங்களுக்கு மனதில் பக்தி இருந்தால், புழுவும் பகவானை அடையலாம். அவ்வளவுதான். That's all. Nobody is denied of attaining the moksha stating their caste. Nobody is denied of attending of moksha stating their caste, creed, color or anything. But மூணு requisite quality இருக்கு. ஸ்ரத்தா, பக்தி. ரெண்டு மெயின். Shraddha and bhakti. Right, next. Finally, with this shloka, we conclude social justice. Let Bhagavan bless the entire society. Right? A human being, creation, jada, chetana, ajada, everyone. Let Bhagavan bless with his shower his blessings among us. Even though differences are there, no difference of opinion should be there. There's a difference? Yes? Even though differences are there, there should not be any what? Difference of opinion. Right? Because difference is inevitable. Difference is what? Inevitable. But having difference of opinion, ucha, nicha, bheda bhava is a crime against Bhagavan. So, artaha, vishannaha, shitilascha bhitaha,
घोरेषु च व्याधिषु वर्तमानाः संकीर्त्य नारायण शब्दमात्रं विमुक्त दुःखाः सुखिनो भवन्तु. No caste, no creed, whoever is suffering. Artaha, though whoever is suffering. Vishannaha, those who are crying. Artha, Vishanna, Shitilascha, those who are broken into pieces. Bhitaha, those who are having fear and phobias. Goreshu cha vyadishu vartamanaha, those who are suffering from incurable diseases. Ellarum sankirtya, all. I insist, all. No particular caste or creed. This is the shloka. So sankirtya, just by telling nartham. Sankirtyana, just by chanting நாராயண சப்த மாத்திரம். அந்த மாத்திரம் சப்த தான் அழகு. ஒன்லி நீங்க இந்த ஒரு மாத்திரம் மட்டும் எடுத்துக்கோங்க போரும். சங்கீர்த்திய, having chanted, having done the nama sankirtana of narayana shabda matram, vimukta dukkha, all are free from all sorts of sorrows. Finally, Guruji, okay, I am free from dukkha, but I am not happy. Vimukta dukkha sukhino bhavan. All are happy. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you, Guruji. When am I audible? Am I audible? Thank you, Guruji, for the awesome session. When we get water, we can either store it in a glass or we can store it in a bottle. But when the water flows like a waterfall, what do? You just enjoy the bliss. That's what it was like, Raghavendra Guruji, when you were taking the session. The success of a speaker depends on how easily the topic is communicated to the audience. And that's where no one can beat Raghavendra Guruji in that. So thank you for that, Guruji, and teaching us that bhakti is the only way of achieving moksha and reaching God. Now, I would like to welcome Ramji, sir, for being present with us during this session, and would request Sridharan, sir, to honor the dignities. Om Namo Narayanaya. It is difficult to speak after listening to such a brilliant discourse by Sharmaji. It is really difficult because he has brought out the essence of Vishnu Sahasranamam as related to social justice. It's a difficult subject, but he dealt with it wonderfully. So I would like to compliment him on your behalf. He has chosen such good names which reflect social justice in Vishnu Sahasranama. What I want to tell you is very simple. This is a satsangam. What you are having now is a satsangam. And you are all lucky, very fortunate, because today you are not watching a TV serial or some movie or something. You are all sitting in a satsangam.
It is very difficult to be in such a place, and only if you are blessed you will be in a satsangam. Take it from me, normally so many people are today spending this time in so many other ways, but you are sitting in a satsangam listening to a very noble, lofty and very purposeful subject in life. Satsangatsve nitsangatvam. Satsangam is not a simple thing. Don't think that satsangam means sitting in a company like this listening to some discourse. It is not so. From satsangam, you are reaching moksham. When I say this, you may not believe it. எப்படி சத்சங்கத்தில் இருந்துட்டு மோட்சம் கிடைக்கும்னு நீங்க நினைக்கவே வேண்டாம். சத்சங்கத்திலிருந்து மோட்சத்துக்கு எப்படி போறதுன்னு ஆதிசங்கரரே சொல்லியிருக்கார். சத்சங்கத்வே நித்சங்கத்வம். சத்சங்கம் இருந்தா டிட்டாச்மெண்ட் வரும். நித்சங்கத்வே நிர்மோகத்துவம். நிச்சங்கம் இருந்தா ஆசை எல்லாம் போயிடும், காமம் போயிடும், மோசம். நிர்மோகத்துவம். நிர்மோகத்வே நிశ్చల தத்துவம். அந்த நிர்மோகத்துவம் இருந்துட்டுன்னா சஞ்சலம் இருக்காது, மனசுல சஞ்சலம் இருக்காது, ஸ்டடி மைண்ட் இருக்கும். அப்படி இருந்தா நிశ్చల தத்துவே ஜீவன் முக்தி. ஜீவன் முக்தி சத்சங்கத்திலிருந்து நேர ஜீவன் முக்தி. சத்சங்கத்வே நிச்சங்கத்துவம், நிச்சங்கத்வே நிர்மோகத்துவம், நிர்மோகத்வே நிశ్చల தத்துவம், நிశ్చల தத்துவே ஜீவன் முக்தி. மோட்சம் கிடைக்கிறதுக்கு சத்சங்கம் தான் ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட். நீங்க எல்லாம் சத்சங்கத்தில் இருக்கீள், ஆகையினால்தான் ரொம்ப லக்கி, ரொம்ப ஃபார்ச்சுனேட்னு சொன்னேன். இந்த விஷ்ணு சஹஸ்ரநாமத்தினுடைய பவர் பல பேர் சொல்லி பல இடங்கள்ல கேட்டிருக்கோம், நீங்களே நிறைய கேட்டிருப்பேன். அதுவும் இந்த மாதிரி இந்த விஸ்வாஸ் குரூப்லாம் இருந்தாக்க நிறைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ், யூ கெட் plenty of opportunities to listen about the power of Vishnu Sahasranama. இப்போ yesterday when I started this inaugural day, I gave 2 or 3 examples. நீங்க இருந்தா உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும், யார் இருந்தீங்களோ அவங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். தெரியா போனா I don't want to repeat. 2-3 ஆக்சுவல் எக்ஸாம்பிள்ஸ் நம்மளே பார்த்ததை நம்ம நம்பலாம். யாராவது சொல்றதை நம்பினா அது ஒரு விஷயம், படிச்சதை நம்புறது இன்னொன்று. ஆனா நமக்கே தெரிஞ்சதுன்னா இட் ஹாஸ் a ஸ்பெஷல் வேல்யூ. இப்போ நமக்கே தெரிஞ்ச மாதிரி இந்த ஆர்த்தா விஷன்னா இவர் சொன்னார். ஆர்த்தா விஷன்னா சிதிலாஷ்ட பீதா. அதனோட பவரை எங்களுடைய விஷ்ணு சஹஸ்ரநாம ஃபெடரேஷன்ல ஒரு வயசான ஒருத்தர் இருந்தார். 94 வயசு, 96 வயசு. ரொம்ப வெரி லீடர். நம்ம விஷ்ணு சஹஸ்ரநாம ஃபெடரேஷன்ல ரொம்ப சீனியர். அவ்வளவு பெரிய பக்தி, அவ்வளவு பெரிய பிலீஃப் விஷ்ணு சஹஸ்ரநாமத்தில். அவர் பிள்ளை அமெரிக்காவில் இருந்தா, நாங்க போயிருந்தார். He went to see his son in America. He was a doctor. அப்போ one day he could not get up from the bed. கால் போகல, நடக்கல, நடக்க முடியல. At that time the doctors came, because his son was a doctor. Many doctors came, saw and said that this is because of old age. 96 வயசாச்சு, அது கொஞ்சம் அப்படி தான் இருக்கும். வின்டர் டைம் கொஞ்சம் ஜஸ்ட் புட் சம் medicine and then all these things, it will improve. Then after summer comes, you will become better. This is what they said. கொஞ்ச நாளாச்சு நடக்க முடியல. அப்படி இருந்து கூட அவருக்கு மனசுல ஒரு பிலீஃப், அவர் சொன்ன மாதிரி மனசுல ஒரு பிலீஃப், ஒரு பக்தி. ஸ்ரத்தா பக்தி சமன்விதா. நான் அழகா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணேன். இந்த ஸ்ரத்தையும் பக்தியும் இருக்கிறதுனால ஆர்த்தா விஷன்னா சிதிலாஷ்ட பீதா 108 தரம் டெய்லி 108 தரம் ஆர்த்தா விஷன்னா சிதிலாஷ்ட பீதாக. ஒரு வாரத்துக்கு அப்புறம் அவரே எழுந்து நடக்க ஆரம்பிச்சிட்டார். சென்னைக்கு வந்து ஏர்போர்ட்ல படி
அப்போ அந்த இது இல்லை, படியில இறங்கி வந்து வீட்டுக்கு வந்திருக்கார். இதெல்லாம் நம்ம பார்த்த எக்ஸாம்பிள்ஸ். அவரே அடிக்கடி சொல்லுவார். போன வருஷம் தான் அவர் he passed away last year, but before that he used to tell his personal experience. இப்போ 2 days back I came to know of an experience. Why I am sharing this is because இதெல்லாம் தெரிஞ்சாதான் விஷ்ணு சஹஸ்ரநாமத்தினுடைய பவர்ங்கிறது வெறுமை இட்ஸ் நாட் தியரிட்டிக்கல் ஆர் அகடமிக், இட் இஸ் சம்திங் ஆக்சுவல் ஃபேக்சுவல். அது தெரியணுங்கிறதுக்காக தான் இதெல்லாம் பண்றது. இது வந்து நமக்கு தெரிஞ்ச எக்ஸாம்பிள் சொன்னாதான் நமக்கும் பிலீஃப் இருக்கும். எங்கேயோ படிச்சதை சொல்றோம், கேட்டதை சொல்றோம், அது இருக்கு. இப்போ 2 நாள் முன்னாடி கோயம்புத்தூர்ல ஒரு டாக்டர், அவர் வந்து he is a practicer of this வர்மக்கலைன்னு உங்களுக்கெல்லாம் கேள்விப்பட்டிருப்பேன். வர்மக்கலை அப்படின்னு ஒரு கலை இருக்கு, நர்வ்ஸை பொறுத்து இருக்குது அந்த ட்ரீட்மெண்ட். அதில் ஒரு ஃபேமஸ் டாக்டர். அவர் ஒரு கிளாஸ் நடத்தின்னு இருக்கும்போது somebody said, ரொம்ப படபடப்பா இருக்கு, I am feeling very nervous, palpitation, படபடப்பா இருக்குன்னு சொன்னான். அவர் உடனே என்ன பண்ணாருன்னா, அது டாக்டரை கூப்பிடணும் அப்படி இப்படின்னா. அவர் சொல்றார், நம்மளே வைத்தியத்தை பற்றி தான் பேசிட்டு இருக்கோம், நம்மளே போய் டாக்டரை கூப்பிடுன்னா எப்படி இருக்கும், பேசாம அங்கேயே இருந்தார். He went and touched his hand. It is narrated by him to me directly. அதனால தான் சொல்றேன். He went and touched his hand, and after about 2-3 minutes he came away and said, our pulse வந்து 130 140 இருந்த பல்ஸ் அப்போ முதல்ல பாருன்னா it came down to 70. 3 நிமிஷத்துல it came down to 70. அப்போ அவரை கேட்டா, நீங்க என்ன பண்ணேன்னு. அவர் சொன்ன பதில், ஐ எம் கோட்டிங் இட், நான் அவர் கையை பிடிச்சு விஷ்ணு சஹஸ்ரநாமத்தில் ஒரு ஸ்லோகம் சொன்னேன்னு சொன்னார். விஷ்ணு சஹஸ்ரநாமம் சொன்னேன், உடனே பல்ஸ் கேம் டவுன் ஃப்ரம் 140 to 70. அவர் நேரேட் பண்ணதை நான் உங்களுக்கு சொல்றேன் டைரக்டா. இது சும்மா இட் இஸ் நாட் தியரிட்டிக்கல், இட் இஸ் நாட் ஜஸ்ட் that we say like this, விஷ்ணு சஹஸ்ரநாமம் சொல்லுன்னா. அப்போ அவர்கிட்ட கேட்டாலாம், முன்னாடி நம்ம கேட்டிருக்கோம், பரமாச்சாரியால் சான்ஸ்கிரிட் காலேஜில் இருந்தபோது ஒரு ஸ்டோரி கேட்டிருக்கோம், நீங்கள்லாம் எல்லாரும் கேட்டிருப்பல அந்த ஸ்டோரியை. பிரதோஷத்தன்னைக்கு பரமாச்சாரியால், காஞ்சி பரமாச்சாரியால் இதில் இருந்தபோது ஃபீவர் 104 ஃபீவர் இருந்தது. விஷ்ணு சஹஸ்ரநாமம் சொல்லி அதை நார்மல் பண்ணி விட்டாருன்னு எல்லாரும் கேட்டிருப்பேன். நிறைய 1930s நடந்தது. அதே மாதிரி இந்த இன்ஸ்டன்ஸ். அப்போ அவர் சொன்னாராம், உங்களுக்கு லோ பல்ஸா இருந்து ஹையா போனோம்னா அதுக்கும் வழி இருக்குன்னாராம். நரசிம்ம ஸ்தோத்திரம் சொன்னால், ஒரு நரசிம்மருடைய ஸ்தோத்திரம் ஒன்று சொன்னா லோ பல்ஸ் கேன் பி brought up very quickly. இதெல்லாம் நம்ம டிஸ்கஷன்ல சொல்றதில்ல, செஞ்சு பார்த்தா தான் தெரியும். அதே மாதிரி அவர் என்ன சொன்னார், விஷ்ணு சஹஸ்ரநாமம் சொன்னா பால்பிட்டேஷனோ ஹை பல்ஸோ இட் கேன் பி brought down. நம்பிக்கையோட ஸ்ரத்தா பக்தி சமன்விதா, ஞாபகம் அவர் சொன்னதுல இருந்து எனக்கு இன்னும் ஸ்ரத்தா பக்தி சமன்விதா தான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஒரு பக்தியினுடைய நம்பிக்கையோட சொன்னேன்னா இட் வில் ஹேப்பன். பகவானே அஷ்யூர் பண்றார், நான் இருக்கும்போது உங்க கேரண்டி, பகவானே கேரண்டி பண்ணிருக்கும் போது நம்ம வேற யார் கேரண்டி? பேங்க் கேரண்டியை நம்புறோம், வேற யாரோ கேரண்டியை நம்புறோம். பகவானே கேரண்டி பண்ணிருக்காரு, அதுக்கப்புறம் என்ன? யோகக்ஷேமம் வஹாமியம். யார் என்ன நம்பின்னு இருக்காளோ அவளோட யோகக்ஷேமத்தெல்லாம் நானே பார்த்துக்கிறேன் அப்படின்னு பகவானே அஷூரன்ஸ் கொடுத்துருக்கும் போது நம்ம வேற எதுக்காக எங்க போகணும்? ஒரு டாக்டர்கிட்ட போய் ஃபீவரா இருக்குன்னா அவன் இன்ஜெக்ஷன் போடுறேங்கிறான், அவன் கை நிட்டுறமா இல்லையா? அவன் என்ன இன்ஜெக்ஷன் போடுறான்னு நமக்கு என்ன தெரியும்? அந்த நம்பிக்கையோட கை நிட்டுறமா இல்லையா? பட் டாக்டர்கிட்ட நீங்க கை நீட்டும் போது அந்த நாராயணன்ட்ட ஏன் கை நீட்டக்கூடாது? நாகம் வசாமி வைகுண்டே ந யோகி ஹிருதயே ரவௌ.
எத்திர மத் பக்தாக காயந்தி தத்ர திஷ்டாமி நாரத. பகவானோட வார்த்தையை சொல்றேன், பெரிய புராணத்திலிருந்து பல செஞ்சுரிஸ் முன்னாடி எழுதினது இந்த விஷயம். நாகம் வசாமி வைகுண்டே, வைகுண்டத்தில் நான் இல்லை. ந யோகி ஹிருதயே ரவௌ, சூரியன்லயோ யோகிகள் மனசுலயோ இல்லை. எத்திரமத் பக்தாக காயந்தி, எங்க என் பக்தர்கள்லாம் பாடுறாளோ, என்ன ஸ்தோத்திரம் பண்றாளோ, சஹஸ்ரநாமம் சொல்றாளோ, தத்ர திஷ்டாமி நாரத, அங்க நான் இருக்கேன் அப்படின்னு பகவானே சொல்றார். இதுல சுவாரஸ்யம் என்னன்னா, வைகுண்டத்துல என்ன பண்ணிட்டு இருக்கார் சுவாமி? படுத்துன்னு இருக்கார். வைகுண்டத்துல படுத்துன்னு இருக்கார். நாகம் வசாமி வைகுண்டே. சூரியன்லயும் யோகிகள் மனசுலயும் உட்கார்ந்து இருக்கார். He is lying down, he is sitting there. எத்திர மத் பக்தாக காயந்தி, எங்க என் பக்தர்கள்லாம் என்னுடைய இதை புகழ பாடுறாளோ அங்க தத்ர திஷ்டாமி நாரத, அங்க நின்று இருக்கேங்கிறார். ஒரு இடத்துல படுத்துட்டு இருக்கார், ஒரு இடத்துல உட்கார்ந்து இருக்கார், பக்தர்கள் பாடுற இடத்துல நின்று இருக்கேங்கிறார். அவ்வளவு இது. திருப்பதியில போய் பார்த்தோம்னா எத்தனை யுகமா என்ன பண்ணிட்டு இருக்காரு? நின்று இருக்கார். நம்மளாம் நின்று பார்த்துட்டு வந்துடுறோம், போய் உட்காந்துக்கிறோம். அவர் உட்கார்றது இல்லை, நின்றுட்டே தான் இருக்கார். யுக யுகமா நின்று இருக்கார் அந்த இடத்துல. அதனால இந்த சஹஸ்ரநாமம் சொல்றது ஸ்ரத்தா பக்தி சமன்விதா சொன்னாக்க அதோட பவரை பத்தி சந்தேகமே படக்கூடாது. அதுல இந்த மாதிரி சத்சங்கத்தெல்லாம் ஆர்கனைஸ் பண்ணி இவ்வளவு அழகாக, இவ்வளவு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல் things have been told, so that you please believe and have faith. ஸ்ரத்தையும் பக்தியும் இருந்தால் எல்லாம் நடக்கும். நாராயணன் பெயர் சொன்னா நடக்காததே கிடையாது. இதை நம்பிக்கையோடு இருங்கோ. நான் சொல்ல வேண்டியது இவ்வளவுதான். எல்லோருக்கும் நமஸ்காரம். Thank you, Ramji sir, for your blessings. May I now request Sridharan sir to honor Ramji sir. वनमाली गदी शांगी शंकी चक्री चनंद की श्रीमान नारायणो विष्णुर्वासुदेवोभिरक्षतु. Next, I would request Sridharan sir to honor Raghavendra Sharma ji, Ramabhadran sir. वनमाली गदी शांगी शंकी चक्री चनंद की श्रीमान नारायणो विष्णुर्वासुदेवोभिरक्षतु. Next, I would request Sridharan sir to honor Raghavendra Sharma ji. श्रीमान नारायणो विष्णुर्वासुदेवोभिरक्षतु. Now it's 11 levels, so we will chant Om Namo Narayanaya. Om Namo Narayanaaya. Om Narayanaya. Om Namo 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 Narayanaya.
सदा सर्वत्र गोविंद नाम संकीर्तनम. I'm seeing some young minds are sitting, right? Young minds are sitting in front of. This is not sufficient. You should have brought more young minds to this conference and seminar. Okay? These two, what's your name? Yes? Shri? Srinidhi and yeah, Purushottaman. Not why we are mentioning when we see another young mind. Yes. So when we see younger generation, we feel happy that these people are very much interested. Bhakyam. So but that's a Bhakyam. Please, probably you might have got some interesting points from this. Please spread this message to next time LIC agent Mari. ஆளுக்கு 50 younger generation புடிச்சின்னு வரணும். Okay? Thank you. Beautiful. You are going to present. Excellent. One interesting question is there. I think you are all from Bhagavata background, right? With one interesting question and answer, we will start the session. Normally, the Astikas are having some confusion in the mind. Guruji, not all Nastikas, some Nastikas. Guruji, no, we don't blame Nastikas. Some people. Guruji, in Ramayana, some people see all wrong things and explore wrong things. Their view. In Bhagavatam, also, they see only wrong things. Wrong things illa. Their view is wrong. Their view is what? Wrong. Okay. View is wrong and propagating the wrong things. What a beautiful ocean. I will dive into this. I will see what is the breadth and depth. All scientific things I will come to know that. I will go and test it. Fourth people, what a beautiful ocean. I would like to sit on this, get a beautiful hava, see the soundaryam of ocean. Only beautiful things. Now you answer me, is the ocean giving only fish? Is the ocean giving only diamond? Is the ocean having only breadth and depth, or is the ocean is giving only soundaryam? Betty, you have to answer. What does the ocean give? What does the ocean give? It gives everything according to your level of understanding, according to your maturity. It gives. So Hindu Mahasamudram is like that. If you want to see only kachada things, it will fulfill you. If you want to see, make it money out of it, it will fulfill you. If you want to see the length and breadth and jnanam of, right, Hindu Mahasamudram, Sanatana Dharma, it will fulfill you. If you want to get bhakti, saundarya, beauty, everything, that also it will give you. Totally, it is your mindset,
your level of understanding, your level of maturity. Right? Thank you. Fourth fellow, fourth person, எவ்வளவுதான் கன்வின்ஸ் பண்ணாலும் ஃபர்ஸ்ட் பர்சனுக்கு புரியாது. You got it? You got it? Fourth person, however he convinces the first person, he will not understand because his level of understanding is what? That only. போவோம் மீனை பிடிக்கிறோம், தப்பு இல்லை. It is not wrong. But you cannot convince them, need not waste our time and energy in convince them. Instead, you dive into the ocean of divinity and get in blessings, abundant, uddara ஆற வழிய பார்க்கலாம். Thank you. May I now call upon Purushottam, class 12 student, to do his first presentation on BSN and medicine. Please introduce yourself first and then go. Namaste to one and all present here. I am Sri Purushottaman from Sri Shankara Matriculation Higher Secondary School, studying in 12th standard. The topic given for me is Sri Vishnu Sahasranamam and medicine. Next slide, sir. These are the table of contents, introduction, importance, benefits that are said in the Vishnu Sahasranamam itself, and benefits that are said in other books, today's research, merits of recitation, significance, and then conclusion. Introduction. Sahasra in Sanskrit means 1000. Vishnu Sahasranamam means 1000 names of Vishnu. Chanting the 1000 names of Sri Hari gives us bliss of mind, and above all, it gives us his blessing. In chapter 149 of Anushasana Parva in Mahabharatam, Bhishmacharya recites Vishnu Sahasranamam when asked for a counsel by Yudhishthira. There is a sloka that should be told after chanting Vishnu Sahasranamam. Achyutananda Govinda Namocharana Bheshajate Nashyanti Sakala Roga Satyam Satyam Vadamyaham. This is said by Vyasa. The meaning of the sloka is Achyuta, Ananta and Govinda. These are the three Divyanamas of Mahavishnu. These are three medicines that destroys all the evils in our body, both physical and mental. And these three divine mantras together are called Namatraya Astra mantras. And Vyasa is so sure that it will dispel all the evils in our body that he says Satyam, Satyam, Satyam Vadamyaham. 2 times he says, I am telling the truth, I am telling the truth. These are the benefits. There is a sloka. Vedyo Vaidhyas Sada Yogi Viraha Madhavo Madhuhu Atindriyo Mahamayo Mahotsaho Mahabalaha. The meaning of the sloka is any treatment that we undergo or that we are going to undergo, it will be successful if we chant this sloka. Krodhaha Krodhakrit Kartva Vishwabahur Mahidaraha. This single line, chanting this single line will give us relief from tension, stress, and so on and what not. Ishanah Pranadav Prano Jeshta Shreshtav Prajapatihi. This sloka gives us relief from respiratory problems. If we have problems in breathing and in lungs, the chanting this sloka will benefit us a lot. Bhrajishnur Bhojanam Bhokta Sahishnur Jagadadijaha Anagho Vijayodeta Vishwayonis Punarvasuhu. This single line, if we do not have any appetite and we do not feel any hunger, if we chant this line, we will get very hungry and we will eat a lot.
Okay. These are the benefits that are said in other books, other than Vishnu Sahasranamam. There is a sloka. Bana bhattaha sutika graha varnane avichinna pathyamana narayana nama sahasram. There is a book called Kadambari that is written by Bana Bhatta. In that, he says there is a Sutikagraham, that is a labor ward, and towards the end of the Sutikagraham, there is a stage where people will always be chanting Vishnu Sahasranamam 24/7. He says that hearing or even chanting of Vishnu Sahasranamam guarantees normal delivery. This is the importance and benefit that Vishnu Sahasranamam gives us. In the Ayurvedic book Charaka Samhita, Charaka says, Vishnum Sahasramurdhanam Charachara Patim Vibhum Stuvannama Sahasrena Jvarane Sarvane Vyapohati. When one worships Lord Vishnu wholeheartedly with his heart, Lord Vishnu gives us relief from all sorts of jvaras. It will leave them at once, all type of jvaras, such as fever, illness, cold, cough, fever, etc. Sage Parashara's Hora Shastram says, Nana Viprakirina Mule Nehasya Prayaschitte Japyamiti. When people used to go to doctors in those days with urinary problems, Nehasya Prayaschitte, kidney related problems, the doctor just used to prescribe chant Vishnu Sahasranamam 3 days per day for a week. It will cure them. What an extraordinary thing that Vishnu Sahasranamam grants us. These are today's researchers, what doctors have found in recent years. There was a research. The researchers observed the effectiveness of Vishnu Sahasranamam for stress management. The participants were asked to chant Vishnu Sahasranamam at 8 a.m. daily for 12 weeks. After that, their BP was checked and it has considerably reduced. And further, their blood pressure was regulated with normal limits. Their depression, anxiety, stress, tension, it was all reduced. If you are suffering from insomnia, see bad dreams every day and have fear of anything. There are many phobias we have today. Fear of dark, fear of ghost. There is no ghost at all. Fear of ghost. And there are many fears that we face today. If you face any of those fears, if you chant Vishnu Sahasranamam, you will not get any fear and you will sleep very soundly. And it promotes our positive thinking and gives us optimistic and thinking about any situation. It is very effective for stress management and it relieves us of stress and creates an aura of positivity around us. Not only if we chant Vishnu Sahasranamam, not only will we be benefited, all the people around us will be benefited. As per Hindu mythology, a devotee has to daily chant Upanishads, Gita, Purusha Sukta, Rudram and Vishnu Sahasranamam. And they are giving us a point. If you are not able to chant any of these in any of the days because of some inconvenience, if you chant Vishnu Sahasranamam alone, it is enough. In Kali Yuga, most of the stotras are cursed by Parashurama, so they are mostly ineffective. So there are a few expectations like Gita, Vishnu Sahasranamam, Devi Mahatmyam, etc. So Vishnu Sahasranamam, chanting of Vishnu Sahasranamam gives us immediate effects in Kali Yuga. One who chant the 1,000 names of Vishnu, we will cross the ocean of miseries and we will reach Parabrahmam, that is eternity, and reach moksha. And devotees of Narayana will not suffer of birth. They will be freed from the recycle of birth, death, and living, and they will attain moksha and reach Paramatma. Okay. When saying about the importance of Vishnu Sahasranamam, Parashara Bhattar says, Mahabharata Saratvat, Rishibhis Pariganataha, Vedacharya Samaharate, Mahabharata Saratvat, essence of Mahabharata. Essence of Mahabharata is Vishnu Sahasranamam. And Rishibhis Pariganataha. The Vishnu does not have these 1,000 names only. He has many other names that cannot be fitted into Vishnu Sahasranamam.
and the name is Vishnu Sahasranamam, so only 1000 names can be taken. The rishis, they have picked up very particular names of Mahavishnu and given us. If you chant this, you will attain moksha. If you chant this, it will grant you immense benefits. So, Rishabhif Pariganataha. Vedacharya Samaharate. Vedacharya is Vedavyasaha. He was the one who compiled all the 4 Vedas. And you must be careful. He did not compose the Vedas. He compiled the Vedas. Before Vedavyasa, the 4 Vedas were together, and all the people used to recite all 4 Vedas. After Vedavyasa compiled Rig Veda, Yajur Veda, Sam Veda, and Atharvana Veda. You chant Rig Veda, you chant Yajur Veda, you chant Sam Veda, and you chant Atharvana Veda. He was the one, he approved of it. Vedacharya, so it is equivalent to Vedas. If we chant Vishnu Sahasranamam, it will be equivalent to our chanting Vedas. Mananatrayate iti mantra. In Sanskrit, it means mantra saves us from worries. In Kali Yuga, Vishnu Sahasranamam is the most effective mantra. Chanting of Vishnu Sahasranamam frees us from worries. It is even proved by scientists. We only believe what foreign scientists say, not what our ancestors say. Okay, it gives us chanting of Vishnu Sahasranamam gives us peaceful sleep. And during the COVID times, in many hospitals, even in foreign hospitals, people chanted Vishnu Sahasranama, and because of that, many got cured of COVID-19. Chanting Vishnu Sahasranama regularly will help us achieve our professional and personal goals, and it will help us relax from stress and improve our positive thoughts. There are many other benefits which I cannot fit into this. And first of all, I want to say, last of all, I want to say is, there are many Vishnu Sahasranamams, such as in Garuda Puranam, we have Vishnu Sahasranamam, and in Padma Puranam, we have one Vishnu Sahasranamam. But this is taken as prominent because of it was approved by Krishna. When Bhishmacharya recited Vishnu Sahasranamam, Krishna was present there and he approved of this. Other Vishnu Sahasranamas are not, I'm not saying the other Vishnu Sahasranamas are not approved, but this is the most prominent one because Krishna was there hearing the Bhishmacharya recite Vishnu Sahasranama. And thank you. Okay, thank you. Hello, wonderful presentation. I have a few questions just to test your, depth. Don't get frightened. Now you said Krodaha. Immediately following is Krodakrit. Exactly opposite. How do you reconcile the two? Krodaha, that's number one. My second question is, you mentioned about, the medicinal effect of that. Okay, that's fine. We all, most of us know about it. You are not explained how it happens. For example, you mentioned about the respiratory problems. If you chant this, pranaha, that sloka, the prana, this 43rd sloka, you will get that. Can you briefly tell me how does it happen? How is it able to cure that one? That's number one. That is the speciality of mantra, sir. That is composed by Bhishmacharya. That is the speciality of the mantra. Chanting it itself gives us immense belief. We do not need to take any tablets or medicines. But you said specifically certain slokas cure certain types of diseases. Why is that? That's number two. I cannot fit all the slokas into this 10 minutes time, sir. Okay. So I picked up one of the... Number third question is, you said the Sara of the Mahabharata is Vishnu. Is not Bhagavad Gita Sara of the Mahabharata? Bhagavad Gita is philosophical. It can be understood only when we have deep understanding of Mahavishnu and Paramatma. But Vishnu Sahasranamam, it just chanting of it will be easy. It's very easy. If you check Vishwam Vishnu Vashakkaraha, easy names, Vishwam Vishnu Vashakkaraha, easy names of Vishnu are given there. And even normal people, those who not have immense, those who not are proficient in Sanskrit also, they can understand Vishnu Sahasranamam. So I said that Mahabharata Saratvat. Good. Nalla samalicha. Nice. Ipo enak or question. Not to end. Intention is not to test you. Because we don't know from which child, even from the smallest child, knowledge comes. I would like to take it.
Yukti yuktam vachograhyam baladapi shukadapi. Even from the child, even from the parent, we should be ready to take the knowledge. So out of, not with any intention. If you don't know the answer, no problem. I also don't know the answer. No problem. Well, let us together, we will find. Now, the topic is Vishnu Sahasranama as medicine. Correct, Amma? Now, in the Laukika medicine, any medicine is coming to the market. Any example, paracetamol. Yeah, or latest COVID vaccination. Any medicine comes to the market, it should cross 10 stages. Has it crossed 10 stages? 1 minute. First step is research. After research, preparation of the tablets, whatever the ingredients are told. Second stage is what? Preparation. Third stage is observation of the clinical chemical changes, what is happening. Suppose these two are mixed, this result will come. As the result has come, that third stage is observation of the chemical changes in the medicine which is happening. Third one, sample. They give it to the public, not to the mass public. They will give one or two people, they will select it and give. Fourth stage, waiting period for actions, reactions. It will take some waiting period. 10 நாளைக்கு அப்புறமா எவ்வளவு ஆகுது, ஒரு வருஷத்துக்கு அப்புறமா இந்த மருந்து எடுத்துட்டா எவ்வளவு ஆகுது, waiting period. அதுக்கு அப்புறமா observation of the effects and side effects of the patient to whom we have given the medicine. அடுத்தது, any mistake is there, rectification, ratification. அடுத்த ஸ்டேஜ் ரீஅப்ரூவல். அடுத்த ஸ்டேஜ் என்ன? பயப்படாத, சும்மா கேட்கிறேன். ரீஅப்ரூவல் அண்ட் ஃபைனல் அப்ரூவல், தென் மார்க்கெட்டுக்கு வரும். இவ்வளோ ரிஸ்க் இருக்கு மெடிசன்ல. ஒரு ஆர்டினரி டேப்லெட்டோ வந்தா மார்க்கெட்டுக்கு வரதுக்கு முன்னாடி இட் ஹஸ் டு கிராஸ் ஆல் த 10 ஸ்டேஜஸ். விஷ்ணு சஹஸ்ரநாமம், சப்போஸ் one shloka, one medicine I am telling, has that shloka has crossed all these 10 stages required or not? 1 minute. Because since you have taken the topic medicine, I am taking. Medicine is not based, will not be, cannot be based on faith or facts and figures. Because உள்ள போய் கெமிக்கல் சேஞ்சஸ் பண்ணும் இல்லையா, அது ரொம்ப ஆபத்தானது இல்லையா. ஸோ மெடிக்கல்ல நீங்க ஸ்ரத்தா பக்தி மெடிக்கல்ல சொல்ல முடியாது. எனக்கு ஆத்ம திருப்தி கொடுத்துக்குது, சந்தோஷத்தை கொடுக்குது, ஃபைன், ஸ்ரத்தா பக்தி இஸ் தேர். பட் when I take it as a medicine, it must have all these 10 stages. So in the 10 stages வேணுமா வேணாமா, which is applicable to Ayurveda also, which is applicable to Siddha also. Is there any answer for this? Would like to know. சார் தமிழ்ல பேசவா? என்னன்னா ஃபாரினர்ஸ் நம்ம கிட்ட இருந்த நாலேஜை எடுத்துட்டு போயிட்டு அவன் மெடிசன் பண்றான். எல்லாத்துக்குமே ஆயுர்வேதத்துல இது இருக்கு. அதனால அவன் அவன் இண்டிஜினஸா பண்ணல. அவன் ஒருத்தர்கிட்ட காப்பி பண்ணி பண்ணும்போது அவனுக்கே அது கரெக்டா இருக்கா இல்லையான்னு தெரிய மாட்டேங்கிறது. அதனால அவன் இந்த 10 ஸ்டேஜஸையும் பண்றான். ஆனா நம்மளை பொறுத்த வரைக்கும் இது இண்டிஜினஸ், நம்ம கிட்டதான் இருந்தது. இது ஆதி காலத்துல இருந்தே நம்ம கிட்ட இருக்கு. அதனால இதை நம்ம if you test it, it will surely pass all the 10 stages. But there is a testing process. Sir, it is said by immortals. We are not, we are mere mortals. How can you take a medicine based on the myth and our ancestors? Medicine ma உயிரோட விளையாடலாமா? சார் ஆனா ப்ரூவ் ஆயிருக்கே, சரியா இருக்குன்னு, உடம்பு சரியா இருக்குன்னு ப்ரூவ் ஆயிருக்கே. இப்ப கூட ப்ரூவ் பண்றாளே. ஆனா ஒரு மெடிசன் ஒருத்தருக்கு ஒத்துக்கும், இன்னொருத்தருக்கு அலர்ஜியா இருக்குமே. அதுதான் சார் விஷ்ணு சஹஸ்ரநாமோட ஸ்பெஷாலிட்டி. எல்லாருக்குமே ஒத்துக்கும், யாருக்குமே அலர்ஜியா இருக்காது. இந்த கொரோனா பீரியட்ல 3 வருஷத்துக்கு முன்னாடி என்னோட சிஸ்டர் கீழே விழுந்து
Hello. கொரோனா பீரியட்ல 3 வருஷத்துக்கு முன்னாடி என்னோட சிஸ்டர் வந்து கீழே விழுந்து முட்டியில ஃப்ராக்சர் ஆயிடுது. அவ வந்து செகண்ட் ஃப்ளோர்ல இருக்கான்றதால லிஃப்ட் கிடையாது. டாக்டர்ஸ்லாம் யாரும் போக முடியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டா கொரோனா டைம்ன்றதால. அவ ரொம்பவே பயந்துருந்தா, ரொம்ப சீரியஸ் ஆயிட்டா. நான் அப்ப லண்டன்ல இருந்தேன். எல்லாரும் ரொம்ப சீரியஸா இருக்காராமா, டவுட்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப இதுவா சொல்லிட்டா. நான் ரொம்ப அழுது. அப்போ வந்து மோகன கிருஷ்ணன் சொல்லிட்டு ஒருத்தர் வந்து எனக்கு விஷ்ணு சஹஸ்ரநாமம் வந்து அவரும் எனக்கு சொல்லி கொடுத்திருந்தார். அவர்கிட்ட சொன்னேன், சார் இது மாதிரி சார் அப்படின்னு. விஷ்ணு சஹஸ்ரநாமத்துல 44வது ஸ்லோகம், வைகுண்ட புருஷ பிராண பிராணத பிரணவ பிரதுகு ஹிரண்ய கர்ப்ப சத்ருக்னோ வியாப்தோ வியாதி வாயு சதோ சஜக. இத வந்து உன்னால ஒரு நாளைக்கு எத்தனை தடவை சொல்ல முடியுமோ நீ சொல்லிண்டே இருமா. நீ எத்தனை நாள் சொல்றேன்னு சுவாமி கிட்ட வேண்டிக்கோ, நீ சொல்லு, நிச்சயமா உங்க அக்கா சரியாயிடுவான்னு. நிஜமாவே அப்படியே 45 டேஸ் சொல்றேன்னு வேண்டிட்டு டெய்லி நான் வந்து அது எந்த டைம்லயும் நான் சொல்லுவேன். இது நான் சொல்றது கேட்டு கேட்டு என் பேரன் பேத்திங்க கூட சொல்ல ஆரம்பிச்சிட்டா. அந்த 45வது நாள்ல எங்க அக்கா எழுந்து நிக்க ஆரம்பிச்சிட்டா இப்போ அப்படின்னா. அதனால இந்த விஷ்ணு சஹஸ்ரநாமத்துக்கு ஒரு நல்ல பவர் இருக்குதுன்றத நான் ரொம்ப உணர்ந்திருக்கேன். இதேதான் அவ சொல்லிட்டு இருக்கா இப்பவும். ஆமா, இப்ப நன்னா நடக்க ஆரம்பிச்சிருக்கா. அதுக்குள்ளேயே இப்ப நன்னா நடக்கிறா. வெளியில எங்க ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கு போகல. நான் சொன்னது இது அப்படியே பிடிச்சுட்டாகும். அந்த ஸ்லோகத்தை எப்ப பாரு அவளும் சொல்றான். சி அவர் சொன்ன கொஸ்டின்ல இது விஷ்ணு சஹஸ்ரநாமம் கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் கிடையாது. இட் இஸ் மோர்லி வைப்ரேஷன்ஸ். இப்போ நம்மளோட வியாதிகள் எதனால் வருதுன்னா, வியாதிகளுக்கு காரணம் நம்ம கர்மாக்கள் தான். கர்மா தான் நம்மளுக்கு வியாதியாக மேனிஃபெஸ்ட் ஆகுது. அந்த கர்மாவை போகிறதுக்காக தான் விஷ்ணு சஹஸ்ரநாமம் சொல்லும்போது அந்த கர்மாக்களுடைய எஃபெக்டை அந்த வைப்ரேஷன்ஸ் மூலமாக அதை குறைக்கிறதுனால அந்த வியாதிகள் வந்து நமக்கு குணமாகுது. I will just say in English for the benefit of people who don't see. All our diseases are only manifestation of our karmas, whatever be that. So that when the Vishnu Sahasranam, the effect of that Vishnu Sahasranam is reducing the karmas or mitigating the effect of these karmas through vibrations, and because of that we are able to get the cure of this medicine. This is what I feel. Maybe you can. Thank you. Excellent, sir. My observation goes like this. Only for the medicines, all these 10 processes are to be undergone. Not for the cure. Not for the cure. Vishnu Sahasranamam is the cure, not the medicine. One thing. Second, as he said, Purva Janma Kritam Papam Vyadi Rupena Badate. In the previous Janma, whatever the sins we have done, that Vyadi Rupena Badate. Now, from the childhood itself, if a child starts telling Vishnu Sahasranama, it doesn't rectify the body, it rectifies the karma. Then karma is rectified, no disease we will get. If karma is rectified, no disease we will get. If no disease you will get, no question of medicine. Thank you. ஒரு நிமிஷம், ஒரே ஒரு அப்சர்வேஷன். விஷ்ணு சஹஸ்ரநாமம் மெடிசின்ல அழகா எல்லாம் அனலைஸ் பண்ணி சொன்னார். ஒரு பெரிய கிவ் ஹிம் எ குட் ஹேண்ட். எனக்கு என்னோட பாயிண்ட் என்னன்னா, the whole thing is in one small nama Vishnu Sahasranama. Nisama Samagasama Nirvanam Bheshajam Vishak. Bheshajamna மருந்து, விஷக்குனா மருந்து. டாக்டர் மருந்து அவன்தா, டாக்டரும் அவன்தா. நிர்வாணம் பேஷஜம் விஷக். இதுல whole thing comes there. நிர்வாணம் பேஷஜம் விஷக். The entire thing is summarized in that. That is my feeling. Thank you. Very happy. Younger generation are coming. Right? You have to rock like anything. So he's coming for the last time also, I think he came. I appreciate your parents for that. So I appreciate your parents for encouraging for such this one research papers, and more research ought to be done. More, you should be dare to. We should be dare to welcome any sort of questions. Okay? Any sort of questions. What is the problem? If we know, we will tell answer. If we don't know, there is no question without any answer. Right? So you just think about it, reflect on it, you will get answer yourself. So you don't have to worry about it. Yeah? God bless you. God bless you.
திருவிளையாடல் மாதிரி எங்களுக்கு கேட்கத்தான் தெரியும் அப்படின்னு. ஓகே. Next, we have Srinidhi, who's pursuing her CA, and she's going to also present on the same topic, VSN and medicine. ஃபர்ஸ்ட் அப்ரிசியேஷன்லேயே ஆரம்பிச்சிடுறேன். இந்த சிஏ டாக்டர்ஸ் ப்ரொஃபஷனல் கோர்ஸ் தோஸ் ஆர் கோயிங் நோ, அங்கே அவங்களுக்கு மைண்ட் செட்டே ஹவு யூனோ ஆல் தீஸ் ஆர் ஓல்ட் திங்ஸ், த நியூ திங்ஸ். திஸ் சைல்ட் amidst those thought is not being shaken mind. God bless you. Excellent. Let them give them the clap, because I have seen நல்லா படிச்சு சமத்தா இருப்பான், ஒரு சிஏ கிளாஸ் போவான், ஒரு எம்பிபிஎஸ் கிளாஸ் போவான், அங்க பிரெயின் வாஷ் நடக்கும், சயின்ஸ் அது இது, அதுல மைண்டு மாறிட்டு குழந்தை என்னாகும், அது முதல்ல முடியல தான் காமிக்கும். ஓகே, ஒரு குழந்தை மாறா இல்லைன்னு முடியல தெரியும், அப்படி விட்டுக்குச்சுன்னா சரி என்ன பகவான் விஷ்ணுவை விட்டு தனியா போறாங்க அப்படின்னு அர்த்தம். ஏன்னா அவர் தானே கேசி. So God bless you. So happy pursuing your CA, and we want such people for the VISVAS, right? Please. Om Namo Narayana. I am Srinidhi. I am here to talk about Vishnu Sahasranam and medicine. Before I go into Vishnu Sahasranamam, I first talk about Sanskrit. Sanskrit is a language that stands above the crowd even in all circumstances because it has a vast vocabulary and grammar. Also, Sanskrit text has all those things that we are researching nowadays. Sanskrit ancient scholars were pioneers in everything and also pioneers in medical science. I would thank all of them for creating Charaka Samhita and other valuable books, and also imbibing the knowledge to all the younger generation. Next slide. Next. Vishnu Sahasranama is a Sanskrit hymn which contains 1,000 names of Lord Vishnu, and it is mentioned in the Anusashana Parva of the great epic Mahabharata. Next slide. Medicine is the science and practice of caring for a patient, managing, diagnosing, and prognosing and prevention of any disease. Also, medicine has various fields such as radiology, psychology, ophthalmology, etc. Here I am going to mention about few organs of the body and also the researches that were made on those, and Vishnu Sahasranama, what it says about them. Next slide. Also, this slide mentions that in the ancient book Tirukural and its translation, it's mentioned how a doctor should be. Next slide. First, let us see about eyes. Eyes are the organs that allow us to see, and also they take in light from the world around and send visual information. Ophthalmology and all those researchers started 1555 BCE or before that. But Vishnu Sahasranamam and other epics like Charaka Samhita also were existing before them, and they showed in many places what was the shape of eyes and its adjoining organs. So what is that function, etc. Next slide. In Vishnu Sahasranama, we find these following words such as Pushkaraksha, Lohitaksha, Padma Nivekshanaha, Aravindaksha, Sudarshanaha, Sulochanaha, all these mentioning the shape of eyes and the adjectives and adverbs that we give to that eyes. And also Sarva Darshanaha is that function of the eyes, that it helps us to see the world and in the recent times, only in the 17th century, a person named Johannes Kepler for research about all these research comparing the old texts and also the new generation and other researches that took place on the eyes, and they concluded many more or less the same things that were mentioned in our ancient texts. Next slide. And next, about the navel. Navel is also known as the umbilicus, or it's a protruding flat or hollowed area on the abdomen at the attachment site of the umbilical cord. Next slide. And also, Padmanabha is a word mentioned in Vishnu Sahasranama. It is in whose navel or nabi
is the source of universe stands. Also, many Hindu scriptures mention that Brahma is known to be originated from the navel of Lord Vishnu himself. And when we compare to the modern era, the navel in human body is nothing that it connects the baby to the umbilical cord of the mother. And then a few other words that mentions the Nabi, he says about how beautiful Lord Vishnu's navel was. Next slide. Face. The word Sumukha means one with a pleasant face. Also, it says about Rama had a very calm and pleasant face even while he was asked to go for an exile. Now, when we compare pleasant or angry, all those Navarasas with the modern, like we have mood swings, like we are very much happy sometimes or very sad. These can be compared with the hormonal imbalances that are occurring inside our own body. For example, oxytocin is a hormone that creates happiness, and it is released when we are surrounded by our loved ones or the one who we love to see and cherish. With some people, we may have a small sort of anger or any other not so happy we'll be made to see them. So at that those times there is another hormone which releases the stress or anger in our body. And also, Srimad Bhagavad Gita also mentions many situations where Krishna shows Shringar Rasa when he dances with his gopikas, or he shows Karunya or compassion when he meets his old friend Kushalan Kushalan was not in a very happy mood or very good condition when he met Krishna after a long time. All these things we compare with the hormones that are secreted by our brain. Next slide. Next slide. And human animal hybrid or animal human hybrid refers to an entity that incorporates elements from both humans and animals. As we all know that we are living in Kali Yuga, and astronomers and few other people mention that it has been 5,500 years plus that Kali Yuga has started. Also, in the current generation, the first human animal hybrid is to be formed by the Mesopotamians 4,500 years ago, but the Narasimha Avadara that was taken place by Lord Vishnu was much earlier to that, and it clearly shows the characteristics of how a good animal hybrid combination should be, that it should not create any bad chaos to the environment. It should be only for the good purpose and motive. Next slide. Next slide. And gigantism and dwarfism, these are also created due to the pituitary gland and its associated hormones in our brain. Vamana is said to be a first dwarf that was to be mentioned in the history. And also, after meeting Mahabali and after a few instances, Vamana grows to an immeasurable height that it can also be compared to a gigantism. In the modern world, a person named Adam Brenner was the only person who was believed to be both affected by dwarfism and gigantism. Next slide. Next slide. Oxygen, as we all know, is a life supporter. Lord Vishnu himself, that in Vishnu Sahasranama says that he is present in all human beings and living entities as oxygen and supports to their life. Next slide. Next slide. Psychology is a scientific study of mind and its own behavior. In Vishnu Sahasranama, there are many places that it is mentioned that God himself is in very pure form and protects the world. And also, if he is in the Rudra or the more anger form, he himself is a reason for the destruction of the same world. In Ayurveda form of psychology, Sattva, Rajas and Tamas are associated with the food we eat and the behavior that we carry. Also, there are many instances in chapter 17 of Srimad Bhagavatam. The slokas 8, 9 and 10 followingly mentions about the qualities of food that a sattvic, rajasic and tamasic person consumes and how it influences his or her own mind. Next slide. Like in this chapter 17, Shloka 8, foods that are too bitter, too sour, salty, or that we know as the fast food in the present generation leads always to Rajasic or a very angry mood, that we always don't have some positive vibrations when we consume those foods immediately. Next slide. And in Shloka number 9, it also says that these foods causes grief, disease, etc. Next slide. Previous slide, please.
previous slide. This is yeah. So this say mentions about sattvic food or that rajasic. Next slide. And these are the words that mention about these three gunas: Bhutaprit, Shivaha, and Rudraha. Next slide. And components of body. In the word mentioned in Vishnu Sahasranama, God says that He is the form of all the 5 elements that is present in a human body. And if we take a human body average of 80 kg, these are all those things that are present inside. And most of 70% is water, and oxygen, nitrogen, they are all part of air. And it is also mentioned, and it can be correlated with that word. Next slide. Next slide. Also, these are the 6 root causes for disease. In Vishnu Sahasranama, it mentions that God helps, Lord Vishnu helps in removing all those worries or pain that we are present in the body. The main reasons for the disease can be any malfunctioning or any problem with the organs or lifestyle and our belief, stress, and emotional and social commitments we have towards our life and the society. Next slide. Next slide. And Vishnu Sahasranama is considered as a vast ocean, and it can that benefit of Vishnu Sahasranama can be attained by saying Sri Rama Ramati for 3 times a day. Also, this sloka is considered as a breathing exercise in many instances. If we are able to hold a breath for a particular amount of seconds, it is believed that our lungs are very healthy. If we chant Sri Rama Rama Ramati without taking any breathing gaps in between for 3 times, it is a check that our lungs are always healthy. Next slide. To conclude, I would say that prayer is the best medicine, and God is the best doctor of our life. Thank you. Hello. Very well researched paper. You have taken a lot of efforts in trying to go into internet, collecting the data and all those things. Very well done. And only thing is, you started talking about medicine, but in between you went into other topics also. You know, like you're talking about the Rajasic, Sattvic, then you went into this Vamana Avatara, all those things. So is there any reason why you wanted to bring in that ideas into this in your presentation? Because hormones are also considered as a part of medicine. Hormone treatments are also present in the modern day medicine, so I wanted to correlate with those things. Okay, thank you. A good answer. So convinced with the paper. I have 2 doubts. How come this Lohitaksha, Aravindaksha, these are all description of eyes? Are there shapes of eyes? I'm not clear with those concepts. No, you told. It's about the beauty of Lord Vishnu's eyes, and it also shares like sometimes you can compare our eyes with different shapes, like round shape or a petal-like form. Those things. Okay. But functions of eyes is not told. Sarva Darshanaha, that says about the vision. The main function of eye is to see the world. So I correlated with that. No. This Sarva Darshana word, how it is connected to functions of eyes? I'm not detailing. No problem. Somewhat, I'm slightly, the shapes of eyes, Lohitaksha, Aravindaksha, and functions of eyes. I want to get more clarification. You can get it. Okay? Because we are Vedic people. We are not aware of science. Whereas you people have got both the chances of going with the Vedic and this one. Try to get it more this one. One thing, this gigantism, I have a doubt. Either in a person due to the genetic impressions, either short form will happen or
this gigantism will happen. How come both are happening in a single moment simultaneously? It may be like during the small age, the pituitary gland or hormone would have not been functioned very well, and it will cause dwarfism. And the hormone treatment sometimes may over exceed the limit that they are prescribed and may lead to gigantism. It may also happen in the adolescent teen years. So a person may have both gigantism and Got dwarfism. it. But fraction of second it will not happen. To Vamana, short for the second step, gigantism was there. But how come it may happen in 1%? Even though the hormonal imbalance or genetical uh, something impressions are there, how will it happen simultaneously in the fraction of second? That should be no fraction of second only. Or can you convince me? I'm not clear about that. No problem. Thank you. God bless you. Wonderful paper presentation. You bring 10 to 15 people next time. You also. Okay. I appreciate your parents for taking you in satsanga. They have come. Have they come? Please call them. I want to add only one comment. Mama. Girl. I want to add one comment. I want to commend you for the research you have done. The research element is something which I should, at this age, it's not easy that you go into the depth of the matter, so much into the depth of the matter. So, on behalf of this satsangam, I want all of you to give her a big hand. Really, very well done. Very good So research. happy, ma. Research mind CA is good. professor, which year, ma? Excellent. Same tempo, same attitude should continue till CA. That we are going to, and you should be ready to serve to the Sanatana Dharma. We would like to honor the parents also. Please wait. All the paper presentation. Your parents are there? Yeah, please wait. We will call them. Okay, thank you, sir. Thank you, parents. On Sarva Darshanam, the what perhaps we can say is Darshanam means vision. Sarva, you can have all visions, short sight, long sight, all visions you can have. So that's one way of answering the Sarva Darshanam. Next, I would like to invite Sudha Bhaskaran, ma'am. She's a VISVAS member and she's a coordinator of Pune. Namaskaram. Good evening, everybody. Good afternoon. M. Pere Sudha Bhaskaran. I am the Pune coordinator for VISVAS. I'm going to talk on the topic Vishnu Sahasranamam and ecology. I just picked up that topic out of the two. And whatever knowledge I have or whatever I have written is closer. Whatever I have gathered in my speech today is all thanks to Ramabhadran sir and all my Gurujis. I have attended the B batch, completed the C batch, and I just gathered information from there. Talking of, so let me first start. Om Namo Narayana, Om Namo Venkateshaya, Om Sri Gurubhyo Namaha. First, talking of ecology. What is ecology? Ecology is a study of organisms and how they interact with the environment. So if you say organisms, Tamil chalom purum puruvum puvum, it means all living things and how they interact with their environment. We have fishes living in the waters. We have amphibians which can move in water and land, and so on and so forth, right up to our human beings. People are even going to space now and living. So how do we interact with our environment? That is my understanding of ecology. Thanks to Mr. Google, I picked it up from there. Okay. Now, how is Vishnu Sahasranamam, which is all of God's name, Vishnu's name, and how is it going to tell us about ecology? How is it connected to ecology? So first, to understand that,
I'll take you through seven principles of ecology. Now, the ecology 7 principles are, it says nature knows best. That is the first ecology, the first principle. The second principle is all forms of life are equally important. Now, this is what we have to understand, that whatever form of life we see around us, or an ant இருக்கட்டும், or a snake இருக்கட்டும், let it be any form of life around us, living, non-living, trees, plants, everything, man as such has got some benefit out of them. Okay, now that is, all forms of life are equally important. So we cannot say na manish. Of course we say that human form is the highest form of the thing, but yeah, a dog is born, it has its own benefit, merits. So all forms of life are important. Now everything is connected with everything else. So each of us are helping each other. Now, for children, we teach them, uh, we say food chain. So there is a herbivorous animal that eats grass. There is grass that is growing in the soil. There is a carnivorous animal which is feeding on the herbivorous animal. There is man who hunts both carnivorous, who hunts the herbivorous, as well as he eats the plants, fruits and vegetables for survival. So everything is connected with everything else. Everything changes. Change means, it is, I would say, time. It also means, the cells in our body. I was very surprised when one person told me that what I am standing now, the next few seconds later, it's not the same Sudha standing here. It is not the same XY person standing there, because your cells have moved and your cells have changed. Now, I went for Vipassana meditation a few years ago, and one of the techniques there they told us was, you sit, close your eyes, you meditate. Let any thoughts flow in your head. Now, even if you have a scratch in a place, don't scratch that area. Just observe that area. The next moment you will find that that scratch has moved from there. Either it is not there or it has moved to another place. You will start feeling the scratch in another place, not because it disappeared, it is because the cells have moved. So there is a constant change every second, every minute of our life. Now, everything must go somewhere. There's always a saying, the world is only a temporary home for you. This is not your permanent home. As Sir always says, we are come here because of our karmas. Our permanent home, Namma Sonda Veedu, is not what we have bought, buildings on this earth, but it is to go back to Vaikundam or go back wherever we came from. So, every one of us, everything in this world, it has to go back, whether we like it or not. Now, ours is a finite earth. எவ்வளவுதான் பாரம் நம்ம இந்த உலகத்து மேல போடுறது on this planet, it cannot bear. So there has to be a limit. Finite means there has to be a limit. And the last one is, nature is beautiful and we are all stewards of God's creation. This was very well explained even in Bhagavad Gita, where God said, Nimitta matram sachin, be only an instrument. I am doing everything. Okay. Now, Vishnu Sahasranamam Shlokams, what I understood after doing the B level course, I'm just quickly going to take you all through. I don't have presentation, so it's only Shravanam and Mananam. I'll take you all through each principle, and
what names of Lord Vishnu I found suitable to each of those principles. Like the first principle, which says nature knows best. Nature means it is creation. Now, when we say the God is the creation and the creator are the same, so it answers your this thing very clearly. It is the very first shloka, like Raghavendra sir said, Vishwam Vishnur Vashatkaro Bhuta Bhavya Bhavat Prabhu Bhuta Krit Bhuta Brit Bhavo Bhutatma Bhuta Bhavana hai. Now, one who is the entire universe himself, he is the reason for this universe to be created, the entire being. One who is inside and outside of every living and non-living beings, one who controls and directs. He is the Lord of the past, present, and the future, creator and sustainer of all beings. He exists within all the splendor, and he is independent of anything else. He is the soul of all beings. He is the one who nourishes and nurtures all beings. So the entire nature, he has created the world. He is inside every creature on this earth, and he is playing the act. All of us are just instruments. We say, oh, I achieved this, I achieved this. No, he made you achieve it. He has achieved it, and we are only instruments in his hands. Now, a few more names. Again, in the third sloka, it is mentioned Lord Narayana is Pradhana Purusheshwaraha, one who is the Lord of primordial matter, that is the Prakriti, as well as the Jivas. With it, he is the Jivatma. In the fourth shloka, Vishnu is referred to as Bhutadir, source of the Panchabhuta, the five elements. Prabhava, he is whom all things were born. And in the 45th shloka, he is referred to as the imperishable seed. Now, the Bijam Avyayam. Now, the seed, as we all know, is the basic thing for a new plant to come up. The seed is the basic thing in a human form for procreation, for a new life to come out. Narayana is also described as Anod, Aniyam, Mahato, Mahiyan. Sir had mentioned that. He is present in the smallest of the small atoms to the biggest of the mightiest. Now in Vishnu Sahasranama, we have a similar shloka for this. Anur Brihat Krisha Sthulo, Gunabrin Nirguno Mahan, Adrita Swadrita Swasya, Pragvamsho Vamshavardhanaha. Now I'm ending the first principle with this. There are many more names that we can pick up from out of the 1,000 names, which talk about how he is related to nature, how he is the creator, how he is the creation himself. Now, just for the sake of the article, I stop myself for the first this thing. Now, going on to the second principle, all forms of life are equally important. Now, God proved this in his own Dashavataram. The complete Dashavataram, if we go through, is the complete evolution of life. He started with Matsya Avatara, which is the aquatic life. Life started in the waters. And then he moved on to Varaha Avatara, and then he moved on to Kurma Avatara, which is an amphibian, turtle. Amphibian can live on water and land. So there's a progression from living in water, you're able to move on to the land as well as live in water. Then there is Varaha Avatara, which is a boar, which is a land-dwelling wild animal. Then he moved on to the Narasimha Avatara, which is half lion, half human being. So we actually stepped in from
the four-legged animal to a half animal. He's still an animal, and to the two-legged human form. Then we have Vamana Avatara, a small innocent child. And then we moved on to Parashurama. Parashurama is the rude, I wouldn't say rude, hot-tempered, you can whatever, whom we can refer to as the early man, the caveman. And then he moved on to Rama, who is the sophisticated, principled Maryada avatar, Maryada Purushottama, a very disciplined. And then you have Krishna, a very strategic winner, at the same time the benefactor of all, and he is a perfect Purusha. So the complete evolution is shown in the Dashavatara, and every type of living being is mentioned there, and everything he took avatara to uphold dharma or to protect the mother earth. So all forms of life are important. Now in Vishnu Sahasranama we have several names which are showing the different Dashavatara. Like we have Sriman in Shloka 3, Keshava Purushottamaha. Then you have Narasimha Vapus indicates the Narasimha Avatara. Then Kapindra in Shloka 53 refers to Rama, the Lord of the monkeys. Kapi also means the boar, so it could also mean the Varaha Avatara. Then in Shloka 60 we have Halayuda, which is Balarama. And then you have the Garuda Dwaja in Shloka 38, one who has the eagle on his flag. Now, why does he have an eagle on his flag? To show that every form of life is important. Now, Sir also mentioned, Raghavendra Sir, how Rama helped, he was living with the Vanaras. He didn't go and search for friends as only the prince or the princess. So every form of life is important. Now, talking about other animals, plants, leaves, flowers, were all given importance. The name Mahoraga in Sloka 72 means the great serpent. In Bhagavad Gita also, Lord Krishna says, among the Nagas I am Ananta, among the serpents I am Vasuki. Now even plants and flowers were given equal importance. Padmanabha means one who has the lotus growing from his navel. Suparna, slok 91, means the golden leaf. In Bhagavad Gita, the world is pictured as the Ashwatha tree and its leaves as the Vedas. The name Vanamali in Shloka 60 means one who is wearing garland called Vaijayati, which is made of leaves and flowers. And we all know that Lord Krishna is very fond of the Tulsi leaf. So plants are also given importance as far as God is concerned. Then names that authenticate the third principle of ecology, that everything is connected with everything else. Now, there are names like Jagata Setu in Shloka 3, where Lord himself is considered as a bridge over which one can cross over this samsara sagara, over the realm of egocentric imperfections and reach the joyous realms of infinite perfection. Now, Prakashatma, meaning the effulgent self. Now, for any life on earth, you need light and heat. If there is no heat, the person, if you go to death, what happens is the body turns cold. Now, it's the heat that gives you life. So, Prakashatma
Pratapana. Prakashatma means the effulgent self. Pratapana means one who manifests himself as the essential thermal energy that lends life potential to the very atmosphere around each living creature. Tejo Vrisha in Shloka 81. One who showers radiance is the sun. Now, there are many names in Vishnu Sahasranama which refer to Lord Vishnu as the sun. Ravi, Surya, etc. Now, Pavana in Shloka 32, one who manifests as the life-giving atmosphere, the air. Pavanaha, he is the dynamism that moves the air. Analaha, again, it's a form of fire. Apam Nidhi in Shloka 35 is a treasure of waters, meaning the ocean. The very glory and mighty of the ocean are all but a reflection of Sriman Narayana's glory himself. Now, Parjanya is, he's similar to the rain-bearing clouds. Now, we all need heat, light, rain, water, soil for cultivation, for plants to grow. Vajasana is, he's the giver of food. Adishtanam, substratum of the entire universe. While churning the Milky Ocean, Lord Narayana, as the turtle, bore the Mandara mountain to stand steady. Sarabha, Sloka 39, one who dwells and shines through the bodies. Now, bodies are also called Sara because they are perishable. In Narasimha Avataram, Lord Shiva took the form of Sarabha, a creature with 8 legs that could kill lions to control the anger of Narayana. Now, fire, light, heat, are all essential elements of life on earth and are interconnected. Now, principle of ecology, the fourth one, everything must change. Now, change is time, directly or indirectly, always moving, hence always related to seasons, years, age, etc. So, a few shlokas are, aha, when day dawns, man wakes up from sleep, that is ignorance. So, the name aha means one who is like the day that awakens people from ignorance. Samvatsara, one who is a personification of the year. Now, not only change in age and season, now Rudra and Shloka 13, one who wipes away the misery of his devotees and the reason for it. So that again is a change. Now, Vibhu, one who manifests himself in different forms. So, taking different forms is also a type of change. Now, fifth principle of ecology says everything must go somewhere. As I had already explained, Swami Vivekananda said, all of us are moving towards Godhead, whether we like it, whether we want it or not, or whether we know it or not. Ultimately, one day we all will reach Vaikuntham or heaven. Now, those who know it, the Mahatmas and the Gurujis, if you have a Guru or if you are a follower of a Mahatma, they have already realized the easiest and the best way to reach that destination. So they will tell you how to reach there faster. Even if you don't have a Guru or a Mahatma, you don't follow, you will still reach there, but after a lot of suffering and shedding tears in this world.
I already talked about Jagata Setu, where God is considered as a bridge to cross this samsara sakara. And Vishnu is referred to as Shamaha, one who destroys everything in the final state during deluge. Now, the sixth principal state, ours is a finite earth. Now, during deluge, after Pralaya, God, everything ends and new life starts. Had this not happened, imagine the earth will get overcrowded, crowded, and there's no place, there would be no place. So, death is not something to fear. It has to happen because new things have to come up. And God Himself has planned it. When He has created this earth itself, He is the one who will bring in the deluge as well. Now, there are a few shlokas. Varunaha, in the evening, the sun reaches the western horizon, so the sun is called Varuna. Like the setting sun, the Lord Himself withdraws all the pluralistic world into Himself. So He is also called Varuna. Bagaha signifies the one who, during deluge, destroys all the six glories: the wealth, the power, the dharma, the fame, the character, knowledge, and dispassion. Now, the last principle is nature is beautiful and we are stewards of God's creation. So we all know Krishna, how beautiful he is, and he's got a lot of gopis around him. We know Lord Rama, very handsome, and Lord is also referred to in Sloka 13 as Amrita and Madhu, the unsatiating nectar to his devotees. He is also called Sriman, meaning possessed by beauty. He's got a Hiranyanabha, one who possesses beautiful navel. Hamsa, as beautiful as the swan. Shragvi and Vanamali again, one who's wearing the beautiful Vaijayanti Mala. Lord Vishnu is present in every form of nature and environment. In Bhagavad Gita, chapter 11, sloka 33, the Lord says, Nimitta matram bhava savya sachit. He advises Arjuna, don't fear they are your relatives, you're killing them, whatever. It has all been done by me and I am doing it. You are only an instrument and you take the glory of having won over the war. Now, through Arjuna, he is advising all of us to surrender completely to him, be only his instruments in this world. It's Lord Narayana who does everything, not us. When he takes over, your ego is completely gone and we have no more fears of prarabdha. Thus, in the Falastuti, it is said, all this world of sun and stars, moon and sky, sea and the directions are but borne by valor the great of the great God Vasudeva. All this world which moves and moves not, and which has devas, rakshasas, and the gandharvas. All these people are within us. They are not like people wearing clouds or crowns or big this thing. These are characteristics within us. And also asuras and nagas. It is Lord Krishna without fail. Sage Vyasa salutes Lord Narayana saying, my salutations to you, Vasudeva, because you who live in all the worlds made these worlds as places where beings live. And also, Vasudeva, you live in all beings as their soul. Om Namo salutations to Vasudeva. Now, I would like to end my talk with the thought for each one of us that we should ponder on
It's our duty to give to our future generations this earth that was given to us with all its fertility, as luxuriant as God made it, and with varieties of the flora and the fauna as was given to us. But what are we doing today? For our own benefit, we are cutting down forests, we are building buildings. There is war going on in some part of the world where to show your power, you drop bombs, you just damage the nature completely. And because of that, we are suffering today emergence of floods, tsunami, global warming, grave diseases like corona. We are not able to breathe in the oxygen completely. When you go out, you have to wear masks. So it's high time we realize our mistakes and make amends to the damages that we have done to our beautiful blue planet. Om Namo Narayana. Om Namo Venkatesaya. Thanks, Sudhaji, for making this presentation amidst your busy schedule. You taken efforts to bring up this. It's a very interesting topic because today everybody is talking about sustainability, right? From the government to political organizations to business organizations, everywhere people are talking about sustainability as the goal. So, which is what you brought out. Now, since you say that Bhagavan is everything, even this kind of changes that are happening in the, this environmental pollution, can be attributed to Bhagavan himself? Because Bhagavan is everything. So what is happening around us, the wars or the floods, etc., is not what God wanted us to do. When He created the planet Earth, He didn't create man with these ideas. But it is, like I said, the Rakshasas and the Gandharvas are within us. It is the Rakshasas, the ego, the selfishness, the greediness, which is making us, we want power. We want to show that as a human being, I am strong and I can control everybody. So it is the greediness which is making us. Science should develop. Man should become educated. We cannot live as cavemen all along, but it should be for the benefit of the society and not for destructing it. But what we are, like, for example, people who talked about medicine, there are a lot of medicines Ayurveda takes from herbs, plants, animals. So you need to use them for betterment for medicine. But cutting down trees, deforestation, for the sake of building houses, building, making money out of it, and being greedy for power. You know that a lion or a snake is a innocent animal. It doesn't attack you. But to show your power, you want to control the animals around you. You want to cut down the trees because the tree cannot fight back and say, "Why are you cutting me?" So, greediness. What we should avoid is being greedy. What we should avoid is try to be kind and helpful to the other living beings around you. And the floods and things are happening not because God is creating it. It is because, like, we cut down the trees, and so there is soil erosion, and so the rivers are abounding and floods are happening. The rains are not happening properly. The seasons are not coming on time. Not because God wanted it to happen. It is because of science, where because you cut down the trees, the water is not evaporating properly. The clouds are not forming properly, and therefore the seasons are changing. Okay, thank you. May I now request Ramabhadran sir and Raghavendra Sharma ji to honor the students, Purushottam, class 12th,
and Srinidhi, who is pursuing her CA. And Allah, please come along with your parents. If the children are in satsanga, my observation, if the children are in satsanga, credit goes to the parent. If the children are in dushta sangha, credit goes to the children, not to the parents. Hats off to you, sir. You have inspired the child by putting in satsanga, right? More, right? Even after finishing CA, brilliant people like you should contribute to the Sanatana Dharma. Will you promise? Thank you. God bless you. वनमाली गदीशांगी शंकी चक्री चनंद की श्रीमान नारायणो विष्णुर्वासुदेवोभिरक्षतु वनमाली गदीशांगी शंकी चक्री चनंद की श्रीमान नारायणो विष्णुर्वासुदेवोभिरक्षतु. Thank you. Purushottam. वनमाली गदीशांगी शंकी चक्री चनंद की श्रीमान नारायणो विष्णुर्वासुदेवोभिरक्षतु. So now we have Rajalakshmi ma'am to do presentation of ecology and Vishnu Sahasranamam. Hello. Yes, ma'am. Am I audible? Ma'am, you are audible. There is a time limit, ma'am. So 10 minutes is the time limit, ma'am. How many minutes? 10 minutes, ma'am. Thank you. You're on mute. You're on mute. You're not audible. You're on mute, I think. Yeah, now it's okay. Now it's okay. Dharma Supreme One. Now, as being students of VISVAS, we know
Vishnu Sahasranamam is for a very elaborate explanation. Now we see is the and ecology talks about the living organisms and the physical environment. Any explanation under the Hindu Sanatana Dharma, the pramanam or the proof is our Vedas, Upanishads, which are much elaborated in a much understandable way by our Itihasa and Puranas. Now, the relationship for Vishnu Sahasranamam, that is the Divya Namas of Lord Mahavishnu, that is the Ishwaran, and the ecological factors, that is the living organisms and the physical environment, is well explained in our Vedas and Upanishads. The Shvetavasra Upanishad says, Edat Nyayam Nityamevatma Samstham Nadaha Param Vedi Davyam Hi Kinjit Bhokta Bhokyam Preridakya Matva Sarvam Proktam Trividam Brahma Medat. I am sorry for if I am not good in my Samskrita pronunciation. The meaning of the above verse is that one should know and understand that Brahma or the Parama Purusha dwells within the Jivatma. That is his Andaryamitvam. Nothing else need to be understood. One should understand that Parama Purusha as the enjoyer, enjoyable Vastu, and the one who commands. That is these three ways, in these three ways as Brahman. That is what this says. Two important aspects that comes out of the above verse is that Paramapurusha or the Brahma. The meaning given by our Guruji in his speech was Brahma means big. Brahma expresses himself in three ways. As one who enjoys, that is Chit, Jivatma, or the living organisms, thing that is being enjoyed, Achit, Achetanam, Prakriti or physical environment, and the one who commands or directs, that is Ishwaran. All the above three are always together. The first one is known as Tattvatrayam. That is the thing which is explained, the relationship between Chit, Achit and Ishwaran. The three tattvas as Chit, Achit and Ishwaran. The second one is the relationship between the three known as Sarira Atma Bhavam or Sarira Sariri Bhavam, which we will not discuss here. The first one we will discuss. For our topic, we will just take the first one. The living organisms and the physical environment, that is Chit, what is coined within the term ecology. Chit and Achit or the Chetana or Achetanam are known as the lower tattvas and Ishwaran is the Paratattvam. In Taittiriya Upanishads, when there was a discussion between Maharishi Bhrigu and he says, Bhrigu, Varuna, when he is answering Bhrigu, he says, Yadevo imani bhutani jayante yena jatani jivanti yat prayanti abhisam visanti tat vijiknya sasva tat brahmeti. Means that from which all had their existence or origin, that which is being sustained after their existence at the end, to that which goes and merges is known as Brahman. So the absoluteness of Brahman, the omnipresent, the omnipotent and the omniscient Brahman is Sriman Narayana. This is actually explained in the last verses of Purusha Suktam. Sri Mahavishnu and his ecological relationship is established in the Dhyana Sloka of Vishnu Sahasranamam as below. Bhubhadav yasya nabhir vyedasura nila shantra suryausa netre karna vasha shirav dhyaur muhammabi dahano yasya vasteyamaptihi andastam yasva vishwam suranara gagago bhogi gandharva daityehi chitram ram ramyadetam tribhuvana vabusham vishnumesham namami. It says that it explains how the whole universe
is like the various parts of Mahavishnu, and it goes to give the explanation that way. Now, apart from that, I have tried to choose certain namas from the Vishnu Sahasranamam. Here, a big thanks to the VISVAS. When I took the second level, that is understanding of the meaning of the Vishnu Sahasranamam, a book was presented, given to us. I felt that it's the right book for me to even do PhD on the Vishnu Sahasranamam. Leaving that apart, certain namas have been chosen. I will quickly go through. Vishnu is the Lord, enters and pervades all sentience and non-sentience. He is the souls to all. He dwells within all. This pervasive presence is indicated by the nama Vishnu. The namas which are the certain examples, certain namas taken as examples, goes to give us the relationship between the Chit, Achit and the Ishwaran. Bhudakrit, he creates all at his will, just as he wishes, all being subservient to his wish and interest. Bhudabrit, he bears all the world and all things. He keeps them as they are in their position. Bhudhatma, he being the soul and the antaryami to all beings and things are but his own body. Bhutha Bhavanaha, the Lord is the one who nourishes all beings, sustains them, feeds them, regales them too, so that all such will be fit to subserve him. The Seshi, towards whom the Sesha Buddhas have only this function. Paramatma, the Lord, the Supreme Soul, has no higher or superior authority over him. He is the Atma to all. He is the Lord of all, but he has no Lord over him. Pradhana Purusheshwaraha, he is the master to both the Prakriti and the Jiva, and so he directs them both. Bhutani, he is the one who is resorted to by all beings with a recognition that he is the supreme goal. Swayambhu takes avatars as birth at his own will and pleasure. In the avatars also, he retains his supreme sattva character. Vishwakarma, the Lord is the author of all actions prior to and posterior to the creation of Brahma. All the functions with regard to the universe are his own, and it does them as his own. Manuhu, the Lord wills, and by that will creates all. Tvashta, the Lord carves out all the species, the devas, the humans, and others with a characteristic form, nature, name, etc., respectively, causing to our observation a difference, an identity, and a contrast. Stavishta, the stoutest person, means he is large sized with a vast expanse. From the subtle elemental Prakriti, he is developed by pure will, the devas, the humans, the animals, plants with their senses. Also the various sense objects, thus the 14 worlds and the whole Brahmanda, and the Prakriti encompassing it with a wide variety of expansions. All this constitutes the Lord, and hence the name Stavishta. Krishna, one who is happy with the sport of creation, sustenance, and termination of the world. Ishana, the Lord is the controller and the conductor of all beings and things in the worlds. Papru, he bears all the worlds in the form of Adisesha. Then Vishwayonihi, he is the germ seed, the cause of the universe, which is spun out of him, the prime cause of all worlds. Mahashakti is power, being mighty in magnitude. Mahipratha, the Lord is the bearer, protector, sustainer of the whole earth. So this way, there are various other namas taken to go to establish the relationship between, from Vishnu Sahasranama, to go to establish the relationship between the Chit, Achit and the Ishwaran. Now, the above namas of Vishnu, there are many other namas also. Apart from the above, if you see in Hindu Sanatana Dharma, the ecological factors and the importance given to them to acknowledge and protect the sanctity is seen in many factors and practices. For example, when we go to temples, each temple has a Sthalavriksha, a Tulasi plant, a Vilva tree. Tulasi Tirtham is given in all the temples. Bhagavan revealed himself as Vanarupi in Naimisharanyam. Chakra Tirtham is being worshipped. Nature is protected under the divine guidance for the divine service by the devotees. The Lord enjoys wearing Manamala, irrespective of be it animals, plants, humans. Everyone is the same for the Lord, who protects, sustains, destroys, to maintain the ecological balance under his creation. It is his own creation. He has to
he is a caretaker too. The chanting of the Divya Namas through Vishnu Sahasranama and understanding the meaning of the Namas helps us, the humans, to protect the nature of Prakriti with the divine grace, which help us to maintain the ecological balance. This will make the earth a better dwelling place for the living organisms. The scientific intellectual knowledge about nature and its preservation, combined with the knowledge of the divine force and the guidance behind it, will help us to bring this ecological balance and the relationship between these the Divya Namas of Sahasranama, which goes to which is nothing but the Bhagavan himself, and to go to bring the ecological perfection, balance and the perfection. So to conclude, let us chant Vishnu Sahasranamam, understanding the meaning of the Divya Namas, which makes our life on this earth more meaningful. With the divine grace, let us protect the nature and be protected by the nature. Sarve Janaha Sukhino Bhavantu. Sarvam Krishnarpanam. Thank you for the opportunity. It is, to be honest, the B-level book given by VISVAS helped me a lot to understand the deeper meanings of the namas, which has kindled the curiosity in me to proceed further. Thank you all. Thank you, Madam Rajalakshmi, for presenting the ecology. And I think you brought in a very good aspect in terms of, the temples, how they protect the temples. we are not able to hear you. Then we have a culture of protecting the cows, go puja, several things. The ecological thing is interwoven into our Sanatana Dharma. So you have brought out that point well. So thank you very much. I think somebody wanted to share their experience. So we'll just give them 5 minutes to share the experience. 5 minutes share. 5 minutes experience. Excuse me. Madam. 1 hour. No? Yes, ma'am. Ma'am, you wanted to say something, Rajalakshmi, ma'am? Ma'am, can you hear us? Yes, ma'am, you are audible. Sudha ma'am, you wanted to convey something? ఓం నమో నారాయణ అండి. ఓ శ్రీ గురుభ్యో నమః. నా పేరు శ్రావణి. నేను వరంగల్ నుంచి వచ్చాను. నాది బి బ్యాచ్ కంప్లీట్ అయిపోయింది కామేశ్వరి గురుగారి దగ్గర. నాకు నా అనుభవాన్ని మాతృభాషలోనే చెప్పాలనుకుంటున్నానండి. ఎందుకంటే మాతృభాష మనకు హత్తుకునే విధంగా ఉంటుంది, చెప్పడానికి చాలా సులువుగా కూడా ఉంటుంది. దయచేసి అర్థం కాకపోతే నన్ను మన్నించండి అందరూ. నేను చాలా అంటే ఆరోగ్యంగా చాలా సమస్యలు అనుభవిస్తూ ఉన్నాను. కానీ నేను విష్ణు సహస్రనామం ఎప్పటి నుంచి అయితే చదవడం ప్రారంభించానో, నేను కింద కూర్చోవడానికి కూడా చాలా సులువుగా కూర్చోగలుగుతున్నాను. ఇక్కడొచ్చి నేను కింద కూర్చొని పారాయణ చేయగలుగుతానో లేదో అని అనుకున్నాను. కానీ 3 రోజులు నిర్విరామంగా కింద కూర్చొని పారాయణ చేయగలిగానండి. అది నా బెస్ట్ అనుభవం అని చెప్పొచ్చు అందరికీ. నాకు ఏమి అవ్వలేదు. ఇంతకుముందు నేను అలా కింద కూర్చుంటే నేను అసలు లేచి మళ్ళీ తెల్లవారు లేచి వచ్చేదాన్ని కాదు, తెల్లవారు లేచి ఉండేదాన్ని కాదు. కానీ చాలా చక్కగా మళ్ళీ లేచి ఇక్కడ పార్టిసిపేట్ చేయగలుగుతున్నాను. వాలంటీర్ సర్వీసెస్ కూడా చేయగలుగుతున్నాను. అది నా చాలా చక్కని అనుభవం అని చెప్పొచ్చు.
మా పిల్లల విషయానికొస్తే, మా పెద్దవాడు కడుపులో ఉన్నప్పుడు నేనంటే 2004లో ప్రతిరోజు విష్ణు సహస్రనామ పారాయణ చేసేదాన్నండి. నాకు తెలీదు అది ఎంతవరకు సైంటిఫిక్‌గా పనిచేస్తుందనైతే తెలీదు. కానీ మా బాబు ఏదైనా చెప్పగానే విని అర్థం చేసుకొని దాన్ని చెప్పగలుగుతాడు. ఏకసంతాగ్రాహి అని అనొచ్చు కావచ్చు. పెద్దవాళ్ళ ముందు అది మాట్లాడొచ్చో లేదో నాకు తెలీదు. కానీ మా బాబుకైతే ఆ అవగాహన ఉందని నాకనిపిస్తుందండి. మా చిన్న బాబు కూడా సహస్రనామాలు పాడగలుగుతాడు. వాళ్ళు ఇక్కడికొచ్చారు. చిన్న చిన్న హెల్త్ ప్రాబ్లమ్స్‌తోని ఇప్పుడు ఇక్కడ ప్రెజెంట్ చేయలేకపోయాను నేను వాళ్ళని. చక్కగా పారాయణం చేయగలుగుతారు ఇద్దరు పిల్లలు కూడా. పెద్దవాడికి 17 సంవత్సరాలు, చిన్నవాడికి 6 సంవత్సరాలు. చాలా చక్కగా పాడతారు. అందుకు నేను ఆ నారాయణుని కృపకు పాత్రురాలని అనుకుంటున్నాను. అంత మంచి పిల్లలు చిన్న వయసులో పారాయణ చేయగలిగే పిల్లలు ఉన్నందుకు అది నేను గాడ్ గిఫ్టెడ్ అండి. ఇది నా ఎక్స్‌పీరియన్స్ అండి. ఈ ఇక్కడ మాట్లాడడానికి నన్ను ప్రోత్సహించిన మా గురువుగారైన కామేశ్వరి గారికి అండ్ ఈ అవకాశం ఇచ్చిన ఇంత మంచి పెద్ద వేదికను నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చినందుకు శ్రీధరన్ సార్ గారికి, రామభద్రన్ సార్ గారికి నేను కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటున్నానండి. థ్యాంక్ యూ సార్. థ్యాంక్ యూ. May I request Sudha Bhaskaran ma'am to come? We would like to honor you, ma'am. Ramabhadan sir ji, Sharma ji sir. Thanks, Sudha ji. Sudha madam is from Pune and one of the strong. You have done ABC all the three, no? You have done ABC all three. You have done it, no? Very good. And she's a coordinator of a big satsang, and dedication, everything is very good. And she's arranging a 2-day program in Pune, March 4th and 5th. Good wishes, ma. Thank you, praying Shriman Narayanan for your success. Huh? Thank you. Hello. Thank you, Rajalakshmi madam. Thank you for presenting it. Unfortunately, since you are not in the mandapam, we are not able to honor you physically. But definitely, when you are back in once you are in India, we will definitely would like to honor you. Thank you once again for your help. இப்போ இங்க 3 சேர் போடுங்க. இங்க 3 சேர். Let the online chanting be on the left side of Sridharan sir. May I request Sridharan sir, Ramabhadran sir and Sharma ji to get seated in the middle.
Now we have an interesting discussion, a debate, or rather talk. And Sridharan sir would like to give a few words before that. Om Namo Venkatesaya. I think this is the third session of the sixth day of the Saptaham, and it's very interesting. It's a new subject, but interesting. In fact, we have been talking on this subject for the last maybe 2-3 months. It will be very lively. I think our speakers are getting ready. Uma has already told all the people to clap whatever she is going to say. She has taken majority. But anyway, it's very interesting. The subject is the merits and demerits of online satsang. We can talk. In fact, they have told me not to talk because I may leak out the important points what they are having in mind. Hence, I'm not going into the detail. But it is very interesting. The need of the hour, because we started that online satsang about 8-9 years back. Of course, Corona came about 5-6 years back only. So we had experience in online and not satsang batches. Subsequently, we have created more than 1,350 satsang all over the world, out of which online itself must be about 800 satsang. So very interesting subject. I wish good the team, a good debate, and come to some conclusion. Om Namo Venkatesaya. Thank you, ma. Okay, the general rule is that we'll be given 5 minutes for each participant to talk on the topic given to you. So let's follow the timeline because we are already running late. So let the participants also have a watch on the clock, which is right in front of you. So handing over to my Guruji, Raghavendra Sharma ji, to be the moderator. Shri Gurubhyo Namaha. செவிக்கு உணவில்லையேல் சிறிது வயிற்றுக்கும் ஈயப்படும். ஸோ நீங்கள்லாம் சாப்பிடாம உட்காந்துருக்கீங்க, இல்லை யாருக்கும் சொல்லாமல் போய் சாப்பிட்டு உட்காந்து வந்துட்டீங்க. 2 கேட்டகரி. ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங் டிபேட் இது. ஆன்லைன் சாண்டிங் பெஸ்டா, ஆஃப்லைன் சாண்டிங் பெஸ்டா? திஸ் இஸ் அ டாபிக், நோ? But chanting itself is the best thing. Chanting itself is a best thing. So, how are we going to decide the topic? Whether you chant online or offline, both are best or not? So the topic is slightly to be modified, right? Because taking Bhagavan Nama in the online or offline, both are punyam. The thing is, teaching online or offline is which is better. But there also a small problem comes. While teaching online or offline, there also you are going to tell Bhagavan Nama only. Ultimately, Bhagavan Nama only you are going to tell. How can you define chanting Bhagavan Nama or teaching Bhagavan Nama online or offline, right? Which is better? Both should be equally good. But here, we are not for that. Which is better? Which is better or which is best, right? Let us see. Always know, in court, my observation, in court, justice is not winning. The lawyer's interpretation is only winning. Correct, sir? How the lawyer break the, how he
put forth is Vada Vivada. Based on that only judgments are given. Okay. So let us see. When we conclude anything, right, it does not mean that this decision is permanent and forever. Based on your arguments, what you put forth, based on your refusals and arguments, what you put forth, on this basis, we decide. Right? Thank you. All the best. We would like to introduce who is online, ma? Online. Good name? Ananta Lakshmi. Purnima Rao. இவருக்கு ஆன்லைன் தான் பிடிக்கும். ஏன்னா ஒரு ஆன்லைன் கிளாஸ் விட்டுக்க மாட்டார். ஒரே ஒரு ஆன்லைன்ல இருக்காரு. ரைட். ஸோ கமலநாதன், Indira Jagan for supporting online. In offline, they have never gone to offline. Okay, right. Nirmala ji supporting offline. Anita in favor of offline. Uma supporting to offline. And my beloved Sishya Sushmita. அங்க சொல்லிட்டா சார் வந்து beloved சிஷ்யான்னு சொல்லிட்டாருன்னா என்ன அந்த சைடுன்னு நினைக்காதீங்க. ஓகே, தட் இஸ் டிஃப்ரெண்ட். ஓகே, ஸோ we welcome you all. Okay, let us have a beautiful discussion, not argument. Right? Thank you. Normally, one of the judges made a comment: when any case comes, the two parties knows what is truth. The accused knows, and then the other person is the plaintiff knows which is the truth. It is only the judge who is being put to test to identify what the truth is. So, like that, we are being put to test. The both of us are being put to test what is the right one. So, may the best team win. Om Namo Venkatesaya. Only thing is, we have a time constraint. Please restrict to the time, each one of you. Thank you. Now, Om Namo Venkatesaya. Due to time constraint, because at 2 o'clock we have to start the Nama Sankirtanam, committed to various people all over the world. We have to finish this in 145 or 150. I understand there are 4 plus 4, 8. 8, 5 minutes only. So you yourself should decide, because we have not got the drink bell, no. So you yourself should decide so that we all can have quick lunch at them. Sushmita, only after 5 minutes you can change the participant, ma, and 5 minutes. Thank you very much. Now, Srimati Ananta Lakshmi will be supporting, putting her points in favor of online. Your sir is in online or offline? Your sir is in online or offline? Watching you. Online only. Right. Pranams to Gurujis. Pranams to both Gurujis, all my Gurujis. So now I'm here to speak about a discussion about online classes. See, the discussion is about bhakti through online or physical. The vibrations or connecting is completely on online or physical. Now, coming to the latest technology, I have learned Vishnu Sahasranama through online mode only. So online mode is a very convenient. Now everybody wants to go with the time constraint. யாரை பார்த்தாலும் we have time இருக்கான்னு தான் கேட்டுட்டு இருக்கோம். So when we go to online, the barrier of going into bhakti, where time becomes a barrier, that is broken. So when the barrier is broken, we have more opportunity to enter into the world of spiritual. I mean, if any barrier is there, it is good to break. We had in olden days, we had all scriptures in a written form. Now we are not able to see anything into hand. Everything is into digital mode or a book, whatever it may be, the revised mode. So time is the main concern where we come to the online mode. So I support on the times that in that contest, online is the best mode of learning into Vishnu Sahasranama, whatever it may be, or bhakti, whatever, connecting to a spiritual ways.
The second is that coming back to the technology, where the old people and the new people comes into picture. There are lots of people, young people doesn't have time to enter into spiritual or learn something which is good for their life. And old people, they don't have physically supportive to walk into or somewhere. I mean, they have their intention to do bhakti, but their physical sometimes doesn't support you. But that shouldn't be a barrier. So when it comes to online, even people who are physically challenged or old age people, they can also stay connected with the satsang. So that again, coming to the age factor, the latest technology, the barrier of people connecting is again broken to do bhakti. So that's why I support online mode. The third one is the geography. Now my friend or whoever it may be, sir, asked my husband is connected online or physical. He is staying away from Chennai. So that we can connect every people across geography when it comes to online technology. It is not like only people in the local to a particular thing. If a person will have an intention, suddenly has a travel plan somewhere. For example, I am into a B group where my Guruji is traveled to Australia, but still that doesn't stop the classes or my learning into that. So that is one of the best thing where we stay connected to the spiritual. We just wanted to break up all the barriers wherever it is stopping us to do bhakti. So that one barrier is what, not a barrier. The advanced technology is what online. Online is not always seeing the WhatsApp or whatever it may be. I think everybody will be with the phone. It is just a mode of communication. It is not something advanced. So we are moving away from we are going into very modern era. We are just break the barrier of reaching the God or whatever it may be. That mode is broken when online. We have lots of satsangs now. Online satsang is more than a physical satsang. Where I am also a part of online satsang, where my time, I can choose my own time. Early morning, 4 o'clock, I can choose. I can go for evening 8:30, whatever it may be. So if I stick on to 5 to 6 o'clock is the evening time, you have to come physically present in, then my intention is to do bhakti, but my time doesn't permit. So what it happens is that slowly I lose the interest of getting into the satsang itself if I'm not into a platform of online. So that's the main reason which I wanted to go for the online mode of doing this physical online mode of doing bhakti. And finally, just wanted to have everybody to be connected virtually. So it is not something new. Veda mantras is a part of connecting virtually. The Veda mantra, the moment you say the God is, Avaganayadvar Kadavul. So Veda mantra is already there in the Wi-Fi from the olden times. So now, as sir said, latest technology, it is all 5G. So already it is there in that olden times. It already said Veda mantras is the only Wi-Fi to get connected to the God. We are just getting into one by we are only our eyes opened only now for this online, all these things. It's only through God. Necessity is the mother of invention. So only now God has opened eyes to this online platform. We are all into this online. So thanks for giving me an opportunity for putting my views onto it. Thanks to all my Gurujis and everybody are my seniors. So if I have said something wrong, just excuse me. Thank you so much. Nothing wrong. Thanks to all Gurujis. Guruji support பண்ணணும்னு அர்த்தம். சரி. Online supporting. Yeah. உங்களுக்கு ஒரே ஒரு கொஸ்டின் மட்டும். ஓகே. ஆன்லைன்ல பத்தி இவ்வளோ ஸ்லாகிச்சு பேசுறீங்க இல்லையா? கடவுள் ஆன்லைன்ல வந்தா ஒத்துப்பீங்களா, ஆஃப்லைன்ல வந்தா ஒத்துப்பீங்களா? Be honest. கடவுள் எங்கேயோ இருக்கிற கடவுளை நம்ம வீட்டுக்கு வந்து ஆவாகயாமின்னு சொல்றோம். ஆஃப்லைன்ல வரணும்னு ஆசைப்படுறோமா? கடவுள் மட்டும் நம்ம ஆசை. கடவுள் ஆன்லைன்ல வந்தா ஒத்துப்பீங்களா, ஆஃப்லைன்ல வந்தா ஒத்துப்பீங்களா? ரெண்டே கேள்விதான் சார். நோ விளக்கம். விளக்கம் வேணாம். கேள்விக்கு மட்டும். Even Arjuna was not ready to see. I don't want Arjuna. I want Ananta Lakshmi. Whether even for Arjuna, Bhagavan was offline, not online. Okay, nice. Just to add masala to this, excellent speech. God bless you. Yes. Now, Nirmala ji. Om Namo Narayanaya. Offline, amma.
Om Namo Venkatesaya. Pranams to everybody. I'm here to talk about physical satsang, how it benefits. The first thing I would like to say is in online satsang, you disconnect after the satsang. In offline, you connect after the satsang. You come here, you meet everybody, and you get to have social interaction with people. That is one of the benefits of physical satsang. The main benefit of physical satsang, I would say, is the positive vibrations that happen. All of you who are here would have noticed when we walked into the hall in the last 5 days when the chanting was going on. How many of you started chanting as soon as you entered the hall? Because the chanting was going on, the positive energy was there, you automatically tend to start chanting the moment you entered the hall, and that increased the positive vibrations. The positive vibrations help in countering the negative energy created by the misdeeds of the people, the greedy people, and it negates the effect and balances the nature. So we need the physical satsang much more than the online satsang. Online satsang is not to be degraded. Online satsang is a temporary solution which helped us during pandemic when we could not meet physically. And therefore, we fully agree that online satsang helped us, but that is only a temporary solution. As in any temporary solution, it is not a permanent solution at all. So you need physical satsang to help people come together. Now, Vishwas believes in 5D principle: determination, development, dedication, devotion, and so on. So what happens? We all came here, our devotion increased because there were too many people here chanting. We also tend to chant along with them. We had dedication because we see kids chanting properly, kids chanting flawlessly, senior citizens sitting patiently throughout the entire 27 avartis. So you tend to develop, you tend to emulate them, and so on. You are in the midst of learned gurujis and intellectuals. You tend to listen to them and you absorb much from them. You try to take as much as you can from them. What are the problems in online? The first thing when we sit for a satsang in online, the first thing that comes to our mind, will my network be okay? Will my mic be okay? Will I be able to unmute at the right time? Will I get a chance to chant? So till the time I start chanting, my mind is more on whether I will complete my chanting properly. Once I finish my chanting, I am relieved. So I may not even continue the chanting. We need mass chanting to have the power of Vishnu Sahasranama helping others. Mass chanting is definitely only in physical satsang and definitely not in online satsang, for the simple reason we do not know whether everybody is chanting online at home, sitting at home. Their mind wanders, they have other things which are being done simultaneously. There may be people at the door who will come and knock, and therefore you will tend to move away from the satsang and so on. So mass chanting is definitely a no in in online satsang. So physical satsang is the medicine for spreading the power of Vishnu Sahasranama throughout. Let me tell you a small story or a small incident that our dear Shekharji has narrated in the Saptaham journal. There was a Goshala and there was a pregnant cow which did not deliver even after the due date. It was suffering from great pain. Shekharji believes in the principle, if nothing else works, Vishnu Sahasranama will work. The power of Vishnu Sahasranama will work. The manager of the Goshala called Mr. Shekhar and told him that this is the problem. Immediately, Mr. Shekhar rushed along with a few of his friends, devotees, and he rushed to the Goshala and chanted in front of the cow, standing in front of the cow. When he chanted Sri Rama Rama Rameti and performed the Arati, the cow delivered a nice looking calf. If online was enough, he need not have gone all the way to the Goshala. He could have just connected online, made a video call, asked him to keep the phone in front of the cow and chanted. No, mass chanting is required. Mass chanting is the need of the hour, and therefore we need to do it. One more instance, the Mahavaraha temple, the sea level, the sea erosion was happening. For 48 days, people chanted there. They did a Mahamantra Sahasranama Parayana for 48 days, and the sea level subsided and the sea erosion actually stopped. These are all the events which have happened, which are examples of the effects of mass chanting. So I would like to say that
I would like to conclude that physical chanting is the best. Online chanting is not, we won't say that online chanting is not required, but physical chanting is better compared to online chanting. Thank you. Nirmalaji, a small question for you. Ramabhadranji, like great, graceful teaching happening in US. Okay, you don't want to miss the. You are for an example, you are very very fond of Ramabhadranji Bhagavad Gita chanting. You don't want to miss his teachings and all these things. Fortunately or unfortunately, Sir has gone to US. What do you prefer? Sir, I will definitely attend the online, but the experience will not be the same if I was in physical class. Exactly. Work is happening or not? It will happen. I only said physical chanting is better than online chanting. Now in this case, sorry? In this case? In this case also, physical class would be much better, because in online class, what happens is the videos are off. The guru is not able to see the students. The student is not able to interact immediately. It is on mute. We have to keep all our questions at the end of the class and then ask. The flow is lost. Okay. Thank you, sir. See, as a counter to that, all the Vedas have been retrieved by the rishis only online. Because the mantras are in the waveforms in the entire universe. If possible, yes, sir, we would prefer that. That is why the thing which is not possible, for that always people go for alternate. So that is online is still a backup, sir. It is still a backup. It is still a backup. Backup is always backup only. Backup is always a backup. Yes. It can never replace the original. Thank you. Next, would like to call Purnima Rao ji, supporting in favor of online. Om Namo Narayanaya. Namaste to all Gurujis. Okay, well, I'm into music. So I have been from 2009. I'm into teaching music, and I'm still learning from my guru. So I have experienced the online and offline method, both the methods. So Guruji always says, Desha Kala Mana Paristhiti, like that, we have to go accordingly. Okay, right. So he always mentions that point. So according to the time, we have to adapt to the system. So this, and when I was learning with my guru music in all the, collective students, when we were learning, we all used to sing in one stretch. Once or twice she used to make us sing, and and sometimes she would hear us independent. That's all. But when it comes to online, we are singing individually in the class. Around 12 students, we are attending the class in music, and 12 students are singing individually, so that the perfection is there when we learn individually online. Physical chanting, definitely it gives you positive vibrations, but learning wise, the online method is appropriate method. And in a month, you can have physical meet. Monthly once we can have a physical meet, and we can sing or we can chant. That we can do rather than online also. That also can happen. And as Guruji said today, like, Vishnu is Antaryami, he is omnipresent everywhere. So the God is in the form of kinetic energy. He is in the power. He is in the satellite. He is in this electricity. He is everywhere. So today we are learning because he is existing in all that, and we are learning online. So this is also a best method over here. And there was one more thing, Meera ji. She was so much in love with Lord Krishna. And one day she was singing this, Mere to girdhar Gopal, mere to girdhar Gopal, dusro na koi. Mere to means I have only the Lord Krishna. See, today we can't see, we see the God only in that idols and on those pics and all over there. This is also online. Have you ever seen the original God? We have never seen original God. From the childhood, we are taught that He is Lord Venkateshwara, He is Lord Krishna, He is there in this, He is there in this. We are believing that. So the belief is itself is the God.
So whether it's online or whether it's offline, the devotee should have that bhakti. Bhakti makes us towards to the spiritual path. And another thing that Meera, I was telling that point is, she'll be waiting for him, and she will not see Lord Krishna, and suddenly that complete, suddenly it becomes very cloudy. The black clouds is covered, and when she's singing with that devotion, the rain drops comes down, and she sees those raindrops as the muva, in the sense that Krishna's anklets. She sees that way, and she thinks that he is a Neela Megha Shyama, and he is come for me in the rain form, and he's coming with those raindrops anklets, and he's dancing for me, and she'll go and get drenched outside, and she'll dance in the rain. So that is the bhakti. So whether online, if you have, but many students, they ask me, like, ma'am, do you teach online? I said, yes, I teach online, because due to the time constraint, due to the distance, we are connected globally online. So online is always the best. Another thing is, when we are teaching online, definitely one has to be present in video, definitely, because that gives a very, very proper impact that we are sitting in a class. Many teachers, they do that, they close the video, they just put the audio on, and we can just learn from YouTube also, if that is the thing. So online, when we are presenting, because my students, they tell me, ma'am, when we are sitting in your class, we feel it's like a class. We don't feel like we are disconnected, because I keep communicating with them. I put more sandwich method. I use sandwich method. That's called, like, I put many debatable questions, and future also, like, I will interact with them so much. I keep giving them homework, and I, like, create an interest that what I'm going to teach in the next class. So definitely online is the best method where we can learn. That zeal should be there with the teacher, how to teach, and the student also should have that interest, how to learn from the online. No matter what, we can rock with online music. Yeah. So that's what madam says. Offline supporting people have failed to adopt the technology. That's why they are going for the offline. And madam, opposite party wants to tell, on behalf of them, I'm telling, for Meera, Krishna was online. That's why in Meera Padam, we can see some sort of shoka is always moving. So whereas for Gopikas 3, Krishna was offline. That's why they were always dancing. But that's what they want to say. But Meera was also dancing in that shoka. She was enjoying that, actually. No, that's right. Enjoying the shoka is something different. Yes. Having the shoka is something different. What opposite people want to say? Yes, for Meera, Krishna was online. She was also enjoying. She was also dancing. But a sort of mild shoka was there, which was not at all there for Gopikas 3. That is their view, not my view. Please, thank you. Sit. Now, Thank you. Anyway, I'll say at the end. Now, I'd like to call upon Anita ji supporting offline. Thank you. Om Namo Venkateshaya. Namaskaram to Sridharan sir and my Gurujis, Sridhar Ramabhadran sir and Raghavendra ji. Now, I just share my experience. We are not here to debate whatever it is. In physical chanting, what I thought to the students, you can teach more of the students, whereas in online you can teach 1 or 2. If out of 20 or 15 on the online, they will learn only 1 or 2 as per my knowledge and what I learned. I taught. So physical chanting is always better than online. And in physical chanting, we can chant full. Whereas online chanting, even now, you are all chanting only 1 or 2 slokas. You cannot chant full. That is one advantage. And as per my knowledge, whoever has learned fully, they are not chanting. Are they chanting every day full? Any one of you here, you have learned, many of you, online, please raise your hand that you are
powerfully chanting. No, that is also one. And mass chanting in divine places, you also, I mean, mass chanting you can do, physically with, with a group of members, whereas, online you cannot do, mass chanting in the divine places. You can also attract others while doing mass chanting. You can inspire others. You can, draw their attention to this bhakti divine line. Whereas in online you cannot do that. And when you, physical chanting, when you do the mass chanting physically, many of them will improve their vocabulary and, fluency of chanting. This I have seen many students this. You can, ask Guruji. They are improving. I have seen so many students. Continuous chanting of Vishnu Sahasranama, you will improve vocabulary also in, fluency of talking or reading, whatever it is. In online chanting, when you are teaching the, Vishnu Sahasranama, this network problem all the times, as my friend is saying that, they have to put on the video. If you put on the video, many will be there. Your, network will be off. So it is a lot of distraction. Sometimes I don't even take the classes also to, check all that network and all. My mood is off, so I can continue that. I always prefer, physical chanting. Anyway, this is like, online is like a snacks, like, what do you say nowadays? Sandwich, no, not full meals. It is. For emergency, you can use that, not for, your full meals. This is what my opinion and, what I experienced. Thanks for the opportunity. The opposite party wants to know that in the offline chanting, there are lots of inconveniences are there. I'm not telling. Those people are telling. Online. Offline. Offline. Offline chanting. What is the inconvenience? Time. No, online only they were not chanting fully. So where they will come to physical chanting? Time, space, economy, time, space, economy, okay, and strain. All these things can be comfortably, easily avoided by online chanting. Not I am telling, they are telling. Only thing, Kamalanathan's opinion, I am telling, okay? Sir, correct. 1 minute. Online chanting, offline chanting தான் வேணும் அப்படின்னு அடம் பிடிக்கிறதுக்கு ஈகோ ஒண்ணுதான் காரணமா இருக்கும்ன்றார் அவரு. No, for your question, I'm telling online is a fast food. Physical chanting is a, good food, not fast food. It is a, healthy food. Online chanting is a fast food. Physical chanting is a healthy food. But this is the world of fast food world. Time being, you can use the fast food. Not, regularly you cannot use the fast food. Understood. It is, dangerous to our health. Understood. But unfortunately, this is the world of fast food world, and they have found the methodology. No, fast food world, that is continuously no. 1 minute. 1 minute. No. What they are telling, they have found the technology of preparing fast food without disturbing the health. They are telling online is the No, it is not proved. It is scientifically also not proved. If you prove, I'll bow my head. No. I'll bow my head, sir, please. That is their view. See, fast food I am telling. This is my opinion, sir. You take half-cut vegetables, boil for a while, get ready, give. What is the fast food is problematic for them? Half-cut vegetable, half-boiled vegetable can be prepared within a fraction of second,
சுட சுட கொடுங்க. Is it the That is health not problem? fast food, sir. You have to add so much of, Thank you. Thank you, ma'am. Thank you. Now, கமலநாதன் அவரோட தமிழுக்கு நான் தலை வணங்குவேன். ரொம்ப அழகான சுத்தமான அருமையான தமிழ் பேசுவார். இவ்வளவு பில்டப் கொடுத்துட்டே நீங்க பேசியே ஆகணும் அந்த தமிழ்ல. ஓகே, நன்றி. ஓம் நமோ நாராயண சார். இந்த நல்ல வாய்ப்புக்கு விஸ்வாஸ் இந்த நல்ல வாய்ப்பு கொடுத்திருக்கிறதுக்கு. ஆன்லைனுக்கு தமிழ்ல என்ன சார் சொல்லுவோம்? பரிவர்த்தனை சொல்லுவோமா? என்ன சார்? 1 to 1. இது ஆன்லைனா இல்ல நேரலை வந்து லைவ். நேரலை வந்து லைவ். உங்களை கேட்கல. இவ்வளவு தமிழ்ல சொல்றோம் சார். ஆன்லைன்னா ரொம்ப சிம்பிள் சார். இங்க அடிச்சா அங்க கேட்கணும். எங்க? இங்க அடிச்சா அங்க கேட்கணும். அது ஆன்லைனா? ஆன்லைன். இங்க அடிச்சா இங்கேயே கேட்கலன்னா ஆஃப்லைன். ஆஃப்லைன் சார். கேட்கலன்னா என்ன பிரயோஜனம் சார்? சரி, ஆரம்பிங்க. கச்சேரி ஆரம்பிங்க. இங்க ஒண்ணு நினைச்சா அங்க வந்து உங்களுக்கு ரீச் ஆகணுமா? அது தப்பு இல்லையோ? அங்க அடிச்சா அங்க தானே கேட்கணும். எங்க சம்திங் கோளாறுன்னு அர்த்தம் சார். அது வந்து என்ன இங்க அடிச்சா உங்களுக்கு வலிக்குதுன்னா சம்திங் ப்ராப்ளம்னு அர்த்தம். என்ன இங்க அடிச்சா எனக்கு தான் வலிக்கணும். அடுத்தது இது வந்து மனுஷங்களுக்கு சார். நம்ம வந்து பகவானோட கான்டாக்ட் வச்சுக்கணும்னா இங்க தொட்டா நீங்க எதுக்காக வந்து ஆன்லைன்ல போய் ஆன்லைனோ ஆஃப்லைனோ எதுக்காக பக்தி எதுக்காக ஸ்லோகம் சொல்றீங்க? கடவுள்ல ரீச் ஆகிறதுக்கு. அப்போ இந்த லைன் எங்க போய் ரீச் ஆகணும்? அவர்கிட்ட போகணும் இல்லையா? சரி, அதுக்கு ஒரு லைன். அப்ப அவருக்கு நேரா வரணுமா ஆன்லைன்ல வரணுமா? உங்களுக்கு எப்படி இருந்தாலும் அவரை போய் ரீச் ஆகுறது தானே நம்மளோட எய்ம். இல்ல பக்தி மட்டும் ஆன்லைன்ல செலுத்துவோமா, நேரா வர்றது மட்டும் ஆஃப்லைன்ல வரணுமா? சார் என்ன இப்போ சார் வந்து கல்யாணத்துக்கு போனா மொய் எழுதுறதையே ஆன்லைன்ல போட சொல்லிட்டாங்க சார். இப்ப கல்யாணத்துக்கு போனாலே மொய் எழுதுனா கூட ஆன்லைன்ல போட்டுருங்க சார். அங்க ஒன்று வச்சிருக்கோம் கூகுள் பே. ப்ளீஸ். ஓகே, தேங்க்யூ. யாராவது ஒரு கேள்வி கேட்டுக்கணும் சார். இப்போ அவங்க சொன்னாங்க டெம்பரவரி அப்படின்ட்டு ஆப்போசிட் பார்ட்டி. உங்களுக்கெல்லாம் எப்படி மெசேஜ் வந்தது? இங்கே வந்து கிருஷ்ணசாமியில் வந்து விஸ்வாஸ் 4 நாள் அவங்க சுக்னிவாஸ்ல மீட்டிங் வந்தோம் சார். ஓகே, மீட்டிங் வந்தீங்க. நான் உங்களை ரெஸ்கியூ பண்றேன்மா. அவங்க சொல்றாங்க கம்யூனிகேஷன் இஸ் டிஃபரெண்ட், ஆன்லைன் இஸ் டிஃபரெண்ட் சொல்றாங்க. கம்யூனிகேஷன் வேர் ஃப்ரம் சார்? நீங்க சொன்னீங்க ஈகோ இருந்தா ஆன்லைன்ல வராது. we go to him. ஈகோ இருந்தா ஏதோ வராது. ஈகோ வெர்சஸ் we go, right? we go to ஸ்ரீமன் நாராயணா. சார் யாராவது ஒரு கேள்வி கேட்கணும் சார். இவங்கெல்லாம் தெலுங்கு சார். மேடம் நாளைக்கு திருவள்ளூர் வர முடியுமா மேடம் உங்களால்? அவங்கள தான் கேட்கணும். சரி, அவங்கள விட்டுருங்க சார். பாலா சார், அவங்க சார், அவர் விஸ்வாஸ் சார். யாராவது நீங்களே சொல்லுங்க சார். எனக்கே வா சொல்லுங்க. என்ன சார்? அவரை கேட்கலாமா சார்? கேளுங்க சார். கேமராமேன் சார், நாளைக்கு ட்ரிப்ளிகன் வர முடியுமா உங்களால 10 மணிக்கு? சரி சார், ஆன்லைன்ல ஒரு 5 மினிட்ஸ் வந்துட முடியுமா? ஆன்லைன்ல தெரியாது சார். சரி மேடம், நீங்க நாளைக்கு திருவள்ளூரோ இல்ல ட்ரிப்ளிகன் உங்களால வர முடியுமா? ஒரு 1/2 hour. சரி, ஒரு 5 மினிட்ஸ் ஆன்லைன்ல ஒரு இது பண்ணிடலாமா? 5 மினிட்ஸ் போதும். 5 to 10 minutes. ஓகே சார், ஆன்லைன் வந்துட்டாங்க சார். இதுதான் ஆன்லைனோட சக்சஸ். நாளைக்கு எங்க திருவள்ளூரோ எங்கேயோ ஒரு இடத்துக்கு வர முடியும்னா முடியாதுன்ட்டாங்க. எதுவும் சார், ஆன்லைன் வந்து இன்னைக்கோ நேற்றுக்கோ ஆரம்பிச்சதே இல்லை. சம் இயர் 5 years 1000 years நீங்கள் எப்போ சொல்கிறீங்களோ அதே தான். மனசில் இங்கே நினைக்கிறது அங்கே போய் ரீச் ஆகிறது தான் ஆன்லைன். அது வந்து மனசுக்கு கரண்ட்டே இல்லாத காலத்திலேயே கூட ஆன்லைன் வந்திருக்கும். ஏன்னா நிறைய பேர் கோயிலில் தான் போய் உட்காந்து சமஸ்கிருதத்தில் தான் படிக்கணும், வேதம் தெரிஞ்சவங்க தான் படிக்கணுன்றது போய் இப்போ நீங்கள்லாம் இருக்கிறதால ஏதோ எங்களை மாதிரி சின்ன ஆளுங்களாம் வந்து கற்றுக் கொடுத்து நீங்கள் எங்கே வேணாலும் வீட்லேயே இருங்க, நாங்கள் வந்து சொல்லி கொடுக்குறோம் அப்படின்னு சொல்லி எங்களை வந்து கதவை தட்டி எழுந்துடுறா உட்கார காலைல 6 மணிக்கு 6 to 7. நீங்கள் எங்களுக்கு வந்து ஃபிசிக்கலாக விஷ்ணு சகஸ்ரநாமம் சொல்லி கொடுத்தீங்க டிடிடி கோயிலில். ரொம்ப சந்தோஷம். ஆனால் நான் லலிதா சகஸ்ரநாமம் படித்தேன். அது எங்கே படித்தேன்? தர்மக்ஷேத்ரா. அது உங்கள் டீம் தான் நினைக்கிறேன். இதில் ஆன்லைனில் கிளாஸ் இருக்குது. லக்ஷ்மி சகஸ்ரநாமம் சொல்லி கொடுக்குறேன்.
பெங்களூரில் பகவத்கீதை, இத்தனைக்கும் என் குருஜியை நான் நேரில் பார்த்ததே இல்லை. அவர்கிட்ட பகவத்கீதை படிக்கணும்னு ஆசைப்பட்டோம். ஃபுல் பகவத்கீதை எனக்கு சொல்லி கொடுத்தாரு. எனக்கு அது வரைக்கும் எனிதிங் மேடம் டிஸ்டர்பன்ஸ் பகவத்கீதை அவங்க அப்படிதான் டிஸ்டர்ப் பண்ணுவாங்க, நீங்க கலங்காம இருங்க. 700 ஸ்லோகமே என்னால் இன்னைக்கு வந்து தனியாக படிக்க முடியும்னா என் குருஜியோட முகத்தையே நான் பார்த்ததில்லை சார். அதுதான் பிரச்சனையே. குருவோட முகமே பார்க்காம கத்துக்கிறது என்ன ஆன்லைன் சொல்லுங்க, அதுதான் பிரச்சனைன்றாங்க அவங்க. ஒரு குரு தெரியாது, குரு யாருன்னே தெரியாது, குருவும் தரைய ஓகே குருவும் தரைய போட்டாரு. குரு வந்து ஆனா விஷயம் கத்துண்டாச்சு. விஷயம் கத்துக்கினேன் சார். எதுக்காக சார்? குருக்காகவா, ஸ்ரீமன் நாராயணனுக்காகவா சார்? குருவை தவிர்த்து விட்டு எதையும் கத்துக்க முடியாதுன்னு அவங்க சொல்றாங்க. நான் ஒத்துக்கிறேன் சார், குரு இல்லாம எதுவும் கத்துக்க முடியாது. அந்த குரு வந்து அவர் சொல்றதும் அதேதான். என்னப்பா என்ன நான் 5 நிமிஷம் கூட ஆகல, மணியை புடுங்கப்பா, நீங்க பெல் அடிக்கிறதுல எடுங்க சார். ஓகே நைஸ். ஒரு பகவத்கீதை என்னால் கத்துக்க முடிஞ்சது. சௌந்தரிய லகரி கத்துக்கிட்டேன். இதெல்லாம் என்னால் எப்படி முடிஞ்சது? இங்க அந்த காலத்துல யாரோ ஊர்ல ஒரு வாத்தியார் இருப்பாங்க, நீங்க அவர்கிட்ட போங்க, அவர் வந்து டைம் சொல்லுவாரு, நீங்க கத்துக்கணும். அவர்கிட்ட போவோம், சார் ஐயா நீங்க எனக்கு சொல்லிக் கொடுங்க. அப்பா நீ அடுத்த மாசம் என் பையனுக்கு கல்யாணம் வச்சிருக்கேன், நீ ஒரு 2 மாசம் கழிச்சு வாங்குவீங்க. இது ஆன்லைன் இருக்கிறதுல நீங்களே வந்து ஃபேண்டாஸ்டிக். தேங்க்யூ சார், நல்ல வாய்ப்பு. நவ் ஒன் மை क्वेश्चन on behalf of them. In those days when நாரதா துருவா வந்து வீட்டை விட்டு கோச்சிட்டு போயிட்டார். துருவா வீட்டை விட்டு கோச்சிட்டு போயிட்டார். அப்போ நாரதா இஸ் கம்மிங் இன் ஃப்ரண்ட். சரியா? இது அவங்க கேட்கணும்னு ஆசைப்படுறாங்க. தேங்க்யூ சார். நாரதா இஸ் கம்மிங் இன் ஃப்ரண்ட். அப்போ நிறைய எல்லாம் சொல்லி தரல, ஒரே மந்திரம் தான் சொல்லி தரார், ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. Got it? நாரதா கம்ஸ் ஆஃப்லைன். யாருக்கு? யாருக்கு? துருவனுக்கு. நிறைய கத்துக்கிறது முக்கியமா, கொஞ்சோண்டு ஆஃப்லைன்ல கத்துண்டாலும் பகவானையே பாக்குறது முக்கியமானு அவங்க கேக்குறாங்க. நீ சார் ரொம்ப நன்றி. நீங்களே அந்த காலத்துக்கு ஆன்லைனுக்கு யாருடா யாருமே இல்லையேன்னு நினைச்சேன். நாரதர் ஒருத்தர் போதும், இங்க நடக்கிறத அங்க எடுத்துன்னு போய் சொல்லிடுவாரு. தேங்க்யூ. ஓ அதே நாரதர் தானா? ஆன்லைன் ஆசானே நாரதர் தான். நீங்க தான் சொல்லணும், நான் சொல்லக்கூடாது. ஆனா மந்திர உபதேசம் பண்றதுக்கு ஆஃப்லைன்ல தான் வந்தாரு, ஆன்லைன்ல வரல. பிரச்சனைய சொல்றதுக்கு ஆன்லைன்ல வந்தாரு. விஷ்ணுவை பாக்குறார், விஷ்ணுவை போய் பாக்குறார், நாராயண நாராயண இந்த உலகத்துல எவ்வளோ பிரச்சனை இருக்கேப்பா, அதெல்லாம் நான் ஆன்லைன்ல பார்த்தேன்றார். சோ அவங்க என்ன சொல்ல வராங்க, மந்திர உபதேசம் பண்ணி கடவுளை பார்க்கணும்னா ஆஃப்லைனு, பிரச்சனையா சொல்லணும்னா ஆன்லைன்னு சொல்றாங்க அவங்க. பிரச்சனை தான் ஆஃப்லைனா. தேங்க்யூ சார், நல்ல வாய்ப்பு. கவுண்டர் என்னன்னா, அவர் ஆஃப்லைன்ல சொன்னாரு, ஆனா அவர் ஆன்லைன்ல தான் பகவானை பிரார்த்தனை பண்ணாரு துருவன். தேங்க்யூ சார். எனிவே நான் வந்து உங்களையும் கேட்பேன் அவங்களையும் கேட்பேன். ரைட் நவ் ஐ வுட் லைக் டு கால் அப்பான் உமாஜி. தன்னுடைய வாதத்தாலும் தன்னுடைய உருவ அமைப்பினாலும் எதிரணியை சல்லியாக நொறுக்கிறார். எல்லாருக்கும் நமஸ்காரம். அன்பு நெஞ்சங்களே, இந்த பதிவின் மூலம் உங்களின் மனதிலை தொடும் இனிய சூழலை இறைவன் அருளட்டும் என்று இணக்கமுடன் வாசிக்க வணக்கமுடன் வருகிறேன். முதல்ல சத்சங்கம்னா என்னன்றது முதல்ல புரிஞ்சுக்கணும். சத்சங்கம்னா எல்லாரும் கூடுறது தான் சத்சங்கம். சரியா? இப்ப வந்து நீங்க ஆன்லைன்ல உட்காந்துட்டு நான் உன் மூஞ்சியை பார்க்காம என் மூஞ்சியை நீ பார்க்காம இருந்தா அது சத்சங்கம். உங்களை யார் பார்க்க வேணாம் சொன்னான்னு கேக்குறாரு சார். எந்த ஆன்லைன்ல மூஞ்சியை காமிக்கிறாங்க சார்? எல்லாரும் வீடியோல. மேடம் நான் கிச்சன்ல இருக்கேன் சார். நான் கிச்சன்ல இருக்கேன். இப்ப நான் பாக்குற மாதிரி இல்ல மேடம், என்ன ப்ளீஸ் வீடியோல வர சொல்லாதீங்க மேடம். அப்படிதான் சார் சொல்றாங்க. அதான் மேடம், ஆஃப்லைன்ல எல்லாரும் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் மூஞ்சி காமிக்கிறாங்க, அங்க அந்த பிரச்சனை இல்லைன்னு அர்த்தம் சார். எஸ். இந்த வருவானே ஆஃப்லைன்ல வருவானே, அவன் மூஞ்சி காமிச்சா என் முன்னாடின்னு சொல்லுவானே, என்ன பிரச்சனை? ஆன்லைன்ல அந்த பிரச்சனை இல்லைன்றாங்க
சார் பிசிக்கல் சாண்டிங்ல ஒரு விஷயம் என்னன்னாக்கா, நம்ம எல்லாரோடையும் நம்ம சேர்ந்து பண்ணும்போது அவங்களுக்கு என்ன வைப்ரேஷன் இருக்கோ அதே வைப்ரேஷன் நமக்கும் கிடைக்கும். அவங்களுக்கு நெகட்டிவ் நல்ல வைப்ரேஷன் வைப்ரேஷன் கிடைக்கும். ஏன்னா பிசிக்கல் சாண்டிங் பகவான் முன்னாடி நம்ம பண்றோம். சோ அவங்களோட வைப்ரேஷன் அந்த இடத்துல வந்து நல்லா தான் இருக்கும். இதே ஆன்லைன்ல பண்ணும்போது நம்ம வீட்டு பிரச்சனைகளை மண்டையில போட்டுட்டு உட்காந்து சும்மா ஒரு 2 ஸ்லோகம் சொல்றதுக்காகவே ஆன்லைன்ல வரா. நான் எத்தனையோ சத்சங்ல பார்த்திருக்கேன். அந்த நேரத்துல மட்டும் கிச்சன்ல இருந்து குடுகுடுன்னு ஓடி வந்து ஒரு 2 ஸ்லோகம் சொல்லிட்டு குடுகுடுன்னு ஓடி போயிடுறான். சார் அவங்க என்ன சொல்ல வராங்க, ஆன்லைன்ல வீட்ல இருக்காதீங்க, அந்த சாக்கு வச்சாவது வீட்ல வச்சு வெளியில வாங்க, அதுக்கு ஆஃப்லைன் யூஸ்ன்றாங்க. ஏன்னா நீங்க பிரச்சனையை விட்டு வெளியில வந்தா தானே பிரச்சனை தீரும். வீட்லயே உட்காந்து எதுக்கு பிரச்சனை பண்ணிக்கிறாங்கன்னு அவர் கேக்குறாங்க. ரைட். இப்ப நம்ம கோவில்ல போறோம். கோவிலுக்கு போனோம்னா அந்த பகவான் முன்னாடி உட்காந்து பண்ணும்போது அவங்க என்ன நினைச்சு வராங்களோ அது கண்டிப்பா நடக்கும். இதே நம்ம வீட்டுக்குள்ள உட்காந்தோ இல்ல வேற எங்கேயாவது ஆன்லைன்ல உட்காந்து பண்ணும்போது அதனோட திங்கிங் வந்து சுவாமி மேல இருக்காது கண்டிப்பா. இதே இப்ப நான் இன்னொரு விஷயம் சொல்லணும்னாக்கா, நான் வந்து பிசிக்கல் சாண்டிங் ரொம்ப விரும்புறதுக்கு காரணமே என்னோட மைண்ட் செட் வந்து வீட்டுக்குள்ள இருந்தா வேற மாதிரி இருக்கும். ஸோ அதை மீறி நான் வெளியில வரணும் அப்படின்னா நான் ஒரு இடத்துக்கு போய் 4 மனுஷங்களை பார்க்கும்போது என்னோட மைண்ட் ஃப்ரீயா இருக்கும். என்னோட பாக்கி எல்லாரும் மைண்டும் பொல்யூட் ஆகும். உங்க மைண்ட் ஃப்ரீயா இருக்கும், பாக்கி எல்லாரும் மைண்ட் பொல்யூட் ஆகும். பை. இப்போ ஆன்லைன் சத்சங்ல வந்து நீங்க சொல்றீங்க, இப்ப நீங்க சொல்ற ஆன்லைன்ல வந்து ஒரு டெக்னாலஜி தெரிஞ்ச பீப்புள் மட்டும்தான் சார் ஜாயின் பண்ண முடியும். ஏன்னா என்னை பொறுத்த வரைக்கும் நான் வந்து எல்லாருக்குமே எல்லாமே தெரியணும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ அந்த இடத்துல பிசிக்கலா வரும்போது என்னால் அவங்க ஃபேஸ் டு ஃபேஸ் நான் பார்க்கும்போது அவங்களுக்கு தெரியாததை சொல்லிக் கொடுக்கறதுக்கு எனக்கு ஒரு வாய்ப்பு. அதே மாதிரி நீங்க ஆன்லைன்ல நீங்க வந்து எனக்கு அந்த நேரத்தில் நெட்வொர்க் இஷ்யூ அது அடுத்த விஷயம். இப்போ ஒன்றும் இல்லை, இந்த பிசிக்கல் சத்சங்க்கு நான் ஒரு இடத்துல பிசிக்கல் சாண்டிங் போயிருக்கும் போது அங்க கிட்டத்தட்ட ஒரு 100 பீப்புள் இருந்தா. அந்த 100 பீப்புளுமே சொல்ற காரணம் என்ன, நான் வரேன் தான் சொல்றேன். ஆனா அது எப்படி அப்டேட் பண்ணணும்னு தெரியலங்கறா. அப்டேட் பண்ண தெரிஞ்சுக்காதது யாரு குத்தம், உங்க குத்தம் தானேன்னு அவங்க சொல்றாங்க. இல்ல எங்க குத்தம் இல்ல சார், அவங்க கூகுள் ஃபார்ம் ஒன்னு போடுறாங்க சார். அந்த கூகுள் ஃபார்ம்ல போய் எப்படி என்ட்ரி போடுறதுன்னு அவங்களுக்கு தெரியல. அப்ப டெக்னாலஜி தெரிஞ்ச பீப்புள் மட்டும் தான் அவங்க இருக்கணும்னு நினைக்கிறாங்க. டெக்னாலஜி தெரிஞ்சுக்காதது யார் தவறுன்னு அவங்க கேக்குறாங்க. அதுதான் சொல்றேன். எல்லாம் இது வயசானவா இருக்கா சார்? இவாளா இப்ப போய் டெக்னாலஜி படிச்சுன்னு வந்து உட்கார முடியாதே சார். வயசானவாளுக்கு நாமத்தை சொல்றதுதான் இப்ப வேலையே தவிர டெக்னாலஜி படிக்கிறது வேலை இல்ல. டெக்னாலஜி படிச்சா அவ என்ன பண்ண போறா? இப்ப இந்த வயசுல 70 வயசுக்கு மேல நாமத்தை சொல்றது அவளுக்கு வந்து இப்போதைக்கு இன்ட்ரெஸ்ட். டெக்னாலஜி படிக்கிறதுக்கு இப்ப எங்கர் பீப்புள் நீங்க சொல்றீங்களா, ஒரு 20 வயசு 25 வயசு அந்த பீப்புளுக்கு நீங்க சொல்றது கரெக்ட். பட் எங்களை மாதிரி பீப்புளுக்கு நான் இன்னும் கேட்டாக்கா எங்களை விட 90 வயசு ஆளுங்க எல்லாம் இருக்காங்க நம்ம ஆன்லைன் சத்சங்ல. வேலிட் பாயிண்ட். கரெக்டா? அவெல்லாம் என்ன பண்ணுவா? 90 வயசு எப்படி மேடம் வர முடியும்? பாவம். ஆன்லைன் அவங்களுக்காக தான் மேடம். ஆக்சுவலி நீங்க சொன்ன பாயிண்டே அதுதான். பாவம், டெக்னாலஜி கத்துக்க முடியும், நடந்து வர முடியுமா? என்ன மேடம் சார், இப்ப விஞ்ஞானமே வந்து பிசிக்கலா நம்ம சொல்ற அந்த ஸ்லோ சாண்டிங் மூலமா தான் நம்மளோட அந்த ஸ்ட்ரெஸ்ல அது விஞ்ஞானம் முன்னேறாத போது மேடம். இப்ப விஞ்ஞானம் முன்னேறி இப்ப விஞ்ஞானமே சொல்லி இருக்கு சார். இப்பவும் சொல்றாளே, விஞ்ஞானத்தாலேயே சொல்லியிருக்கா நம்ம பிசிக்கலா ஒரு இடத்துல கூடும்போது அதனோட வைப்ரேஷனே வேற. நீங்க மன அழுத்தம், மன சோர்வு, கவலை எல்லாத்தையும் மறந்துடலாம் அவதான் சொல்லியிருக்கா. வீட்டை விட்டு வெளியில வாங்க மேடம். வீட்டை விட்டு வெளியில சார். அவங்க என்ன சொல்ல இன்னும் கவலை ஜாஸ்தி. கொஞ்சம் இருங்க, நானே உங்களுக்கு ஏத்து கொடுக்குற பாயிண்ட். அவங்க என்ன சொல்ல வராங்க, இன் பிசிக்கல் சாண்டிங் கெமிஸ்ட்ரி வில் ஒர்க் அவுட்ன்றாங்க. சார், நம்ம ஆதிசங்கரர் வந்து பஜகோவிந்தம்ல ஒரு 4 வரி சொல்லியிருக்கார் சார். சத்சங்கத்வே நிச்சங்கம், நிச்சங்கத்வே நிர்மோகத்வம், நிர்மோகத்வே நிச்சல சத்வம், நிச்சல தத்வே ஜீவன் முக்தின்னு சொல்லியிருக்கார். இந்த சத்சங்கத்துக்கு என்ன அர்த்தம்? நம்ம எல்லாம் ஒரு இடத்துல கூடி சொல்றதுதானே சார் அவர் சொல்லியிருக்கார். அந்த எல்லாரும் ஒரு கூடி பேசுற இடத்துல வம்பும் நிறைய பரிமாற்றம் நடக்கும்னு அவங்க சொல்றாங்க. வம்பு பேசுறவா ஆன்லைன்ல மட்டும் இல்லையா சார்? ஆன்லைன்லயும் இருக்கா சார் வம்பு பேசுறவா. ஆஃப்லைன்ல மட்டும் இல்ல, எங்க போனாலும் வம்பு பேசுறவா இருப்பா. இதுக்காக மட்டுமே வருது இல்லவா, எல்லா இடத்துலயுமே மேடம். ஆஃப்லைன்ல ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் தனியா காசிப் பண்ணிக்கலாம், ஆன்லைன்ல பண்ண முடியாது. ஒரே ஒரு விஷயம் சார், இப்ப பிசிக்கலா சாண்டிங் பண்ணும்போது இந்த பகவானோட கொள்ளை அழக பார்க்க அப்படியே கண்ணை வந்து அப்படியே உறுத்தி பார்த்துட்டே இருக்கணும் போல இருக்கு. நீங்க ஆன்லைன்ல உட்கார்ந்து இருக்கும்போது பூஜை ரூம் எங்கேயோ இருக்கும், இவ பெட்ரூம்குள்ள பெட்ல உட்காந்து சொல்றதெல்லாம் நான் கண்ணால பாத்திருக்கேன். பெட்ரூமையும் பூஜை ரூமா அவ கன்சிடர் பண்றா மேடம். இதுல என்ன உங்களுக்கு தப்பு? ஆன்லைன் gives you maturity. ஒன்னே ஒன்று சொல்லிக்கிறேன் சார். உண்மையிலேயே நான் வந்து பிசிக்கல் சத்சங் போறோம் அப்படின்னாக்கா எங்க ஸ்ரீதர் சார் கூட போறதுல நாங்க ரொம்ப சந்தோஷப்படுறோம் சார். சாப்பாடு கிடைக்கும் சார், சாப்பாடு எங்க போனாலும் பிரசாதம் கிடைக்கும். கேக்குறாங்க ஆன்லைன்ல பிரசாதம் கிடைக்குமா? விதவிதமா பிரசாதம் கிடைக்கும். ஆன்லைன்ல பிரசாதம் கிடைக்குமா? வெறும் உங்க வீட்டு சாதம் தான் கிடைக்கும்.
எல்லாருமே கடவுள் பிரசாதத்துக்கு தானே ஏங்குறோம்னு அவங்க சார் சொல்றாங்க. இந்த 7 நாள் சப்தாகத்துல விதவிதமா சாப்பிட்டுருக்கோம் சார். மேடம் இது நல்ல பாயிண்ட் மேடம். ஆன்லைன்ல பிரசாதம் கிடைக்காது. இது ஒண்ணு போறோம் இந்த அணி வெற்றி அடையிறதுக்கு. கிளாப்ஸ் கோ. தேங்க்யூ so much. வாய்ப்பளித்த விஸ்வாஸுக்கு ரொம்ப நன்றி. தேங்க்யூ சார். No. Final fast round will be given to each one of you in a whatever you are telling immediately rapport round almost. Yes madam, don't worry. Now I would like to call upon Indira Jagan supporting right online, telling that we don't want prasadam. Yes. Om Namo Narayanaya. Namaskaram to all. Thank you for this opportunity. Okay. See, so far, when we are looking at timelines, how did we look at? Because Hinduism, so look at Sanatana Dharma is so old. We told Krita Yuga, then we told Treta Yuga, Dwapara Yuga, and Kali Yuga. We are currently in Kali Yuga. But today, what are we talking? COVID-1, COVID-2, COVID-3, COVID-N. Okay. Yesterday's news bulletin was talking about steps government wants to take about COVID because China is having a huge explosion of COVID. Please don't think I'm going away from the subject. Yeah. So, looks like, see, we are telling it's man-made. COVID is man-made. Many scientists are telling it is man-made. If this is the thought process, we cannot change the thought process. It is only going to go from bad to worse. If they find everything is stabilizing, the pharma industry and the scientists and whoever else has negative thoughts of destroying the world in a different way, bio-warfare, whatever it is, will come up with new strains which currently cannot be taken care of by existing inoculations. Existing vaccines cannot take care. So they can take care of it partially, like the Indian ones are good, or it takes care of it zero, like the China one is done. So in all this, we are living in a very, very uncertain time. So let me come to my, I am a coordinator for our local satsang. Sorry for the interruption. Can we? Yes. What they want to ask, in a cinema theater, if you go, right, there is an emergency exit there. Yes. When is the emergency exit is useful? Only when the emergency comes. When the theater is normal, all can use emergency exit? No. So what they want to tell, due to COVID and all these situations, it is like emergency exit online. You cannot use in the normal way. That's what they want to say. Sir, what I'm saying is, we have seen in the last 2 years that we have had so many restrictions and only now we have come out of it. This emergency exit seems to be the only way now, till we come to a stability Came to the point. where emergency exit is not needed. Then No, it's you a came to different our case. point. What they are telling, you came to our point only. This is only emergency exit only, sir. not normal No. exit. Okay, no sir, because even though we were all stuck at home, what gave us mental sanity is the online courses. VISVAS courses, A, B, and C course gave a lot of, it was good for the mind. So, புரியுதா? அவங்க என்ன சொல்ல வராங்க தெரியுமா? இவ்வளவு பெருமையா சொல்லிக்கிறீங்களே, விஸ்வாஸ்ல 55,000 பேர் படிச்சானே, அது ஆன்லைன்ல தான் நடந்துச்சு, உங்க ஆஃப்லைன்ல நடக்கலன்றாங்க. சொல்லுங்க மேடம். Yes. So the spread, the reach is higher. And today's global economy, everybody is traveling. One need not miss out on anything. No, madam, what they want to say, in online, your reach is higher, right? In offline, Bhagavan's reach is higher. Sir, I will ask another question. We say Bhagavan is inside each and every person. That is why we do namaskaram to everyone. Because there is the Antarami Bhagavan is there. So when we are, I might make mistakes. Please pardon me. Please, nothing. But when we are looking at Kovilla Ponadam, I'm shifting to Tamil for just 1 minute. Kovilla Ponadam Bhakti, I want
online, if initially the whole group agrees that they will be there from beginning to end, everybody is there. It's there happening in our satsang. They're all there. Today I'm asking, there are equal number of kids and adults in our group. We asked the kids to come. None of them came here. I coaxed them. I told them, please come. It's very nice. No, they won't come because their parents are pushing them from class to class. They don't have time. Whereas they're very good at learning Vishnu Sahasranamam and they are chanting so beautifully. Okay, so this will be lost. They will lose that. Sir, I am not saying physical is bad. What I am saying is in today's time, with taking into account all this, online is the solution. Right. Excellent. One question they want to ask. You are talking so much in supporting online சொல்றீங்க இல்லையா? This பட்டிமன்றம் happiness ஆன்லைன்ல நடந்தா நல்லா இருக்குமா? You have to answer. We can conduct online. We can happily conduct offline. Okay? ஸோ இவ்வளோ பெரிய அழகான பட்டிமன்றம், நீங்க அவங்கள பார்த்து கேட்கறது, அவங்க உங்களை பார்த்து கேட்கறது, இந்த சந்தோஷம் ஆன்லைன்ல வரும்னா தாராளமா வச்சுக்கோங்கன்னு அவங்க சொல்றாங்க. We want crowd or we want happiness அவங்க கேட்கறாங்க. சார் நீங்க சொல்ல வர பாயிண்ட் எனக்கு புரியுது. இது ஆன்லைன்ல நடக்கணுமா, பிசிக்கலா நடக்குதுன்ட்டு. இது பிசிக்கலா தான் நடக்குது. ஆனா இங்க இருக்கிற ஒரு 75லேருந்து 150 பேர் வரைக்கும் தான் ரீச் ஆகும். ஆனா பின்னாடி ஒரு மிஷின் இருக்கு பாருங்க. இது ஒரு 10,000 10 லட்சம் பேருக்கு எத்தனை போய் சேர்த்திருக்கும் நேரத்துக்கு. அவங்க என்ன சொல்றாங்க, இத்தனை பேருக்கும் மகிழ்ச்சி இருக்கு, அவங்களுக்கெல்லாம் காது மட்டும் தான் கேக்குதுன்றாங்க. சார் மகிழ்ச்சி எடுத்துன்னு போய் வீட்டு வரைக்கும் டெலிவரி கொடுக்குது சார். சார் கேட்டு என்ஜாய் பண்றதுக்கு மகிழ்ச்சி இருக்கு. இங்க இருந்து அவங்க ஃபேஸ பாக்குறது, ஃபேஸும் பாக்குறாங்களே. ஆனா மனசாட்சியை தொட்டு சொல்லணும், இது ஆன்லைன்ல நடந்தா இவ்வளவு சந்தோஷமா இருக்கும் தான் கேள்வி. உங்க மனசாட்சிக்கு விட்டுறேன்னு அவங்க சொல்றாங்க. எஸ், நவ் பாதி பாயிண்ட நானே எடுத்து கொடுத்துட்றேன் அவங்களுக்கு. என்ன ஓகே, சுஷ்மிதா ஜி is in support of physical learning, offline learning. அதுல ஒரு அட்வான்டேஜ் இருக்குன்னு அவங்க சொல்றாங்க. ஆஃப்லைன்ல குடும்பத்து ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிலாம் விட்டுட்டு ஓடி வந்துடலாம், பாவம் கணவனையோ மனைவியோ தலையில போட்டு வரும்போது எல்லாம் அந்த எஸ்கேபிசம்க்கு அது யூஸ் ஆகும்னு அவங்க சொல்றாங்க. ஸ்டார்ட். Om Namo Narayana. Before I begin, I would like to seek my Guru's blessings, Sri Kaushalya Guruji, who taught me Vishnu Sahasranamam, and also would like to pay my humble pranams to all the Gurus present here, Ramabhadran ji, Kameshri ma'am, and all the Gurus, and the Guru of all Gurus, Raghavendra Sharma ji. No doubt it was an online chanting program through which I learned Vishnu Sahasranamam. But it was the physical chanting program, I remember last year during the Puratasi month, that I got an opportunity to meet the man behind this, all of us learning Vishnu Sahasram today. Yes, Sridharan sir. And it was through him that I got to do service to VISVAS. Whatever service I was able to do, I got an opportunity through Sridharan sir. I was also blessed to meet my Guru, Kaushalya Guruji and Raghavendra Guruji. What more a disciple can ask for than getting the Guru's blessings in person? In online chanting, we need focus, we need discipline, and we need to be organized to chant all the shlokas, though on mute, without getting disturbed by the external circumstances. அப்படினா ஆஃப்லைன்ல இன்டிசிப்ளினா இருக்கலாமான்னு கேக்குறாங்க. No, in physical chanting, when we are doing offline chanting, we chant in groups, so we get to chant all the shlokas. Also, there is another benefit. We get to chant along with the Gurus, and it helps us to correct our mistakes. What mistakes we perform during chanting, that is being corrected because the Gurus are chanting along with us. Even in online, Gurus are chanting na avanga solranga. And this helps in improving our chanting, which also helps in activating all our chakras, which in turn multifolds the benefits of chanting Vishnu Sahasranamam. In Bhagavad Gita also, we know that Gita Upadesham was received in two modes.
One is offline and one is online. So the one who received offline was Arjuna, and another one was Dhritarashtra through Sanjay. We know the end result. We all know Arjuna was in a confused state of affairs. He did not know what to do. He did not want to fight with his own kith and kin and family members, right? But at the end of the Gita Upadesham, all his confusion was cleared. But on the other hand, Dhritarashtra was in a state of anger, resentment, and fear that what would happen during the war. It was the same Arjuna at a later point of time. Krishna, you told me something in Kurukshetra, I forgot everything. But on the other hand, Sanjay, who listened to it, became a great bhakta of Krishna. I will give counter to sir. Even after forgetting everything, finally Krishna Darshana was happened to Arjuna who was offline, not to Dhritarashtra who was online. சார் திருதராஷ்டிரா ஒரே ஒரு வாட்சா தான் சொன்னாரு. அர்ஜுனர் 545 வாட்சா சொல்லி இருக்கிறாரு. அவங்க ஏதோ சொல்ல வந்தா சொல்லட்டும். Yeah. Okay, so in life, we know that there are two types of learning. I believe there are two types of learning. One is good learning and one is divine learning. So for subjects like math, science, physics, we don't need divine learning. Any teaching method, online, offline, is good enough. But Vishnu Sahasranama can also be learned online. I'm not saying no. But to add a divine significance to it, we need the Guru's blessings. And that can happen only in person. So what I'm trying to say is that we need to be under the Guru's eyesight to get that blessings. Guru Parvai நேர்ல தான் கிடைக்கும், ஆன்லைன்ல கிடைக்காது. Excellent. Okay. Physical chanting, அதுக்கு ஒரு கொடுப்பனை வேணும் சார். Physical chanting also helps in spiritual progress. Now you may ask, how do I progress spiritually? In Bhagavad Gita, it is written that a person can go spiritually only when he is in association with other devotees. You are in some bad habit, you have some issue, you mingle along with other devotees in person. You go along, like I have participated in so many physical satsang in Mumbai, Hyderabad. I've got an opportunity to meet so many good souls, seeing what they are doing selfless service to Vishwas and Narayana. And all this helps in increasing our progress in spirituality. And in conclusion, I would like to say that the main Mahamantra, what we are talking about, the Vishnu Sahasranamam, who gave us this Mahamantra? Bhishma Pitama, right? So Bhishma Pitama, when Sanjay could do a live telecast, even Bhishma Pitama could have done a live telecast, right? He could have done the same thing online, but he chose to convey this message, convey this shlokas in person to all the Pandavas and Devas, because he knew the importance of physical presence and the Guru's blessings in chanting the Vishnu Sahasranama. That's what they want to say. When Bhishma Pitavaga preferred offline, only 10 people were around them, around him. If it were told in online, the entire loka would have been around him. Sir, in English, there is the saying, too many cooks spoil the dish. So I think that would go for it. So I would like to conclude saying that online chanting is just a facility, but in physical chanting, there is divinity. So choice is yours. Thank you. Choice is yours. சார் ஒரே ஒன்று பேசலாமா? நான் பாதி லேட்டாக தான் வந்தேன், பட் அருண் நீங்கள் பேசியிருப்பீங்க தெரியல. எனக்கு ஒரே ஒரு பாயிண்ட் நீங்கள் பேசியிருந்தா மறுபடியும் ஐ ஜஸ்ட் வாண்ட் டு ஷேர் மை வியூஸ் ஒன்லி. ஏன்னா ஐ எம் நாட் சப்போர்ட்டிங் போத் எனி ஒன். பட் ஒன் திங், இந்த ஆன்லைன் சத்சங் இல்லாமல் இருந்ததுன்னா, இஸ் இட் பாசிபிள் டு ஹேவ் சச் அ பிக் கேதரிங்? நம்பர் ஒன். நம்பர் டூ, again I'm just want to sharing, but I'm not supporting anything. Second, because I am a person going to all A batches, so many satsang only. So when I go to any satsang, I think Sushmita covered that point very well. I am meeting a person in Australia, Chennai, Trichy, everywhere, which I don't get. I am in a small village in Karur. I am only meeting people in Karur. Which is better? You don't you think you get more
more contact across the globe with சார் ஆன்லைன்ல எல்லாத்தையும் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கலாம். ஆனா நீங்க அன்பு எப்படி சார் பரிமாறுவீங்க? நீங்க பிசிக்கலா போனனால தான் நீங்க வந்து அவ்வளோ தூரம் உங்களை எல்லாத்தையும் நீங்க வந்து கனெக்ட் பண்ண முடியுது. When இந்த you go, why do we go to physical satsangs? Why did you go to Hyderabad? Why did you go to Mauritius? Why did you go கடல் தாண்டி அவ்வளோ தூரம் that எப்படி is போனீங்க? because the benefits I'm getting, I just want to go and physically share it. That's all. But you don't know, I can share some of this satsang. I don't know Ravi is here or not. A218, and there are so many satsang when we go 5 minutes before they join, and they exchange so many personal views. I'm enjoying it. And when they come to India or anything, they come, we become more friends. We become more. Is it possible in the physical or anything what we are doing? Sir, you went in person, sir. That is why their happiness was multifolded. Imagine நீங்க வந்து வெறும் வீடியோல மட்டும் நீங்க ஸ்ரீதரன் சார் பார்த்தா உங்களுக்கு எவ்வளவு சந்தோஷம். இன் பர்சன் கால்ல தொட்டு கும்பிட்டா எப்படி சந்தோஷம். நீங்களே சொல்லுங்க. Be practical and be உங்களால் அவங்க என்ன கேக்குறாங்க? உங்களால இங்க உட்கார்ந்துட்டே ஆன்லைன்லயே உட்கார்ந்துட்டு ஊட்டியை ரசிக்க முடியும் என்றால், ஆன்லைன்லயே உட்கார்ந்து கொடைக்கானலை ரசிக்க முடியும் என்றால், ஆன்லைன்லயே உட்கார்ந்து சுவிட்சர்லாண்டோட குளிரை ரசிக்க முடியும் என்றால் எங்களுக்கு ஆட்சேபனையே இல்ல. ஆன்லைன்லயே கிளாஸ் வச்சுக்கோன்னு அவங்க சொல்றாங்க. Sir, then why are we arranging for yearly visits to Tirumala? Why are we going to Ayodhya? அங்கெல்லாம் போறது அங்க இருக்கிற டெம்பிள்ஸை போய் பார்க்கறதுக்கு ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. To chant in spiritual locations. பீஷ்மாஷ்டமி அன்னைக்கு குருக்ஷேத்ரால போய் சாண்ட் பண்ணா நல்லதுன்னு அங்க போறோம். இது ஆன்லைன்லயே பண்ணிருக்கலாம். பட் லாஜிஸ்டிக்ஸ் ப்ராப்ளம் இருந்தாலும் we have planned. VISVAS has planned all these things. So that itself proves that VISVAS believes in physical chanting. மேடம் அவங்க வந்து இந்தோனேஷியா போனாங்க. ஒரே ஒரு பாயிண்ட், இதெல்லாம் பண்றதுக்கு பேஸ் என்ன இருந்தது? பேஸ் என்ன சார்? நாங்க ஆன்லைன்ல இவ்வளவு பேர் வந்து சார் நாங்க ஆன்லைன் வேண்டாம்னு சொல்லவே இல்ல. எக்ஸாம்பிள் என்ன சொல்றேன்னா, நாங்க 2018 முன்னாடி we are also conducting classes. மேக்ஸிமம் என்ன, நான் ஒரு 2 கிளாஸ் இதுல எடுத்திருப்பேன். அந்த மகாலிங்கபுரம் சார் வந்து இதுல எடுத்திருந்தார் டிடிடில, அண்ட் மேபி அவர் ராமதுரை வந்து இதுல டி நகர்ல எடுத்தார். அவ்வளவுதான். Sir, but what is the quality of knowledge imparted, sir, to the devotees? Evlo pair out of those have actually learned the Maha Mantra completely. In fact, online வந்த அப்புறம் தான் நம்மளுடைய faculty strength increase ஆயிருக்கு. இல்ல, they have learned, but they have come to physical satsang and seeing you gurus chanting so well, we want to reach at least to a smaller extent and try to improve our chanting. That's okay. We understand that the physical aspect is okay. But then அதுக்கு சப்போர்ட் பேஸ் வந்து நமக்கு தேவை ஆன்லைன். தட்ஸ் வாட் இட் இஸ். ஸோ பேஸ் இட்ஸ் a combination of the two. அப்படி இல்லை மேடம். இங்கே வந்து ராகவேந்திர சர்மா சார் வந்து ஒரு ஸ்லோகம் சொல்லி கொடுத்தாருன்னா, நீங்கள் ஆன்லைனில் அவர் கூட கிளாஸ் கேட்டு பாருங்க. ஒரு தடவை வரலன்னா விட மாட்டார். 5 தடவை வேணாலும் சொல்லுவார், 6 தடவை வேணாலும் சொல்லுவார். அந்த உச்சரிப்பு உங்கள் வாயில் வர்ற வரைக்கும் அவர் சொல்லி கொடுத்து தான் இது பண்ணுவார். இது ஃபிசிக்கலாக இருந்தால் நடுவில் இன்னொருத்தன் கேள்வி கேட்டால் டைவர்ஷன் அங்கே போயிடும். ஆன்லைன்னா ஃபோக்கஸ். இப்ப ஆன்லைன் சப்போர்ட்டுக்கு நடுவரையே அவர் எழுகிறாரு. ரைட் நவ் இட்ஸ் டைம். எனக்கு ஒரே ஒரு டவுட் பேசணும் தெரியுமா? பாயிண்ட் நல்ல பாயிண்டா? பிகாஸ் we have to wind up this. என்ன பேசணுமா? ஆனால் அதுக்கு முன்னாடி ஒரே ஒரு வார்த்தை. உமா சொன்னாலே இந்த ஆன்லைனில் தூங்கி போடுறான்னு, இந்த கிருஷ்ணா மண்டபத்தில் இங்கேயும் ஒரே ஒரு செகண்ட் இங்கேயும் Sir, Raghavendra sir, rather than the debate, sir, like we have to discuss about how to improvise our satsangs, whether online or offline. எங்க ஏரியால வந்து டீச்சர் கிடைக்கல, எனக்கு வந்து கத்துக்கணும் ரொம்ப ஆசையா இருக்கு. பட் எப்படி நான் கத்துக்கிறது? நீங்க ஆன்லைன்ல சொல்லி தருவீங்களா? அல்லது நான் வந்து நாகப்பட்டினம் போய் சொல்லி தர முடியாது. வந்து நாகப்பட்டினத்துல ஸ்டூடெண்ட் இருக்காங்க, அவங்க கேக்குறாங்க இங்க வந்து டீச்சரே கிடைக்கல எங்க ஏரியா பக்கம், அதனால நான் சிட்டிக்கு போய் கத்துக்க முடியாது, நான் அவுட்டர்ல இருக்கேன். பட் நீங்க வந்து சென்னையில இருக்கீங்க, சென்னையில இருந்து எனக்கு வந்து கத்து தர முடியுமா அப்படின்னு கேக்குறாங்க. நான் எப்படி போக முடியும்? பட் என்ன, எனக்கு ஆன்லைனும் வேணும் ஆஃப்லைனும் வேணும். அடுத்த பசங்க வந்துட்டாங்க. நான் சொல்ல வேண்டிய எப்படின்னா, நீங்க சொன்னீங்களா ஆன்லைன்ல தூங்குறாங்க, கிச்சன்ல எல்லாம் கரெக்ட் தான். நான் கிச்சன்ல போயிட்டு இருக்கேன், வேலை செஞ்சுட்டு இருக்கேன். அவங்க வீட்டுல சொல்லிட்டு இருப்பேன் நான். அதே இந்த மண்டபத்தில் பார்த்தீங்கன்னா கூட நம்ம 100 பேர் இருந்தால் அதில் 10 பேர் தூங்கிட்டு இருக்க ஒன்றும். அண்ட் ஒன் மோர் திங், விஸ்வாஸ், ஐ வாண்ட் இட்ஸ் a joke actually. We have a competition, sleeping, chanting in sleeping and winning the prize.
பண்ணல. நம்ம 2-3 பேர் இருக்கார். முரளி வரலாம் இல்லை, பட் ஸ்டில் முரளி சார், நம்ம சிவராமகிருஷ்ணன் சார், and one more person, my colleague Ishwari is not here. In Bangalore, we used to go to a lot of places, no? ஒரு இடத்த வர்ச்சுவலாக தூங்கிட்டாங்க 3 பேருமே. They were chanting so nicely. That is again the power of Vishnu Sahasranamam. And we enjoyed. இவளுக்கு யாருக்கு ப்ரைஸ் கொடுக்கலான்னு ஜஸ்ட் ஜோக்காக சொல்கிறேன். பிகாஸ் இங்கே வந்தால் கூட சொல்கிறதுல only 20% தான். வெதர் ஈவன் இஃப் யூ கான்டாக்ட் இருந்தால் கூட இல்லையா. ஸோ ஆன்லைன் அதே தான் வருது. ஐ வாண்ட் டு ஷேர் மை வியூ. And sir, conclude that, and the next program is also delayed now. Over to you, sir. 2 minutes. Based on this Vada and Vivada, on this place we have a conclusion. It is not the forever conclusion. It cannot be. Based on this present situation, we come to a conclusion. ஆன்லைன்ல ஒரு இன்ஸ்டிடியூஷன் அபரிமிதமான வளர்ச்சியை அடையுமா அடையாதா? ஆஃப்லைன்ல வளர்ச்சி அடையிறதை விட ஒரு ஆன்லைன்ல அபரிமிதமான வளர்ச்சியை அடையும் அப்படின்னு அவங்க சைட்ல வலுவாக, நான் சொன்னோன்னே என் ஒப்பீனியன் நினைச்சாதீங்க, வலுவாக அவங்க சொன்னாங்க. செகண்ட் திங், many people are supporting the offline because they are not convenient in technology with the updated technology with the online. As a matter of escapism, they are going for offline அப்படின்னு அவங்க சொல்றாங்க. Online saves energy. Online saves physical activities. Online saves time. Online saves money. ஒரு கூட்டத்துல 50 பஸ் புடிச்சுண்டு எல்லாரும் ஒரு மண்டபத்துக்கு போறது எப்படி? ரைட்? வீட்லயே உட்கார்ந்து செலவில்லாம அதே விஷயத்தை நம்ம வீட்ல எடுத்துட்டு வர்றது எப்படி? So online updated version is always better அப்படின்னு அவங்க சொல்றாங்க. These are all the advantages of online. Let us see the offline advantages. Right? Now we come to the final conclusion. Offline, நீங்க பாருங்க, alternate is always a alternate only. It cannot be main. ஏன்னா திருப்பதியில ஒரு ஆல்டர்னேட் வச்சாங்க. நீங்க வர முடியலன்னா ஆன்லைன்ல தரிசனம் பண்ணிக்கலான்னு. எத்தனை பேர் கேட்டான்? கோவிட் முடிச்ச உடனே எல்லாம் கும்பலா லட்சக்கணக்கா எல்லா கோயிலையும் போறான். So it is the online is the substitute. ஆன்லைன் இஸ் த மாற்று. ஒரு கிளாஸ்ல மெயின் டீச்சர் வரலன்ன உடனே ஒரு சப்ஸ்டிடியூட்டுக்கு ஒரு டீச்சர் அனுப்புவாங்க. தட் சப்ஸ்டிடியூட் டீச்சர் இஸ் ஆல்வேஸ் சப்ஸ்டிடியூட் ஒன்லி. ஹி cannot replace the main teacher அப்படின்னு அவங்களோட கருத்து. சேம் லைக் தட் ஆன்லைன் மோர் இன் நம்பர், ஆஃப்லைன் லெஸ் இன் நம்பர். ஆத்துல மணல் அதிகமா தான் இருக்கும். ஓகே, டைமண்ட் ஷாப்ல டைமண்ட் கொஞ்சோண்டு தான் இருக்கும். அதனால அதிகமாக இருப்பதெல்லாம் சிறப்பானதுன்னு சொல்ல முடியாது, கொஞ்சமாக இருப்பதெல்லாம் மகிமை கம்மியானதுன்னு சொல்ல முடியாதுன்னு அவங்க சொல்றாங்க. நீங்க என்னதான் சொல்ல வரீங்கன்றீங்களா? ஃபைன். சோ எனி குட்னஸ் ஆர் சிறப்பு cannot be measured by the numbers, right? It can be measured only by the quality, not by the numbers. Definitely online la 10 times, 20 times, 100 times as VISVAS has grown, definitely you cannot refuse this. But மனதுக்கு நிம்மதி தருவது, மனதுக்கு சந்தோஷத்தை தருவது, பிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டி தருவது ஆஃப்லைன். மனசுக்கு சந்தோஷம்,
நான் உங்களை திரையில் பார்ப்பது எப்படி, நான் உங்களை நேரில் பார்ப்பது எப்படி. அதனாலதான் மிகப்பெரிய மிகப்பெரிய சினிமா ஹீரோஸ்க்கு அவன் திரையில பாக்குறான், நேரா பார்த்த உடனே முண்டி அடிச்சுன்னு ஓடுறான். அவனுக்கு ஆஃப்லைன்ல பாக்குறதுக்கு அவ்வளோ சந்தோஷம். சோ ஆன்லைன்ல வாக்கிங் போக முடியுமா அவங்க கேக்குறாங்க. ஆன்லைன்ல வாக்கிங் போக முடியுமா, ஆன்லைன்ல ட்ரெட்மில் போக முடியுமா. ஆஃப்லைன்ல வாக்கிங் போனா இதயத்துக்கு நல்லது, ஆன்லைன்ல ட்ரெட்மில் ஆஃப்லைன்ல வாக்கிங் போனா இதயத்துக்கு நல்லது, ஆஃப்லைன்ல வாக்கிங் ட்ரெட்மில் போனா இதயத்துக்கு நல்லது, ஆஃப்லைன்ல ஸ்லோகா படிச்சா இதயத்துக்கு நல்லது. ஒருமா சந்தோஷம். இன்னும் முடிக்கவே இல்லையா ஐயா? சரி முடிச்சிடலாம். சோ என்னைக்கு உலகத்துல தாய்ப்பால் ஆன்லைன்ல குடிச்சா குழந்தை ஆரோக்கியமாக வளரும்ன்ற நிலையில வருதோ அன்னைக்கு ஆன்லைன் கிரேட், அது வரைக்கும் ஆஃப்லைன்ல கிரேட். இது என்னோட அபிப்பிராயமும் கூட. ஓகே, ஆஃப்லைனுக்கு மாற்று. ஏன்னா ஆஃப்லைன்ல we create an ஆரா. இந்த ஆரான்றது ஒரு சர்க்கிள். டெஃபினெட்லி ஆன்லைன் ஹேஸ் 100% மோர் தென் ஆஃப்லைனை விட 100% அட்வான்டேஜஸ் ஆன்லைன்ல தான் இருக்கு, மறுக்கவே முடியாது. ஆனால் ஆஃப்லைன்ல இருக்கிற அந்த சந்தோஷமும், அந்த மனிதனுக்கு மனிதன் இருக்கிற நெருக்கமும், வம்பும், எப்படி வம்பும் அப்பப்ப வம்பு பேசினாதான் சந்தோஷமா இருக்கு. அவன் அப்படி பார்த்தல இப்படி பார்த்தல என்ன பிரசாதமும் இதுக்கு மாற்று இன்னைக்கு வரைக்கும் இல்ல. ஆகையினால ஒரு இன்ஸ்டிடியூஷனை ஓகே அதிகப்படுத்தணும்னா ஆன்லைன் வேணும், மனித வளத்தை மேம்படுத்தணும்னா ஆஃப்லைன் வேணும். மனிதன் என்பது மனித வளத்திற்காகத்தான் இருக்கிறானே தவிர எண்ணிக்கையை கூட்டுவதற்காக இல்ல. நன்றி, வணக்கம். தேங்க்யூ. I just want to add, ஸ்ரீமத் பாகவதத்துல இந்த கிருஷ்ண பரமாத்மாவும் இந்த கோபிகைகளுடைய எபிசோட் மூணு ஸ்டேஜஸ்ல வரும். எவல்யூஷன் தான், இட் இஸ் அன் எவல்யூஷன். ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேஜ்ல கிருஷ்ணர் வந்து ஃப்ளூட் வாசிக்கும் போது எல்லா கோபிகளும் அவளுடைய பண்ணுகின்ற வேலையெல்லாம் விட்டுட்டு அப்படியே நேர கிருஷ்ணன் கிட்ட வரா. இந்த பிசிக்கல் அசோசியேஷன்ல தே ஆர் சோ ஹாப்பி. அப்போ ஒரு ஸ்டேஜ்ல என்ன ஆகுதுனாக்கா, கிருஷ்ணரை கூட்டின்னு மதுராக்கு போயிடுறார். மதுராக்கு கம்சன் கூட்டின்னு போறான்னு கோபிகள்லாம் ரொம்ப வருத்தப்படுறா. ஐயோ கிருஷ்ணனுடைய பிசிக்கல் சப்போர்ட் இல்லையே, அவருடைய நம்ம இல்லையே சொல்லி ரொம்ப வருத்தப்பட்ட போது உத்தவர் அனுப்புறார். உத்தவர் அனுப்பிச்சிட்டு எனக்கு இன்னும் வேலை இருக்கு, வேலையை முடிச்சுட்டு நான் வரேன்னு சொல்லிட்டு. ஸோ அந்த சமயத்தில் உத்தவர் அட்ரஸ் பண்ண அப்புறம் திரும்பி கடைசியில் சமந்த பஞ்சகம்ன்ற இடத்துல வந்த போது கிருஷ்ணர் என்ன சொல்றாரு, எல்லா கோபி ஸ்திரீகளுக்கும் நீ என்னுடைய தாட் மட்டும் மனசுல இருந்தாலே போறோம் அப்படின்னு பிளஸ் பண்றாரு. அது இருந்தாலே நீங்க சந்தோஷம் பண்ணி, அதுக்கப்புறம் பகவானுடைய பிசிக்கல் பிரசன்ஸோ இருக்கோ இல்லையோ அந்த சமயத்திலே அவருக்கு ஆனந்தம் கிடைக்கும். ஸோ தட் இஸ் அன் எவல்யூஷன். பிசிக்கல்லேருந்து ஆன்லைன் போயிட்டு பகவான் மனசுல நினைச்சாலே சந்தோஷம் வந்துருத்துனாக்கா தட் இஸ் அல்டிமேட் ஸ்டேஜ். இது இதுவா அதுவான்ற கொஸ்டின் இல்லை, எல்லாமே ஒரு ஸ்டேஜில் ஒரு ஸ்டேஜில் நம்ம போயிட்டு இருக்கோம். ஸோ ஒரு ஸ்டேஜில் நம்ம போல் வாட்டு தோன்றதுக்கு போல பிடிச்சிக்கணும். பட் அந்த ஸ்டேஜில் போகும்போது போல விட்டாதான் அந்த சைடு தாண்ட முடியும். அந்த மாதிரி பிசிக்கல்ன்றது ஆரம்பத்தில் தேவைப்படுறது, கடைசி ஸ்டேஜில் அதையும் தாண்டி போகும்போது தான் பகவானுடைய ஆனந்தம் கிடைக்கும். We will do that. The concluding song we have on this subject by Purnima. Before that, I request Raman sir and Raghavendra Sharmaji to give a memory of from VISVAS for this those is a special song on our VISVAS and the debate what we had gone through for this online and physical satsang with our beloved Gurujis. So I written this song for our VISVAS. Ma'am, only Purnima, only 1 minute. Physical. Only 1 minute. Shall I, sir? Physical satsang versus online satsang, which is the best? Physical satsang versus online satsang, which is the best?
We all came for the debate and we have scholars in our group. We all came for the debate and we have scholars in our group. It's a debate that happened at Krishna Swami Mandapam. We have judges all well versed in the doctrine of knowledge. Oh, my Vishwas infinite, global chanting gives us light. Oh, my Vishwas infinite, global chanting gives us light. COVID taught us learn to chant at wherever we do live. COVID taught us learn to chant at wherever we do live. Nothing stops the heights of chantings when we are at Vishwas. Oh, my Vishwas infinite, family of divine light. Oh, my Vishwas infinite, family of divine light. People from across the world are connected to Vishwas. Online or physical satsang, does it matter at Vishwas? Cause we see the Lord Vishnu in the chantings of satsangs. We are all blessed devotees to learn from our best Gurujis. Oh, my dear Vishwas, you are only the best, making more satsangs, making it a global spread, making it a global spread, making it a global spread, making it a global spread. My God. அனௌன்ஸ் பண்ணுங்க மைக். இந்த ப்ரோக்ராம் அனௌன்ஸ் பண்ணுங்க. ஆங்கர் வாங்கண்ணே. சபை அப்பதான் நிறையும். நீங்களா வந்து எல்லாம் வாங்க. மைக் ஒரு நிமிஷம் வாங்கல. மைக் மைக் எனக்கு கேட்குற மாதிரி மானிட்டர் மாதிரி. மானிட்டர் வேணும். மானிட்டர் மாதிரி வேணும் எனக்கு. என்ன நான் பாடுறது எனக்கு கேட்கணும். Now we have Anand Bhagwata sir do the bhajan. அதை இப்படி திருப்பி எனக்கு கேட்குற மாதிரி வச்சுருவோம். அது ஆடியன்ஸ்லாம் நீ இப்படி திருப்பிக்கும். எனக்கு கேட்குற மாதிரி. எனக்கு சுத்தமாக எனக்கு கேட்கவே இல்லையே. ஃபீட்பேக் வெளியில தான் இருக்கு. இல்லை இந்த ஹாலு எவ்வளோ வச்சாலும் செட் ஆகாது. நாங்கள் நிறைய பாடிட்டு இருந்தோம் ஹாலில்.